Steve, you said it there perfectly as well. The lights, the trophy, the money, everything. It just makes it 10 times harder to win and to advance in this game. But one of these players will be moving into the next round to qualify for phase 2. But one will be going home. Unfortunately, 0 and 2. Already starting on the offensive side of things with Yoshimitsu and Sin. The thing is that, look, you might be the only Yoshimitsu, but I think that helps the Yoshimitsu players. The less Yoshimitsu representation, the better. And right? Sin, my man's got gimmicks, and he started off that set with a perfect. Yeah, very different to other Yoshimitsu players. I think that's the beauty of this character as well. You know, players like Kane and Trench, you know, iMusician, everyone has their own style of play. I think with Sin, he has like a really good balance. He has so much knowledge, but at the same time, he is ready to make it tricky and make it awkward for the opponent. Yeah, he definitely uses a bit of like the resources that all the other Yoshimitsu players play, right? And shout outs to Kane and Trench, shout outs to iMusician. You know, we're big fans of those guys, but right now the lights are on Sin, and I'm sure they would want him to succeed with this character just the same. Lohai answers back round for round, one apiece. Lohai really needs to wake up after that 3-0. I wonder if that's going to play a part in his mind as well. Beautiful flash there to stop any offense. I like that. Cancel it, sneaks in the low, as much damage as you can. Oh, and goes for the low. Look at, and I love Yoshimitsu's combos, man. They always look so cool. They definitely look cool. I hate getting hit by them, but they definitely look cool. And here's the mix-up. Punish. Yep, good stuff. Goes for the 2-throw, but did not get it. Stand duck, put the sword up. That means that flash is definitely a threat. I feel like Lohai needs to find a way to activate heat here, and he does it there. Regains so much health as well, and I feel like with this combo, recovers all that gray health, eliminates half of Sin's bar, but he goes the other way. That's what I was talking about. The tricky play of Yoshimitsu, the gimmicks of Sin, and he gets the floor break. He should be able to get the kill. That clock is winding down. Oh, 1 pixel remaining, 5 seconds. If he got that low parry there, the game would have changed, but Sin on the front foot. Nice blocks. Just mixing them up. Lohai trying to find the right opportunity. Down forward one, and he baits out the flash. And that's what you want to do. When a Yoshimitsu player is starting to overcommit to the flash, you need to find the way to bait it out, and Lohai punishes him severely for that. Wow. Just gets up and does it. Yo, you like EU style Tekken, Steve? I don't know about that, bro. I don't know about that, bro. Yeah, this is the EU style, man. It would have got me, though. I will say that. I would have been tilted. Woke up, hop kick. Oh, wake up while rising one. This round could be over. Okay, all right. Okay, Lohai still fighting. Yeah, my man, no headset on, by the way. Taking in the sights and the sounds of EWC while he's playing on stage. Yeah, Sin really needs to try and get this for sure, because the thing is, you give Lohai a bit, he's gonna run away with it. He got the orbital, but wasn't ready for the hit, so no combo. And that's one of the reasons we're looking at the combo from Yoshimitsu and Sin right now. Oh, so good. So close as well. Man, this combo lasts forever. Gets a little bit of life back as well. Like Sin is pressing all the buttons. Lohai's just trying to find one opportunity. He's threatening with the orbital hill as well. The cannonball. Looking for a reaction out of Lohai. He's playing the defensive side of things. Playing in range 3 or 4 because he knows there's got to be a big commitment by Lohai, by Sin, if he wants to make something happen. And that was a bit of a bait. Had a power crush behind it just in case you hit a button. Great layered strategy there from Lohai. He gets a game on the board. Well played. Yeah, I think that one thing that's really important about Tekken that I've started to notice right now is the usage of power crush, right? Even if it's just being used at the right time at the end, like in that situation, you always need to be very vigilant when approaching opponents, because that power crush can come out at any time. Yeah. Like when you least expect it there, you see that Brian going for the power crush and winning the round. Oh yeah, I forgot they got a special intro. Yo, we got to let these intros rock. That intro is one of the best as well. Definitely, definitely. Nice, small punish there. Machine gun blow. All right, let's see what Sin can do here. We know how much damage he's caused around EU, around the world. It's a huge achievement to qualify for the EWC as well. Dude, Sin, wow. Sin this year has actually been playing amazing. We saw him quite a bit last year, but this has definitely been one of his breakout years where we've seen him succeed as well as qualify for EWC. It seems like he's trying to play a bit more tricky now. He's using those spins a bit more. But Lohai just stop cold, man. He's just, defense is too strong here.
Look, if you guys are new to Tekken, I implore you, turn on Low-High stream and watch how many characters he plays and the level that he plays them at. Brian isn't his only flavor. My man's got a bunch of them. To the wall we go. Nice punish. I like that. Cannonball straight, lots of blocks done, keeps that positioning on the wall, using the spin to switch the position. He first gets him out of danger in the orbital. It still trades, though. That's a tricky one. And this is what I was talking about, the power crush at the right times. He's used it 2 times, and both times have hit from Low-High. The Beyblade gets the counter hit, re-wall splat. Oh, this is where the tricky stuff, oh my god, the tricky stuff. The low. Oh, he got it back forward to Mock Breaker. I was about to say, Sin is in such a good position right now. He also has, I don't know if he's going to want to activate. And that was so smart because Low-High sidestepped twice there, maybe thinking that the heat burst was going to come out. Instead, the down forward one, Sin staying alive. And I'm glad you talked about the power crushers, right? Super offensive game that Tekken 8 is. Sometimes your only option is the power crush to alleviate the pressure. But it also, even if they don't get, they get this small damage with punish-wise, nice break on the 1+2, it's still something that you make them think about. Nice sidestep! Yeah, he's done that on a few occasions now. And this is my favorite part. When their back is against the wall, you know, he has endless tricks here. What's standing for? Yeah, you got to be careful. Yoshimitsu has some very useful unblockables, which are back to the wall, rainbow drop. My man says no thank you to the Skittles. Nice block. Great option. The Fubuki meets Sin. What a sneak. And that is another similar situation as before. Tried to sidestep. Maybe he thought the heat burst was coming, and on 2 occasions, Sin not popping the heat. If I would have heat burst, I would have died. Wall damage. Flip him over, cook him on both sides. Small punish. It's going to activate, of course. Oh! Not close enough. Knocks 2 times and runs away. Well, like Low-High is finding himself in these really bad situations. You don't want to be there against Sin, against Yoshimitsu. He actually lucked out in that scenario because that unblockable was there and he could have been on his way to death's door. But he's still there. Back to the wall. Unblockable again. The toe kick. Oh my god, he gets the counter hit. This is going to be humongous damage, Steve. What? He dropped the combo, ran up and reset. God. I don't know why I didn't go for Rage Art, but it got the job done. What do I know? Oh my god, Tekken 8 is so 60. Bro, okay, big counter hit. Wait a minute, Low-High is opening up the floodgates now. He's getting a lot more hits, and he gets the wall. Watch the damage. Takes the Oki. Goes for the taunt setup again. Sin is tech rolling all the time here. And look, me and you both know, one of the things you don't do versus Brian is tech. Oh, kangaroo kick. He has to do some sort of crazy mix-up here. And goes for the big low again. So unfortunate, doesn't get anything with it. Oh, the heat burst. Good patience. That was so smart on the side of Low-High to wait after the wall jump. You see Yoshimitsu's alike, and a lot of these players, they like to use the wall jump to get out of pressure. Yoshimitsu has so many moves. A lot of times you're gonna take a breath. You're gonna be like, hold up, what is he doing? I love that he did that. Low-High, keeping the momentum. Sin still fighting, bro. If this is a race, he's right behind him. Yeah, I feel like Sin is just holding on by a thread right now, but he's managing to keep up with the speed that Low-High's playing at. Just small margins. Low-High's like movement, sidestepping, decision making is just slightly better. But both of them just being a bit more patient. Cannonball straight, gets under the high. Because it definitely looked like it crushed the jab right there. Takes the Oki. Man, Sin is taking a lot, you're right. Yeah. He's playing a very dangerous game. You figure as a Yoshimitsu player, he'd not be teching. But, you know. He's teching so much as well. It's not working out in his favor. Low-High, just one final mix-up here. Just one down forward, one down, or one power crush again. All these power crushes are hitting, Steve. He's doing it at the right time. It seems like he likes to do it at the end of rounds when he knows Sin needs to press a button. I've heard about this strategy before, and it's really good. When at the end of rounds, then more than likely the opponent is going to press, try and make a comeback of some sort, and then Low-High just throwing out that power crush. And the orbital. First time he's got the combo. First time he's got the combo. He's landed 2 of them, but not prepared. Hatchet. Yeah, this is the first. Low-High right now. He's playing so strong. Sin, you need to pull something out the back here. And Sin going for a spin. Actually takes away his own life, but he gets the counter hit, but the wall almost messes up the combo. Flash, let me get some of that life back. Yoshimitsu with one of the unique characteristics of getting life back on most combos.
This is so close, and the confirm there by Lohai, 1 round away from moving forward and eliminating Sin from the Esports World Cup. Elimination point on the line. Oh, just single jabs. I like this. Poke him a lot more. Yes. Look at the life lead he has just by pokes alone and Lohai. And the thing is, all those pokes, right, maybe 5 or 6 pokes, took so much health, but Lohai just got 1 launcher, and he's already evened it out. This is going to be an awkward combo. Can you convert those in? Nice adjustment. Talk about conversions. Talk about conversions. Okay, Sin. Lohai biding his time. Going to the defensive route. Knows that offense is the name of Sin's game, and he's trying to thread that needle. Engage. Wait a minute. This is a dangerous situation, Sin. What have you got Lohai on the front foot, Steve? Almost. He lucky that didn't hit on the ground. Oh, wait a minute. Is he out of there? No! And there is Sin. And I told you before, Yoshimitsu's around the world like to use that option to get out of there. Sin's still alive, holding on. Oh, and too much tech. Oh, we spoke about that before. Sin needs to be careful. Such a good call out, Rukang. He is teching a lot, and Lohai is making him pay for it now. Making him pay super hard there. Sin is going to have the life lead here again. I wonder if he's going to activate Heat. He's got a bunch of options here. Your life is on the line, Sin. No room for mistakes, no room for error. Oh, wow, catches him out of the air. Wow, tries to use the charge drag boot. Oh my god, he's playing so tricky now. Yoshimitsu bringing out all the tricks. Down forward 1 and Sin staying alive. He believes. Oh my god, just out of range, Steve. Sin on the verge of going down, just a little too eager to get that, and this is where Sin has an opportunity. That's a huge launcher. Back against the wall, dangerous situation. I don't know what type of mix-up that was. Still spinning. Definitely takes his life. Slash kick. Oh my god, this is tense. Lohai not pressing any buttons. No, he ducks, he doesn't punish though. Just a little too slow. Sidestep works this time. Sin's got an opportunity to get around a match on the board and can send us to more games, but he's got to close out this round, and it's only 16 seconds left on the clock. Cannonball straight. Oh, this is crazy. Sin needs to find a way back here. He's on his final life, goes for the flash, and that was the wrong option, Steve. Goes for the Rager, and Lohai advances. 1 mistake is all it took there. Of this match as Lohai celebrates the win. Of course, please can I get a round of applause for the lone EU representative Sin. And meanwhile, Lohai joins me right here to get his first key crush of the day. He will need to crush a second one if he wants to validate his ticket to tomorrow's top 16. The key is being set. The key master is giving him the quick security, and now it is time to get that key destroyed, to make it pop and to make it loud. Let's hear this one. This key marks the end for Sin, but marks the continuation on Lohai's sides. Ah, there we go. GG's to Lohai. And unfortunate, Sin must bow out of this one. Lohai continuing on this. We will see more of Lohai. GG to the players, of course. And Lohai is already escaping before the key. We must give you the end. Lohai, congratulations and GG. And we will be back with more Tekken. 2 more matches going to qualify, and maybe a couple more keys destroyed by Lohai.
Welcome back, everyone. EWC 2026, the key crushing there. Oh my God, what a thing to witness as well. Your hopes and dreams, Tasty Steve, just crushed. Your soul just destroyed there. And yeah, so unfortunate for Sin. You know, commiserations to him. He put up a great fight. You mentioned it before as well. He's had a great year, and he's made everyone proud in EU for making it to the biggest stage. But so unfortunate for him to go down. Yeah, somebody's got to fall by the wayside. But once again, you're watching the best players in the world go up against the best players in the world. Somebody's going to go 0-2. It just happens. I'm sorry to say, if you're new here, it definitely happens. And it takes nothing away from these players outside of their, tournament positioning. However, these guys are going to meet each other somewhere else, somewhere down the line, in another country, in another tournament, another bracket, and they will be thinking about the last time they played, which could be EWC. But the show must go on. In the next match, you see it right in front of you, Rangchu, John Ding, decider match. Oh, another elimination match. One of these players will be going home. And John Ding, we spoke about this before, the maybe the pressure on this guy to perform well, team vitality, looking for those points. They want him to advance as far as possible, ideally win the whole tournament. Yes. But it's going to be a long road. He's already got through one hurdle, now another one in his way in Rangchu, a two-time Tekken World Tour champion. Well, these guys are getting locked in. John Ding versus Rangchu coming up. Championship club points on the line here. You know Vitality wants John Ding to do well just as well as Vero wants Rangchu to do well, but it's all about who wins. Big counter hit to start it off. And I'm going to tell you right now, I honestly can't call this match. No, it's going to be difficult. And the beautiful thing about us watching at home, us on the commentary desk as well, is that we can see those small micro adjustments. We can see when they change their timings. It's so nice to see, especially in Tekken 8 as well. But right now, both of them, just swinging the first round, trying to suss each other out, trying to see each other's timings. And it's almost over this first round. John Ding running away with that first round. 32 seconds left on the clock. First blood. I really want to see what John Ding does here against Rangchu's lows. We've said it's a big part of Rangchu or any Falcon Run's gameplay. I want to see how John Ding manages to find the way around. Well, John Ding has crazy movement with the Eddie. He always has. And I'm sure he knows he can't play this character up as close as he plays some of the other matchups. So you're right. I would love to see what his option is going to be. And right now, it's offense. Gets the explosion off the wall. Shout outs to Clive and the crew. He burst. I like that, taking a little bit of the Oki, but still push it to the wall. And because of that stance, he has a little bit more tracking on the follow-up move out to relax. And look at this, nothing but offense. Nothing but offense. 2 rounds straight so far here. Yeah, I want to see some more strings come out from Rangchu here. John Ding just running away with it. Stage hazard, gets the explosion. Drops the combo though. Doesn't punish that low. Yeah. Down jab there. Again, Rangchu just being really defensive, waiting for John Ding to make a mistake. And we saw that last time. You said one of the things that Rangchu needed to do was up his offense because he was playing defense too much. And I think you're right. Playing against a player like John Ding, you can't let him just play his game. Up, yeah, constantly. And John Ding, the level that he's at as well, you cannot do that. Just dashing forward, looking for something. 15 seconds remaining. See him priming with that down forward too, because if he got the hit, it would have been a clean launcher, but he's only got 10 seconds left. The 1, 2, 3, 6 seconds left, and once again, we saw Tekken Master use that string to close out a bunch of rounds just in case they try to down jab, they get clipped in the process. I like the option, but I also like the answer just to go for that string to close out. Yeah, that was sick. John Ding, 3 rounds straight against Rangchu. How is Rangchu going to adapt to John Ding's gameplay? Even though Rangchu is having perfect punishment on all those unsafe moves that John Ding's doing. John Ding doesn't really care. He just carries on going for it, carries on using his offense. He's not really deterred from going through those options. He's not taking major risk with anything. Just maybe a -12, -13 punish here and there. But he doesn't care. He's like, oh, you're letting me run most of my offense anyway, so I'm just going to keep doing it. Bro, if you want to gamble, go right ahead. You going to block this? I guess you'll find out. But Rangchu back into it and turns up the offense. Giving us shades of life right now with the running threes.
Nice. Wall splat punish. Wow. I love that. Back against the wall, presses the button, and he changes the whole situation here. Wow, look at how much travel he gets across these stages. This arena, definitely a lot smaller, but still, Falcomom definitely gets the opportunity to do some crazy wall carry on stage like this. Does Junding believe he can make a comeback here? I bet you he does. Okay. I mean, it's not going to happen, but you got to believe. Of course, yeah. Even if there's one pixel remaining, you need to try and find a way back. Nice jab interrupt there. Down jab. Yeah, I want to see like more free ones from Ranchu, or go for the free 4 option as well. I don't know. Like, he's not going for anything at all. He's not. You got to be careful, though, because we know John Ding is definitely a down back monster. Yeah. So if you swing high, he's definitely going to hit you with a Wild Rising 1. And maybe that's why he's not doing it as well. Going for that big low again, and Ranchu answering back with 2 rounds in a row. Let's go. Nice whip punish. You see how he got that whip punish? He dashed in, dashed back. Ranchu did something, and then he dashed in and got the whip punish. Oh, that was so sick. Goes for the sprint kick. Engage. Off the wall. This is going to be a big combo. Oh, I didn't even see the wall there, man. That was sick. 2 locked in on the battles. And then the double nice wall damage there. Big 81 damage. Yeah, Johnny's just trying to find the way out. Oh, what? Nice sidestep. 3+4. Almost got the wall. Sneaks in a low. Oh my God, just goes through him. Plus frames. Great punish. Block. Great block and punish. He's got some great life to recover. That offense is going to help him get a little bit more back. Oh, I love the buttons that Ranchu's pressing now. Single jab, not letting Johnny get in, and the block punishment still on point. And when he mixes the offense with that stone wall defense of Ranchu, he becomes so dangerous. And that was very well played from Ranchu. Ranchu saying, yo, man, I'm done with the Bears. I'm on to Falcomom. John Ding looking real composed. I saw a tweet where he was like, man, I can't wait to play for the Vitality fans. And I got to say, man, Vitality, you guys got some bangers with John Ding. John Ding, and look, not here, but King Ray, also just the same. Yeah, John Ding definitely does put on a show. Going for the mid. John Ding holding his ground. Whoa, speaking of holding his ground, the explosion sends him down to the bottom floor. Going to get a full combo extension, and he still got heat. Nice wall damage as well. Goes for a cheeky low there. Running his offense. Nice sidestep. Going to get the heat engager. Explodable floor right there. Wow, handstand that once again, he's been using a lot of handstand today. Yeah. Rage Rod, that's not going to kill, but he gets to take his momentum back, and he's going to get some of this great life back, as well as take away all the recoverable great life from John Ding. Very good option as well. You were right there. He's using a lot of handstand, Steve. You pointed out so early on, and heat smash into the round there. Great stuff. He forces the guess. Yeah, you might block. You might block. Like a couple of them, right? But then all the others. Just constant guessing. Drum roll, please. And look at the life deficit already from Ranchu. So Ranchu now is forced to press buttons if he wants to get back into the game. Look at this offense on display. John Ding, wow. Wow, gets the sway punch, free combo follow-up, 2 rounds to none in game number 3 right now. In favor of John Ding, but jabs him out. Great awareness. Yo, the jab combo though? Looking like Tekken 5 over here. Oh, almost had trouble. Counter hit on a down 4-2. Not sure what that was from Ranchu. Oh, he's going to get the... Oh, I was about to say he's going to get the wall spat. And again, going for those mix-ups, Steve. It's so dangerous. This is going to be even more dangerous, Steve. What? So unlucky. Mix-up time. Just has never gone for that low option. Just always going for the mid. Nice block. That's what got Ranchu back in that first game. And that's probably why John Ding is scared to go for anything low. The Tekken Master special there, and takes 3 rounds straight. John Ding on the front foot. 2 games to 1 in favor of John Ding right now. Oh, man. Yeah, I wonder what Ranchu does in this situation. It's just not working out. Locked back in. Just straight into the next game. No, breather, no time to just think. Character select. Let's see what
maybe I can pick a different character, just going straight in. And John Ding is 1 away, I believe, from moving forward into phase 2. Oh, nice. And that's what I was talking about. That's exactly what I was talking about. That while Ryzen 1 gets the full launch to the wall, unscaled damage here, and he keeps the momentum. And tries to go for that 1+2, doesn't... Whoa. My man's dancing. Activates heat. All right, he's going to get a small combo. There. Catches him out of the air. Heat's already active, and that momentum now looking a lot better. He finishes the string. What's the guess? Oh, nice counter hit. Oh, he's swinging. John Ding's pressing those buttons. Just mixing him up with all those stances. Small little whiff punish, gets some nice damage there. John Ding is playing so well, finishes the string and gets punished for it. John Ding 2 more rounds and he moves forward, Steve. On his way to set point if he gets this round. Nice tracking move right there. And he's playing this range real comfortable. We were talking about that range 3-4 Falcon Rom. Yeah. John Ding looks real He's comfortable. really controlling the pace of the game. Well, range 2 don't even look like he's able to play the game right now. I feel like that's what makes John Ding a world-class player. 100%. Because the way he controls the game makes you panic in some situations. He's definitely playing Tekken 8. Oh my gosh, you gotta guess right, and he's not gonna be able to do it. Now, I don't know many people who can guess that 100% right all the time, but set point here for John Ding. Rank 2 cannot lose another round this game. Oh my god, he's just hands away. Goes for that forward free. God, this is crazy. I'm still waiting for like one big low from John Ding. He's just not doing it. He's not taking like crazy risks. He's not giving Rangchu anything, any opportunities to really do anything. It's like he's suffering for every single hit. Oh, Garuda. That's one of the first times we've seen that. Yeah, I'm going for a different option, unblockable this time around. Drum roll, please. He does not get the wall splat. Yeah, activates heat. He's going to have to do something here, Steve. It's not looking good. Maybe this is the start of something. Okay. 3-1. Okay. That's what I was talking about, the 3-1 string. You can mix up the 3-1 or the 3-4. It's definitely good options to make him think. High risk, but sometimes it works. And there we go, Rangchu taking the initiative, pressing more buttons. Punish. Gets the launch. Here comes John Ding again. Once again, Rangchu has won a round, but John Ding, if he wins one, that's the end of his tournament life here. Oh, he tried to make a huge read. Going for the low this time off of the feint. Wait a minute. Yeah, I feel like he's playing really risky here and it's working out. But John Ding just stopping all of that. Sidestep, drummer 34. John Ding could close it out. And that is going to be the end of rank 2. John Ding Vitality. You know they're both happy. But of course, it's going to leave rank 2 real sad. They shake hands to make amends, but it won't bring back that key. John Ding stays alive, and the Eddie was looking crispy. I'm glad you said that. I think that's what makes John Ding strong. He's been playing Tekken 8 from the beginning. He throws out there, and he's like, yo, look, welcome. Make this guess. Are you going to block this low? Am I going to do handstand? And that's one of the things he's been doing a lot more. Relax has always been there, but the fact that he's been using a lot more handstand, the sidestep, the power crush, the dude's been showing a bunch of different looks. Yeah, it's so good to see as well. John Ding, congratulations to him for moving forward here, but commiserations to Rangchu. Will be going over to the stage for the Key Crush. And as the key is handed over, please make some noise one more time for Rangchu. John Ding, my dog, Big Swole. Okay, ladies and gentlemen, John Ding officially makes it to the next phase of the event. He's officially in that top 16. That boy swole as hell. I had to take the jacket off real quick. Shout out to all the buff gamers out there putting in work. John Ding, you're making us look good. And right now, the 2-time TWT champion is getting his key crush. This is a dog-eat-dog tournament, ladies and gentlemen. The best of the best. No remorse as John Ding handles business. Come on, John Ding. You see I got a t-shirt on, brother.
You still got a t-shirt on, ladies and gentlemen. You know what I'm saying? The strongest levels of gameplay, the strongest gamers in the world, right here at the Esports World Cup. Congratulations again, brother. You son of a... What y'all know about that? Go ahead, ladies and gentlemen. Go ahead and keep it going with EWC 2026. This ain't no regular thing. Came for the ring, you know what I mean. You see my name in the lights. Better get right, I'm champion. And we had to send another player home. One of my favorite players. Shout outs to Tasty Rain, true shout outs to Mimi and the kitty at home. But the show must go on. I believe this is the final match of Group B, and it is a decider match. Low-High versus Rest. This is going to be tough for both of these guys. Rest has been playing very good. Low-High, I feel like, and I told you this after the last set, felt like he just woke up. Yeah, I remember we took the headphones up and you was like, yeah, he's awake now. He's playing. Yeah, it was really unfortunate that you went down 3-0 against Riot there. And the Falcon run maybe just wasn't warmed up properly, but now he is fully warm, ready to play the game. And again, one of these players will be going home so early in the tournament, but EWC, there's so much pressure when you're playing on the biggest stage. You start to do strange things which you wouldn't do if you was in your bedroom and if you were playing like online, if you were just there and there wasn't this much pressure. But when it comes to the big stage, there's so many factors to take into consideration, which you have to prepare for mentally before the match even starts. You know, one of my favorite things about fighting games is the fact that, like, when you go to a tournament, you have to play in that setting. You're not playing at home with your shoes off and your mom bringing you hot cocoa. Like, ain't no Discord call. It's just you versus your opponent. You got to get the W. And it's a lot on the line when it comes to EWC club points. When I say you get a TWT spot, and then on top of that, a lot of money. But here we go, Low-High versus Rest, Group B. This is a decider match. Let's see who gets it. Let's see who moves forward here. Again, we're so used to Rest pressing those buttons, but a really nice duck there. And the knee, the counter hit knee. Leave the body smoking, 98 damage. And the heat smash. Yeah, Low-High is definitely awake there. One mistake from Rest. And Low-High just punished him hard. One heat smash and that was it. He was gone. Down for action. Sidestep into the jet upper. I told you. Somebody had some coffee. My man's awake. Counter hit. Wall not going to stop this combo. Low-High cashes out with the heat, gets the spike, and keeps him right there. But he needs to be careful because his back is to the wall, and if Rest gets something big. Look at the pressure that he's putting, and you called it. Steve, you called it. And people are tech rolling every single time. They need to relax sometimes, stay on the ground, don't do anything. He's ready with that taunt. Low-High is playing so well. I like that. Rest trying to switch up the approach. Causing Low-High to play a little bit more defensive. And he's got a couple of looks shown, but nothing big except for this launcher. Does he use the heat, though? The wall's right there. Yes, he does. The pressure. A very good way to use heat as a defensive option. Alleviate part of that pressure, but Rest is still on the front foot. He's holding that duck. Rest needs to be really careful. Oh, wow. This next exchange, if Rest gets one more hit, life. Oh my God, Low-High. I told you he was awake. Leave the body smoking. 3-0. Low-High is definitely awake right now. He's playing like a monster, a man possessed. He wants to make it through into the next phase. But Rest, man, just one small mistake is what costs him every single round, right? One small mistake, straight to the wall, and then one final mix, bam, and it was done. Yeah, I mean, look, I'm glad you pointed out. Everybody was Tekken versus Low-High. I'm like, did you forget what character you're playing against? And Low-High can definitely do the high execution stuff. So if you're on the wall, just be prepared to see a flashy combo. Nice little punish. Especially if you're teching on the wall. And the low parry, so on point there, Low-High. Okay, heat. On for the carry.
And he's trying to take all the way to the wall, but even if it doesn't take all the way to the wall, he has good positioning, and that's where he wants to be. He wants to be able to be in that range to be able to use taunt. And look at this offense. Back forward, looking for a duck potentially. Finds it, but he gets the block. Rest spins the rest of the heat. There goes for the... Oh, No break. Yep. Counter hit too. Gunshot, grab it. to look for the confirm. Very nice low by Rest. Still in the game, not giving up here. Slow him down with the pokes, going for the legs. There's the power crush. Lowhigh's represented that in multiple sets now. No punish. He went for something big there. Oh, he gets him in the back. What's the combo like here, though? Chop it? No. What a duck. Still wasn't ready. Tries to sidestep out of the corner. Rage Art to call out the pressure. And remember what I said? That's the thing about Hwoarang. Yeah. He literally is like, how well do you know how to fight this character? Do you know my strings? Or are you going to call me out on some of these blatant highs and launch me for it? Rest, checking the boxes. Oh god, I want to see some more down forward fours from Rest, though. He started doing it at the beginning, trying to catch, you know, Lowhigh moving, because he is moving at times. And there again, the sidestep. Maybe some more homing moves. Oh, I like this combos. The awareness. Looking for a tech right there. Huge block damage. Oh, and the duck there just stays ducking. Oh my god, the taunts. This guy's feeling himself. Bruh. Bruh. Okay, all right. Lowhigh. 1-2-1. Light. Round lead is definitely in Rest's favor. He is down a game, so he's definitely going to need to make something happen here. But you can see him getting a lot more confident in his offense. Oh, he is. Again, just spacing. Going back into that Rage 0. Rest pressing those buttons. Lowhigh just looking for one opportunity. And this has happened so many times already, I said. And look at the damage that you lose because of that one mistake. And back against the wall. Spins it. No resources left, not even Rage. Rest goes for a big swing, and Lowhigh is ready with the punish. Game 2 looking like a wrap if Rest doesn't do something. Down forward one confirmed. Oh, it catches him moving. Final hit doesn't work though. But the way that Lowhigh is playing Steve right now, just man-possessed. Okay, Incinerator not gonna work. No, Rest needs to do something now, but it is not looking good. Lowhigh goes into match point here. Third, one more, Steve. Third match, potential final round of Lowhigh can keep this up. And you can see Rest, a little small head shake like, man, what do I gotta change up to get this in my favor? You can see him racking his brain, but what's the move? What are you gonna do with it? It's so difficult to see what, you know, if I was there and trying to give him advice, I'm actually not sure what to say, because it was just, you know, he's going for risk at certain times, but he's just making one mistake out of maybe like 5 decisions, right? And then that one mistake is costing him 75% of his life, like, you know, back against the wall, big combo. It's just like, you see what I mean? It's all these buttons are hitting. Yeah. The low, the mid, like he's hit 3 successful moves there. He's on the front foot. Again, still on the front foot. But Lowhigh is still just waiting for that one moment. I just said it there. Look, it just happened. I told you guys. Everything works for a while, and then this happens. Positioning. Oh man, be careful. Hey, people are continually tagging on the wall, and I'm telling you right now, overextending. Rest gets the Rage Art. It's gonna be big damage, but I don't think it's gonna be the end of the round. I think that was really good from Rest to do that, because he's not really gone for the Rage Art in those final situations there. Heat gets the dash. Rest still has a full bar over there. You know he's trying to activate. Oh, and goes for the low. And I like that. The balance of trying to, hey, he's going to activate, maybe cancel. That means he just went full offense, throws Lowhigh off the trail, and now Rest has got an opportunity, but he gets hit by a big counter hit on the string. Yeah, that's so good. All the way again to the wall. Same story every single round. That's what the Brian player wants to do. Oh my gosh, the back four. Into the mock breaker. Oh, tries to go for the Incinerator. Only goes for 3 hits there, and he is feeling so confident. You can see, when you play someone, you can see, or when you watch someone, you can tell when they start to feel confident, Steve.
Yeah, it's just a sense like us Tekken players have. Oh yeah, of course, bro. It's Lohai, man. This dude is literally one of those players, like the minute he gets momentum, and his character really benefits from it too. Oh my God, I love that. Goes in the stance, gets the launcher again. We've seen it twice over now. Big damage on the board. He dashed to close it out. Rest gets 2 rounds. And that's what you want in to this see. 3rd game, bro. You want to see that, Steve. You want to see Rest fighting back. Takes a big deep breath there. It's not over yet. There's a long way to go, and a big counter hit knee again. Uses the floor. Gonna extend his combo a tiny bit. And the dash forwards catches him pressing buttons again. Same string, same results. Not gonna get the kill, but he's looking for the Oki. Oh man, Rest didn't tech this time. That's good. Back 3, not gonna work. Small punish on the side of Lohai and the Bryant. Uses the Power Crush. We've seen him use Power Crush at the end of rounds. He's already used it twice there. It didn't work. Jeez. And just waiting for him. Like you said, the times that he's taken his momentum back, it's been him raw ducking until a string comes where he's like, there's the high, and now I'm gonna launch you. Yeah, down forward 1 string. This is really looking good for Lohai right now. Doesn't confirm the rest of it. Rest needs to find a way out. Power Crushes. He bursts, fighting back. Rest still going in. Finishes the string. There's the down jab. Lohai with the check on the knowledge. And this is going to be big damage. Still no kill. But man, is this not good for Rest. He needs to do something. His tournament here for EWC is on the line. He cannot lose this round. Oh my God, it's so close as well. 25 seconds remaining. Rest trying to stay alive. Activates heat. That was the right option there. Lohai ducking though. Not dead. 16 seconds left on the clock. No resources, and the jet upper to close it out. Lohai gets match, but of course, can I please get a round of applause for Rest? As Lohai once again joins me on that crusher. He crushed 1 key earlier and he's about to do the same on that second one. This is Rest's dream that are being shattered live right now as Lohai validates his ticket for tomorrow's top 16. A hard-fought bracket, and let's hear this one. Ooh. Loud and clear, Lohai. Congratulations. GG's to you. Lohai will be back tomorrow on that top 16. We already have 4 players qualified top 16 after this group. Closing this group now. And now it's time to go back to the studio to introduce the next group as one more group coming up here at EWC.
Well, Group B has concluded. It was exhilarating, and we crushed 4 keys in total. 4 players move on to the next phase, and the storylines, well, they continue. Welcome back into the Allianz Vault. I'm Taylor Reflection Snowball, joined by Majin, Obama, and Markman. Walking through the key crushers, man. We started with the first one, Ikari, going down. Yeah, this group was a scrappy group, man. We had some matches, and of course, like I think Riot's path, maybe the most surprising for a lot of people. Obviously, he's qualified, he's played in this event before, but doing it with the character and doing it the way that he's done, riding momentum from that LCQ performance, the way he's done this here today, Mark. I don't think a lot of people had it pen to go that way. You know, I don't think anyone was actually betting that he was going to make it out as clean as he did. Yeah. He had such a dominant performance with that character, that Falcon and we talked about it before, primarily a Jhin main, made the switch over to Falcon. He made it work. Obviously, a lot of people have been studying against that character, but it wasn't enough. He took them all out. Took him out indeed, and Sin also getting his key crushed. I felt like he was much hyped up coming into these series. Is it a big surprise Sin's gone? I mean, we had big surprises yesterday. Out of the 4 keys for you, Obama, that were crushed, are any of them like, wow, I was not expecting this so early on? I can't really say that, man. Especially my outlook is a little bit different. When you get to, again, the top 0.0001% of this game, you look at this group, a lot of these guys, man, especially having players who qualified from different events, some of them winning events to qualify like that. But at the end of the day, it's just about who is playing better this weekend, right? This time it didn't go Sin's way, even though he's had a lot of really great success in France. We talked about it on commentary in the past year. But looking at the group, if he would have played better this weekend, a little bit better, maybe, sure. But yeah. I can't really say it's a huge surprise with the way it's gone. It's just the people who are playing just a little bit better are making it happen. Well, either way, making it to the stage, I think we can both agree, or all 3 of us can agree, that making it to the stage is a massive accomplishment. And for Sin, you did your absolute best. You were the best in the world when it came to Tekken 8. Of course, though, Reinhardt had a chance to talk to him after his unfortunate loss. Let's listen in. Sin, always a pleasure to watch you play. The Yoshimitsu's off the chain, dude. I know it didn't work out today, but that doesn't mean anything. This is part of the experience bank. This goes into the collection of information you're going to use to brand yourself an absolute world champion, superstar in the future, and that's the mindset that I think you should be employing. What do you think? Honestly, I had an epiphany after Versus Fighting, where I truly let go of all the hatred, anger, and disappointment that I feel sometimes with myself and the game. Okay. And I truly ask myself, like, why do I actually play this game? Good question. Like, what was the reason? First, it was because I wanted to be the best Yoshimitsu in the world. Like, I went to Tekken 8, full morale, I was like, and then I won crossover. I was like, even more morale. And then, you know, things unfolded more, morale got lower, and then I realized I actually just want to be a showman for these people. I want to show people what my Yoshimitsu can do. That this is Sin's Yoshimitsu. You don't even need to look at the nameplate. You already know who it is, just from playing. Do you think there's a world where those 2 things can exist together? The best Yoshimitsu and Sin as the best, and my style being the recognizable? You being recognizable as the world's best Yoshi and being the best in the world at the same time? Oh, absolutely. I think I, right now, am the most specialistic Yoshimitsu in the world. And I don't think anyone has me beat by that. All I need is just some polish, more training, more fundies, and I think I'm good to go to become the best Yoshimitsu in the world. So definitely. I like how you answered my next question as well. Obviously, the EWC run comes to an end on this occasion, but looking back, I know you've only had moments to reflect. What would you say you could have potentially done differently? Honestly, I need to get playing with this new mental that I have, because I play and I get angry and I'm a very impulsive player. But right here, I felt so calm, serene, and it felt different, different. I felt happy to play, but it was also a bit like sometimes fury helps, you know. Sometimes rage helps, sometimes anger helps. And I just need to learn how to deal with my new mental right now. In the words of Itachi, analysis requires calm. Itachi Uchiha. Wonderful. There you go. I'm going to leave it at that, guys. Hope you enjoyed the interview. Catch you for the next one. Take care.
Thank you, Ryan Hart, as always, for the great interview. Big talking coming out from Sin there, Mark, man. I quite enjoyed his philosophy, just kind of how he went about this year. Yeah, you know, he did great. You know, I got to say, seeing that interview gave me a new level of respect. I didn't know what he was going to say. I thought he was going to troll or something, but he had a lot of cool stuff to say about him and learning through the game. So I got to give him all the respect in the world. Yeah, really big fan after that interview, of course. Obama Lohai, though, came in as one of the favorites, right? I mean, second place last year. This time around, he's looking to do better. Yeah, it's not clean, right? But he did make it through to phase 2. That's what really matters here. I don't think a lot of people had the path penned that way, but able to clean it up, able to make it happen against Rest and loser side, and be able to qualify to round 2 where you get that new lease on life going into tomorrow. That's what matters if he's going to have another shot at winning this thing, right? Like last year he got second place. He wants the dub. He wants the dub, and a 3-0 over Rest will solidify his spot into the next phase. And I got to say, this was a relatively clean set despite his early loss a bit earlier to Rife, that whenever he ended up getting taken down. Of course, for Lohai, he's going to move forward. His fans are going to be ecstatic for that. Just to shout out John Ding, though, also going forward for Vitality. That is big news, especially when it comes to the club championship race. But that was all of Group B. One more group to go. We now transition into Group A, and the players are arriving, and Ryan Hart is bumping into some of them. The scorching hot sun is just a slither of an example of the heat that surrounds the matches about to go down here for phase 2 of day 2 at the Esports World Cup. What's going on? My man Arslan Ash going to be taking on CBM. How do you feel? It's kind of like a return grand finals at the TWT. I'm feeling a bit nervous. I think the first match is always you are not prepared, you know. I just want to win the very first match. I think the rest of the matches will be all right. Okay, man. Good luck to you, sir. Yes, CBM, man of the hour. I just spoke to your opponent. We know you've played each other many times. You've watched each other's matches. You know each other's styles. What's the mindset going into this one, CBM? Every time I met Arslan at big tournaments like EVO, he blocked my way lots of times. But this time I will block his way. Oh, I like that spice. Okay, you do that, sir. He said, I'm going to block his way. Best of 5. Can't count. Thank you, Ryan Hart, as always, getting the lowdown on the players as they arrive to the venue in the hot sun, but it's a little bit cooler in here, but it's about to heat right back up because Group A is about to go down, and Obama, we got some spicy matches. Yeah, this is another group where you're looking at, and it's going to get kind of scrappy. Obviously, you're Arslan Ash, and he's going to jump out at you, right? That's the Emperor of Tekken 8 right now. But the other players, it's about those other 3 spots that are up for grabs, right? And a lot of these guys, especially you're looking at people like Mangja, you're looking at Breadman. Breadman, of course, this is his first appearance here at EWC, being able to get in from that TWT final qualification. What does he have in store? How is he going to shake things up here, Mark? What do you think? I think very much a specialist because he is the lone Leroy player that is going to be here in the competition. I think unless players have studied that particular matchup, they might be in for a world of hurt. He always brings it, and he has the ability to study everybody else. He has that advantage for him. So I'm looking at him to be the big surprise for this group. For me, I'm looking not only at the names, but also the orgs that are coming into play. Twisted Minds for the first time. They've got 2 of their members about to play. Luckily, one on upper bracket, one going to be on lower bracket, but that doesn't save them if they match up against each other in the lower bracket. So securing the top 2 spots is going to be big for the organization. You also have NIP and VP as well, who's about to throw down on the stage. Big orgs and big talking points throughout the club championship race, right? So this is what my eyes are personally going to be focused on, because the club championship race at the top is truly getting tight, and we might even have a change of leads. Falcons was in first place. Will they stay in first place? That's the big question. Now for Mangja, I want to hear from him about all the club championship updates powered by Aramco. 지금 올해 저희 팀이 성적이 되게 좋아요. 작년에도 좀 안타깝게 떨어졌었는데 이번에는 꼭 좋은 성적을 내도록 최선을 다하고 있는 중입니다. 그래서 조금 마음에서 부담이 생기고 있는데 그걸 이겨내야지 선수의 프로 선수로서의 And the punish, and Mangja punches his ticket for the next phase of this tournament.
지금 많은 동기부여가 되고 있습니다. 사실 좀 좋은 성적을 내면은 아무래도 뭐 높게 가서 1등까지도 바라볼 수 있는 상황이니까 명예 아닐까요? 역시나. We're absolutely flying through Tekken, but over here in the Kadia City grid, we're only just getting started in PUBG Mobile. Not too much has developed, Lauren, but have we got any advancing storylines? We've got some they're definitely going to be paying attention to over the next 4 days. We have a 4-day-long group stage, 2 days of matches for Group A, 2 days of matches for Group B. We're in Group A right now, and two of the big names that we're keeping our eyes on are Aurora Gaming and AGAL. Now, they're in the top 8 right now for the performance so far. However, they are teams that are expected to make their way through all the way to finals and at least find themselves in the top 8 at the end of it. So definitely a CC club that could potentially influence our leaderboard in a big way if they're able to find any sort of meaningful performance here today. But then when we get to Group B, we're not there yet, but when we do, Vitality will also be over there, and they could potentially take this whole thing home. There's names that keep on popping up all over. It's Aurora Gaming, it's AGL, and it's Team Vitality. They're across a load of games this week. We'll see if they're able to get some points on the board and keep advancing. Play is in our DNA. Whenever we let it out, it becomes our superpower. Now imagine an entire city being built to supercharge it. Kadia City, powered by Play. Thank you, Trav and Glitter Explosion, for the update. Group A, the final group before we head into Phase 2 tomorrow. Set number 1, Manja and Mayoil. This one's going to be a fun one. You know, Manja, a very old school player representing from around the world, a legendary Law player. I think a lot of people have kind of been underestimating Law. You know, Law received a few changes in the recent version of the game, but he still has what it takes to compete at the high level. So I think he has the slight edge, especially matchup-wise. Again, there's a lot of people looking to see him do well. Manja, of course, was one of the few players that qualified for this event with a win, right? With a win, yep. At Super Tournament, even though he actually qualified from TWT final. But win on the way here, that does a lot for him in terms of building momentum and confidence. You heard him in the interview. But Mayoil, in this matchup, he is another player who has been having a really great year, really good consistency on his end, too. And this matchup is just going to be fun because of how Manja wants to play it. He's going to want to get in close quarters, but Mayoil's reads defensively, how that's going to play out in the first of 3 is going to be the fun point to watch. And they've got a long history played against each other, not only in this title, but previous. It's Group A, the final group before Phase 2 tomorrow. Hollywood Rob TV, Damascus, set the stage up. It is time for the final group. We closed 3 groups already, and now 4 spots remain on that top 16, and that is going to be the group. This group, Rob, has a lot of killers, including the one and only Arslan Ash. Arslan Ash, and I'm telling you right now, ladies and gentlemen, Arslan Ash is about to cook up in this event. I ain't trying to be biased, but it is what it is. 8-time EVO champion, not a chance in HE double hockey sticks that he does not pull up and show up and show out, Damascus. I mean, especially when there is a title that's been elusive to him, you know, for the last 2 years. He's trying to break that curse. That's going to be interesting, of course. Plenty of killers in this group, starting with the match that's lining up right behind us, Manja and Mayoil. You know what? So you actually just brought up titles. We know that one of them has already won Stars Cup. One of them has won Soup. You couldn't even win a Tekken tournament in a Soup kitchen, Damascus. So how do you feel about the fact that there's a Soup tournament champion right here on this stage? Is that the reference of me cooking you on Tekken? Don't ever in your life disrespect Big Hollywood like that. That's it, ladies and gentlemen. We ain't about to disrespect these players or the audience at home whatsoever. We have an absolute, what I'm about to say, Damascus, but I'm going to say, you know my words, a certified banger on our hands right now, EWC 26, ladies and gentlemen. Let's go ahead and get into it. This one, we're about to see who is going to move on to the next round. This is going to be Manja versus Mayoil. Let's get to it. Welcome, everybody. This is EWC, and we are officially in Group A, the final group
Final 4 spots to make it into that top 16 for phase 2 tomorrow. Who's it gonna be? But the first match is gonna be Mangja versus Moil. I'm MYK, calling the action for this block. Is joining me with Majin Obama. Thank you, bro. We gonna close this phase 1 out. They put Group A. We got Mao Mangja. You gonna put money MYK on here with me. Let's go. This is the matchup, I think, looking at the openers that we have for Group A. This one, I think, is gonna be the most exciting, the most violent. Yeah. Just because of the way they want to play, right? Mangja's gonna try to get in close quarters, try to run dragon pressure, but Mao and how he has been playing Jack, especially this year, especially recently, his reads, bro, the way he uses Gamma charge, especially just to be able to counter and parry a lot of different, it's going to create a sense of hesitation and a Yomi eye in how Mangja's going to have to pressure him. And, you know, there's going to be a lot of grabs that come out as well, I think, and grabs and lows are going to be a big, Yeah, gotta blow up the Gamma. That's the fun part about this matchup too, because Jack, very big character, hard to step around some stuff, so he kind of has to try to roll through it with the Gamma How armor stands. He feels like a trash can, bro. Look at those hips. Dump truck, back it up and dump it. Here we activate early or wall to the push. Wall push, rather. Big damage on Mangja's side, and the slide, the nunchuck, final mix, double up into the smash. Okay, good comeback for Mangja, game round number 1. So I'm leveraging slide early on here as well, just kind of put it in Maoil's head. Big down 4-4 counter hit, gets the link, takes the non-engaged crouch throw version. Oh, just threatening the slide. Again, it's about the layers that creates on Yomi. Ooh, okay. Held the Gamma How, saw that he was gonna swing into it, hit him with the bubble. That's the best part about it. It's like the insurance policy that's built in. Low parry, are we gonna be able to convert this to wall pressure? Wall was in a weird spot, was hard to convert. Counter hit, sidestep 3, look at the damage. Dash up, threaten him. Denies Moyle's heat because of it with his own heat smash. Smart lockout. Smash step in low. Double dragon on the down jab round start? Quick sidestep and look at the conversion from that double dragon. Wall pressure minus 45%. Oh my goodness. Minus 50. And the chip sequence are coming out. Getting under the jabs with the low. You're almost using those just as a deterrent and just to be able to break up pressure. But in the exchange after, look where Mangja finds himself. Gonna blast Same scenario. No, keeps the wall pressure. Now hold the smash again. Where are we Dragon charge going? low? No. Last time he went low, so this time he goes mid, but gets the blast from there. Raise the roof. Ooh, the Patriot upper. Making some noise with it too. Still have heat to work with to extend this. Be able to push to the blast wall. Real on ender. And the Oki lower that shoulder. A blue one. Maximum damage with the heat dash. Oh, this brother Maui trying to make it to the big leagues. Look at that. Drill him. Wow, immediately challenges with the jab after the down back 1. No hesitation for Mangja, but again, Moyle 2. DSS forward 2. Let me get you with that while standing upper. Going for the heat extension? No, we're going for the spike Oki. Spike Oki again, Gamma charged coming out. And it's on the mark, and Mao just raw dog upper in the mid-range after. The risky uppercut for the mid-choice at the end. Wow, that's what you were talking about, Obama, throwing it. Especially with Law, where he has a launching throw, so good. Jump arrow wall combo, what are we doing with this? What's for Oki? Sidestep 3, double up on the low. While standing forward, pressure goes low again. Heat burst able to buy Mao a little bit of time here. Chopin blast with the dash behind it. Crouch jab to break it up. Every round, hold this heat smash. 1+2 throw, nice break. Returns the favor as well. Light punish, goes for a greedy slide because of it, and he's paying for it. Fortunately, out of rage. Not going to suffer too badly. While standing forward, slide. Raw dog close to it. You won't do it again, he said. You won't block it again. Drop the elbow. Time's a factor. Try to thread the needle on the jabs. Down jab to save his life. Called out the Gamma 4. Wow. Mangja playing with his eyes wide open. Going in the game 2 here. Gotta imagine stage swap. Yeah, gotta get that stage swap. The explosions on this stage didn't really favor either of them. We'll see. Jack with possibly like the Pac-Man stage with the floor breaks and stuff, with the jackhammers and stuff, and the throws. If you got grabs that unique grabs that'll break like that, everybody. I love Pac-Man. You right? I love Pac-Man.
Greatest video game character of all time. So on the Mount Rushmore, that's for sure. And now look at how Mal-Il opened this round, using a lot more of the move list. You see him going with that 2-1, that high mid string. Oh, but the Jag Hammer forward 1. Good mix of mids and high mids. Nice throw for the side switch. But it's all Mangja right now. He's in the full driver's seat. Okay, counter activate. Tag him low. Mini uppers from Crouch. What a trade. Both traded on the heat smash. That was sick. I've never seen that. But called out on the high extension. Yeah, the rocket kick after. It's been getting Mal-Il. It's been called out, what, effectively twice for Mangja in big ways to close out rounds. Ooh. You gotta imagine he's gonna go out the different option out of How now. What are they gonna do with this? Plus frames, go with the low check, crush the armor. Armor, stop banging on it. Big boy got a block. Ooh. Both the plus frames. 1-1 into nothing. I like it. Ooh, nice block. Optimal punny. I like that. The forward one for the tracking. Nice block again. He's I like on this. it. I like when the command grab characters getting ripped up like this. Now, yeah, you gotta break. Moyle's defense, the conversion off that get up 4. Low damage, but it's about the real estate push here and the positioning. Didn't take the punish on the wall standing 2-1. Try to make him hold the heat smash. What a crouch jab to stop that. All right, all right. One apiece. Yeah, I had a feeling it would be like this. This is a scrappy kind of fight. Both these guys not afraid to press buttons on each other. A lot of abare on both sides. Down jabs are the name of the game. Try to steal a turn with armor too, but the double dragon again. Reminiscent of that first game. Especially to get wall like this, especially to get heat, get positioning, 90 damage. Ooh. Step in low again. Mangja's really favored that sidestep mix-up at the it's so good. After recovery. Yeah, sidestep 3, sidestep 2, and he's also doing sidestep right to avoid like a possible kip up. A lot of layers covered there from Mangja. Takes the lead in the game. Throw brave, one throw. That was a real one throw. On the plus frames, what are you gonna do? Mao just holding back. Oh, flip kick out of nowhere. What the? Flip kick for the wall. It's low wall, so adjust. Nice, nice. Heels aware. Get back to the slide games while standing 4. Chain while standing 4 pressure. Oh! Wasn't there in time though, but the poisonous arrow gets the splat. Back fist, and again the duck on the rocket thrust kick. Mangja up 2-0 on Mal-Il, playing with speed. Yeah, he's really trying to like sneak those in there while standing 2-4 to try to keep his turn going. If it's blocked, he is at advantage, but Mangja just doing a great job of calling those out. Moyle though, it's so hard, man. How do you move around a quick character like Law, where he's just locking you down with DSS pressure, jabs, dragon hammer, and as soon as you try to swing, boom, double dragon. Especially with the arsenal that this character has anyway. I mean, we're not even talking about the fact that he's like a punish character. You can't really whiff in front of him. You haven't even seen the uppercut come into play here really at all. Yeah. But when you're a big body like that and you're talking about how difficult it is to step, when you can't even leverage that against him and you actually have to play his game and just be that good on defense, on calls out on the duck and just blocking, it's just tough, man. Yeah, he's really trying to find an opening with these Gamma House, but dude, Mangja's making it so tough. The back one string, when they heat here, counter hit, throw, grab. Launching throw. Oh, misjudged the wall. Hold on. Chance for Moyle. Sherman stomp this time. Checking the buttons after. Crouch stab, skill the turn back. Right in the smash. Ooh. I like that. Delays it this time. They've been showing Dragon Charge low up until this point. Yeah, so he did the while standing 3 into legend kick. The legend kick catches up. The high strings are costing Moyle everything. He's just believing and letting everything rip. If it's a high extension in the string, Mangja is just not letting him do it. Dude. Yeah, he's not letting him get anything off of those. To the wall with the burst route. He still has all his wall hits. Smart. No counter confirmation on that wall standing 4. Could have been a splat. That time stepping it. Woo! 4-2 with the upper. Out of range. Oh, you looking like Jake Gyllenhaal right now. Bubble boy. And right now, Mangja on set point against Mal-Il. Do something. Fight back. It's looking like Donnie Darko right now. Yo, that's a crazy movie, man. That's a crazy movie.
Lower the shoulder, fight for these plus frames. Good duck from Malo this time. Wow. Finding the low, but again, the double dragon. Can't find that Gamma Howl timing, man. He's catching up after the armor is gone. And you know we about to break this for. Oh, yeah, we going Drop up. the heel on him. Push towards the wall, just short of it. Now we parallel to the blue. This is a chance for Mao. He's got to be able to make it happen here. Chopin He got wall position now. Yeah, lower the shoulder. Oh, no. Optimal Punish. punish. Doesn't stick to the side. Lucky break. What a jab. Left. Guaranteed back 3. Wow. The while sending 2 finally paying off a little bit for Moyo. Yeah, good round for Moyo. Got a pulse. Manja, of course, his defensive movement, too. Not just about the calls out on the highs, but the micro step left in some of these spaces to be able to create the whiff punish opportunities. First time using that 1+2. It does have some jab evasion and low jab evasion. Back one string, check with 4-2. Okay. Right back to neutral. Dip him. Now the 2-1 guy, like the 2-1 gameplay. Classic jab. Classic jab. Good old keep out. Boom, and Trumpet blast. Yeah, that move is so good for a heat dash move. End of the timer, just send it. Why not? There's so like much range. there's a class of attacks in this game, like back 1+2 for Jack. It's almost like Fang Iron Fortress. Yeah, where it's just Steve like, Sonic Fang, you just throw it out. Yeah, you get that speed with the guaranteed dash mix behind it. Exactly. It's so good. Ooh, he had it. Oh, but he got CL 1.5. He wanted standing down forward too, but he was crouching. Low parry on Mangja's offense after. Mao, this is your chance. There's your spike. Does he have the carry from here? Not quite. He's got to make it happen here, though. He got the heat spike. Big stomp, Chopin blast again. Just give me the wall press. Sexy time. Lay on him. Drill, baby, drill. Counter hit, standing 3. He needed that. Moyo puts one on the board. Strong rebound that game. It was looking like he was cooked, man. Mangja had him almost dead to rights 3 rounds straight in that third game. The face he made after 2, it was just like, indubitably. It's just like, I got those. 2-1. Moyo staying alive. Has to work for it though. This is not easy. This time rounded edges on this stage too. Sometimes the corners can get a little aggressive. Not as aggressive as Arena though. Ooh, good call with the charge there. Just able to convert it into heat. Again, I love it. More of this, please. Yes. The high mid-screen. Ooh, get off of me. Heat smash, 10 frames. Interception. Oh, no, sir. Not a counter hit. Went for broke there. Strong momentum swing right now. You can feel it, man. Some desperation plays from Mangja in that last round. End of the round, why not? And Malo now starting to go to classics that we haven't seen in the setup until now, right? Even just the down back 1, the homing attack here to be able to convert into this. Yeah, 2 for 2 on the homing attack. So good. Wall pressure now. Tagging him with the lows. Mangja can't find a way out. Nice throw break throw, but got shot. Didn't even put the dash behind it. He just knew. Smash is good. Final pixel. The mid check for Moyo. What momentum. Okay, starting it off with the jab string. Wow, interrupted the follow. Down back 1 this time into the knee. Rocket thruster kick actually works out. Wow, I didn't know you could delay it that long on the second hit. Hey, smash is good. Good chunk of damage. Oh, dash, duck, and found the high he was looking for. No, you hate to see it. Small legs. Moyo, he's like, That is a super fast reverse 2-0. I mean, he was on the brink of defeat like it felt like 60 seconds ago. Didn't just get a 3-round straight. That game looking good, all tied up now, 2-2. That last game was really fast. Especially with that big combo drop when Mangja finally had an opportunity. You can stay solid here. Oh, you could have got the 3+4 link. Catches the wall jump. Not a big conversion, but got something. No punish on the bubble. Breaking the 1+2. Crouch jab, take the turn back. Activation from Mangja. Wow, the range on that nunchuck. Ooh, and the meaty down 4. Couldn't even get up 4 in time. Ooh, in the back. Could have been worse. No game nullified.
Floor break up is available too on the next spike. Slide is good. Ooh, drop it on him. I like the full crouch mix out of that too. Ooh, finally gets a good. It wasn't even a punish. He might have been able to block. Or he might have been stuck back in the DSS. That's huge return for one good read. Chopping blast is gonna get intercepted. Low parry. What a low parry, needed that. Goes for the floor break, trying to extend it. Still got heat dash as well. We're gonna hold on to the heat for the smash. What's the mix? Delay dash there. While 73 Legend again, pushing towards the wall. One flip kick. Flip kick it, then a huge sidestep. And the hammer drops it on him. Mangja back where he was a few minutes ago. Set point. Damn, Moyle with the gamer lean though. He's locked in. 1-1-1. Okay. Gets the low block, but high moves, but late on the punish, and he's paying for it. Just a little bit late, but look at the reward here. 81, we ain't done yet. Had to spend the burst to get the wall. Totally worth it. Slide to switch sides. A lot of health Mangja can get back to if he gets another opportunity to just lay on pressure. Smash again. What are we doing with this? While sending 4 this time. Moyle tightening up. Oh, sidestep double dragon again. Oh my God. Kip up. Saves him. The one with the flip kick. Double flips to Chesty for Mangja. Wow. That one delivered. Now I was looking at that group. I was like, that's a good matchup. That one will be fun to watch. Mangja going to be the one emerging with the win here to move on in Group A. Last group here for Tekken 8 at EWC. Mao-Il, he made that one fun to watch. He made that one interesting. Going to have another shot in the gulag, but there's some... Man, this is going to be a tough one to make it out of, bro. Especially for this group. Can make it out. You got Arslan Ash to deal with. You got Matsuba, Matsuba, Japan. Breadman, bunch of these high level. Hasimir as well. CBM? Yeah. Oh my God. Not going to be easy, but great stuff to Mangja there. Moyle was starting to bring it back, but Mangja held on, and he's going to be advancing on the upper bracket side. But before we can move on, we got to take a short break. Don't go anywhere. EWC 2026 for Tekken 8 will continue. Oh, I love it here, man. EWC 26, Tekken 8. They already got the next set on stage. Matsuba, Japan. Oshare Kosetsu. Ooh. Fashionable fractured. Nobi put out, he's like, yo, you got to change your name if you want to be a pro. He said, okay, Matsuba, Japan. Now going up against Hafiz Tanvir. Young man from Pakistan. This is a nasty group, man, YK. This one is a scrappy one. Dude, you have 3 Pakistan players in here. Qasimir, Hafiz Tanvir, and Arslan Ash. This is not easy. And then you have Matsuba, the lone representation from Japan in this group. And his Fang Wei has been leveling up something nasty. It's the Fang, but then it's also the Ana. Yeah, Ana since Season 2. Yep. I feel like, especially regionally, recently when the chips have been down, you see her more and more from him. Even though, of course, he rode, that Fang gameplay with a little bit of Ana at Super Tournament to qualify for this event, now that I think about it. Mm-hmm. A lot of people kind of like wrote her off early in Season 3. It's like, oh, she's not the good old Season 2 Ana anymore. She's still strong. That's what she does. She still be right sweeping. Right-hand sweep. Hafiz, of course, got here on Evo Japan's performance. We made a top 8 finish there. No stranger to the stage, of course. Matsuba going to be the one that's his first time here at EWC. Wow. Representing West Japan. Big ups to the Osaka folks. I think we're probably expecting the Claudio versus Fang Wei matchup. Hafiz, one of the players that do rock the highest level Claudio. I remember like when Tekken 8 first came out, he's like, Arslan was tweeting about, isn't Claudio's low heat smash cheap, especially on the explosive wall? Like, he shouldn't be getting the whole combo there. Scary stuff.
Claudio, of course, not as strong as the previous iterations where he got the Blue Moon Burst for free like Season 1 and 2. So he does have to like place those a little bit more carefully now. Not as strong, a little bit more risky in general. Can't rely on some of these safe tools that he had before. They're not as safe, right? But for Hafiz, it feels like nothing's really stopped. He's still going with him. He's still loyal, where others have kind of moved away. Or even others have been trying to pick up a secondary just in case to complement him, but gets the engager from Matsuba. Returning Got gauge. from Hafiz, sidestep 4 and open stage like this. He's looking for the high after the fish hook. -10, takes the punish. Good block. Counter hit timing on the back 4. Ooh, accidental jump. Nice! Up forward 2 with the wall behind it. Gets the full wall combo. Hip up and, man, in the slide punch sequence after. Good punish from Matsuba. Back 1, still a staple, man. Still a key necessary. move. He's just going to go to the classics and open stage like this. Ooh. Running 2 this time. Walk and check. But that's the strategy we're probably going to see a lot in that neutral space from Matsuba. Stepping around left to Claudio's weak side to really shorten up his move list. Try to make Hafiz extend a little bit more just to make things track. Extend, dash to realign, or even just go to other homing options. Oh, went for the break, didn't get it, but we're going to get it with the smash, even better. Specifically with the wall, you just talked about this. It's so good. You just mentioned that. It's so good. Low smash is breaking hard wall off the first hit is so scary. That is so cheap, dude. This is just by design so cheap. Then Claudio and Paul are the only ones that have the low smash where it touches a wall to get 5 extra damage. Oh, gets the float. Bang down for 1 flow. Gonna be able to try to touch the balcony. Got with it. This. He gets it. Oh, we're breaking it too. Okay. I thought it was going to pop heat for the heat route. Spending it here instead. No, we're trying to go for the next wall. Just to set up for that down back 3. Touch him in the back after the walk. Matsuba with the step after and the finish. Dude, his step timing has been so good. It's really hard to pin him down. Oh, and now he's bringing out the other Fang stuff. Turning up the aggression since he has the round lead. Bad trade in the circlet string from Hafiz. Just going with the jab string, and again, similar approach that he had that previous round, right? Center stage is going to give it some of the classics, make my wall push. Back 1, heat smash with the wall to support. 1 touch away while standing 4. Good awareness, that was only the first hit. 1-3, step and activate. Matsuba with the chance to steal it. Down back 3. Oh, the challenge from Hafiz, no fear. Wow, that kept him alive. That was a scary challenge, though. Counter hit 4-4-4 to start it off. And he has the install. The defense, Hafiz is blocking everything now. Fishing for the counter hit. Oh, he got the fidget spinner to the wall. This is right where Hafiz wants to be here. Sidewalk on the kip up and the easy heat smash to seal the deal. Game 1 goes to Hafiz Tanvir. I love seeing that kind of movement from both of these players. Do my wall combo, but don't get too greedy on Oki. Let me hit the sidewalk real quick in case you do a kip up. It's been so good for both players. Big call outs. Even just the anticipation on the reversal options like the kip up. Like, we haven't seen hand spring at all, or even recovery kicks. It's really just been kip up. People just kip it up today. Yeah, bank on kip up is so good in this game. Best it's ever been in the Tekken series. But here we go, celebration on the scene. We're in Paris. All right. Really trying to like force the steps right now. Like the in and out play from him. Finds a 4-4-2 engage. Yeah, he's just gonna occupy mid-range, control space a little bit, poking back and forth, dips out, then just reapproaches. See what he'll give me. Observa activates heat. Low touches from Hafiz adding up here. Iron Fortress with the dash behind it, gets the float. Gonna be able to touch the wall for this? Absolutely. And we show him the shoulder. Nice low block there on the low shoulder. Wow. Slide punch. So and evasive. The down back 3, you're still in range of the splits kick. Can't wait for that Yujiro. That brother can hit the splits. Back 1, where you stepping, can't step to home and move.
Wow, nice counter confirmation. Dude, he even tried to step with him right before sending out the knee, and he still stepped it at the right time. Matsuba finally not getting caught by the back 4-2 string. First one. Looking for that running two. Hop is now biting. Official kick, able to get him in the position to apply more pressure. Chops him up with the mids. Here we go. Matsuba with a chance to tie it up here. One round away. Claimed Matsuba rounds right now. If we could just keep this up, Hafi is trying to track him on this movement. Homing move, a lot more homing move now. Homing move, homing move, homing move. And he's cool with that adjustment too. Okay, like fine, Hafiz, you're going with the back one. Snipe by sidestep approach a lot more. That's what he wants. Set him up for the next games. Next rounds, okay, full charge to keep himself plus. Plus frames, plus frames. Hop kick blocked and punish. Hafiz Tanvir with the dash behind it. Ooh. Step armor after the back one. Went right past him, oh my god. Oh my goodness. Nice confirmation from back turn. Parallel to the wall, can he touch the other one? Almost. The pressure though, a little bit of heat, shoulder heat dash. Counter hit throw. Hafiz keeps trying to disrespect after heat dash. Oh, the crouch jab in mid-range. Able to seal it for Matsuba to tie it up here. 1-1. I think that's something Matsuba has started picking up. Is that every time he's been heat dashing, like Hafiz has been hitting a button afterwards. He's -5, but he's trying to do some type of option there. Just counter hit through him. What's the adjustments going to be from Hafiz Tanvir? I like the back one usage, but it's like back one's more minus now, and you're more of a disadvantage. So it's like you're definitely giving up a turn if it's blocked. And for Matsuba, he's like, with the way he's been moving and the return that he's gotten off of that movement, he's cool with even just getting tagged by that a few times, especially if it's like center stage, you're not really going to suffer too much. Exactly, yeah, no wall splat behind it. A little 20 damage, tops, it's not that scary. Nice punish on the single hit fish hook. Break, nice duck on the falcon kick. Could have been worse though. Served it with the dash behind it, finally get a grab, side swap. Sidestep forward, gets checked by Matsuba. Good mid punish. Optimal punish, 12 frame punish. Ooh, the running knee. Sidestep forward, then the mid strike after the finish for Hafiz Tanvir. Yo, why was Rangshu playing with the mic down like that the whole time? He's the only, he had the mic, he had the headset on like he was talking to somebody. Oh, damn, the strats. Maybe he was calling up the family, the power up. He's in a Discord. Yeah, with Vivi, you never know. We go running to the engage. Hafiz Tanvir eating these lows. Iron Fortress again. Matsuba. Oh, wins good. Gets in a position, just apply mid pressure and dip. Okay, here we go. That was so. Oh no, that's not unfortunate. Like the low smash. Hafiz Tanvir still in range to work with. What a challenge. Plus frame. Headbanger. Oh, the step low. chop. The insurance, the step before the low, creating that while standing forward to whiff. Scrambly kind of match, even after the drops. It's so close to each side. They both made the adjustments now in the neutral play. Now it's like, who can turn up from here? Just like you were talking about too, you saw that back one. That block back one just there at tip range like that, that's what Matsuba's looking for. To get into that range, you test him with these one jabs, these other mid options, use back Kempo to lure him in. Oh yeah, I think that's the strat actually. Once he starts relying on back one, that's when the back Kempo comes out. He hasn't even been going to that very often. He's been fighting at the like very tip range. Yeah, it's almost like he's saving it, you're right. We'll see if, right there, if he did it, he would have got him. Ooh, good counter hit. Calls out the low. Great timing from Hafiz. Gets the install as well. What are we doing with it? Fishing for the forward 1+2. Yeah, he's trying to let it rip. Trying to let it rip. Yes, there it is. Oh my God. Spin a win, baby. Spin a win. This brother playing Beyblades. Spin on him. Going for as much carry as he can. Just watch that wall push. Had the duck. Just a little bit too late. Wow. Ooh, duff him. And the little low tap ties it up in round count. Big round right here. Big round. Do all this work just to lose this game? Oh,
for either player. So tense. Punish with the starburst, counter hit confirmed. Sidestep 4 is good. Wow, Blue Moon burst on counter hit, still just as good. Season 1, baby. Still pushing on this wall. Low smash. Oh, man. Pop his tan beer. Wow. Picking it back up. 2-1 advantage here over Matsuba. Claudio, the character that's kind of like a mid dispenser. The only big low he really has outside of heat is that sidestep 4. So a character like him having that low heat smash is so messed up. It's compounded too. Maybe you could talk about this character for a long time. Especially even like the way some animations are, like sidestep 4 having the deceptive kind of like startup on it where it makes it really hard to see the difference between that and like a back one option, especially at the wall. Because it almost looks like he's just standing there. So then when you add in that low heat smash and what it can do with that wall, oh man, that's break you down mentally, bro. Shoulder, Tio. Wall positioning for Matsuba, but Hafiz navigating around it. Getting off that wall. No, right back on it. Up 4-2. You ain't going nowhere. And the pickup parallel to the wall here. Whoop. Wall parallel, yeah. Scary stuff. Sidewall conversions are possible as well with Fango 4-3, but not going to get a chance. Gets splatted by back 4-2. And Hafiz got all that health back in rage. Now this is the worst scenario. Nice stuff. Switching the wall positioning. Matsuba has a lot of gray to recover, though. Going for chip into the low smash. Nice play. They're going to put Matsuba in rage here. Takes a good chunk of life because of it. And the punish. Matsuba needs something. 2 seconds. Not going to have the time. Yeah. Denied by Hafiz. Yeah, those end of the round timer scam situations are so important. Make them hold the string, burn like 2 seconds. So important. Good flash duck from Matsuba. It comes with the 1-2, just go for the back charge there. Hafiz Tanvir going to be able to engage. Back 4-string. Interrupt. Step burst is good. Defensive burst application. Oh, the tantrum. He got the pickup. He got the counter hit. Got the wall. Oh, that was a low wall. Unfortunate. It was really ambiguous looking. Break of the grab this time. Left a full three. Oh, the down back 2-1 interrupt. No more Blue Moon. Wow, took the risk on the low high and he paid for it. The other normal low, and unfortunately that one has the window if you have the patience and the awareness to call it out like that. For Zanzibar. This is a really close set between these two. Wow, sidestep up forward 3+4 to fake out the sidestep 4? Guard on the sidestep 4 there, comes with a while standing 4, and then again, mid-poke kick after. Ooh, tag him low. Hafiz has been either trying to move too early or been pressing on that string. Yeah, like Matsuba has been ending it at the second part, which is punishable. He's like lulling him into that a false sense of sensation, you know, trying to make him punish it. And when he finishes it, both the past 2 times, it's had return. Plus frames. Goes to Corsair low. Running 2, crouch jab to take the turn back. Smash and rage art to pop him for it. This time answering the heat dash with the rage art. Still got half a heat timer too. Be about even on health, a slight advantage maybe for Hafiz, but Matsuba with rage art of his own. Spends it on the 2-1-2 dash. Step 4 in the jab low. Hafiz Tanvir takes the round, and now MYK set point. Hafiz Tanvir. He wants it. You know he wants it. Now the back tempos are coming out. He tried the sidestep lefts, the flash ducks on the running 2s. Now it's time for the back tempo to cash out. 3-3 back. Got the fish hook. Ooh, look at the flash ducks, man. He's like, let me get something. Oh, hop kick, get out of here. Get out my face. Matsuba Japan, I got this wall, I got this heat. What? Questionable wall combo. Questionable wall combo. I don't know about that. Doesn't care. Iron Fortress dash behind him. Give me the wall pressure. I'm going to tag you low, and then just like that. Still set point for Hafiz Tanvir. A chance to extend here from Matsuba. Staying alive. Keeping it jabs and mids only. Nothing risky but the jab high. Paying for it. With the balcony too. Oh no. Activation. Doesn't even use it. No, just splash for damage.
Oh, slow smash And is so scary He here, has bro. the threat of it. Okay, it's gone. It's gone. Matsuba fighting out of the corner. Running E. Oh, finds a cross dash one. Gets the lead back. Yeah, was for the counter hit Iron Palm. Oh, back one. Tip range. Running 2. Circlet. Good jab interrupt. Good jab interrupt. 3-3, no 4. Down back 3. 17 seconds. Mid check. Oh, trying to step left around the running 2, running 4. Takes the lead with the pokes. Matsuba stays alive. The low mid mix at the end there. Wow, had to scrap for it in that last round. Hafiz wanted to end it right there. And the change up on the while standing punch string as well. So I'm going back to the second. Yeah, only the stopping second. on the second hit. Mixing that up with the down back 3 timing as well. Yeah, that's a good play at that range. That mid-range play where Claudio's just trying to tag you with that back one or the running 2 on his approach or running 4. And then both of them have been mitigating that risk very well. Nice counter confirmation. What are we doing with this? Back one again. And then return to neutral. Ooh. Wow, beat him to the punch. Wall pressure now. Matsuba getting out of there with the throw. Side switch, but the fidget spinner again. Spends the dash for maximum damage. 82 damage like nothing. Side step sweep. Oh, he just sent it. He believed. No whip punish. One more poke, mid or low. Matsuba is a down back 3 master. Oh my God. Dude, completely undeterred. I think he might have got one block this whole set. That brother is popping splits at home. Wow, recognized it wasn't gonna hit, so he didn't do the 1-2. It's all the tools he's used all set together in the same range at the same time. It's when you use it. A spicy. Sidestep low, mid got the splat, not even a convert. 0 on hit, down 4, takes the jab into the smash. Trading rounds here. Oh, the flash duck, good attempt. Back one, tagging him. Trying to nullify that sidestep left. Oh, threads the needle. Sidestep low. The engagement. Somehow, Matsuba. Well, how did he know? Oh, it was super off axis. That could have been way worse. Yeah, the Quincy arrow, man. That was a big commitment. Matsuba could have made him pay really badly there. Oh, big duck and fat launch. And you know where you're going. Put him on the wall. With the unscaled, takes the lead 2-1 in the game. Matsuba on set point against Hafiz Tanvir. Right. Dispel Magic in mid-stage. It's beautiful, Matsuba. Take your pressure. Corsair board. Oh my God. Taking his frames. Yeah, Disrespect, hop kick, I don't care. Huh? Combo drop from Hafiz. Wow, got a burst. One more chance. Armor through. Circlet, sidestep 4. Oh, big whiff on the shoulder, but just a 2-1. Fortress dash. Throw, this time countered. Oh, the block! Finally gets the block on the down back 3, and we got a double to Ricci. It took 4 games. 4 games in that long for him to get a strong punish on that down back 3 like that. And he got it when he needed it most. Both these guys want it. Undeterred, Matsuba's still going to it. This is good. Oh man, Hafiz coming out fast. But Matsuba just keeping it even with those crouch dash ones. The low shoulders. Ooh, called finally. That's what he's been looking for early on. Power crush, flash duck, only jabs. Spell magic. Down for 1, fish him with fish hook. Activation from Hafiz. Scary stuff. Smash on the table. Ooh, big whip. Wasn't counter. The lows from Matsuba. Oh, but the believe it all hop kick. Wow. And that's gonna be enough. Hafiz Tanvir
with the clutch dream hope kick. The look on his face says it. Oh, MYK, he stood up the second that Rage Art hit, looked at the crowd. He knows he got away with that one. Wow. What a set. Matsuba Japan gonna have a chance in the gulag here in Group A, but Hafiz Tanvir with some gutsy calls when it mattered most. That hop kick to seal it. The genocide cutter, man, put it all on the table for that one. Dude, this match was so close. I love the adjustments on both sides. Finally, at the end, like Matsuba had the big call out on the running two, keeping it real close, but at the end, the big call out, do or die hop kick for Hafiz Tanvir. Really good set. Before we get to the rest of our Group A matches, we got to take a quick break. We'll be right back with more Tekken 8 here at EWC. We're back at Esports World Cup Group A action here, the final group. Who are we going to crown? The 4 champions out of this group to make it into phase 2 tomorrow. We got 2 matches already underway, but coming up next, Breadman versus Casimir. This, in my mind, looking at the names, the roster on the Group A selection, I felt like both of these guys could be kind of like a dark horse in this bracket, right? Breadman, of course, running Leroy at this level, not a terribly popular character at the global elite level of competition. Very true. He plays him to great effect, as you saw, of course, at Tekken World Tour Finals, where he qualified for this event, right? 4th place there, yeah. Very impressive. We had a showing. really strong showing, and I'm thinking, you know, you have to have been looking at, as a professional, you're looking at the roster players that are qualified for this event. That has to be a matchup that you had to dedicate some practice time to, right? Yeah. But he hasn't really even been seen all too much outside of Korea I since agree. then, right? He's kind of like a dark horse, right? He just kind of comes out every once in a blue moon, right? So, but then also in Pakistan, they do have a really strong Leroy player there by the name of Khan, runner-up at EVO 2023. So maybe Casimir has some Leroy experience by fighting Khan in local tournaments. Not sure, but Casimir locking in the Zafina, known for her movement. But Leroy, not a popular pick. Let's see if Breadman can show us what the specialist can do. Especially over the course of a long set like this. 1st to 3, Casimir, of course, qualifying out of his performance at EVO just a few, 6 weeks ago. Like a little bit less than that. This guy's been representing Zafina on the base stages at recent memory to great effect. Showing just how strong Zafina can be. But the low counter, the Herman low counter? Herman low counter after eating a lot of them in the process to that wall. Locaine denied, but since he got beat out of it, he still keeps it. And timing is going to play a big factor in this for Casimir there. You saw the delays in those chunky lows out of Tarantula stance after that transition. Ground star low parry, that's how we're starting it. To the wall. Good damage off the low parry with the wall. Now the running pressure. And the torpedo kick out of Tarantula stance, able to get the counter. Whoa, the launch thread. Uh-oh. Got the wall, huge just chunks of damage. Breadman hasn't even had a chance to play yet. The chip and the low to finish. Yo, Casimir. Leading the charge here. And that's something, too, with the way Leroy can really find plus frames, especially into Herman stance transitions that are frame advantageous. He needs a little bit of time, right? You got to be able to set up for, if you don't want to just run chain punch pressure, and you got to be able to get sidestep attacks to get into that positioning. And also get the flow of your opponent's like attack pattern and timing to get those parries off and stuff to really get the most out of this character. But right now, he's just kind of getting locked down by Casimir Zafina. He's taking opportunities here and there where he can, but he's not really getting too many opportunities to even just lay on chip damage with chain punches. There you go, that sidestep double kick like that. It's one of those frame advantageous ways to be able to set up in the Herman pressure. Armor is good. Final chance, but the while standing too instantly, it does have a lot of evasion, can go under some mids as well. Not a bad choice to bet it there. Casimir taking game number 1 with that.
Like you said, too, just very momentum heavy on his side, not really giving Breadman a lot of opening or even just time to create an opening like that. It's very interesting, too, because Athena, like, since she got the Azazel arm upgrade in Tekken 7, and especially in this game, she has a lot more moves that utilize that, especially that back 1+2 in that neutral range. It feels like he's just outranging the hell out of Breadman. Yeah. And Leroy kind of stubby, too, on the arm department. And even if it's not like launches, she does such a good job of just creating chunks of damage. Yeah, just doing damage for you blocking. Yeah, chip, whether it be chip or even just those chunks, you don't get a ton of gray health. Yeah. You don't get a ton. Which is wild, too, because Chip has been neutered a little bit, but she can still do a lot with strings like that. What the? That was crazy. We got to talk to whoever's paying this cameraman. Yeah, bro. We got to talk to He him. be partying sometimes. I just want to talk. That's what I have Yeah, I just want to talk outside, bro. Ooh, Transition oh, to armor, wow, not didn't have enough. enough life. Good presence of mind for Breadman to finish that string there. Good read here, defensive. Low parry, No, not able what to the- convert, gets shot in the back. Did you see the momentum on the 3+4 going backwards there? That was weird looking. Explosion. A lot of great health just from the chip. Oh, but the hits here. Dude, if he got a conversion off that. But he got the walk, he got the back shot too. It's a plus frame. Nice, big call out on the heat smash. It is a high. He was prepared. He's got to make something happen with this though. Got to be able to find the wall pressure. First route. Keep on the carry to the wall. Gets it. Ha, got it. Beautiful wall carry. Set up for your offense here. Low strike into heat engagement with the dash behind it. Going to be able to finish the round. Come on, Sugar. Trying to get a rebound here. Walking Nice the man's face massage. Dog walking. Ooh, the parry into forward 4-2. All right, that was it. That's the specialist stuff I'm talking about. Parry into full launch. Wow, Breadman double punches up. back to back. Oh. Counter hit, confirm it. And Breadman, a very, very fast and strong response here. That's a rebound game, man. That was sick. And dude, we saw last time Casimir went for the running 1+2. He went for the low, big low, hermit low counter. This time, mid parry into a full launch on the Tarantula down forward 1. That was sick. These are key attacks for Zafina and her offense, too. And she kind of just gets to do those sequences sometimes after the previous moves. So it's like having a character that can parry or low counter like Leroy really throws you off your offense a little bit. Naturally, on the side of Cossack, you have to imagine that's going to create a little bit more hesitation. And with that hesitation, I wonder if Breadman is going to be able to create an opening for himself. Ooh, good reversal though. Breaking the glass, stomp on him. Spends the install for the extra damage. Just takes the spike because it's a sidewall. This is what we're talking about, those chunks of damage. Zafina be doing that too. Just little two pieces that do a lot of damage. The Tarantula stance goes for the low. Scarecrow in the squiggly punch. Good awareness to stand up for the mid. Tags him low. Orbital gets stepped. Casimir walking him. Opening lows, Hermit stance, pressure mid. We'll try to punish the parry attempt, but wasn't there in time. Ooh, where you stepping? Where you going? This is my space. I control this here. That big swipe, man. Look at the reward here. Didn't quite Wall get the positioning. Wall. Ooh, had a big whiff punish opportunity, but went for a slow cane to whiff punish, but gets an orbital. Hold on. Gonna go for the break. Weird sidewall. Goes for it. Yup. What are we doing here? Just send him away with some damage. Low touch, low touch. Sends it on the dash. Into a frame trap attempt. Nice confirmation off the second hit of 2-1. All natural on that second hit if it's counter hit. Got the interruption on it too. That was counter hit. All evened up right now, but he lets the string rock. It does have a counter hit property on that second part, but it's a high. Gets the burst. Yo, not quite. Big sweep from Hermit. Sweep. Out of Hermit stance. Counter hit, the crouch jab underneath the chain punches. That was hella good, because if that knee whiffs, that's the only time you could duck that. But down forward, 4-1 at the wall. Nice delay to get the wall hits properly.
Ooh, and the low tap at the end. Nicely done. Casimir pulls ahead now. Oof. What round start down 1+2? Mid engager. Down 1+2 to be able to put this wall pressure on him. Sidestep double kick. We armor through it. Casimir not out of dodge yet. Wait a minute. We're betting the Hermit big lows and the low parry into the round. Literally going back and forth, back and forth. Forward into Hermit pressure afterwards. Casimir just staying patient, trying to see what he does. Patiently just holding back. Ooh, but gets shotgun for his troubles. Still has Tornado. We're going for the blast burst. Okay. Outcast arrow into all this. Yo, okay, not bad. Heavy scaling from the shotgun counter hit. But down back 3, no confirmed. That was the next wall. He would have had 4, 1+2. Gets it anyways. Why not? Hermit sweep. He's been banking on that. And he's like 3 for 3 on those. This is a combo exhibition, yo. Sick. Wall to wall. Oh, tried it. The double low and then the check after Breadman. With that punish, gonna go up 2-1 in the set. I thought that was Casimir's game for a moment there. Yeah, I did. But then those parries and the Hermit counter just really makes you second guess like your 2-in-1 offense. You're just like, I can't just do this autopilot off. I gotta really bait that stuff out, second guess myself sometimes. The combo recipe from Breadman too. He had that one drop after the counter hit at the wall, but then he picked it up back up with the Hermit stand sweep with the wall explosion. But even the combo recipe just to go wall back to the wall, other side, the other side of the stage, the wall. That was a little combo exhibition that last round. It wasn't about the damage, it was just about setting up for the next play. Yup. You want to keep that wall positioning after the wall carry just to get that pressure. But like Margin Obama said, yeah, there's the Anna. She never left. I was expecting an Omatsuba set, but Casimir going to pull her out as well. Character he's gone to in the past. Still has her strengths. Definitely not as strong as she was in Season 2, but that right-hand sweep, that full crouch mix is still just as potent. Oh, and look at what stage we're on. Ooh, the double parry? Debuff applied. Got the walk, interruptions on the side of Casimir. Full crouch sweep, and here we go, MYK. Get ready to flip coins. Nice carry. Activate. Hey. Dude, 80 damage off the full crouch sweep. Big chunk of damage. Man, these group stages are brutal, dude. Right? These guys do not care. Like, whatever, man. I'm playing. Like, gotta do what you gotta do. Guess per game. This is war. Ooh, mid-Kane gets some counter hit. Whip burst route. He can spend it if he wants. Yeah, this is sick. Oh, we're going downstairs first? 90 damage, and I'm in heat. Now we're gonna keep the heat activated. Shy of a hundo. Did he get the step? Not deep enough. What the trade? And he converts? Oh, you gonna eat some pixels for that. Give me the floor. No, too many hits. Normal hit, heat, back 1+2, gets the pickup. Oh my God, lowers his shoulder. Blockable shoulder. Outcast arrow to start things off with debuff applied. What did he think was gonna happen? Nice block, good punish. Went for the low, but was aware. Let me go low. I'm the master of the lows. Herman low high string after as well. Debuff once again, active. Fisher with that down 1+2. Big Got the step this time, and we gonna touch the sky. Casimir now with rage to work with, but can we reach the wall? The activation, he's pushing. Maybe he finally hit a biting dragons, might have been able to clear. Oh, I thought he was getting parried there. Good throw to throw the power crush. Nice step. Not in time for the heat smash though. 1+2 throw, no break. From Casimir, maybe he slid the buttons. Unfortunate there. Redman on set point. Ooh. Little punish on the parry attempt there. The winner here gonna play Casimir. Ow. Nice. Upper. Beautiful step. Are we going for the break? What? Wine opener for the wall combo? It doesn't matter though. Okay, Casimir staying alive with the Anna pick. Familiar round opener. We've seen that down 1+2 to round open and engage before this set. Lows at range. Going crazy with the stances and then Outcast the shotgun. arrow.
You know where you're going. Parallel to this wall is going to be a sidewall situation, but he might be on the pixel 4. So I said 3+4. Challenges. Does not care. Nix. Hit him with the mid this time. Good kip up. Oh, gets the link off the side. Can he convert? That's sick. Tornado, right blast, resplat. Piece. It's not enough. The scaling. Counter hit while standing 3. Bearman has a chance. Plus frames. Nothing. The low. The block. Oh my God. Counter hit mid step kick. 2-2. We're going to a final game, MYK. He had the low block there, but didn't get a punish. Oh, that was unfortunate. So I guess he was not trying to block it. I think he was just trying to move and maybe hit the down back during the back dash. Got a lucky guard. It just wasn't ready for it when he saw the animation. It's hard, man. The game, especially the way she moves, it's so fast. Yeah. And it's just a movement block sometimes. Like, I was just trying to move and he hit the low on my down back, on my KVD. You're kicking yourself after. You're like, oh, man, like, how could I let that go? Right. That was the comeback right there. But now, all tied up. Great switch for Casimir to the Ana. At the duck, maybe didn't expect the... I like the debuff strategy, though. Why not? He has to actually hit you to get that off of him. There it is. Adding up too. Just a harassment, yo! The Chaos Judgment 1, counter at link. It's over. Awesome, you're just stuck to him, man. How many booties were in that combo? That was like 3. Keeping it compact, just piling on the lows that whole round. Oh, that could have been big. Plus rings against the Hermit. Nice confirm on the Hermit, 1+2. Huh? It's held true south. Comes up swinging, debuff applied once again, sliding. Whoa. And the delay to come up with the rising upper. And here we go. We got the wall, got the corner even. Activation. Casimir. For the flip over route. What are we doing with this? Bull crouch low, bets it. Wall's right there. Gotta adjust. Low wall. Goes for the unscaled. Nice stuff from Breadman. Low cane. Off the side with the heat dash to secure the routing. Smart choice because the side wall. Heat dash into Rage Art. That was a good choice from Breadman. Not enough though. Sidewall scaling. Not a counter hit. G shots. Ooh, the second hit of the low. The second low. Saved him. Saved him. He tried to whip punch the first. Trying to hit confirm that. Nice down jab. What a duck at close range. Got lucky and came up with a good answer. Ooh, the sidewalk. Where's she going? That hammer chance forward momentum kind of saved herself there. Oh, Shades of Season 2. That counter 2 jab doesn't go into hammer chance 1 anymore. With punish activate. Full crouch armor. Shoot him. Eat up. Ollie's down. Throw the hips. Take the round. Casimir back on set point here. Great switch to Ana, man. It's working out. 4-4-2. Horseman, yeah. Sidestep double kicks in the Hermit. He cancels out of it. Outcast arrow once again. That finds the mark. Mid. Get off of me. We love 12 frame mids. We love them. Especially counter and launcher ones. We take those. Ooh, grabs her out of armor. Face massage. Okay, what's for Oki? Just a low tap? Once again, no throw break. Generic throw. Casimir looked down at his stick afterwards. Like, something wrong with my buttons? Good mix of lows after activation. Crush the armor. Yup. RPG shots. Breadman denied on Breadman's side. Going for chip on Casimir with the bazooka. Ooh, 15 seconds. Smallest of lead for Breadman. The roll. Wow, the get up 3 range. Barely clipped. Final mix. Oh, nice low check there. Low high string, he guards and finds the low. Casimir going to be moving on to face Hafiz Tanvir to qualify out of Group A. Breadman gets dropped into that lower side. He's gonna have some nasty dudes to deal with down there if he's gonna make it out of this thing. Pakistan looking strong right now in Group A, but man, Breadman put up a fight with that Leroy. We saw some of the specialist stuff, but Casimir made a great switch to that Ana at the very end. Right when like a lot of players kind of wrote her off Season 3, she still has her strengths. She can still be played effectively at this level, and we've seen it showcased by a few players already this
this EWC alone. But yeah, for him to stay in the fight, use the Ana to be able to force the set to its conclusion like that with the win over Bremen, that is a good result for Casimir. And so now let's take a quick break before we get to our conclusion here of Group A. It's going to be CBM versus Arslan. We'll be right back. This one on his mind for a while, even if he plays it cool, right? But going up against him is going to be CBM, a man who is no stranger to this stage or any of the global elite stages up until this point. One of the more well-traveled players, and of course, the question I have is character selection for him. What's he coming into this with? I think he's gonna be Jin. I feel like he's been really locking in the Jin as of late, but yeah, does he have a new one? Surprising. No, I mean, it's Jin, but of course we've seen him play some other characters in some of the big stages over the past year. So you gotta imagine in a 1st-to-3 scenario like this against Arslan, maybe if he could leverage one of those other character picks to maybe potentially even squeeze out one game. I'm more curious about Arslan's first character pick here, because it's a 1st-to-3, and Kunimitsu just came back, and he, like, that Evo run, people kind of just saw him win it with the Nina at the end. But the way he got up there was all Kunimitsu for the most part. No, Arslan, he thinks he's a JRPG boss or something. He likes to play like, no, you got to deal with my Kunimitsu for the Nina, right? But with this event, and this is kind of the one that's eluded him. We talked about that, right? That's been a talking point going into this thing for the past 3 years. Maybe he just runs Nina the whole way through. Maybe he's like, bro, this is what works. Yeah. This is what I got to do. Like, this is my champ, the 8-time winning Evo championship character, Nina Williams, going up against CBM's Jin. All right. It's the one we've been looking for. No games, open things up the back 2-1. Arslan Ash fishing early in the mid-range here. Slightly big stage as well. That is the punish, but I think he got there a 2nd frame or something. Ooh, how did he find an electric there? Favor. What? First route. Trying to get as much carry. Yup, back 2-1. What's for Oki? Out of range for the down 4. Lockdown with the jabs. Low to beat the armor, not quite. Whoa! How did he find that? Has the wall to work with as well, with this dash. That should be enough with the stomp. That did so much. First round to Arslan. This is one of the strengths with Nina too. She just does so much good poke damage. Just almost never leaves you with grave. Poke damage, and of course it's complemented by the way she applies pressure too. The only grave is from the reversals here. Jab down 4, really? Wow! The electrics have been crispy from CBM. Just outside of rage too. Smash is good. Went for the damage extension too. Boom. Gotta imagine calculated on the side of CBM like that. Good answer, yeah, feeling confident. He was talking smack coming off the bus too. I'm gonna block you this time. I'm tired of getting denied. Fishing with 4-4. Nice 10-frame punish. Jackknife in mid-range. But Arslan able to close the gap. He's going for shut up. Raw dog. CBM trying to find his spots to sneak in another electric here. But Nina with these wall of buttons, man, jabs, down forward 1-2s. Good interrupt from Arslan there. And that's all he needs to. Just an opportunity at pinpoint range like that. When you're playing compact, you might need a hop kick on the way there, like you just did. But how does he keep finding all these launches? He's just looking for a little bit of space to set up for maybe a sidestep 1, find some frame positive pressure like that. For the extension, 102. Sword in the low after to be able to take the round. CBM, okay. Came prepared. In control here, fishing 1-2, 2-1. Prep time CBM. Plus frames. I like that. Dash up and wait. See how Arslan's going to react to that. Sidestep right duck. Gets under the magic 4. Wow. Good timing on that down forward too. Max range upper.
Can we reach the wall? Wall's right there with the burst, possibly. Oh no, drops the last hit. Would have been the wall. Down back 3, working the lows a little bit now. Variety of lows. Grab Nice. the crush. Oh, ban. All right, just like that, Arslan ties it up 2 apiece. Good call-outs too. The speed here, 2-1. Oh, caught him ducking. Axe kick, and CBM's going to be able to convert this here. A lot of carry, especially with the heat. Still going to be well short of the wall, but another sequence maybe. Dive kick, down jab. Don't get your turn. Let me steal it. Okay, okay, the new stuff. 2-1, and then the demon hoof. Spends the smash to try to get off the wall. He's getting a little too close to the wall. CBM just trying to poke him down, not trying to get too greedy here. Oh, no duck on the high, but he does have a mid there. Throw for the side switch. Smart choice from Arslan. No whip punish on the down 4. He just looked at it. Oh, mid before the armor kicked in. No -10 punish. Gets the knee though. The 4-3+4. There's such small splits. MYK wiped the floor with them. Shut up. Oh, why did he take the risk? What? I don't know if he meant to do that. Sidestep 1 into back sway 4? That was an interesting choice there. Risky mid to try to close it out. Might have been a missed input. Yeah, I was thinking miss input, if anything. Yeah, it's not a conventional move to try to close the round out. The last 10 seconds of that round, though, got so tight. CBM had such a health advantage, but he kept doing things that were like -10, -11, -12. And those small dividends were enough to put Arslan in position to be able to make that comeback. Sick. CBM takes the first game. Battle of mids right now. Now the lows. Mids and jabs. Safest Tekken you could play. Ooh, nice step. Then the second you get out of that, you want to put a 4-4 out of there. Sidestep. Talk to this wall. Down back 3, okay. Kazuma punish. Ooh, the Zen almost got under it, but the second part's mid. Oh, down to blatant. Down. LRK too. Attack the legs. Burst activate. Attack the legs. He tried it again. He tried that same sequence again. Down to LRK twice. Lead jab right into a hook fist. How does he keep finding these electrics, man? On a jab? Ooh. Sword ender. The low in recovery off the wall. Arslan Ash getting some health back. Poking his HP back into this thing. Just a little bit of chip with the mid guns. Back sway into down forward 2. That was clean from Arslan. Back sway down forward 2. Sidestep right down forward 2. Have done a lot for Arslan Ash in the set so far. Wow, the Zen 1 follow the tracking on the tech roll there. Oh, good down jab interrupt. The down back 3, man. That move is goated. This is a really good low. Oh, but the smash is good. Do CBM be whip punishing all these single jabs, bro? Electric, heat smash, all on single jab. Down 4 range. Arslan trying to catch a timing right now. CBM not biting. Nice little whip punish. Dude, the timing from CBM is ridiculous right now. He's on one right now. You got to be able to convert this. Don't give Arslan Ash these openings. Wall pressure, burst Side rage, burst, get out. Step it, crouch tap, take my turn back. Post smash, where we going with it? Plus frames and then reversal rage art. No, he didn't, he was stuck. All right, gonna have to hold this rage art. And she's still got about 40% heat timer left to do something with it. Heat smash, He's alive after all those bullets. Right? After all them shots. Dude, Tekken bullets must be like sponge bullets, you know? Just playing this paintball. Yeah, it just tickles, man. Airsoft gun, look at that. Dude, we should be shooting people in the face and it does nothing. Back 2 series at the wall, he wants it so bad. Oh, no. But the reverse rage art, Arslan not gonna bite. Arslan still looking strong and composed, but the floor is lava now. LRK gonna be a launcher if he gets to use it, but the greed might make it obvious. Back 2-1 and now defensive burst. Oh, good. Threading the needle with the 2-1. These guys are, man, the Abare jabs and crouch jabs. I love it. Got to do it. Called out finally on the electric. Arslan got that one scouted.
Takes the floor. Yeah, gets the spike here for the blast. Just a resplat, reposition, jab, down back 3, and then the mid with the dash. This patented Arslan lockdown at the wall. How you gonna escape? How are you gonna escape? I'm trying to poke out with the 2-1, the jab. Not gonna happen. Arslan Ash wall pressure, baby. 1-1, able to tie it up here. That's that 8-time EVO champion wall pressure right there. With that Nina sidestep 1 at the end of the round, you ain't going nowhere. Yeah, especially Nina with sidestep 1 into the backsway cancel. She's +10 on block. It's such a good advantage. The frames, man. Yeah, it's ridiculous. It's really, really good. It's a lockdown character when you block that sidestep 1. So good, especially in heat too. She's just getting the HP back. The additional options, like, oh man. CVM trying to size her up in mid-range though. Working the lows though, but the counter hit launch here in mid-range. Arslan Ash. He punished that previously, 3+4 from Nina, that homing move kick, but she could go into crouch dash afterwards, and that's why he died this time. Arslan saved it for that one. To the wall on this stage? Push on this stage? What? Oh my God. Nina Williams. Nina Williams. And the low to close it out. Arslan now feels like he's settled in. He's a little bit more comfortable now than an initial game. Nice and composed. Big open stage. With mid strikes here. That knee into the mid guns are so good. Wow, calls out them high. CBN with the no-hit confirm on that down forward 1. Flip over. What are we doing with it? Step, it's deep enough. Got the hop kick. Oh, this combo can hurt. But the wall might come into play again. We got to burst into spike. Yep, got it. Into the unscale. What are we doing for wall pressure on Yakushima, by the way? Oh my God. One with the follow-up kick. Dude, we reached the wall twice in Yakushima. This is crazy. Back-to-back rounds. Yeah, this is very rare. You don't see the wall very often on this stage. The biggest stage in the game. Lows, mids, and hook fist. Arslan Ash on the back foot right now. Head, shoulder, knees, and toes. Get the ankles though. Contesting this mid-range 2-1s from CVM. Oh, double it up. Yeah, that frame trap is so good. Down back 3 into forward 3+4. Arslan special. Just annoying to deal with in general. Oh, gets the slide on counter hit. Okay, flip over spike. And there's your spike. Just back up. Smash into just safe mid check just in case. Safe mid check, sidestep right, got the counter hit on the back too. And that's enough to seal the round. Arslan Ash looking comfortable now. And we haven't been seeing those electric timings coming out of CVM after he got that 1 duck that last game. Maybe scared to throw him out again. 2-1, that down 4-1, and then just lead jab string. Back sway, nothing. Back 2-1, the intercept. Gets the 10. A lot of space control on both sides here. Ooh, blockable shoulder just eats it, trying to step. Step in, activate this time. Wipe the floor with the, oh man, Arslan Ash. 2-1 advantage over CVM. I swear Arslan's wipe the floor is practically unblockable. I like rarely see his wipe the floors get blocked. And he's been that might be the first or second time he's used it this set. He's gone to it very sparingly. He's been going to a lot of her other lows. He's done a lot more down 3, a lot more down back 3. You've seen a lot of the other low options, almost like he was saving it. Yeah. No, I really like. I've always noticed this about Arslan. It's just like his wipe the floor hit percentage is just so very high. Yeah, he's really good at like save. Yeah, like Obama said, saving it for when he needs it. Whoa. Out of range for the 2 throw. Nina does have a full throw game, same as Jin. Spit that stuff on him, down 4-1, and now getting the down back 3 gameplay. Oos. Lows on both sides. This time the Demon Paw. To get engagement out of it. Now Malcolm went flying. Oh, the low taps, every little bit counts. Let me just widen this lead just a little more, CVM says. Try to deny his heat. Arslan spends it on the smash. I got a smash too. That was a step, but Arslan didn't see the whiff.
shut up in open stage like this. Oh, just keeping it mid, keeping it safe. He just wants to burn the clock. CBM side up forward, 2 out of trouble. That little sidestep left built into it. Got him out of there. Evasive punch. 2-1. Oh, dangerous. Sizing up with the down back 4 as well to complement this mid pressure. CBM starting to get a little more comfortable again. The electrics are coming back. Jabs, you're seeing electrics, you're seeing 4-4-2. Good punish from Arslan there. Checking the low. 2 throw out of stance, electric in the back. Got a spot. Oh, but the wall came in at the worst spot for the burst. So unfortunate. That was 30 seconds of pressure just for that one sequence, and it got ruined. Oh, off the side. Oh, he tried to adjust. He tried to adjust. Good attempt. Jab string into activation here. Arslan Ash, wall to support him. 10 seconds remain. You got rage. Arslan with the advantageous positioning, Back but to not ones. with the life lead. The down back 3s. Bet it all. Yeah, he was trying to fake out the wipe the floor with the crouch dash. Went Try with to the kiss him divine for it cannon. instead, yeah. Yup. Ooh, Demon Paw counter hit, actually. Wow, step this way, he said. Check this out. Got balcony, gonna be able to just that's so broke. Take your break here. Spike into pressure back here on the second floor. Activation, sidestep. Oh, that's the Gets floor. checked. Wow, the Obari while standing 1 paid off huge. Got a spike into unscaled. Nice. Good damage, just gets thrown in the open. Smash is gone. CBM post smash, where you going with it? Takes the -12 into smash. No duck on the guns. Gunshots to chip, adding up though in a big way. Plus frames for him. Down jab, turn denied. Whoa, the 3rd hit. He hasn't spent that at all this whole set. Yeah, not falling for anything desperate from Arslan Ash. Solid round there. This game compared to the previous ones the rounds are much grindier. Yup. These guys definitely, they're scrapping right now. In the pocket. A lot more defensive in terms of just neutral. Very, very just not super highly risky options being shown on the table. Exactly. And Arslan not taking any too big risk here, like hauling out of the electric like last time. Playing it really compact too. Mid-range and compact play. Oh, finally in the open. Big electric and the activation. That was so... What? 7 sword and a whiff. No, not like this. Oh, man. And Arslan he's gonna put him right back on the wall. These lubricated walls, why are they so oily? Oh my goodness. Fossil fuels MYK, rage charge. Oh, it's good. Big old rage art here, gonna get a little bit of life recovery. Both heat activated though, look out. Denies Arslan's heat with his own. Just get the low. Back Good 2 series. Sabaki gets denied. And right back at it, set point, Arslan Ash. The 2 times he's went for that punch, Sabaki has failed him. Safe mid pressure, jab pressure. Nice confirm that time. Keeping it safe. Close for CBM, good advantage this round. Looking for a chance to extend. Oh, he almost got under, but the 2-1 timing from CBM. LLRK, safe burst for Oki. Step, not quite. Deep enough. Woo. Yo, big step, but it wasn't the back. Back 3+4 whip punish. Slide. It's not over yet for Arslan. He smells blood. He's going in. Oh my God! Wipe the floor into the stomp to Arslan, taking the set. Wow. The unblockable wipe the floor. You said it just a little while ago. His hit percentage with that move for years, at this point, has been incredible. And to finish it off that way, oh my God. CBM was right there, almost so close to being able to extend this set. But Arslan Ash, he just finds a way sometimes. When he's feeling it, he can just impose his will. Yeah, the pressure at the wall looked like shades of evil, man. It's like he's looking like he's in top form, man. Arslan Ash is gonna be the one to look out for. But that means 3 Pakistan players over 3 Korea players in this bracket. In the opener, right? We're not done with this yet.
Wow. But that does say a lot. Look, we're going to check in with our partners. We'll be right back with more Tekken 8 here at EWC. Oh, Group A is looking good. I was hearing we might get a lot of 3-0s. Not the case this time around. The first 4 matches go the distance. Well, besides one of them, but either way, it was fun to watch. Hey, everyone, welcome back into the Allianz Vault. I'm Taylor Reflections Noble, joined by Tasty Steve. And wait a second, Reinhardt, we were able to sit you down on the desk. How you doing, man? I'm really good. The action has been non-stop. I've been enjoying every single second of it, man. I just don't know what's going to happen. It's been everything outside of what I've predicted so far. Everything so you haven't been right once. All right. Yeah, I had CBM for that set. Just because Arslan Ash, he's won every tournament under the sun, 8 Evos, a TWT title, but hasn't quite got that eclectic resume here at EWC. That's right. Well, for Twisted Minds, they are looking good. The big story, right, going into Group A, Twisted Minds making their first appearance. They needed to avoid the decider matches, and so far, Steve, they've managed to do it. I mean, look, if I'm Twisted Minds, you have an A1 competitor, and if anybody's going to make it through, even though he hasn't had the best results at EWC, it's going to be Arslan Ash. Like you said, man, 8 times the EVO champion. Many accolades. How can you count this guy out regardless of the stage? But Hafiz as well. Hafiz makes it through. At least he's not all the way to the next phase, but he's looking pretty solid. He had to go against Matsuba. Wasn't an easy matchup at all. It did, in fact, go all the way to the very end, but he got it done. He did indeed. He's going to be facing Kasim Mir, who took over Breadman 3-2, went down to the wire. I think that set could have gone either way. We were talking in the green room how Breadman is just so sick, but I think Kasim, the thing that made the difference was the defense. He was a brick wall when it came time to clutch it out. Clutched it out indeed. CBN, Arslan Ash, they have history. And this series went to the way of Arslan Ash, who was much hyped up, 54% favorite to win this tournament, based off of your predictions, mind you, not necessarily the predictions up here on the desk. But I hear EWCs get hard for him, but regardless, he manages to get a solid win and push his way through to the next matchup. Now, again, going back to Twisted Minds, these guys are looking good. Hafiz is on fire. Now, for Twisted Minds, when it comes to the club championship race, they need some big W's. This is just one of those spots. Now, for Matsuba, first EWC, honestly not mad at the fact that it goes to a 5 in the sets, right? No, the thing is, man, we were talking about Matsuba. Man is actually ridiculous, and he's representing Good 8 squad. They don't have many Tekken players represented, but also we don't have as many Fang Soul represented as well. Matsuba, a great character, a great player to put in there to try to mix things up, but he's still in a hard pool to be in, especially to make it out, and it didn't go his way, obviously 100%, but he still got a chance. Yeah, I mean, he's got, still very much in there, but he has to go against Breadman. That's going to be the next matchup, and that will be a decider matchup, which is not going to be an easy one, but that's the way these tournaments go. Standout match, though, from the first 4, Ryan. Which one to you was the most impressive? Wow, that's a tough one. I mean, I did definitely have my eyes on the CBM Arslan Ash match just for the history, just for the fact that CBM has been stopped at the final hurdle to the Golden Temple each and every time by Arslan Ash, and this was the one that he really, really wanted. But I do think that the pressure weighs heavily on the person who has the most accolades, so another reason why I thought CBM might steal it away, but Arslan Ash just too solid on the day. Too solid indeed, at least so far, but he needs to win again if he wants to go into phase 2. Now, the Allianz Vault has been absolutely lit, but the STC Arena is popping off. We need to go to a club championship update powered by Aramco.
We're right in the thick of it here in the STC Arena. I can barely hear myself think, never mind speak, but I'm joined with Ginny, who's ready to give us an update on everything Club Championship when it comes to Call of Duty. All right, the truth is, I don't think Club Championship right now matters that much or is as exciting as what we got going on behind us, but it is Gentlemen's against G2, which just happens to be quite an important game for the Club Championships as well. Last week, G2 winning COD over on stage 2, which gave them 1,000 points. This week around, though, for Black Ops, they're not eligible for Club Championship points because they made too many roster changes. Gentlemen's, however, are the recent major winners when it comes to Black Ops. They were going up against 100 Thieves in the finals for Major 4 2 months ago. 100 Thieves also playing later today, going up against Optic, which are the title defenders, and Falcons got a game coming up as well later today. So as of now, we haven't approached the Club Championship top 8 finish territory just yet, but we're slowly getting there. We've got the vibes going on, so that's what matters. Listen, I'm sure what you said was great. I can barely hear myself, but we're back to you guys. We'll keep you updated on everything Club Championship. Play is in our DNA. Whenever we let it out, it becomes our superpower. Now imagine an entire city being built to supercharge it. Kadir City, powered by play. That stage is looking crazy, but make no mistake about it, we've also been loud here in the Allianz Vault. The fans are popping off because the matches only get better and better. And now we've got 6 in front of us. We need to find out what our groups A and B for tomorrow's competition is going to look like. We need to complete Group A. And 6 matches, been 4 keys, 4 players moving forward. Who's it going to be? Let's start talking about the future of what is about to take place on that stage. The first matchup that we're going to be going into, Hafiz versus Kasim Mir. Now this one is a great one for a number of different reasons. Steve, talk me through it. So I'm gonna tell you right now, the thing is that Hafiz, obviously a Claudio main, went through some major changes in that last update. So we were kind of questioning what character we were gonna see from Hafiz. Stayed true to the character, sticks to the Claudio, but also Kasim Mir coming in with some very unconditional picks, right? Some unconventional picks with Anna, the Safina, 2 characters we don't get to see as much, but he's repping them so hard. And of course, it's gonna be something big to look at. You want to give a prediction or do you want to stay silent for now? It's okay if you want to stay silent. We got a lot more to get through. I'm going to sit on the fence right here. I'm just going to sit on the fence. I will look. I like both of these guys. They're amazing players. It could go either way. EWC, I will never, ever try to check the temperature of this stage or the players. It's too scary, bro. It's too scary. Fair enough. Let's go to the next winner bracket matchup, Ryan. It's going to be Mayoil going against Arslan Ash. Yeah, definitely a tricky one to call right out the gate. I'm not sure. Of course, Arslan Ash looking like he's stepping into new strides on this level of platform. Mayoil as well has slightly less pressure. I think Arslan Ash, with everything expected, brings his own deep pressure into the situation too, right? So looking at the match for tomorrow, Arslan Ash, a W here today, but he got a more traditional game, right? With Jin, Nina. It's more of a classic, it's more of a traditional matchup. Tomorrow, Mayoil might have something else to say. He's had a chance to look at what Arslan Ash is bringing to the table this time around, and I'm not sure, but I might have to say I'm going to go neutral on this. Being the reporter, 2 times. Got to keep it neutral. 2 times. We got 2 of them. Both of you don't want to cast or curse it. I respect it. Hey, sometimes the caster curse is very powerful. It's too powerful. I've commentated a lot of matches, and I'm telling you right now, players look at me crazy when I don't want to be responsible for that. What the hell was that? I'm like, I'm sorry, bro. I just got to call it. With $1 million on the line, I don't blame you boys. I really don't. But let's at least talk about our decider matches, our elimination matches, right? They're tough to talk about. We hate seeing those keys get crushed, but that's just the way of the competition. Matsuba and Breadman. Oh, that's a scary one. We were talking about Breadman, and as like I said before, Matsuba in the back. I'm a big fan of Breadman. He represents a character. He's the only Leroy player that we have in the entire tournament. We don't see Leroy as much, and he is good. And he's got a character on backup if things don't go his way. I'm just saying, my man Breadman, he's here for the bread. He wants the bread. He wants the bread. A lot of bread indeed. $250,000 for first place. EWC is absolutely lit, and so much is about to go down on that very stage. This is only day number 2. 2 more days to go. But Manja, CBM, the last one. What are we thinking? Ooh, yeah. I mean, these two know each other very well. They've got history in and out of tournament. They know the styles. They know what they're going to need to do tomorrow. CBM's going to be vexed after today's loss. He knew he needed that, didn't get it. He's going to go up against his hometown buddy.
I think Manja also very calm and calculated player, though. He likes to change the tide of things under pressure. He's very good at that. I like him for a match that goes all the way. I like Manja to steal it. But if we get a one-sided clash, I think we'll see CBM go the distance. Well, there's the 4 matches. We're going to circle back, talk about match number 1 in just a little bit. But for all of you out there, EWC is great. Check out EWC Play. Thinks he can come in here and play my game. Let's go. He knows nothing. Let's go! Tyler 1, you're done. Raw energy. Blow the house down. EWC Play is great, but so is Level Up. And if you guys don't know, the Level Up Series Season 2 is out now. A lot of people are haunted by their past. I'm inspired by it. They're not just playing for themselves, they're really playing for their entire family. They have defeated their demons. They have crushed the curse. All right, 6 more matches to get through, and 1 is about to take the stage. We talked a little bit about it, but let's dive a bit deeper into it. I'm not talking predictions. I'm just talking about how we feel this is about to go down. Hafiz versus Casimir. Yeah, this is going to be a tough one on both sides, I feel like. These guys are definitely familiar with each other, one. But Hafiz, we talk about the young guns, that's one of the young guns, and he's very strong at that. I can't wait to see what goes down. Casimir has multiple characters. Hafiz locking in on the Claudio. It could go either way. I want to see who has the solid game plan going in. In the current meta, we've seen Claudio struggle in certain matchups. You know, he just doesn't bring as much to the table as needed. I'm not sure. Of course, Kasim has a multitude of characters to choose from that could provide him the edge that he needs going into this best of 5. And this is why I wanted to talk about the fact that Hafiz doesn't have, we didn't think he had a character, but he stayed tried and true to the Claudio. Now, the thing is, those changes are big, but he's such a neutral heavy character and player, and he locks down in a sense of like, he's gonna fundamentally outplay you, and when you least expect it, there's the hop kick. That's what got him the victory. The one hop kick he did that entire set, that's how he got the W. It's gonna be a great one for sure. 6 great matches. Chat, get loud, get active. Who do you think is gonna move forward? Who's gonna have their key crushed? So much riding on the line, and phase 2 is happening tomorrow, but to make it, you gotta beat the opponent who's directly in front of you. It's time to finish our Group A, finish our phase 1. Let's head to the stage. Ladies and gentlemen, we have 4 more players fighting for their spot in the top 16 of EWC 26. All of our matches from here on out are all decider matches, which means everything is on the line. Everything's on the line. The first 2 matches will be to qualify tomorrow, you know, with a breeze. Winner side, we don't lose, you don't go to this bracket, we just go clean. And then the next 4 matches after that are all key crusher match, all matches with the tournament life on the line. And as you said, right, 4 players will make it. We already have 12 players set for 2 more top 16, and we need 4 more. And this one right here, of course, so far we had pretty much all 3 twos except for Arslan Ash with a 3-1 victory, coming here trying to make a statement, letting it be known that he's bringing Evo Arslan all the way here to France for EWC as well. But Casimir and Hafiz Tanvir both with 3-2 victories, showing that they do have that clutch gene. But right here is where it matters even more. They are on the winner's side, so whoever loses will have 1 more chance. But you would much rather get it done right now and step your foot in that top 16. Absolutely. After this, there's going to be Arslan Ash versus Manja as well for a qualifier spot. But right now, it is time to launch that match, the first qualifying match of this group. It is Hafiz Tanvir against Casimir. It is time to launch the first decider match of this group. It is time to go for our commentators. Please, everyone in the room, make some noise! Big love to Damascus and Hollywood Rob TV there. Man, the games have been incredible so far, but we're going into Hafiz Tanvir versus Casimir in the next round to move on to phase 2. My name is Rukang, and I'm joined by the legendary one and only Markman. How's it going? It's going well. We have the honor of bringing you the play-by-play, the heart
the cries, the passion of these next few games. Of course, as mentioned, all of these are decider matches. They're going to decide something, good or bad, but we're going to go into this matchup. This is still the upper bracket winner side. Hafiz Tanvir, Casimir, who do you like? Oh, it's a tough one. You know, both of these players very, very strong. Casimir, I've spent a bit of time with, and he's such a lovely guy, but he plays some mean Tekken. But both of these players representing Pakistan as well, they've performed so well. Like, something to highlight this whole, like, the past 2 days as well. So many players moving forward as well. We're going to get even more players from Pakistan moving into phase 2. Yep. All right, battle of two characters that probably aren't as well represented nowadays in the Tekken meta, but we get Claudio going up against Zafina. Battling it out. Nice launch here early on from Casimir. Pushing towards the wall here. Yeah, it's going to get a lot of damage there. What's the pressure like? I really love this when they push towards the wall. You know, they jostle for space as well. They understand the importance of that wall positioning. Very nice wall splat. Nice wall splat combo. Goes for the big damage early on. Nice confirmation off the down 4-3. Oh, missed the second hit because of the aerial state. Yeah, tried to interrupt there. No more heat on the side of Hafiz Tanvir. Casimir still having some of that bar. Will he be able to use it? Sidestep? Is he going to go for it? No. Tries to catch him stepping. Doesn't do anything with it, though. 10 seconds remaining. Casimir's going to need to do something. Gets a guaranteed damage afterwards. 5 seconds. This is so close already. Who's in front, Markman? You might have stolen it right there. Oh, but it was enough. There was still time left. And Hafiz Tanvir taking that first round. The thing is, Markman, this has been the story of the last 2 days. So many like small decisions right at the end of rounds when there's 1 second remaining. That's the difference. Yeah, you know, a lot of the games that we've been seeing, especially in this group and the prior group, we've been seeing a lot of games go to the final round. I don't want to see that. I want to see blood. Give me 3 O's. Right, again, catch him on the floor there. Casimir refusing to get up. The minute he gets up, he gets hit by a heat smash. Hafiz Tanvir playing so strong right now. Yeah, you got to remember, these guys probably have a lot of familiarity with each other in this particular matchup as well. Both character specialists. Okay. Try to catch him this time, getting a counter hit. Follow-up guaranteed afterwards, pushing towards the wall. Yeah, I want to see what the wall pressure's like here. Trying to get some plus frames. Beautiful sidestep, and he's going to get full damage from this. Yep. Then downstairs as well. He should be able to... Oh, no, he missed the follow-up. This is unfortunate. Doesn't matter. He was able to clean it up, and that could have gone wrong. Could have gone really wrong. Very wrong. Okay, chopping away here. I like the options here from Hafiz Tanvir. Trying to keep him grounded, not letting him use any of that stance stuff. I love the way that Kasim's playing. Just small moves, jab, down forward ones, and trying to move around Claudio. All right, back one. Activation from Casimir. Continue with that pressure. You can see all that chip damage as well. He's going to try and get it back now. Nice small punish. Goes for the low. Beautiful interrupt. Got it on counter hit too. All 3 pieces guaranteed. Oh, did he sidestep? So good. Good down forward too. And he's able to tie things up here just like that. Final round, game number 1. Okay, follow up here. Yeah, it seems like Casimir is the one pressing all the buttons, the one being aggressive. Hafiz just being really defensive, trying to find the right time to attack. Tries to go for a hop kick that won him the final round in the game before, but it is not looking good for Hafiz. Casimir doing so much damage, and look at that, just delays it and manages to take the first game. Yeah, able to close it out. And you know, both of these guys have had other character options. Again, we were talking about it. Will they have to do it? Again, knowing that these guys are probably very familiar with each other, sometimes it's the element of just surprise. Like, maybe I could throw them off enough to steal one game, a few rounds, a match. Yeah, definitely, for sure. And the funny thing is that they haven't actually faced each other this year. They faced each other last year at Clash of the Olympians, where Casimir, we were there. Yeah, where Casimir won. So it was the same Claudio into the Zafina. So I'm not sure if there's going to be a character switch, but obviously Hafiz believes in his character. Well, that's the beauty of the format too. It's not a 2 out of 3. It's 3 out of 5. So you have a little bit of, you have 2 chances before you have to make that hard decision with the character lock. All right, here we go, 4-4-3, the heel drop follow-up here. Yeah, there's a bit more room for error. Nice back one. Ooh, caught a move in back one pursuit. Let's see what he does here. Then advancing knee strike.
Caught him there with the counter on the low. Again, just being very defensive. Casimir, the one pressing those buttons. Oh, and he catches him moving, man. That's all he was looking for. Just one moment there, and you can see. I think slowly but surely Casimir is starting to feel that comfort, especially when it comes to spacing here, utilizing a lot of the tools to kind of prevent Hafiz from even having a chance to go in. Exactly. We know how dangerous he is as well. Casimir with a really strong performance at EVO, and now performing really well right now, controlling the game really well. I like that. Gets a knockdown here. Second hit, not able to duck it. Oh, spin to win. Yeah, Beyblade. Let her rip. All the way to the wall. It's going to hurt big time. One more mix-up can do it. Sidestep into the mid-action. All right. Here we go. On the scoreboard here. No duck on that hit, but again, it's tricky. He has the mix-up. It's funny, they both just whiffed both of their moves there. They're just playing at that range. Yeah. But they're throwing out very safe-ish moves. Oh, goes for the third hit. Nice jab interrupt. Yep, knows he has enough frames in between here to get a poke. Not going to let her get away with it. Again, with the back one, these guys just trying to restrict each other from moving sideways. Easier said than done, though, especially with Zafina's movement. Oh, nice attack there. A follow-up gets the pickup. Should be able to push towards the wall, no problem. Activation station. Yeah, the level of play that they're showing here, I think we've seen it the last 2 days, is so high from both of the players. They're playing a different type of Tekken, and there you go, Casimir on the front foot again. One more round, then he goes to 2-0. Beat smashing her. Okay. Seems like Hafiz Tanvir doesn't really have an answer to the pressure and the mix-up that Casimir is doing. Yeah, both of them just, again, just throwing out very safe-ish moves. No one taking any huge risk. Oh, the hop kick. I was waiting for that to come out. He's been using it at the right times before. And now the hop kick out of nowhere. Really good decision. Going to get all that damage just from one hop kick. Yeah. But Casimir now having rage, but also having his heat available still. Oh, he doesn't block the low. You got to be ready for that string. Here we go. Final round here. Very, very important round because it's either going to go and tie things up or Casimir is going to have a big lead. Close. Again, whiffs the back one, but this time Casimir ready to punish. Hafiz has done that a couple of times and gone unpunished for it. Casimir punishing correctly, has good wall positioning as well. This is looking really bad for Hafiz. Big damage. Has everything on his side, goes for the big low and takes that huge risk right at the end. 2-0 to Casimir. He's such an impressive player, Markman. Yeah, and he's just always so calm and collected. I mean, as you mentioned, we've seen him throughout last year, some of this year as well. His performances have always been top-notch. But again, with this stage and with so much on the line, he is so close to phase 2. He has to take this game. And again, being able to do it on the upper bracket, not have to go to those shark-infested waters. Yeah. Hey, it's going to the Phoenix Gate. It looks like these guys are going to stick to their characters. Hafiz Tanvir locked in, has to win 3 straight with Claudio just to have a chance to make it into phase 2. Yeah, I'm super curious to see, to understand why Hafiz is sticking with Claudio, even though it clearly isn't working at all against Casimir. Also, Hafiz has a range of characters he plays at high level. I mean, it could be a different layer. Again, these guys might just be so used to each other that he believes that Claudio is his only viable choice here. Could have gone either way. Remember, it did go to the last round both times. Let's see what happens here. Okay. Good challenge there. The stagger on the pokes here. Shit has the wall. Goes straight for Rage Art. Right into the Rage Art. Was that the right decision? Is that going to be it? It looks like it might. It should be. Very nice. Archers are serious. Yeah. But it's going to take a lot more to exercise that demon. Oh my God, guaranteed nice. follow-up. Oh my God, what was he doing? He was just fuzzy ducking like so many times in the final one there. He gets the low parry. That was sick. Too, yeah, able to capitalize, get the momentum back here, but again, still in the middle of the stage. Yeah, just being offensive again. Goes for the Beyblade. Both of them are swinging right now. Yeah, they're going for that big hit. Big read, the follow-up here again with the pressure. Look at that chip damage. Look how much gray health. That took so much, right? Yeah. Might have another chance here. Oh, goes for the back 1+2 and then side steps. Very good stuff.
Yeah, should be able to close it out here. There it is, enough damage, and just like that, 2 rounds straight for Hafiz. He is needing this game. Yeah, out of nowhere, finding a way back. All right, good poke here. Power crush, Punish. yeah, and that's what I'm not seeing a lot of as well, the use of power crush. When someone's being really aggressive, you need to be willing to throw out the power crush. Yeah. Claudio's a little bit harder to use, of course, here as he advances. Yep. Oh, small whiff, gets some jab punish. Okay, look at the life lead. Casimir is going to have to pick his shots here. Be very careful as the approach. Oh, this is so dangerous. Jabs, needs to be careful here. Oh, is he going to be able to hit that? No, he's not. And Hafiz Tanvir, 3 rounds straight against Kasim. I mean, that's a good way to bounce back, to make a Definitely. statement. 3 rounds in a row. And this is the difference. You said it before, Markman. Best of 5. It allows you one more game to adapt. To adjust, and to see what your opponents do. If this was another event, right, first of 2, then Casimir would have been through already 2-0. But now Hafiz Tanvir has the chance to bring it back. Yeah, we're in the Coliseum, a bigger stage. Walls a bit further out, but very, very possible to reach those within grasp here. All right, again, dashing forward. I love the way that they're both using single jab as well, just to control the space. Jabs and down forward ones. Yeah. They don't want anyone to be near each other. Definitely all about control here. Who's able to come out on top here? Again, there is so much on the line here in this upper bracket match. This is a qualifier to get out of this group stage into phase 2. That's what they all want. And the thing is, it means so much for these players to make it through into that phase 2. That was so sick as well. That's going to be huge damage. He's going to push for the wall here. Yeah, and he's already called that out twice in their particular matchup. The sidestep on the heat burst, able to capitalize, get a launch, get some big damage, and now has him by the wall, and look at that, another round. And I love that when you're super brave at the end of rounds to go for lows like that, there is a lot of risk involved, but Casimir is so confident in his reads. You got to believe in your own juice, your own sauce. Okay, no duck on the second hit there. Still has an opportunity, but a great punish there from Hafiz. They're going for that low, using similar flow charts, just that Hafiz can't really do anything about it. Beautiful. Ooh, and the push into the running 2, tying it up on rounds here again. These guys are just going back and forth. Nice, goes for the low. The option here gets the heat engager. Yeah, the sidestep there was sick. Right, starting to open him up with a few lows. I feel like Casimir smells blood. He's going to want to end it now. Doesn't want it to go to a final game situation. Whiffs the back one again. Doesn't do anything with it. And you can see Casimir starting to overextend a lot more. And the hop kick comes out of nowhere. I could feel that about 10 seconds ago, Markman. He was pressing. He was going for different lows. Prepped and ready for and it, then right? ready for that hop kick. You could feel it. And again, that's not a hop kick we see too often either. Oh. All right, here we go. Has a good chance. Right now, Casimir, again, you're talking about smelling blood, right? When you're this good at the game, your nose is attuned. Yeah. Like I have the opportunity to kill my opponent. I'm going for it. Yeah, he wants to move forward here. Casimir is so close. He's been playing so well. Goes for the heat dash, the plus frames, Markman. And the use of the jab there, able to close it out. He's looking to get it right here. One more, he can do it. Nice block. Oh, and he's done so. Casimir moves forward here, qualifying for phase 2. Congratulations to him. I know he's going to be really happy for that. And Hafiz just whispered something to him. I don't know what he said. Maybe great games, but wow, what a play. You know, first of 2, first of 3, it doesn't matter. Casimir comes up on top. And again, big shout outs to Pakistan because their players have been putting on an insane show as well. And another player for Pakistan moves forward. Yep, and we'll be able to see him, of course, guaranteed playing tomorrow in phase 2 in our top 16. You guys can see some of the action that just transpired on the screen. Again, these 2 great players from Pakistan. You can see the Zafina play, able to come out on top, able to beat the gap there with that while standing for closing it out. Hafiz Tanvir now having to go to the lower bracket where he's going to have to battle it out for his chance to get out. But it's, again, so much more on the line. Yeah, there's so much more at play. Oh my God, it's going to be crazy. Don't go anywhere, guys. We'll just be going for a quick break. See you very shortly.
Welcome back, EWC. Day 2 action, of course, in the group stages. Trying to figure out who will be qualifying from this upper bracket into phase 2, and it comes down to these 2 star players. We have Arslan Ash. We have Mangja. Pakistan versus Korea, a tale as old as time when it comes to the Tekken scene. You know, we've been seeing this now for quite some time, since the 3rd season of Tekken 7. I can't Who's gonna take it, man? Yeah, it's a difficult one to call. Arslan Ash, man, this is the one that has eluded him. The Esports World Cup, 8-time Evo champion. He's won the Tekken World Tour as well, and he did say backstage when I was speaking to him that he really wants to give his heart to this tournament here, and he's going to try his best to win it. And if he does win it, that was the question I asked him. I was like, what would you do if you won it? And he's like, I don't know what I'd do, man. Like, maybe retire, maybe? Like, as in... No, he can't retire. I mean, he still has more Evos to win, right? He's trying to go after that record. Yeah, the 10, right? And the record holder is actually sitting next to us right over here. Mr. Justin Wong, also streaming as well. But again, you guys, in for a treat. Winner of this will make it out into phase 2. As mentioned, Arslan Ash, a much different Arslan Ash from when he first stepped onto the Tekken scene. You know, he played in a bunch of the more regional events early on. He made it out to an event, I believe it was in Taiwan or Thailand. And then he also made it out to Evo Japan, where he ended up winning that, kind of putting him on the map, right? But from that point on, who knew that he would eventually not only win all those world titles, he would also eventually move to Japan, and that's where he's kind of studying and playing now. It's kind of crazy. Exactly. It's great as well, because he's definitely like upped his game, I think, even more as well. Playing in Pakistan, obviously he understands the gameplay there, but now he understands a different style of play as well, and that's only going to benefit him even more. So I wonder, I think everyone at home, everyone around the world is wondering how far can Arslan Ash go this time round at the Esports World Cup 2026. I got to call this out because a lot of people were saying it online. There was a lot of talk. Oh, yeah. When he moved to Japan, a lot of people were saying, like, there's no way he's going to win again. He's going to get soft. He's playing with players that are not as good as his local scene. That's what people were saying, and I do not agree with that at all. He still won Evo. Exactly. I don't agree with that whatsoever as well. I just feel like it benefits him even more understanding a different style of play. Oh, yeah. So when he goes into tournament, he understands the way that players from Pakistan play, but now how the Japanese kind of players play as well. Yeah. Oh, they're switching sides. We got Arslan rocking that championship Kwanba stick, the gold one that they give out to champions. And then on the other side, we got the Victrix Pro, another gold arcade stick. It's beautiful to see as well, those gold arcade sticks, right? All right, looks like players are locking in. What do you think we'll see? It's going to be Nina versus Law, more than likely, yeah? Yeah, that would be... probably go for their main characters at first. Again, they have some time to play around. It's first to 3, and there is some room for error. I honestly think Mangja is going to be super prepared for the Nina matchup. So Arslan Ash has to be thinking here, what do I have in terms of my back pocket? What can I surprise him with? He has a Kunimitsu, he has a Miyari Zo. Yes, he does. He has a lot of characters, actually. He's been playing so many different characters, learning these characters for particular matchups. He even has an Elisa. I think you were right here, Markman, though, on the pick. It looks like he's locked in with the Kunimitsu. Ni Daime Kunimitsu, the second Kunimitsu coming up to the plate to battle against Mangja. And maybe it is that familiarity with Nina versus Law that kind of prevents him, because Law is a very, very strong character against Nina. Anyways, we're going to go into the action. Descent into subconsciousness. Yeah, it's going to be interesting to see how Arslan Ash actually plays using Kunimitsu. In Tekken 7, able to just utilize maybe 4 moves and then just backdash the whole time, wait for a mistake. Now you have to be more offensive, and he started already. We never saw this kind of style from Arslan Ash before. He's just pressing all the buttons straight away here. Yeah, and this is going to be a huge chest counter hit confirmed. Gets the splat here, big damage at the wall. Into the full string, one more mix-up could do it. Goes for the down back 3 series, looking to close it out. One more hit could do it. And the down jab there, so dominant straight away. What a way to start the game, Arslan Ash. He's preventing Mangja early on, especially that opening round, from just playing. If you can't win, if you can't play. Yeah, I wonder if Mangja was ready for this type of play. The buttons being pressed so much from Arslan Ash.
I mean, it's a good check. It's always a good check to see if your opponent is pressing. But that's what happens if you press too many buttons. Manja on. Whoa! What the wall messed up the combo. Yo, ninja killer stuff. Like, do you know when he dropped the combo? That's tying up on the rounds here. Let's see. Manja with the adjustment here. Poison arrow. It looks like awesome combo. Yeah. Oh, the confirmed counter hit. Look at the damage. 93 damage. Jeez. He's just going in here. He's going to get the Rage Art. Has a little bit of life left here. He's going to be able to heal quite a bit of it. Entire arsenal of treasures and weapons. It's a lot of damage. Uses set 1+2. Full crouch low. Activates heat. He's got a lot of resources to work with here. Ends up using the heat smash. He's working that comeback. He might get it. Put the brakes on the low. The follow-up here into the low. He gets the block. Oh my god. 20 seconds remaining. Goes for the low and the slow-mo there. Arslan Ash. I can't believe they gave him Kunimitsu again. I can't believe... You guys forgot what he did in Tekken 7? They gave it to him again? Bang just trying to fight back. Yeah, he's using that set to skip neutral, and it's working. Set using it to close the gap. Able to get the big combo here. What's the mix though? Goes for the back. 2, the follow-up here. Resets the situation. Yeah, gets it by the final hit there. Everything Arslan Ash right now. He still has heat as well. Goes for the low. What do you do, Manja? You need to find a way out. Down forward 1 to take it, and Arslan Ash playing extremely dominant there. And you called it, Markman. He has a variety of different characters he can use, and he goes for the Kunimitsu. And it worked. It worked. I mean, 3-0 rounds, right? 3-0 rounds. A very dominant performance here. Forcing every turn back. Anytime that the momentum kind of shifted in favor of Manja, it was heat smash, set 2, big attack, take my turn back, let me push you at the wall, let me make you guess for game. Oh man, they're going right back into the rematch, and they ended up getting the same stage. Good cancel there, goes into the low option. Sidestep low attack, are you serious? I love that move. Sidestep 4. It reminds me of Roger Jr.'s old sidestep 4. That's what a move, man. Follow up here again. Just very similar to before, Markman. Just loads of pressure. Okay, here we go, Manja. Gets the heat smash to follow up here. One more mix-up, can do it. No, he did not press. He did! He's a madman, and Arslan Ash able to sniff it out here, gets the big counter hit Rage Art, and he's gonna even it up on life. One more mix-up can do it. He has the lead, actually. Oh, and just closes neutral again. That set. So yeah, set 1+2, able to land there. So good. Let's see what he does. Again, Arslan Ash is starting to run away with it now with that Kunimitsu play. Side step 2. Gets the back turn grab. Go throw break. Ooh, he tried to catch him. He was stepping the right direction too. Look at the movement as well from both the players. Gets the wall splat. Now, whenever I see this combo now, I get scared. Don't drop it. Here we go. Follow up. What's the mix here? He does have access to this heat smash still. Able to land it that time. What's the mix though? Goes for the slide, yeah. Feel like that's one of the first slides we've seen. Maybe he needs to do that. Goes for a safe-ish low. It's, you know, -13, not too punishable, but it's enough for Arslan Ash to punish with. Yeah, able to react there. Gets the wall standing 1-1. The follow-up here. DSS forward 1, heat engage. Here comes Manja. Manja having a huge life lead here, but Arslan pushing back the other way now. He could really change things up. Gets another punish, the follow-up. Yeah, these two guys are both playing like at range 0 now, pressing those buttons. Yeah, they're pressing. Again, just jabs, down forward 1. Goes for the full crouch low. You have to respect it. Goes for the power crush. No one has heat here. Oh my god. Crazy. Down forward 1 and the low. Arslan Ash is just pressing all those buttons. And he manages to take another game there. Absolutely incredible stuff, man. This is mental. Arslan Ash 1 away now from making it through into phase 2.
Man, it's looking rough for Mangja. Arsene Ash came to play. He's like, you know what? I made it to phase 2 last year. I couldn't make it out into our top 8, but this time, I'm trying to make things work. And it's working so far. Everything he's doing has just been, he's just playing so perfectly with Kunimitsu. The perfect balance of the jab down forward ones, playing a very patient game, but at the same time, he can really turn it up. He switched to Lydia? It might be over already. My God. I don't want to be that kind of guy, a negative Nancy or anything, but it might be over. You want to... Mangja's probably saying, you want to play like that? Yo, it's time for you to experience the Lydia now. That's the problem, though. I feel like Arsene Ash knows this matchup. Oh, my goodness. It's going to be crazy. Let's see how he's able to deal with it. Second hit, able to land, gets the knockdown. Yeah, go into heat, Mangja. Go into heat, and now it's a one-player game. Defend for your life. Unless you get thrown. Unless you get thrown. Oh, no. There you go. Make use of it. Here you go. Yes. Heaven and Earth. Oh, goes for the high. Good block on the low. I feel like that's one of the first times he's blocked it. Arsene Ash, one more time. One more hit here. Both of them trying to fuzzy deck, and Arsene Ash, 2 more rounds and he moves forward. We know the damage that Lydia can do. We know how strong this character is. He just needs to be able to utilize that heat pressure. You have to get the hits, though. That's the thing. If Arsene Ash is playing so well, sidestep 3-2, I love that, though. That was big. Has a big chance here. He better optimize the wall. Here we go. He's flat. Big damage. Bam. Huge damage. He has the life lead here. Yeah, that's it. Guess. Guess again. No more heat, though. Gets the punish while standing 2, able to close it out. Mangja finally getting around here. Yeah, I feel like Lydia is would definitely be a good option here as well. Able to mix Arsene Ash and do like his own offense. Lord can't do it as much. It's all about output. Firepower. This character definitely has it, but again, has to be able to land these hits. Okay. And trying to catch and pressing buttons. Beautiful block on the low and a really nice punish. Oh, look at this combo here. He has the wall positioning as well. Gets the splat. One more wall. Oh, he's going to get the wall splat as well. You know, the damage. Has a lot of heat to work with. Has free stack as well. Red tape. Chop. Arsene Ash with the evasive maneuvers. Follow up here. What a step! Oh my God, that was sick. And he dashes forward as well. And the low, Arsene Ash 1 round away from moving forward here against Mangja. He's tried the lure, it didn't work. Now trying the Lydia. Oh, he went for the 3. Did not finish it there, of course. Only the high option. Oh, and goes for the throw again. That's 2 times he's done that. Brother, he has been scouting it out. Good block again. Have to block those. Oh, here we go. Heaven and Earth. Heat smash. Deal with it. Yo, these guys are pressing buttons. I don't think the Lydia's going to work here. Arsene Ash is so close to the end. Yeah, looking to close it out here. He's not going to get a kill, but he's going to have a mix-up. Guess for game. Arsene Ash, you're so close. He's going to get guaranteed damage, though. Mangja trying to fight back. He's on his final health. Could be anybody's game here, especially with Rage in play. Oh, the punish. One more hit can do it. He goes for the low, able to close it out, and Arsene Ash
Welcome back, everyone. EWC action, Tekken 8 here. Day 2, we just witnessed Arslan Ash full of confidence, making it through into phase 2. But now we are going into an elimination match, Markman. Yeah, it's going to be fun. Markman and Rukang, bring it to you guys here as we go in deeper. Again, more and more on the line for these players. Of course, elimination. Somebody is going to get their key crush, their hopes crushed. And of course, one player will move on. But again, it's, God, dude, there's so much on the line here for these players. And it sucks because, you know, a lot of these players we will not see in phase 2. It's just unfortunate. There's so many talented players that are here. We have Matsuba, who we haven't seen in such a long time on the international circuit. Same thing with Breadman. It's been quite a bit. So it's going to be sad we're going to have to say goodbye to one of these players. But either way, we were talking in that short break here about just how much of a monster Arslan Ash is. When he picked Kunimitsu, I was like, oh my God. I never really got to see him play the character as much because, you know, the matches I did see of him playing, especially at EVO, he won and closed it out with that Nina. But that Kunimitsu, man, did so much work. Insane, right? Absolutely insane. And the fact that he's playing both of those characters at an extremely high level, it just shows how good he is. Yeah, oh, this is a lore match. Feng Wei versus Leroy. Let's go. Elimination match. Someone will be going home. 0-2, Markman. Breadman versus Matsuba. Matsuba did so well when he was fighting against Hafiz Tanvir. Went to the final sequence there, of course. Big-ass hop kick from Hafiz Tanvir. Was able to close it out here. That has to be ringing in Matsuba's mind as he kind of approaches with the lows in the particular matchup here. Has to be very, very careful how he approaches. Does have a slight life lead here, but having to deal with the cane. Yeah, uses the cane so early as well. Was it worth it, though? He needs to win the round here. Otherwise, he's not going to be able to use the cane again. There you go. Good stuff. It's all about that bread. Yeah, he used it. You can't use it again now, but it was worth it. Yeah, once per game. Let's see what he does here, how he might be able to adjust. Nice down 2 here. Gets caught with the forward 4. Here comes Feng Wei pushing towards the wall here. This is going to be a big hurt. I wonder how Matsuba's feeling at the moment, though, because he was so close to winning before against Hafiz Tanvir. It was just that one hop kick decision. If he blocked, he would have won. Yeah. So I wonder what his mental state is like at the moment. I mean, you got to think about it. Those kinds of things, you can't let it bother you because right now, you're not even fighting him. You're not even going to fight him again until you make it into the top 8. Guaranteed damage afterwards. Okay, the follow-up here. The pressure there with the 4-4-3. Here we go. Nice. Evasive punch gets the follow-up. Good presence of mind there to get the wall shoulder. All right, here, tying it up on rounds now. Matsuba able to even things up here. Tantrum punch. Again, his use of the down back 3 is so good. He's putting pressure on. Small moves, both of them just jabbing. Beautiful sidestep, gets everything guaranteed. And oh my God, the counter hit. Yeah, big counter hit on the sawed-off shotgun there. Gets the follow-up here now. Coast from Toast. Oh my God, that misses too? So yours one misses, and now Leroy's one misses too? Anytime people start doing Gatling punches at the wall, I'm gonna start feeling weird, man. My stomach is in knots right now. Oh man, that's unfortunate. But either way, he's still able to close it out here. 2 rounds to 1. The floor is lava. Let's see what Matsuba can do to bring it back here. Oh, that's one way. Great option. And that's a huge launcher in terms of opening damage here. One of the best situations you can get. Oh, he's pushing back the other way. Oh my God, he's pushing at the wall. Goes for the low. No, throw break. Matsuba holding on here. Plus frames down forward 1. Final round. The follow-up here. Reverse Kenpo gets the hit. Heat engage. Big wall standing to punish. And was huge risk as well. He's going to lose so much health because of that. I mean, sometimes you got to risk it for the biscuit, but you got to be able to hit the wall too. No wall, no ball. Just a small punish there. Down jabs. They're playing at that range 0. Oh, the nip up again. Able to get the hit and the momentum back. Oh, goes for the orbital. Was predicting the low. Breadman trying to get out. Counter hit. Oh, he went for the down 3 repeated. Oh, parry. Again with the low. Oh my God, there's no way. That's unfortunate there. He went for the sequence.
Not able to do it on hit, but of course, Matsuba having that presence of mind, going from crouch 3, able to close it out there. So good stuff to him, but man, that was wild. Intense game. You can see it in their faces as well, Markman. So intense. Intensity is the name of the game here. Matsuba looking like, you know, it was a bit of a scramble, lots of scramble situations towards the end there, but he was able to make things work. It's all about picking your pokes, and he is a poke master. Okay, reverse Kempo. This time, you know, he barely uses that reverse Kempo, so he was trying to scout something out there. Now starting to use it. Sometimes just throwing it out there leaves your opponent having that kind of awareness, like, oh, I got to be careful how I approach. So it forces you to play that compact game. And maybe that's what Matsuba wants. Like, don't even try it, bud. Oh, very nice. Uses the cane pretty early on as well. Doesn't do anything with it. Gonna get the guaranteed shoulder in the back there. Yep, forward 3 guaranteed afterwards as well from the heat dash cancel. And he's putting the pressure on Breadman, just hold him back. Oh, shoulder. Looking to close it out with the down 2 this time. I like that. Had he done the 3+4 earlier, maybe he would have beat it out. But still, the timing for Matsuba is everything. Yeah, what's really impressive as well is that Matsuba's not afraid to go for those lows. He's been going for the down 2s, down back 3s, everything. Yeah. He's just not scared. Yeah, I mean, primarily, he has been using the down back 3s. He rarely uses the down 2s. So it's interesting to see that, but not only the down 2s, in conjunction with using the Kempo step as well, he's been utilizing a lot of the stance stuff. Okay, while standing 1-3, this time getting the heat engager. Oh, he's waiting for the second hit. That was so smart from Matsuba just to do the first hit. Good block there. Trying to fight out of it. Oh, parries the shoulder. Reverse Kempo, forward 4 on block there from the back turn low sweep. And that's going to get the big wall standing to punish, end the round there for Breadman. Yeah, I think that's something for Matsuba to think about now. There's 2 occasions where he's gone for the back turn into low, and he's got it blocked against Breadman. I wonder if he'll do it a third time here. I think it's just because of the stubby range from the mid options and the slower options from back turn as well. So maybe it's one of those things where you just try to scout it out, gather more information, because it's still fairly early on here in this matchup between the two. Yeah, they're both still gathering information. Big low from Breadman. Yep, stand slow. Follow up here. Sidestep 1+2, big damage coming up here from Matsuba's shoulder. My God, I was about to say it's going to be really difficult to make a comeback here, and that time he ducks from back turn. Was it the wrong time to duck? He's nearly made an incredible comeback here. The down forward 1 whiffs and makes a mental comeback out of nowhere. Man, Matsuba really started putting it together towards the end of that round, doing so much damage just from that early evasion on the sidestep 1+2. He's looking to get this time finishing the hit and gets the extra damage there from the shoulder. Oh, again, a side situation. He's been getting a lot of those 1-2s in the shoulders from the side. Playing so well, Markman. Breadman needs to do something to stop this momentum from Matsuba. He's really feeling himself. You can see it in his gameplay. Yeah, and the thing is, like, the movement is not helping Breadman at all. In events past, what we've seen from Breadman is he try to create openings for himself, start finding ways to start poking and flowing, but he's not able to do that against Matsuba. Matsuba is in full control, both offensively and defensively. Bro, look at that damage. That is crazy. Matsuba playing out of his mind. 2 games now. 2 games for Matsuba. Looking like he's on cruise control to potentially go 3-0. Yeah. I know I was kind of cheeky earlier on with saying I want to see blood, I want to see 3 zeros, but I didn't mean it like that. Yeah. I want to see good games. All the 3 zeros coming out now. But hey, if we get out earlier, I get to watch the VODs earlier too. Let me go. Yeah, Matsuba, really impressive. And I spoke about it earlier, Markman, that I thought that maybe the mental aspect might play a part here as well, losing to Hafiz Tanvir. Oh, but yeah. he just kind of eliminated all of that, and it seems like he's not even thinking about it. He's just super locked in, and this is starting the same way as before. Matsuba, and using the cane again so early. I don't know if I agree with it, because this doesn't confirm the round, right? It definitely doesn't, but it, you know, obviously gives him a chance to get the momentum, and that's something that Breadman has been lacking in the particular matchup. So sometimes just making sure it's your turn to play offense is going to be enough. But man, he just got mixed up, sidestep 4-point blank by the wall here, and Matsuba looking to close things out. He could have had a wall standing 2 there. He could have ended it. He could have done something a lot bigger there. Good throw break, 20 seconds remaining, gets the counter hit low. More plus frames down forward. Whoa! He could have capitalized. He didn't get the hit. The follow-up, the backswing blow.
Gets bopped on his head for it, though. Man, slow motion is great. It's incredible, right? It's so good. Bro, we're going to lose our voices before the end of the day. Yeah. That's why I'm trying to pace myself right now. Right, I did 6 already before. Now this is another 6, man. Today's our last day, Rukeng. No more pacing. Let's go crazy. I'm joking. We need our energy. We do. Okay. Gets the wall splat potential. No, doesn't get it. Oh, man. He went for that He's burst there. What's he going to do here? Big down back through once again. Very nice. All the way to the wall. Good delivery there with the 4-4-3. And the follow-up there, looking to close it out. And just like that 2-round straight here, like I said, I want 3 O's. Make it happen. Breadman doing really well now. Seems to have adapted a little bit. I feel like Breadman is actually enjoying the scrambly situations because there's been a lot of scrambly situations toward the end, and Breadman has taken advantage of that. And again, look now, it's starting to get a bit strange, and Breadman with a beautiful low parry. Again, it's the long play. This is a race to 3. Let's see what they do. Goes for the grab. Follow up here. Sidestepping towards the wall just to kind of prevent and restrict. God, that was so sick. What a whiff punish. Okay. Nice evasive punch here. Looking to close it out. He's going for the parry as well. Has, again, sidestep 4. Again. Caught him by the wall. Staying on the ground. What's the mix-up like? Back against the wall. Hits him with the orbital, and with the right combo, Breadman is going to take this. Staying alive here, 2-1. All right, and that was still very clean there from Breadman. You know, him being able to kind of shift momentum towards his favor, get offense started, get the pressure started as well, key low parries. It all started working out, but again, all Matsuba has to do is change up his timing, because his timing is insane offensively. But if he waits, if he kind of picks his shots, forces his opponent to react, I think that's where he's going to start winning. It's again when he's kind of in control and forces his opponent to react to him. Tekken 8 is not a fun game when you just have to try to block everything. It's kind of scary. That's what I like to do. I like to just press buttons, man, and make the opponent just block. Yeah. Constantly, I mean, you're not putting me in the blender. I'm putting you in the blender. Oh, here we go. Nice sawed-off shotgun. Big counter hit again. Should be able to get the wall here. Let's see the break. Yeah, Breadman's trying to make a comeback. He's already got 1. Can he get another to make it 2-2? Nice grounded hits there. Has another chance. Big down back 3. Doesn't finish the string, and Breadman slowly but surely, he's playing a lot better here. Matsuba not pressing as many buttons as before. Oh, big stomp to follow up here. Kept him honest there with the Hermit 4. See what he does here as he makes the approach there. Forward 2. Both of them just spacing out. Yeah, you can see that they're both just dashing in, trying to find each other's timing now. Matsuba not as confident as he was before. Resplat again. My gosh, my goodness, the damage. Shoulder, pressure. Beautiful block, man, Beautiful so punish. good. He did a slight sidestep as well, but unfortunately it's going to mess up the combo potential here. Oh, and uses the cane this time. You know what? I completely forgot about the cane there. See? You got to be able to be ready. The soul still burns. He pulls out the weapons. I thought he used it round 1 again. He sealed it away for too long. Oh, this comeback is nuts, though, at the moment. Like, Matsuba is just frozen. He doesn't know what he's doing right now. Trying to catch him with the homing move. Beautiful sidestep, big launcher. This is huge because Breadman is riding high on this momentum. He got Matsuba in the toaster right now. He's going to get even more damage here. He still has access to heat as well. It's not looking good. Low. Oh my gosh. Yo. Insane. Yo, Breadman. He wants that bread. He wants more bread. Let me get further in the tournament. The thing is, Matsuba had so much control over the game. It was all going his way, all the decisions. Breadman just wasn't getting started at all. And then out of nowhere, he just makes a comeback, makes the adjustments as well. And I feel like just the movement and the way that he's been baiting out moves, sidestepping and then launching. And Matsuba not going for any back turn mixes like we saw before. Even though he was going for back turn into like big lows, it was getting blocked or whatever, it would still mix your opponent up, right? But now he's just like completely gone off that.
doesn't want to interact with Breadman at all. That's the thing, is Breadman didn't give him an opportunity to even get in that comfort zone. A lot of the times when Matsuba was kind of able to employ those mix-ups on him, he was pushing him physically towards the wall. Breadman was like, nah, we're playing in the open, and I'm just going to beat you up. Yeah. Anyways, we're going to go back into this decisive final game between these two. Breadman, Matsuba, Korea versus Japan. We are in Ortiz Farm in Peru. Let's go. That's your peeps. Yeah, that's my people, man. All right, into the action here. Let's see how it plays out. All right, Breadman versus Matsuba. Matsuba was actually 2-0 up. For anyone tuning in right now, Breadman has managed to bring it back. And we're going to a final game situation. He parried his head. That was crazy. Again, sidestep, good wall positioning. Breadman trying to find a way out. And look at this pressure now. Again, this is the difference. He has him by the wall. The cane what? You know what? I'm going to ring you out. This is crazy. Soul Calibur. Well, round one, Kane doesn't have enough to push to the wall, though. Oh, it gets the wall split anyway, and this is the first time Breadman has been in front in this set. This is good for him. Again, momentum just starting to build up, starting to creep up here. Matsuba's going to have to make some decisions. You know, he has been going for these pokes. He's been getting him towards the wall, but again, just letting him get away with so much of the big hits, things that lead to combo, things that lead to damage. Oh my God, and again, didn't I say the scrappy situations? Both of them are just pressing. It's ugly right now. Oh my God, And he's just Breadman likes opening it. him up. My God, all the lows. That's so many lows in a row. And Breadman, one round away from moving forward, eliminating Matsuba. And what's mad is that he started off the round with like 4 lows and then switched to the mid and then even more lows. Matsuba fighting back. Yeah, this was a big combo and an opportunity there. Gets the 2-slide 1. Gets the opportunity to follow up here. He's going to get the second wall too. Oh no, he doesn't get it, just short. Doesn't matter, closes it out there with the new back 4 string. I like what I'm seeing here. Matsuba, use this momentum, bounce back. He needs to find a way back. Breadman though gets the heat engager straight away. Nice block on the low. Second hit, able to land there. Puts a stop to things. Oh, he gets the block, no duck though. Barkman, this is tense. One mistake is gonna cost them big damage. That's a mini mistake, gets a nice float combo. Oh, the wall messed them up. That's unfortunate. Breadman able to maybe get out of the corner. Oh, activates heat. Let's see what he does. Back 4 fish hook. God, this is crazy. He's taking so much risk with those lows. One of them gets blocked and it's over. Well, that's the thing, is he's going to test him here. Let's see what he does. Sidestep attack? No? This always happens, Markman. It always happens. Nice jab check. I like it. Oh, into the crouch chest low. Here we go. Final round. This is crazy. Oh my God, gets the second hit. Heat engager. It looks like Matsuba's going on the offensive straight away. The pressure. And he gets the wall splat. This is big damage. Oh, he doesn't get the splat early on. Still able to adjust there. Still 70. Oh my God, the damage from there as well. Just whip snap. He gets the jab string counter hit. Just out of range. Yo, this is going to be big hurt. One more. In the sidestep, beats out the low get-up kick. Oh my God, what did we just witness there? Matsuba looked like he was going down with the comeback that Breadman was making, but he manages to survive. It would have been another heartbreak if he was to go out in a final round situation. I'm sure he's so happy with that win. Congratulations to Matsuba, but commiserations to Breadman, who goes home. Yeah, unfortunately for him, but again, got to give up. Those were just back and forth. Oh, that was sick. Matches, again, probably one of the best sets I've seen so far today. We're going to look at some of the replay, but again, dude, this was a crazy set between these two players. Matsuba, I felt like he was done. Breadman was making that comeback, but slowly but surely, he was starting to poke away and get it again. You guys can see the way he closed it out in this final round between these two. And again, Matsuba, just such a brilliant comeback there. Close it out, sidestep, minor adjustments, and it was enough. Unfortunately for Breadman, as we mentioned, he is out. Man, what a game we just witnessed. Oh my God. All right, guys, we'll send it for you guys to see the key crush. As the key is handed over, please make some noise one more time for Breadman.
Matsuba, that is how you play. Oh my goodness. Breadman fought very hard, tried to hit him with the reverse 30 ball. Matsuba, that's just absolute insanity right there. Try to hit him with the reverse 30 ball. But ladies and gentlemen, no way, not a chance in HE double hockey sticks as Matsuba representing Japan, the land of fighting game godhood. Repping that good 8 squad is showing exactly why he is here at the Esports World Cup as he crushes Breadman's key and punches that ticket to our next phase. That right there is what it's all about. Matsuba right here, here's our cam. Phenomenal again. Congratulations, officially he is in the top 16. He's done until tomorrow. We're about to see him move on. This right here is what the fighting game community is all about. And of course, that clutch is how champions are made. We're gonna see just how far Matsuba takes it. Let's keep things going with our next elimination match. What a game we just witnessed between Breadman and Matsuba. That was absolutely insane Tekken 8 action. But our next game coming up now is going to be CBM versus Mo-Il. Man, it's going to be crazy because, you know, CBM played so well against Austin Ash. Yeah, we were backstage, right? Yeah, that was a lot closer than I thought it would be. But again, for him to be in a situation now where he's on elimination, possible elimination, and going up against Mo-Il as well, oh man, this is going to be scary. Elimination matches, always scary. One of these players will be going 0-2. One of them will be going home. Yeah, you know, that last set took a lot out of me because I was like, man, what's going to happen? I can't tell who's in the lead, who has the momentum. It was just going back and forth. I mean, early on, I thought, like, you know what? There's no way that... I thought it was done. I thought it was over too. I was like, yeah, there's no way. He's got this. But that's the power of the longer set, right? That's crazy. Anyways, we're going to go into this action. Very curious to what everyone at home thinks is going to happen here. This is probably going to be Jin versus Jack. Yeah, definitely. Yeah, I think they're locking in now, Jin versus Jack. It's good to see CBM's Jin. I know there was talk about him using maybe a different character in the tournament, but his Jin is really strong. Jin is a very viable character as well. And you have the people in the crowd as well enjoying the show. It's good to see. There's a lot more Tekken for the next few days, so I hope you guys, if you're enjoying what you're seeing right now, please stay tuned as there is a lot going on at EWC. Going right into the action, here we go, starting things off. Mo-Il with the Jack 8, going up against CBM, the Cherry Berry and Mango. Let's see what happens there. The elimination match. Oh, beautiful duck already, and that's what you're meant to do. Mo-Il just testing the waters at the beginning, going for the high option after that, and CBM just ducking instantly. Nice, keeps him there. Oh, what a side And the splat into the Domowashi to close it out. Crowd goes wild. First round, of course, as mentioned, CBM goes for the Demon Palm. Mo-Il with the running attack. Good throw break. Electric. Oh, and drops the combo. Goes for the hell sweep and it gets launched for East Troubles. And that was just a quick way to turn things around here, especially for Mo-Il. He's going to close it out here. Goes for the spinny winnie. Oh, okay. Trying to press buttons to get out of that. Oh, I was going to say CBM still has access to heat, but Mo-Il just not allowing him to use anything there. Electric again. Oh, man, this is big. Gets the wall as well. Surprised he didn't go downstairs. Just forward one. Yeah, big jackhammer. Went for the wall setting attack, Kazama Fury. Yeah, not too much happening. Again, both of them pressing buttons, but very safe-ish moves. No one taking any huge risk. Using the 2-1 down jab. Guaranteed damage afterwards. Oh, punishable now as well. Do you remember before that stuff was it -9? It was safe. You just spam 2-1-4 all day. And because of that, Mo-Il takes the round. Again, great presence of mind there. Able to do that big
Heat smash, guaranteed punish is mentioned. Moyle with the life lead here. Yeah, gets a knockdown. Let's see if CBM's able to make a comeback here. Goes for the rushing forward 4, sidestep hook fist. He's had so much success using the electric. Oh, it was worth it to pay your electricity bill. Exactly. Oh, the wall just short of it. So unlucky. Oh, he beat him out right through his smash. Oh, good throw break. Dangerous, putting the pressure on and hop kick. We've seen so many situations where players have their back to the wall and then they just throw out the hop kick, even though it's not advisable because you could get really hurt for doing stuff like that. Drops the combo at the end though. Big shield follow up here. Seed planter, and unfortunately trees cannot grow in the desert. And he's gonna get knocked out here in this round. Oh, so good. Very nice reactions there. Look at that crowd enjoying some good-ass Tekken. Oh yeah, absolutely. Final round here, game number 1. CBM and Moyle. Nice jab checks here. God. He is just willing away at the life bar. But again, threading that needle with the forward 4. Oh, whoa, he tried to go for the crazy punish there. Didn't work out. Oh, sidestep hook fist once again. Able to land counter hit tornado, follow up into the heat smash, and he's closing it out. CBM, first one on the scoreboard here. Yeah, good stuff to CBM, playing really well. I feel like in a game where a lot of characters' pokes have been nerfed, Jin still has amazing ways to end rounds. You know, the 2-1, the back 2-1, the down 4, not reactable. Yep. Like, he has such good ways, and the sidestep electrics from CBM have been super crisp. Yeah, he's been making sure that they count. If he's going to go with it with intention, Again. he is going to intently get in that ass. Exactly. He dropped the first one, not dropping anymore. Resplat, follow up once again here. Oh man, this is huge. Yeah, I feel like he's playing the correct way against Jack as well. You need to be super aggressive. Bam, there you go. Another round to CBM. Yeah, that median line destruction, able to close things out. He had some added insurance of the heat as well. Let's see what he does. CBM, he might be starting to run away with this. He's playing with so much confidence too. Yes, yeah, it seems like he's really locked in. Guaranteed damage. Oh, punish. He doesn't go for the electric this time. Forward 4, trying to close the gap. All right, big stuff here. Both of them just spacing out, going for small moves. Needs to be careful, gets the trade, so unlucky. Oh, dashing forward. Wants it more. Don't think anyone really wants to press any buttons, and the wall standing 2. The wall standing 2 series able to land there. Tied up on rounds here in game number 2, but CBM still having the advantage. Big hop kick. It's going to be huge damage as well. I wonder if he's going to activate Heat. No, just opts to save it here. 83 damage. But back against the wall, how does Jack even get out of this? I mean, there's one way he can do it. He just fly out of there. Put the jetpack on. I've seen that move in ages. Key burst. Oh my god, again! Gets launched! And this is going to be humongous damage. Uses the heat to extend the combo even more. The down 2 at the end to finish it. Yeah, he looks so locked in. Right, 2 rounds to 1 here, and the floor is going to be popping. Take it to the skies. Look at my combo, guys. Nice stuff here. Gets them with the crouch dash cancel into the down 4. Yeah, he's playing so confident here. It's like Moil can't really start any type of offense though, and CBM has just been doing that every single round, just sidestepping into buttons, and it's working. Oh man, what a push here. The follow-up here, gets the crush, guaranteed follow-up here. Once again, Moyle starting to fight. So persistent with those throws. He has to be careful. Oh, is that gonna... He had enough. I was gonna say, he does not have enough life. Let him rip there with the back 2. That was crazy. Anyways, as mentioned, let's see what happens. Such an important round. It's either 2-0 or tied up. What's gonna happen? Forward 4 counter hit. What's funny is that CBM hasn't gone for any hell sweep, hasn't gone for anything big. Like, hasn't even gone for a down 2. He's just
trying to finish him with mids, sidestep, movement, the electrics as well. Down forward once, you can see him just poking away. It's working out so well. Oh, he's looking to close it out. One more hit could do it, and that's going to be it. 2-0. CBM is up 2-0 for Moil. Moil's going to have to think about it. We know he could use Victor. We know he uses Jack, obviously. But he has to lock in, because whatever character he picks now, he has to win 3 games straight just to move on. Yeah, it's really good play by CBM, especially the way that he's ending rounds. I spoke about this before. Jin has some of the best pokes in the game. And he's just ending rounds so quickly. You can even see by the wave dash there how confident he is in his play. Yep. So confident. How many of those has he landed? I wish we had a counter for how many hook fists he's landed. So many. He's getting so much mileage from it. Yeah. Every time Moil tries to approach, he just gets launched. Oh, he went for the big throw there. Good tech there from CBM. Oh, able to get the duck there. Threading that needle while setting 2. The thing is, Moil has attempted so many throws on CBM and none have connected. Oh, the old school hell sweep. And Moil needs to wake up. Needs to do something. Just 2-1. And any time he tries to get anything started, yeah, always gets launch mark, man, every single time. It wasn't a bad option either. He went for a throw there, and he got hit with the hop kick right as he went for it. That's just, oh my God. He's done. Incredible play. Honestly, CBM is playing like a man possessed right now. No one can stop him. He is so locked in. I know early on I said I wanted to see 3-0s, but to the expense of anyone, this is unfortunate. Okay, big counter hit, gets the pickup on the back 3. He's gonna hit the wall here. This is a masterclass in how to play against Jack. You know, you need to be aggressive against Jack. Doesn't have as many tools to escape and alleviate pressure. CBM playing like a madman. No, this is Moel's final chance here. The trade, so unlucky there. Gets that in the back and the low to finish things off. CBM moves forward in this lower bracket, eliminating Moel. CBM takes the win, and Moel must give his key up to the winner of this match. It is time for the traditional key exchange as CBM moves forward. Please, round of applause for Moel. As CBM joins me for a key to be crushed, a key that represents his opponent's dreams, but more importantly for him, represents the fact that he's still moving forwards and has another game to play to reach tomorrow's top 16. So without further ado, we are getting the man ready to pop yet another key for today. And let's hear this one. We've got a couple loud, we've got a couple silence. I want to hear them pop. Loud and clear, CBM. GG's to you. One more step to get to that top 16, and he will be back later. 2 more games left for today to close that top 16. So back more with more Tekken 8. 2 more games. Let's get hype. Play is in our DNA. Whenever we let it out, it becomes our superpower. Now imagine an entire city being built to supercharge it. Kadir City, powered by play.
EWC Phase 1 action. Going into Phase 2, one of these players will move on for an opportunity. One will have their keys crushed. Markman and Rukeng on the mic as we bring it to you for another important set here. We saw Mangja earlier going up against Arslan Ash. Fortunately, he fell short. Same thing with Matsuba, had a brilliant match early on. We saw him make some adjustments in the lower bracket. Now fighting his way back up here to fight against Mangja, where we're gonna be treated to a good old Kung Fu showdown. It's gonna be Law versus Feng Wei. Yeah, let's see what happens. And the thing is, Matsuba has been in 2 situations now where it's gone down to final round. One of them he lost, one of them he won. So you should take confidence from that. Yeah. And try and make it through into the next round. But in his way, Mangja. Whoa! Oh, the Ana. Yeah, you thought it was the Feng, yeah? I thought it was gonna be Feng. But anyways, surprise, surprise, here we go. We have Law versus Ana. I forgot Matsuba also had an Ana as well. I feel like a lot of people just might have given up on Ana after the changes, but still, you know, we've had three to four people using Ana throughout the week so far. Yeah, it seems like a lot of players will have Ana as the side character. She's never the main character. Always the side Always character. the side one, yeah. Yeah, in case anyone wants that debate smoke, it's Team Nina versus Team Ana. It's Team Nina all the way. Yeah, I agree. Yep, Team Nina, for sure. The chat is pissed right now. 100%. I can tell they're pissed. What? There's a lot of Team Anas out there. Oh yeah, it's a debate that's been going on like forever. Watch you bring it up. You tweet about it later. Yeah, I'll just put Ana versus Nina. Who wins? You're gonna have people arguing. Anyways, gets the Rage Art here, looking to close it out. Gets the big KO. Lucky Tom, put it on. Ooh, double dragon. See what the combo's like. Yeah, it's gonna go far. That's all I know. Here we go, while setting 3, poison arrow, follow up. Double dragon once again. How many dragons do you have in your pocket? Oh, this combo again. Do the right thing. That is the right, like, you know, that one's guaranteed. Yeah, but I mean, for a little bit more damage, you could go for the down back 1+2. Risky. Here we go. Mangja tying things up here, 1 round apiece now. Yeah, I like the fact that Mangja is being more aggressive now as well. He's not just standing there, not just waiting and defending. Because I think against Arslan Ash, he was a bit maybe flustered there. Arslan Ash's pressure was super annoying for Mangja. Bro, he forced him to pick Lydia. Yeah, at the end, yeah, because he was like, I want to press some buttons, and I can't against Yokinimitsu. Yeah, that's a very dark situation. You're forcing your opponent to do that. Anyways, we're going to go into the action, back into it, and again, these guys are just going back and forth, round for round, pound for pound. Matsuba starts off pressing buttons, gets a nice launcher there from Ana. It's nice little damage as well. Oh, what a sidestep! It's a small punish. And again, Mangja is the one that's trying to sidestep, the one that's trying to get around. And Matsuba is just locking him down, homing moves, all the moves coming out. And 3 rounds to 1 there. Matsuba takes the lead. Good stuff there. With the Ana pick, of course, big surprise. Yeah, Matsuba always seems to have a great start, and then sometimes it goes down here. This time he just wants to take the momentum, try and win it 3-0 against Mangja. Mangja had the right game plan at the beginning, but yeah, Matsuba just a bit too strong there. Let's see what the adjustments are. Again, just on the front foot, Matsuba. So impressive. Down jab. Oh my god, nice heat engager. Ooh, like poison. Yeah, Mangja needs to start pressing those buttons. Oh, the trades. Oh my god, in his favor. Pushing towards the wall here. He's going to get it. It's going to be big, nasty damage. Again, Matsuba just pushing forward. Oh, big low, big risk, and it works out. Yo, Mangja, what are you doing here? Just whatever he's trying to do is not working out. Again, just pressure, all the buttons being pressed.
Oh, and the flip kicks. That's the first time we've seen that. Maybe that's the answer. While standing punish, that's going to be huge damage. The patience there. Down 2-3. Gets the refloat. Big damage. 91. Oh, into the arrow of poison. He dash cancel. Okay. That was good. Maybe more of that from Mangja. The thing is, Matsuba's going to want to get into that range 0. Wants to mix his opponent up. Mangja just not allowing him now. The low's coming out as well. Oh, and the power crush. He tried to launch him. Didn't work. Yeah, the strings. Trying to alleviate pressure. And we've seen that move hit so many times. Yeah, so sick. He's been able to get that side step 3+4 quite a bit. Now again, pushing towards the other side. What's the mix? While standing 4 into DSS 4-3. And look at that, 2 rounds to 1 now, working on this comeback. Down forward 1, strings again. The same thing over and over again. It's working though, no need to change. Half bar already. Forward 1, he dash cancel crazy, again. yeah. He's been landing a lot of the poison arrow too. Okay, while standing 1. They trade blows, but not enough life on the side of Matsuba. Just like that, we are tied up. Yeah, Mangja now trying new stuff. You could see he went for the flip kicks as well. Doing so well. They're pressing a lot more buttons and working in his favor. In this game, Tekken 8 especially, Mark, you need to be pressing those buttons at times. You cannot be too defensive in this game. And when you do turtle up, most of the time doesn't work in your favor. Yeah. And he started pressing and doing new things with lore, and it started working out. All right, Elegant Palace here. Again, just spacing out. Mangja instantly with those buttons. Oh, the sidestep. The confirm heat engager. I'm loving the style of play from Mangja. He's really putting the pressure on. Oh, the heat engager from Matsuba now. Caught him with that 4-4-3-2. Let's see what he does here. Oh, and I said it, I talked about it before, Markman. The flip kicks are the difference right now. He's willing to throw it out at times and catching and ducking or doing something. Matsuba is falling for it. Jab rush, down forward 1 series here. Nice. Mangja pushing forward here. This time getting the DSS forward 1. Cracking open into the heat smash. This is nuts. Yeah, Mangja's playing really well right now. The whiff punishment is on point. More move variation as well. Okay. How many times did he see him with that? So many. Yeah, we're going to have to stop calling it double dragon and call it like quintuple dragon. He's letting way too many of those things. Exactly. Follow up here. Chasing him down. Let's see what he does. He has the pressure by the wall. Right, it seems like Matsuba's just frozen up now. Doesn't want to do anything. And Mangja taking advantage. Nice wide opener here. Has him by the wall here. Has to be careful to sidestep. That was huge. Guaranteed afterwards. Very nice. Mangja just brings it all the way back. 2-1. Do you think he needs to bring Feng Wei all the way back now after getting that Ana Bruck like that? Yeah, he's thinking about it. You can see. Does he switch characters or does he stick with the Ana? It doesn't seem like the Ana's working anymore. So maybe more inclined to switch here because whatever he's doing, it's not working. Yeah, and he's also going to have to kind of lock in with whatever character he picks now. So now that he is on the last possible opportunity, I think he's going to pick Feng Wei. I don't think he's going to pick Ana. Yeah, he might as well try a different character. The Ana is not working anymore. But who knows? Maybe he has someone else. Who knows? Matsuba maybe would. So, whoa! He has somebody else. This character seems to be popping up a lot today now. We're starting to see the potential of Kunimitsu at high-level tournaments. I mean, I think everyone knew she was a crazy character. Definitely, but man, yeah. We just had to wait a bit of time before we saw her. Like, he's betting it all. He has to win 2 now. 2 straight with Kunimitsu. Can he do it? oh, unlucky there. All right, starting to do a lot more
More forward 1+2 now. Great block, nice punish. Uh-huh. Oh my god, Again, there's that move again. Double dragons. Uh-huh. Should be able to close that out, no problem. Keep it nice and simple. Yeah, let's see if Matsuba can do what Arslan Ash done. Arslan Ash's Kunimitsu definitely worked in this situation. He's going to have to play it the same as Arslan Ash, just very aggressive in his face. Go for those big lows. Nice set 1+2. Okay, goes to the low. Follow up here, has him at the wall here. Mangja activating, trying to get out of that corner, and he just sidesteps out of it, but the heat smash, having to deal with it. One more hit to close it out. Down forward one check. And Matsuba taking that round. Here we go. Yeah, I love the way he did that. Just down forward one, jabbed, and down forward one again. If Matsuba wants to win this, he's going to need to press more buttons. Mangja, though, with a nice launcher. The dreaded combo here. Just goes for the good stuff. The stuff that works. Jesus Christ. All the buttons. Gonna punish. And he still gets the combo as well. He burst. Oh, down forward one. Bro, Mangja is fighting back here. One more round. Matsuba trying to put up a fight, but I don't think it's going to be enough. Is he going to make it through? Okay. Has the pressure at the wall here. Mudades caught him with the mid. Looking good for Matsuba here. Let's see if the Kunimitsu pick is going to work out. Oh, low while standing punish. Matsuba trying to stay alive. Has a good chance here. Activation station on the counter hit. Oh my god, a huge hop kick from Matsuba. All the way to the wall. What's the mix-up like? It could be going down to a final game situation. That's one of the first slides I've seen. He's not been doing that a lot. Going for all the lows. Activates heat. Oh my god, the combo though. Matsuba trying to stay alive. Oh my god, this is close and he blocks the slide, doesn't get the right punish. Oh my gosh, this is gonna hurt big time. Big opportunity for both players. It's either gonna be tied up or it's gonna be all over. Who's gonna get it? Oh, he get it with the down forward 1-3. Oh my god. And he takes it there. Mangja pops off, manages to make it through. All right, ladies and gentlemen, as the key is handed over, one more time, make some noise for the Japanese powerhouse, Matsuba! Mangja representing that VP, that Virtus Pro. Trying to get some very important club championship points, and as you see the exasperation, congratulations, brother. That boy got a big smile on his face. That's that energy with good reason as he steps 1 foot closer to lifting up that EWC 26 trophy, ladies and gentlemen. The clutch out right there at the end on the last hit. And this will be the last hit for Matsuba as his key gets crushed.
one step before top 16. And just like that, Mongja moves on in the bracket. We will see him tomorrow representing that Virtus Pro. Phenomenal play once again, and we still have more Tekken 8 action coming at you right now. Play is in our DNA. Whenever we let it out, it becomes our superpower. You'd love to see it as well. You can see Ulsan there. Yeah. And what was really beautiful to see yesterday as well, that Ulsan was crying when he made it through. You could see how much pressure it was and how much it meant to him to make it through. And he really does believe he can be a 3-time EWC champion. You know, I wasn't cheering for him yesterday. I was watching him. I was like, I want to see some disruption. I want to see a new champion. But after seeing how emotional he got, I was like, you got to cheer for him. You have to. You got to love Ulsan. Exactly, man. And to win it 2 times and to still be hungry for the 3rd EWC and to not take it as lightly. He says this is the most pressure he's felt and he really wants it even more. Can he do it though? I don't know. I'm kind of trying to think this through on the performance, how they've been playing today, and of course maybe just selfishly what I want to see for tomorrow. And I feel like CVM has done very well here. He has, EWC in the past. Hafiz Tanvir, it's the first time, right? At EWC? I feel like it could be. I believe it is. And he is the sole Claudio representative here. Either way, this is going to be fun because, again, 2 storied players that we've seen playing throughout last year and this year, fighting for a big chance here to get into the big money for EWC. And I guess for me, it comes down to, do I want to see Jin or do I want to see Claudio? Yeah, I'm a big fan of Jin, though, in general, but we're going to see... You're a Mishima fanboy. Yeah. You also picked Anna. I jumped onto Discord and I started checking with the Tekken Zaibatsu Discord. And I asked him cleanly, straight up, Nina or Anna? There were more Anna picks, so I got outvoted. So you win today, Rukang. Anyways, going into the action, starting things off here, CBM with a big combo early on, pushing towards the wall. Yeah, I think this is a great way to end the day as well, with these 2 playing an elimination match. 2 of the best players in the world. And you know these guys are going to play at 100 miles per hour. They're going to play so fast as well. Very nice already, though. CBM doing some fuzzy ducks to start things off. Okay, what a step into the crouch dash 1. Closing it out there. Nice and clean CBM. I like those little wave dash pop-offs that people do. It's so cool. Was it around back in Tekken, Tekken 5, Tekken 6, would people pop off like that as well, just wave at the end of rounds? I'm curious to know when this... I don't know if it was considered a pop-off. I think some people just warm up or something? Yeah. I feel like, I wouldn't say it's a pop-off. Yeah, sometimes I see it, or sometimes I do it. I just do it when I'm feeling myself. I'm like, I'm really confident. Very nice, and Hafiz Tanvir just shuts down any confidence that CBM was building. Here we go. Nice use of the backdash here. He was trying to thread that needle again. He was. I love what he's trying to do. Just dash forward a little bit, then backdash. Waiting for Hafiz to press a button, and he does it again. Interesting trade there. Going back the other way, Demon Paw. Coming out on top here, the down 2, the placement here. CBM with a nice life lead here. But Hafiz does have resources. He does have rage. He does have heat.
Oh, very nice. Goes for the low, just the first hit and the back 2-1 to finish things off. That was one of the first times I've seen CBM do a down 2 in neutral. I don't know if it was intentional or not, but it definitely hit there. Some information for him. Oh, big block, bad punish. That is not what you're going to do there. All right, got him with the heat engager. The follow-up here, sidestep 4, trying to open him up. Hafiz Tanvir desperately trying to stay alive here in the tournament, but a big Godfist combo again. CBM pushing towards the wall. Yeah, CBM's Jin is so sick to watch. Savage Sword. Picks up. He hits him with a Thunder Godfist from Omen stance, and 3 rounds secured. Game 1 secured. Ends it with a down 4 there. CBM looking good. Playing well at the moment. What does Hafiz Tanvir do in this situation? Maybe a switch of characters. I don't know if he'll stick with the Claudio, but it just seems like CBM is 1 step ahead. Yo, CBM looks so poised and confident. I wonder if he's going to go crazy if he makes it through, if he's going to pop off. I mean, do you pop off from just making it into phase 2? Because, you know, there's a lot more beyond that. You know, you saw Riot's reaction earlier as well. He made it into phase 2 and he went nuts. Well, like that's probably because no one thought Riot was going to win. That's a big difference. No offense, but I did not expect him to win. Of course, yeah, especially in the mirror. It was a really tough 2 games for him, and he manages to make it through. So. Whoa, Hafiz is not using Claudio. What is this? Goes for the Nina. I know we were talking about Team Anna and Nina earlier. I didn't mean it for these guys. Oh man, Kazama Fury punished downstairs. I feel like we're manifesting these characters now, you know, going with the Nina here. Well, maybe I'm just gonna start talking about King, because I want to see King. Have we seen any Kings this week? I feel like we've seen 0. 0 King. We saw Armor King, just not King. Yes, the John has made the conversion, the switch. Okay, pushing towards the other side here. Here comes CBM. He's gonna get the wall from the smash. The follow-up, Savage Sword, Savage combo. CBM playing so locked in at the moment. I feel like the way that he's closing the space as well is just near perfect from CBM. His spacing. Throws out a jab, gets punished for it. Okay. Heat dash. Back against the wall. Hafiz Tanvir is pressing, goes for a big low, drops the combo there. Still manages to get the round though. Yeah, you can see small combo drops as well from Hafiz. Don't know how comfortable he is with the Nina. Oh, single jab. Oh my god, that was sick! And the crowd goes wild for that. Down 4, this is a dangerous situation. Manages to back away even though he's backwards against the wall. Goes for the damage there. CBM on fire right now. Here we go, here we go. Looking to close things out. CBM, he was going for the Godfist punish? CBM's playing out of his mind. The forward 2 heat engager. Trying to thread the needle, trying to find a way in here. Still has heat available, still can do some stuff. Oh, he was out of range! Doesn't do anything with it. Heat smash, gets it blocked. My god, this is so suffocating. And the low parry into down 4. What combo was that, man? It was not a combo. That was a single hit, brother. All right, gets him with the Divine. The follow-up here has a chance by the wall. But again, he just has a sliver. He has heat. Did not pop it. 3 rounds to CBM. Now CBM is in a good spot here. Ulsan is all cheers, all happiness there. Yeah. Really good stuff. At the end of rounds, it becomes really difficult for the opponent, especially when fighting Jin. When Jin has so many good poke tools, it was between back to 1 and down 4. You think he can hear me if I yell from this part of the stage and be like, hey, don't use Nina again? Because that was not good. He needs to think, goes back for the Claudio. He tried the Nina, it didn't work. But now if Hafiz Tanvir wants to make it through into top 16 and play tomorrow, he's going to have to win 3 against CBM, who's been looking so good. Even against Arslan Nashmark, man, CBM played really well. Oh, yeah. Played out of his mind, actually. You know, that was, again, a closer match than I thought it would be. Either way, going back into the action right now, Hafiz Tanvir going back to his main squeeze.
Claudio Serafino. Oh, the hop thanks for putting pressure on me by the wall. Let me give you a hop kick. You get one, you get one. I feel like I'm going to add that to my notes as well, because I've seen a lot of high-level players today and yesterday, when their back's against the wall, they're using hop kick as an option to like just take back momentum. It's a huge risk, but it seems to pay off a lot of the time. I mean, yeah, I mean, CBM, or this Mishima in quotes, has a hop kick. He has the ability to do that, but man, good stuff. Oh, he tries this hop kick of his own. No punish, He was inspired. He was inspired. Okay, tries to check him there. Got him with the third hit. They have to stand there pressing those buttons. 3+4 knee check. Down forward 3 here, pressuring back. Nice counter poke there from CBM. But Hafiz does have the positional advantage here. Has him by the wall here, restricting his movement if he tries to sidestep. Oh my God, I felt that in my heart. He hooked him good there. Follow up here. He's gonna push towards the wall here. He gets what it. A combo! Combo video time. Just like that. Set point CBM. He got the crowd popping off. He got the 2-time champion popping off. But this is the damage that Jin can cause. One of the best Jins in the world, and you can see that just wave dashing forward. Hafiz Tanvir doesn't really know what to do here. Still throw breaking. He has no answer to his pressure mark, man. Look at the wave dash just going forward. He's got to make a mistake sooner or later. Power crush for the first time. My goodness. Oh man, it might be Dunzo. Good punish, great pressure here into the hell sweep. Yo, is he gonna end him here? What do we got, Rukang? Is it the end for Hafiz? It is. He's Dunzo. 3-0. CBM moves forward here and he pops off. You see how much it means to these players to make it. Hafiz Tanvir, so unfortunate, moves. Doesn't move anywhere, goes home, unfortunately. But CBM so strong there with the Jin. Good stuff to him. He is advancing into phase 2. Unfortunately for young Hafiz Tanvir, he is now out of the competition. Yes. He's gonna get his key crushed. Hopefully this doesn't crush him and he's able to bounce back. Obviously still a lot of Tekken ahead for him in his young career. Yeah, what a day we've had though, Mark, man. Just exceptional games, and this one here to end it was incredible to witness. Yeah, it was good stuff all the way. You could see in the replay there that final sequence. Oh man, Ulsan popping off. All cheers. He's going to be playing tomorrow as well. We're going to go ahead and throw it over to Damascus as we go to the Key Crush ceremony. And the final key of the day must be given up as Hafiz Tanvir must give his key to CBM. But of course, please, can I have a round of applause for Hafiz? As CBM joins me once again on the Crusher, another key to destroy to validate his ticket for Friday's big top 16. Tomorrow we go back, everyone in winners, 2 more groups to play, and a spot on that top 8 on the line. Time for the very quick security briefing for him to be ready to pop the final key of the day and validate his ticket as the 16th player on that top 16. Ooh, all right. Made noise as well, CBM. Congratulations, big GG's. A well-deserved victory for CBM. He will be there tomorrow, along with Ulsan, who's been really cheering for him as well. We love to see this stuff. We love to see the friendship, the camaraderie that we can see within fighting games. And that's what fighting games are about, guys. The 16 players are now confirmed as CBM is there, and the destroyed key can be given to CBM right now, as of course you need to parade a bit your victory. Yes, get this going, CBM, a well-deserved one once again for the Korean player, getting that win, validating the ticket. He will be back tomorrow alongside the other 15 players remaining. Only one champion can lift that trophy at the end of the week, but for now we got the 16. So with these guys, over for the day, but let's go take a look at the studio and chat some more Tekken.
And just like that, from 32 to 16, Group A has concluded, and Phase 1 is officially done. We've crushed, 8 keys, 16 keys over the past 2 days of competition. 16 dreams have been crushed. However, for others, they are ready to push forward and make history. As we see the reactions, some of these keys, when they snap, they go bang, and for good reasons, because that is the heart of the competitor officially being put out. Yeah, that's what happens, bro. The EWC, I feel like the trademark at this point is hearing the clang, the metal bang over there as the dreams get crushed, the hopes get crushed of some of the best players in the world, man. Just let you know how heavy it is here. That's it. And Mark, man, we lost some heavy competitors throughout those 6 matches in Group A. Who was the biggest shock in your opinion? Oh, man, I think out of all the ones that we saw in Group A, you know, it was just sad to see Hafiz. He was coming out of the gate, he did so well, and then he ran into so many problems. CBM was playing out of his mind. The cherries, the berries, the mangoes, he hit him with all the fruits. He hit him with all of them. My favorite breakfast, that's what I'm talking about. That's it. Hey, cherry, berry, mango is a solid breakfast, Steve. I gotta agree with you. We take a look at the tournament bracket for Group A, and it was exhilarating to say the least. And it started off with some incredible matches, Mark, man. I mean, we went the distance, set 5, going all the way to 5, 5, 5. We got one that went to 4, but either way, it ended up playing out as it did. Now for Virtus Pro, they get a big win. Twisted Minds as well. Yeah, Arslan Ash did very, very well. Obviously getting into a very nice spot. Kind of beating some of the curse early on. You know, a lot of people expected him not to do as well just because of expectations of past EWCs, but obviously did very, very well here, and he's going to be in Phase 2, so I'm looking forward to seeing how he performs as well. Yeah, man, we talked about this early on. I said if you get one, Arslan Ash ain't a bad one to have, but Hafiz Tanvir, man, a very good player. It's sad to see him go, but I'm definitely a fan, and I'm happy. Me and Mark talked about this. He actually stuck to the Claudio. I was super surprised, but look how he made it work. Didn't get the dub that he needed, but it's still great matches all around. Yeah, good storylines either way going into tomorrow's competition for sure. There's been a lot of great coverage, but no coverage greater than Level Up Season 2. A lot of people are haunted by their past. I'm inspired by it. They're not just playing for themselves, they're really playing for their entire family. They have defeated their demons. They have crushed the curse. Level Up, a great program. Check it out. It's Season 2, and it'll teach you everything you need to know about the Esports World Cup. But let's educate you on Group B, because this is Allianz Vault. It's all about Tekken 8. Now, Group B was incredible. We started off with some amazing matchups for sure. We walked through it, Mark, man. What do you see? You know, from seeing what we saw earlier today, the match that I really wanted to see was the John versus Jun Ding. The John using a really much more newer character from what we're used to seeing from him. Traditionally using the King, but bringing out the Armor King, and he did not mess around. I'm a big King fan, Armor King fan, either one. I'm always happy to see. And like I said, my man had to pop the trunk, get the AK. Today was a good day. That's all I'm saying, bro. Good day as well for Vitality. They get one through, and the club championship race at the top is close. Oh, yeah, it's going to be very sick because Jun Ding always brings that energy. Not only does he bring the energy himself, the crowd definitely shows up for him. And I got to call out one particular player, Rayev. I did not expect him to do as well as he did. And he popped off hard. Yeah, he was actually playing out of his mind. I definitely didn't expect him to take out Rangchu. That hurt my heart, but it's good to see him go up. And then he's just Rife playing amazing today, bro. Yeah, showing off, beating Lowhigh to start off. Come on, doesn't get any better than that. But Group C, let's go back to yesterday, because yesterday was a whirlwind of emotions, and we lost some heavy hitters, some big legends for sure. And as we take a look of where we started, man, you go through it. It's kind of hard to pick where you want to start, but I guess let's go Atif for Team Falcons. Atif definitely one of the favorites out of all EWC to actually make that championship run. But once again, showing you just the level he did not make it through. Who we need to talk about is how well Yagami played starting off. He made the first blow versus Atif, and it really did go their way. Kudan's gone from the tournament. Nobi still in the tournament. Numan looking like one of the guys you're going to see there, still not there. Mulgold, the young gun, not there. Group C was crazy. A lot of hurt hearts, especially considering when you look at this bracket.
And one thing you got to call out too is 2 Falcons players made it out of that group, and that's going to be big, especially with the club championship on the line. That's right, club championship is well underway, and Falcons already in first, but with 2 members moving forward, they're looking good. But it wasn't just those 2. Let's take a look at Group D, because another Falcons member slipped through the cracks, ended up being top 4 in their respective Group D. However, we've got to pay our respects to Nee. Nee. But what a phenomenal player. I love the Leroy, great stuff. How does he feel? I saw him reeling back in the chair there. How does he feel? He's had a few moments to reflect on everything. How does he feel about his overall performance here at EWC? 일단 좀 탈락하시면서 사실 좀 많이 아쉬워하시는 장면이 좀 눈이 당겼는데, 그래서 좀 마지막 경기를 하시고 나서 좀 어떤 감정이 있으셨는지 일단 궁금합니다. 일단은 하나는 아쉽다라는 감정과 하나는 후련하다는 감정이 이렇게 2개가 들었습니다. So first of all, obviously frustration because I couldn't make it. However, but also I think got a lot of side of relief because now it's like over right now. So it's like I gave my all to this tournament. So I think that both goes at the same time. I'm glad he feels like he was able to get everything out and do his best. That's really important. So the second question would be, you've been using Leroy for a long time, one of the most loyal Leroys in the world. What is his fondest memory to this day with Tekken? 사실 오랫동안 리로이를 써온 유저시기도 하고 이번 대회에서 리로이를 계속 써오셨는데 철거를 하시면서 좀 가장 행복했던 기억이 있다면 좀 어떤 기억일지 좀 여쭤보고 싶네요. 작년 TWT 파이널에서 5등한 기억이 제일 남고요. 그것 때문에 여기 EWC에 올 수 있었으니까 그게 제일 기억에 남습니다. Yeah, getting 5th in the TWT finals last year was the fondest memory of mine. And that being said, that 5th actually made me compete in the EWC. So yes. Yeah, that was my fondest memory of it. Amazing, amazing. Breadman, always a great player to watch. Appreciate all your stuff and look forward to seeing more from you in the future. 감사합니다. 감사합니다. Hunger's the root cause of conflict. Join me, and we'll feed the world. Okay. Get ready for the next battle. Tekken 8. New challenger. The hero has arrived. Bob! Shady! Cheap shots just don't work on my perfect body. Impact! No flavor? Let me go! I hope you're ready! Hey! Sense? Float like a butterfly, sting like a bee. You know why I love eating onigiri?
His own beauty also means to slay devils. Let's go. Eat your calories out. Burn my fat. Roar my fists. Feel the power. You'll need to spend the rest of your life paying for all your sins. Hey, welcome back. We're sorry about that. Something happened. We never know what happens, okay? But it was just a little bit of an issue. We're back, though, and we want to pay respects where respects need to be paid. And that was Group D. Because Group D was exciting. And again, going back into that narrative, we lost some legends, and Nee was one of them. Everybody wants Nee to win, man. He's one of the tried and true Tekken gods out there, bro. And obviously, coming into a group like this, I mean, you had Zubair from the LCQ, K-Skate, Tekken Master, Farzin, Ulsan, the returning champion, and Ninja Killer all in one group. I mean, look, we know how this goes. Only 4 makes it out. Somebody's going to get their feelings hurt on the way. Yeah, I'm pretty sad about Ninja Killer. He hand-gifted a wonderful present to Farzin to be able to qualify out of the upper bracket. But again, another exciting one. We talked about Farzin, the other Falcons player that was able to make it out there. But the one that I was actually really looking at was the other opponent on the other side. Because again, there's so many good players around here. Just can't wait to see what's going to happen tomorrow. It's crazy. 32 players started. We're now down to 16, and groups will be played tomorrow, and then that will dwindle it down to our top 8. But top 16 players break it out into Group A and B. It's going to be exciting. Boys, walk me through it. How is day number 3 going to look? Well, Rob, like, we were not done yet. Why did you turn off the mics? Bro, what are you talking about? I thought that I would never break it anywhere else with you again, Damascus. Stop pressing the wrong. It was the red button, not the blue one. It's our first time producing the show together. Yeah, you had to switch the camera to tailor, to reflections, looking clean and stuff. He was ready, and you did the man like that? Live? I'm not gonna lie. In 4K? I did that on purpose, Reflection, because of how you said Ninja Killer yesterday. You know what I mean? That was my get back. That's exactly what that was. Pretending he's right, you know. It's a mistake. It happens. I made one this morning too, you know. Okay, but as far as these matches, I feel like there was not a lot of mistakes made, at least for the players that qualified and officially punched their ticket into what, ladies and gentlemen? Top 16. I know it's hard to believe, but just that fast, we have 16 players gone, and we have our 16 best players left. Yo, my man's Arslan Ash. That's what I'm talking. That's how you play. Oh, listen, well, I'm watching Evo Arslan Ash this week, you know, like I'm seeing him with the Evo buff, really good. I was talking to him earlier, and he was like, yeah, I only want to see you on Saturday when I crush keys. Like, you know, like, let's not talk tomorrow. Hopefully he makes it through winners. We don't have to go through any key crusher for him. Just straight locked in. Somebody, I seen a tweet. It said, what was it? It said that Arslan Ash brought Evo Arslan right here to EWC. They said he just started with the E and stopped reading the rest. Whatever. Like, you know, he's like, yeah, 3-letter starts by E. That's my tournament. Good enough. Listen, he's gunning for this bot. The back-to-back champ is still Ulsan. And I love the fact that he was there to cheer on his teammate CBM. Okay, that's it, ladies and gentlemen. We are officially down to our top 16 competitors, and y'all know what this is all about. $1 million on the line, a whole lot of pride, a whole lot of glory and history, as only one player will lift this EWC 26 championship. Ladies and gentlemen, I have been Hollywood Rob TV, joined here with my brother Damascus, and we'll see you tomorrow with more Tekken 8.
कोशिश ज़रूर करनी है कि कंसिस्टेंट आप रखें, लेकिन जहाँ पे हम बात करते हैं कि कुछ बैड गेम्स आ जाती तो आई थिंक आपने उनको जो है वो बहुत ज़्यादा मेंटली रखती है कि डोमिनेट करे, पॉइंट्स टेबल के ऊपर एक छाप छोड़े। बट पोर्टल मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इस मैच के अंदर हमें टीम फ्लैश का कमबैक होता हुआ दिखाई देगा? वेल आई थिंक हो सकता है, और बिल्कुल आप सही जो है वो एक गेस कर रहे हैं, क्योंकि टीम फ्लैश ऑब्वियसली हम देखते रहे हैं कि अनफॉर्चुनेटली अभी के लिए उनकी जो परफॉर्मेंस है उस तरह से आपको कोई बहुत बड़ा उसमें जंप आता हुआ नहीं दिखाई दिया, या कोई कंसिस्टेंसी एज सच जो एक्सपेक्टेड रहती है टीम फ्लैश से वो आपको नहीं दिखाई दी, लेकिन स्टिल दे हैव द पोटेंशियल। एंड ऑब्वियसली रेंगल का एक मैच है तो आप एक्सपेक्ट करें कि टीम फ्लैश भी हमें हमारी जो टॉप 3 यहाँ पर लेट से टॉप 5 तक की जो टीम्स हैं वो इस मैच में आते हुए दिखाई दी जाए। लेकिन टॉप प्लेयर्स अभी आ रहे हैं तो टॉप प्लेयर्स की बात कर लेते हैं। टॉप टीम्स की तो हम बात करते रहेंगे, लेकिन टॉप प्लेयर्स के अंदर फिलहाल टॉप वंस अगेन द MVP, द ग्लोबल MVP, जो कि हमें ये टाइटल अपने नाम करते हुए दिखाई दिए हैं अपनी पास्ट की होने वाली मैसिव परफॉर्मेंसेस के बदौलत दोस्तों। इनकी तरफ से जो है आई थिंक आज के इस दिन पर एक अच्छा स्टार्ट है, अच्छा डैमेज है। एलिमिनेशंस में भी आपको नाम आता हुआ दिखाई दिया अलॉन्ग साइड फलक, उसके साथ साथ एक और टीम के प्लेयर थे जो कि हमने थोड़ा मिस आउट कर दिया, लेकिन वापस आ जाते हैं हमारे मैच पर। एंड दोबारा वो बात होगी, प्लेयर्स आएंगे तो फिर हम जो उस बात को दोबारा से स्टार्ट ज़रूर करेंगे। लेकिन नो इट नॉय ऑल द वे टुवर्ड्स सॉल्वर सिवर्नी, आपके प्लेन लाइन बनते हुए 1 पर मौजूद हैं, ग्रुप स्टेज पर हैं। सो यस, अगर एक अच्छा स्टार्ट हो जाता है आपके सभी प्लेयर्स की तरफ से जो परफॉर्मेंस हमें देखने को मिल जाती है, तो डेफिनेटली आने वाला जो मरहला है आपके लिए वो ज़्यादा हमें जो वो आसानियाँ लेकर आता हुआ दिखाई देगा। जहाँ तक आपने बात की रिजेक्ट की, देयर इज़ नो डाउट हमें अफ्रीका से आए हुए नाम दिखाई दे जाता है, और आई थिंक एक ऐसी टीम भी है जिनके पास ऐसा कुछ ज़्यादा एक्सपोजर नहीं था जब उन्होंने PMGO सीज़न 1 खेला, लेकिन सीज़न 1 की वो जो परफॉर्मेंस है वो भी अनफॉर्चुनेटली कुछ खास नहीं गई। टीम हैश 25 पे एंड करते हुए दिखाई दी थी, पर उसके बाद अब जो है एक और S tier इवेंट है जिसमें टीम आपको प्ले करते हुए दिखाई दे रही है। सो स्टिल आप कह रहे हैं कि इनके करियर वाइज अगर आप देखें तो आई थिंक इट्स क्वाइट अर्ली स्टेजेस के, यहाँ से हमें एक्सपीरियंस ही गेन करते हुए दिखाई देंगे। यहाँ से अगर इनफैक्ट अगर आप PMGO सीज़न 1 के मुकाबले में बात करते हैं तो प्रॉबली अगर टीम सर्वाइवल स्टेज तक भी चले जाती है, सर्वाइवल स्टेज से इनफैक्ट अगर उन्होंने अपने आप को फाइनल तक पहुंचा लिया फिर तो खैर बहुत बड़ी चीज़ हो जाएगी। लेकिन आई वुड से कि अगर सर्वाइवल स्टेज तक भी टीम जाती है और वहाँ पे अच्छा खेल कर फिनिश करती है, डिस्पाइट द फैक्ट वो क्वालिफाई करे या ना करे फाइनल्स के लिए, तो तब भी आई थिंक रिजेक्ट के लिए एक अच्छा ही यहाँ पर हम रिजल्ट इसको कंसिडर कर सकते हैं, कंसिडरिंग कि जिस तरह से आपको एक नई टीम जो है अफ्रीका से इस सारे ग्लोबल टूर्नामेंट्स को ज्वाइन करते हुए दिखाई दिए। लेकिन खैर बैक टू द टूर्नामेंट, बैक टू द एक्शन जो कि हमारे सामने ऑन द स्टेज भी चल रहा है और हमारी स्क्रीन पर भी है कि आपको प्लेयर्स दिखाई दे जाते हैं मिनी कैम के अंदर। उनकी तरफ से अभी तक के लिए गेम के ऊपर फोकस है काफ़ी ज़्यादा किया जा रहा है, राइटली सो। रेंगल का ये मैच है और एक जो रोटेशन है वो यहाँ पे सरंजाम दी जा रही है। कहीं पर टीम KRX आपको दिखाई दी, कहीं पर थोड़ी देर पहले हमने टीम उल्फ के आई थिंक प्लेयर्स को देखा, लेकिन फिल वक्त कुछ ज़्यादा जो आसार हैं फाइट के वो आपको दिखाई नहीं देती हैं, नहीं दे रहे इनफैक्ट। और शायद थोड़ा और इंतज़ार हमारा स्टेज 2 के सर्कल का जो है तो हमें करना पड़ेगा। जी हाँ, बिल्कुल इंतज़ार करना पड़ेगा नेक्स्ट सर्कल का, एंड उसके हिसाब से टीमें हमें खेलती हुई नजर तो आएंगी। लेकिन फिलहाल देखा जाए हमें रोटेशन करती हुई हर तरफ टीमें दिखाई दे रही हैं। जहाँ पर भी किसी भी टीम पर नजर डाली जाए वो गाड़ियों में दिखाई देते हैं। एक जमे का फिर लगता हुआ दिखाई देगा हमें सर्कल के हिसाब से देखा जाए तो ईस्टर्न साइड के ऊपर थोड़ा सा अनऑर्थोडॉक्स सर्कल रहा है। कह सकते हैं कि 70% ऑफ द टीम्स और मे बी 80% ऑफ द टीम्स को हमने देखा कि उन्हें गाड़ियां लेकर रोटेट करना पड़ा। जो टीमें सर्कल के अंदर भी थी वो भी बेहतर से बेहतरीन जगह की तलाश में थी, लेकिन निग्मा गैलेक्सी उनको देखा जाए रोटेशन के टाइम पर काफ़ी डैमेजेस पड़ेंगे। गोड स्क्वाड की जानिब से ये गेट कीप करने की कोशिश की गई, लेकिन अच्छी बात यह है कि सेटिंग बिल्कुल भी उस चीज़ को सामने नहीं रखते, उनकी तरफ से इग्नोर किया जाएगा अपने ओपोनेंट्स को, और सर्कल में जाना उसको अपनी टॉप प्रायोरिटी रखा जाता है। कोप्स ऑलरेडी वहाँ मौजूद है, यानी रिग्रुप किया जाएगा बड़ी आसानी से। लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए गी के एक बहुत अच्छी जगह पे मौजूद है। सर्कल ने अगर बैक फ्लिप मारी तो ये जगह कहीं ना कहीं एक ऐसी जगह बन सकती है जहाँ पर शायद हमें गीके टॉप 3 के अंदर आती हुई नजर आए। इससे पहले भी अगर आपको याद हो गीके ने रोटेशन काफ़ी अच्छी की और सर्कल ने कई बार इनको काफ़ी फ़ायदा पहुँचाया। हाँ बिल्कुल, और स्पेशली इनफैक्ट अगर मैच 1 ही की हम बात करें तो मैच 1 का स्टार्ट भी नहीं की तरफ से था विद विद सेकंड इनर। सो टीम की के यस अभी तक के लिए एक कंटेंडर के तौर पर हमें ज़रूर शुमार होते हुए दिखाई दे रहा है, और पॉइंट टेबल पर भी आप इनको हैश 4 पे ज़्यादा फर्क नहीं है, टीम 4 साइड से ज़्यादा फर्क नहीं है टीम अरोरा। और अगर आप हैश 1 की बात करते हैं आपको 8-9 पॉइंट्स का जो फर्क है, 9 पॉइंट्स का एग्जैक्ट से वो बनता हुआ दिखाई दे। लेकिन रोटेशन अगेन ऑन द स्क्रीन 20 स्क्वाड भी अगर क्या आता हुआ दिखाई दिया सर्कल के अंदर। इनके साथ साथ कुछ और स्क्वाड्स हैं जो कि शायद एक मेजॉरिटी आप कह सकते हैं जो कि ऑलरेडी सर्कल के अंदर आ
चुकी, उनको ज़्यादा अपने व्हीकल्स का इस्तेमाल करना नहीं पड़ेगा। जब ये सर्कल हमें फिनिश हमारा बन जाता तो फिर कुछ फाइट्स हैं वो यहाँ होते हुए में आकर कुछ प्लेयर्स नॉकआउट्स, रिवाइवल, ये जो हमारा कुछ देर के लिए हमारे साथ ऑन द स्क्रीन भी है, लेकिन सर्कल फाइनली आएगा और सर्कल के शिफ्ट के साथ ही आपको मिलता ये दिखाई प्रेजेंट वो हमें एक ड्रॉप बनता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि KRX पहले वहाँ पर मौजूद है। ओजी के प्लेयर्स को वहाँ पर देख पा रहे हैं। अगर आप टॉप एट से देखें तो टीम गेमिंग स्टार अब सर्कल में वहाँ से आना चाह रही है। रिजेक्ट जिनके ऊपर थोड़ी देर पहले हमने बात की थी, वो सर्कल के अंदर आपको वेस्टर्न साइड से आते हुए दिखाई दे जाएंगे। सो खासा आई थिंक ये जो एक क्लस्टर बिल्डअप हो रहा है फ्रॉम द वेस्टर्न साइड, टीम अरोरा गेमिंग, टीम 4 थ्राइव्स, टीम रिजेक्ट, टीम अलूला, आई थिंक यहाँ से जो शायद फाइट है नेक्स्ट टाइम ये जो कुछ ही सेकंड्स के अंदर आपको बनते हुए दिखाई देने वाली है, वो हो जाएगी। जी हाँ, बिल्कुल ठीक है। आपने सर्कल के हिसाब से देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा हमें टीमें एक ही साइड पर आती हुई नजर आती हैं। दैट इज़ द ईस्टर्न साइड, जहाँ पर हम देख रहे हैं कि इनफैक्ट सर्कल के हिसाब से इट्स द वेस्टर्न साइड, जहाँ पर अरोरा गेमिंग की एंट्री बनती हुई नजर आ रही है। अगर आप मिनी मैप की तरफ देखें, आपको आसपास कई टीमें दिखाई देंगी। एक साइड पर टीम RJC है, एक साइड पर टीम उल्फ नजर आती है, जिनके प्लेयर नंबर 4 दिखाई देंगे। लेकिन 4th राइव्स दे आर इन अ फाइट अप अगेंस्ट गीके, जहाँ पर प्लेयर एक सामने मौजूद तो थे जिन्हें गिरा दिया जाएगा। दूसरे प्लेयर को शॉटगन के साथ तिगनी का नाच नचाया जाता है। गीके के बाकी प्लेयर्स आएंगे, उनकी पोजीशन का अंदाजा यहाँ हो जाएगा। 4th राइव्स 2 प्लेयर्स गिरते हुए नजर आते हैं। थर्ड पार्टी पीछे से हो जाएगी, ग्रेनेड्स का इस्तेमाल किया जाएगा। उज़ैफा सर्वाइव करेंगे इस ग्रेनेड के आने को, लेकिन T24 इज नॉट गोना सर्वाइव एट ऑल। केविन की जानिब से उन्हें एलिमिनेट कर दिया जाएगा। IQ को भी बचाना है। उज़ैफा बड़ी मुश्किल उनके ऊपर बनती तो है, लेकिन उज़ैफा को पकड़ लिया जाएगा। पीछे से कवर फायर दिया तो जाता है। गीके फिलहाल दिक्कतें बनाती है, लेकिन इजी फॉर बैड बॉय। उनको लॉबी भेजने के बाद 4th राइव्स ट्राइंग के किसी तरह बच पाए इस जगह के ऊपर, लेकिन ऐसा लग रहा है कि इस थर्ड पार्टी के चलते, इन यूटिलिटीज के चलते 4th राइव्स का बचना इम्पॉसिबल हो जाएगा। पीछे से फलक को भी गिरा दिया जाएगा। एंड नाउ हुज़ैफा इज द लास्ट वन स्टैंडिंग। लेकिन क्या गीके आगे बढ़ेगी या फॉल बैक किया जाएगा? अगर फॉल बैक किया गया तो शायद मौका मिल सकता है, लेकिन केविन उनके बिल्कुल सामने मौजूद हैं। हुज़ैफा को शायद एग्जैक्ट अंदाजा नहीं है कि किस जगह पर केविन बैठे हुए हैं। हुज़ैफा इज द लास्ट वन स्टैंडिंग, जिनका बचना बहुत मुश्किल है। हाँ बिल्कुल, और 4th राइव्स वर्सेस टीम गीके, इनफैक्ट अगर आपके फाइट डिसएंगेज भी होते हुए दिखाई दे जाए तो तब भी जिस तरह के आई थिंक ये जगह बन चुकी है, जिस तरह से हमें आसपास प्लेयर्स दिखाई दे रहे हैं, तो सूनर और लेटर आपको टीम गीके, टीम 4th राइव्स दोनों ही के ऊपर जो यहाँ पर खतरे के बादल मंडल आते हुए दिखाई दे रहे हैं। कि दोनों को इस मैच से एलिमिनेट होना पड़ेगा। दोनों को अनफॉर्चुनेटली कोई भी प्लेसमेंट पॉइंट जो है शायद इस मैच में मिल नहीं पाएगा। और जो एलिमिनेशन पॉइंट्स अभी तक आपने निकाल रखे हैं, टीम 4th राइव्स उनके पास 2 एलिमिनेशन हैं, गीके उनके पास 1 एलिमिनेशन है। सो यही जो एलिमिनेशन पॉइंट्स हैं प्रॉबली या इसमें 1-2 पॉइंट्स और ऐड करके ये जो टीम्स हैं वो हमें फिनिश करते हुए दिखाई दे सकती हैं। अगर जो बाकी टीम्स हैं उनकी तरफ भी टीम्स बढ़ती हैं तो, लेकिन टीम 4th राइव्स फिलहाल खैर वो यहीं पर ही रहना चाहेंगे। हुज़ैफा टीम 40 के अगेंस्ट टीम गीके के केविन, उनकी तरफ से कोई मूवमेंट हमें होते हुए नहीं दिखाई दिए। इन द मेन टाइम जब ये प्लेयर्स फाइट कर रहे थे, जब हमें ये फाइट बनते हुए दिखाई दी, कुछ और टीम है जो कि रोटेशन करना स्टार्ट कर चुकी हैं। इन रोटेशंस के अंदर भी आपको कुछ प्लेयर्स आमने सामने आते हुए दिखाई दे रहे हैं। टीम उल्फ है, टीम उल्फ के साथ साथ टीम फ्लैश के एक प्लेयर थे। फिर टीम उल्फ जहाँ पर जा रही है वहाँ पर ऑलरेडी टीम अलूला के प्लेयर्स मौजूद है। सो हर ही तरफ आई थिंक जो क्योस है वो आपको बनता हुआ दिखाई देगा। एंड टीम 4th राइव्स हुज़ैफा वंस अगेन इट विल बी, जिनकी डायरेक्शन में भी प्लेयर मूव करते चले जा रहे हैं। लेकिन दिस इज द रीप्ले जिसके अंदर आपको टीम ओजी के प्लेयर्स हैं, एक प्लेयर को टेक डाउन करते हुए दिखाई दिए। एक एलिमिनेशन पॉइंट टीम ने कंफर्म किया। इन दैट मीन टाइम जब ये सारी की सारी फाइट्स हम देख रहे थे ऑन द स्क्रीन, लेकिन AGAL एक मुश्किल यहाँ पर ख़त्म नहीं होती है टीम 4th राइव्स के लिए, और एक और स्क्वाड, एक और पूरी टीम वो यहाँ पर निकल कर आ जाती है। जी हाँ बिल्कुल, हुज़ैफा आखिरी प्लेयर थे जिनको लॉबी भेज दिया जाएगा। ऑल गेमर्स के प्लेयर्स की जानिब से एलिमिनेशन पॉइंट दर्ज किया जाता है, लेकिन ऑल गेमर्स जिस जगह पर आए हैं यहाँ थर्ड पार्टी होना मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा इनके ऊपर। गोड स्क्वाड के प्लेयर्स फूप्समैन एक साइड से कहीं ना कहीं क्रॉसर्स तंग करने की कोशिश में बैठे हुए इंतज़ार करेंगे। जहाँ ऑल गेमर्स ने अगर कवर छोड़ा तो डेफिनेटली एलिमिनेशन पॉइंट गोड स्क्वाड के पास जा सकते हैं, लेकिन पीछे से कहीं से उल्फ, कहीं से अरोरा मिल मिलाकर डैमेजेस देना चाहती है। RRQ भी यहाँ पर स्लैमिंग देने के लिए आ चुकी है। यहाँ केओस बनता हुआ दिखाई देगा। पॉइंट ऑफ कंटेंशन की बात करें तो वो ये जगह है जहाँ डिफरेंट साइड से डिफरेंट टीमें आती हुई दिखाई देती हैं। लेकिन चलें, उल्फ जिस साइड पर मौजूद है, दे आर फॉर नाउ ऑन द सेफ साइड, जहाँ उनके पास कवर तो मौजूद दिखाई देगा। पीछे उनके जोन का भी एक बड़ा एरिया है, लेकिन RRQ अप अगेंस्ट टीम अरोरा गेमिंग को भी इस मैच के अंदर मौजूद है, और वो आपके सामने ऑन द स्क्रीन आज
वैसे लेकिन अगर ना ही शायद उनके पास कुछ ग्रेनेड्स हैं, ना ही कुछ यहाँ पर की तरफ क्या बचा नहीं है कि फलां टीम एरेंगल के ऊपर ग्रेट स्पाइडरमैन के जी हाँ बिल्कुल, लेकिन यहाँ पर एक्सफोर्स रिजेक्ट की फाइट बनती हुई दिखाई देती है जहाँ सामने प्लेयर के पास चाकू मौजूद है. ही मैनेज्ड टू लैंड अ ब्लो ऑन बेबी. इन फैक्ट बेबी ने यहाँ पर ट्रेड नॉक भी निकाल रखा तो है, लेकिन यहाँ देखा जाए जब वो दिखाई दे जाएंगी सभी के साथ कलाब करिए. हाँ बिल्कुल, और ये जो गिव अवेज हैं वो भी आपके लिए रखे गए हैं, सो आप उनको भी विन कर सकते हैं. लेकिन आई थिंक नाउ इट्स टाइम कि हम हमारे थर्ड मैच के खत्म होने के बाद फोर्थ मैच की तरफ बढ़े, और फोर्थ मैच जो कि एरेंगल के मैप पर आपको होता हुआ दिखाई देगा एक बार फिर से. सो इस मैच के प्लेइंग पाथ की जानिब भी, और देखते हैं कि किस तरह से हमें टीम्स की तरफ से जो कमबैक्स हैं वो क्या आते हुए दिखाए. क्या हमें टीम फोर्थ राइज मोस्ट इंपॉर्टेंटली उनकी एक अच्छी परफॉर्मेंस से इस मैच में दिखाई देगी. सो प्लेयर्स 64 प्लेयर्स पर ये वो सारे वो नाम हैं जिन्होंने पिछले मैचेस के अंदर भी खेला है, वही इस मैच के अंदर भी जा रहे हैं. और अगर आप ओवरऑल स्टैंडिंग की बात करें सो फार तो टीम KRX दे आर एक्चुअली ऑन #1. उनके पास अच्छे पॉइंट्स की दूरी पर दिखाई दी जा रही है. टीम उल्फ है उनके पास फिर जाके 4 पॉइंट्स पर है. टीम फोर्थ राइज जो #4 पर मौजूद है, लेकिन ये जो 20 की लाइन है इसमें काफी सारे कंटेंडर्स हैं. 2 पर टीम निगमा गैलेक्सी, 21 पर टीम ऑल गेमर्स, टीम गो, टीम RQ के पास 20 पॉइंट्स हैं. तो नंबर 9 से लेकर नंबर 3 तक आप ऊपर की जानिब जाते हैं. तो सर ये 6 पॉइंट्स के डिफरेंस से आपको कम से कम 7 टीमें इस पॉइंट टेबल पर अभी तक के लिए जो वो दिखाई दे जाएंगी. सो आई थिंक यस ऐसा ही होना चाहिए कंपटीशन किसी भी टूर्नामेंट का. खासतौर पर अगर आप ग्रुप स्टेज की बात करें तो ऐसी फाइट्स हमें देखने को मिलनी चाहिए थी, जो कि आज के दिन पर इन टीम्स ने दिखाई भी है. लेकिन आई थिंक ऑन द वेरी राइट साइड, ऑन द बॉटम साइड अगर आप टीम KRX की बात करें तो ऐसा लगा कि शायद वहाँ पर हीट मार्केट्स बने हैं. कोई टीम तो ऐसे दिखाई नहीं दे रही है, कोई भी प्लेयर उनके पास नहीं दिखाई दे रहा है. लेकिन ये थोड़ी देर के अंदर में कंफर्म होगा कि आखिर कौन वहां पर आया था, किसको एलिमिनेट किया गया. इनफैक्ट टीम रिजेक्ट एक प्लेयर में देख पा रहा हूँ कि टीम रिजेक्ट इज द टीम जिनके एक खिलाड़ी इस मैच से अनफॉर्चुनेटली जहां प्लेयर्स अभी ग्लाइड कर रहे थे अपनी बिल्कुल जो अपनी जगहों की जानिब, अपने अपने ड्रॉप की जानिब, वो इस मैच से ऑलरेडी एलिमिनेट हो चुके हैं. जी हाँ बिल्कुल, लेकिन यहाँ पर एक्सफोर्स रिजेक्ट की फाइट बनती हुई दिखाई देती है जहाँ सामने प्लेयर के पास चाकू मौजूद है. ही मैनेज्ड टू लैंड अ ब्लो ऑन बेबी. इन फैक्ट बेबी ने यहाँ पर ट्रेड नॉक भी निकाल रखा तो है, लेकिन यहाँ देखा जाए अलोला स्पोर्ट्स क्लब, उनको देखा हमने चंद एलिमिनेशन पॉइंट्स अपने नाम दर्ज करते हुए नजर आते हैं. RJC की बात करें, एक एलिमिनेशन पॉइंट उन्होंने भी दर्ज किया, लेकिन रिवर्ब को एलिमिनेट करा लिया अर्ली ऑन फाइट्स में. चाहे किसी भी तरह से आप प्लेयर्स कमाएं तो वो अच्छा नहीं है, लेकिन जॉइन द उजुमाकी नारुतो इवेंट एंड ड्रॉ फॉर, आगे मैं पढ़ नहीं पाया, खैर ज्वाइन करें और जीतें जो भी है यहाँ पे जो भी मिल रहा है वो जीत जाएं. बट चलें GK स्पोर्ट्स की बात करते हैं. ऑन द अदर साइड वो भी एक अर्ली वन फाइट में आते हैं जहाँ उनके सामने गोट स्क्वाड मौजूद है. लास्ट मैच दोनों टीमों का अच्छा रहा, या चलें अगर कहा जाए कि गोट स्क्वाड का बहुत ही अच्छा रहा तो गलत नहीं रहेगा. गोट स्क्वाड एक अच्छे मैच के बाद अर्ली वन एग्जिट अगर ले लिया गया तो ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा. जी हाँ, और टीम गोट आई थिंक प्रेशर है टीम गोट के ऊपर, जस्ट लाइक टीम फोर्थ राइव्स के जब उन्होंने पहले मैच का विनर सेकंड इनफैक्ट अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई थी अलॉन्ग साइड टीम बी के, तो उनके ऊपर भी प्रेशर था कि आने वाला जो मैच है उसके अंदर हमने बहुत बेहतर खेल कर जाना है. लेकिन उसमें कोशिश जरूर की गई टीम की तरफ से, बट हमने देखा कि टीम फोर्थ राइव्स 4 पॉइंट्स पर ही उनको उस मैच से एलिमिनेट किया गया था. टीम उसके बाद अगर आप सेकंड मैच की बात करते हैं अरोरा गेमिंग जिन्होंने विनर सेकंड निकाला, सो द वेरी नेक्स्ट मैच आई थिंक वो आपको टॉप 5 में नहीं दिखाई दिए. तो ये जो कुछ चीज़ें हैं ये आपको दिखाई दे रही हैं कि एट टाइम्स आप पिछले मैच का विनर सेकंड करते हैं और अगला ही मैच जब आता है तो यहाँ तो मिनट हो जाते हैं. यहाँ पर अनफॉर्चुनेटली बाकी जो टीम्स हैं उनकी बहुत ज़्यादा नजरें यहाँ पर होने की वजह से आप उस मैच को खासा जो है उस पहले मैच की तरह जो है प्ले नहीं कर पा रहे होते. सो टीम गोट दे आर द वन जिनको आई थिंक अपने आप को भी के लिए यहाँ पर बचा कर रखना है, साबित कर रहे हैं कि वो एक बेस्ट टीम है. और जिस तरह से टीम हमें आई थिंक इम्प्रूव करते हुए दिखाई दी ओवर द टाइम इनकी तरफ से अच्छी से अच्छी ओवरऑल स्टैंडिंग रिप्लेसमेंट आती रही है. तो भी एक वो स्टेज है जहाँ पर आपको अपने आप को साबित करके जाना है. लेकिन GK वर्सेस टीम गोट के प्लेयर्स की तरफ से एक मोलोटोव थ्रो किया गया था रैग्नारॉक के ऊपर और उनको मोलोटोव जाके हमें हिट करता हुआ दिखाई दिया. मोलोटोव से डैमेज अच्छा खासा हुआ प्लेयर को, लेकिन इससे पहले कि वो नॉकआउट कर दिए जाते रैग्नारॉक ब्रोकन वॉल साइड पर आ जाएंगे. स्मोक का सहारा लिया जाएगा, फिर एक और स्मोक किया जाएगा. इन दैट मीन टाइम टीम गोट के जो बाकी प्लेयर्स हैं वो अब इनकी तलाश है वो खैर स्टार्ट कर देंगे. 3 यहाँ पर हैं, एक खिलाड़ी थोड़ा दूरी पर है जो कि बिल्कुल फंस चुके हैं टीम GK के दरमियान. सो 3-1 ऑन वन साइड, 3-1 ऑन द वेरी अदर साइड. और पहला एलिमिनेशन पॉइंट आखिर कौन लेकर जाएगा कुछ ही देर के अंदर ये फैसला होगा. ये गो टीम GK बनते हुए पहला नाम जिनकी तरफ से टीम गॉड के
फूप्समैन को अब एलिमिनेट किया जा चुका है। इस मैच में देखा जाए अगर किसी भी मैच के मुकाबले में तो अर्ली ऑन फाइट्स कुछ ज़्यादा ही होती हुई नजर आएंगी। की स्क्वाड पुश करता हुआ नजर आता है। They're trying to go all in. Easy for Bad Boy को गिरा दिया जाएगा। Now it's just the last man standing जो कि फॉल बैक करना चाहते हैं। शायद उन्हें फॉल बैक करने की इजाज़त ना दी जाए। मॉक्सी वो प्लेयर हैं जिनको टैग किया जा रहा है, दूर दराज से डैमेज देने की कोशिश की जा रही है और बुलेट्स की निक भी करती हुई नजर आती हैं। 1 से 2 गोलियां और लगी तो शायद मॉक्सी यहाँ जा सकते थे इस मैच से बाहर, लेकिन जो हुआ है गोट के साथ ये होना नहीं चाहिए था। पिछले मैच के अंदर बहुत जान मारी गई। पिछले मैच के अंदर इस टीम की जानिब से चिकन डिनर निकाला गया। कोशिश की गई कि अपने आपको पुश कराया जाए पॉइंट्स टेबल के ऊपर जितना वो ऊपर ला सकते हैं, लेकिन अगले ही मैच में अनफॉर्चुनेटली ये टीम अपने प्लेयर्स गवाती हुई नज़र आती है और अब आखिरी प्लेयर पर आ जाएंगे। यानी लास्ट मैच की परफॉर्मेंस इनकी खू खाते चली जाएगी और प्रेशर वापस से इन पे आता हुआ नज़र आएगा। ऑल्दो होना तो ये चाहिए कि जो टीम अच्छा खेली है अगले ही मैच में वो उस परफॉर्मेंस को कंटिन्यू करती हुई नज़र आए, लेकिन गोट के केस में ऐसा नहीं होता। आखिरी प्लेयर हैं जो कि शायद थोड़ा ही देर सर्वाइव कर पाएँ, ज़्यादा भी किया तो टॉप 5 में आ सकते हैं, इससे ज़्यादा और वो कुछ नहीं कर सकते। वेल लेट्स सी एंड औरोरा अगेन हमारे सामने वो भी आ जाएंगे और एक एक करके जिस तरह से टीम्स की बात चल ही रही है। सो टीम औरोरा गेमिंग ऑब्वियसली जिस तरह से अब वो टॉप 2 के अंदर मौजूद हैं, सो दे आर एक्चुअली अंडर अ बिट ऑफ प्रेशर एज वेल कि आपको अपने इस टॉप 2 के अंदर जो है वो पोजीशन को मज़ीद मुस्तहकम बनाना है। कोशिश कर रही है कि आप डिसेंट जो पॉइंट्स है वो ऑनवर्ड्स निकालते चले जाएँ, बिकॉज अगर आप दिन के स्टार्ट की बात करें और अभी तक की इंप्रूवमेंट की बात करें तो थिंक बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट आई है और अब थोड़ा कंसिस्टेंट कहीं ना कहीं टीम हमें जो है वो होते हुए दिखाई दे रही है। क्योंकि पहला मैच 6 पॉइंट्स था, उसके बाद जो इन्होंने मैच खेला 17 पॉइंट्स का था, फिर उसके बाद लास्ट मैच जब आया वो भी 7 पॉइंट्स का आपको होता हुआ दिखाई दिया। सो औरोरा समहाउ आई थिंक जो बेस लाइन है वो जो कम से कम पॉइंट्स के लिमिट है वो 6 पॉइंट्स से टीम अब आपको नीचे जो वो देखे जाते हुए नहीं दिखाई देने वाली। प्रॉबली दे विल प्ले द लेवल बेस्ट, लेकिन ऐसा हो सकता है कि टीम वोल्फ ई-स्पोर्ट्स के होते हुए हमारी बाकी जो टीम्स उनके होते हुए आपको कुछ मुश्किलात हैं वो इस टीम के नाम के साथ भी इस नाम के सामने भी जो आते हुए दिखाई दे जाएँ। लेकिन टीम वोल्फ ई-स्पोर्ट्स सो फार वो भी नंबर 3 पर मौजूद हैं, 26 पॉइंट्स इस टीम के पास। और सर्कल की बात करें तो सो फार टीम वोल्फ ई-स्पोर्ट्स सर्कल के अंदर है। टीम की तरफ से पुचिंकी के आसपास रोटेशन की जा रही है, गाटका और पुचिंकी के बिल्कुल दरमियान से जा रहे हैं, जहाँ पे सामने की तरफ टीम निग्मा गैलेक्सी के प्लेयर्स हो सकते हैं और फाइट बन सकती है अगर थोड़ा और आगे जाया गया। लेकिन टीम वोल्फ ई-स्पोर्ट्स वो आगे जा रहे हैं, उनको नहीं पता है कि सामने कौन मौजूद है। प्लेयर्स का एक ही फोकस है, दैट इज़ ऑब्वियसली कि अपने आप को स्टॉप पर लेकर जाना है, उस रिज पे जाके शायद थोड़ा स्टे करना है। इनफैक्ट इस तरह के मौके पे स्टे करना तो यही चाहिए, ना ही आपका प्लेयर्स इस तरह से एक्सपेक्टेड होते भी हैं कि क्वाइट अर्ली आप इस तरह से जो मैच के 7 मिनट के अंदर अंदर ही जहाँ पे अभी आपने लूट करनी है, जहाँ अपने व्हीकल्स को अपनी जो है मज़ीद कोशिश करनी है कि उसको रिफ्यूल कर लिया जाए, कुछ ज़्यादा व्हीकल्स अपने लिए यहाँ पे हासिल कर ली जाएँ। आप आउट ऑफ नोवेयर अपने आप को जो रिज पर लेकर जाए और आप इंतज़ार करें कि कोई टीम आए और हम इतना जल्दी जो उसको मैच से एलिमिनेट कर पाएँ। सो येस मोस्ट लाइकली आपको प्लेयर्स हैं अपने कंपाउंड्स की तरफ ही बढ़ते हुए दिखाई देंगे। कंपाउंड्स ऑलरेडी उन्होंने यहाँ पर सेलेक्ट कर रखे हैं, वहाँ पर ये रोटेशन हमें सर अंजाम देते हुए दिखाई देंगे प्लेयर्स। एंड टीम अलूला उनमें से एक नाम वंस अगेन, और अलूला अभी तक अगर आप इनके परफॉर्मेंसेस की बात करें तो सो फार सो गुड। अनफॉर्चुनेटली 6 पॉइंट्स निकाले हैं टीम अलूला ने और इस मैच का 1 पॉइंट डाल के इनके पास 7 पॉइंट्स हैं। सो ये जो 7 पॉइंट्स हैं कंसिडरिंग कि ये चौथा मैच है सो ज़्यादा बेहतर नहीं है, इनफैक्ट काफ़ी ख़राब तर है टीम के लिए और सबसे नीचे होने की वजह से ज़्यादा प्रेशर भी है कि अपने आप को इस मैच के अंदर एटलीस्ट जो है 1 पॉइंट को कन्वर्ट करना है डबल डिजिट्स के अंदर। और अगर ऐसा हुआ तो फिर एक बड़ा जंप जो है वो यकीनन यहाँ से भी आपको आता हुआ दिखाई दे सकता है। सो टीम अलूला जी अंडर सम प्रेशर, लेकिन सर्कल फाइनली शिफ्ट लेकर जाएगा और 1 ही सेकंड के अंदर नेक्स्ट स्टेज हमारे सामने आ जाएगा। देयर यू गो, स्टेज 2 बन चुका है। जी हाँ बिल्कुल, सर्कल का शिफ्ट यहाँ पर आता है, बहुत ही ज़्यादा डिसाइसिव शिफ्ट यहाँ दिखाई देगा, जिससे कि बात तो वाज़ेह होती है कि सर्कल हमें कहीं ना कहीं ये जो हिल साइड है उसी साइड पर जाता हुआ नजर आएगा। फेरी पियर साइड पर भी जा सकता है, चांसेस हैं, लेकिन इतना हार्ड शिफ्ट शायद हम एक्सपेक्ट नहीं करें। ऑन दी अदर साइड अगर देखा जाए टीमों की तरफ से जो जमे गफीर लगाया जाता है वो फेरी पियर साइड पर ही लगाया जा रहा है। इवन अगर आप देखें कुछ टीमें हैं जो पुचिंकी के आउटस्कर्ट्स में अभी भी नज़र आ रही हैं, जो हिल साइड है वहाँ पर होल्ड किए हुए हैं। सो कहीं ना कहीं इसकी प्रेडिक्शन करना बहुत मुश्किल है, ये सर्कल कहाँ जाएगा ये आप एंटिसिपेट नहीं कर सकते। यू हैव टू मेक श्योर कि सर्कल में जो भी आपको जगह मिली है उसी को अपने लिए जन्नत मानकर, उसी को अपने लिए बहिश्त मानकर आप वहीं पर रहें, खेलें अपने लिए। लेकिन चलें, 4th राइज एक फाइट में आती हुई नजर आ सकती है, बिकॉज फरिया
दे आर प्लानिंग टू वेकेट दिस कॉम्पाउंड। इस जगह से वो निकलना चाहते हैं, बाहर जाना चाहते हैं। सामने शायद उन्हें अंदाज़ा नहीं है दैट फोर्थ राइज इज देयर, लेकिन फलक क्या उन्हें अंदाज़ा है कि फ्रिया यहाँ पर आ रही है? अगर तो बैकस्टैब मिलता है फिर तो हैरानी, फिर तो परेशानी होगी। स्प्रे नहीं देना, इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, इन्फॉर्मेशन मिलेगी फ्रिया को कि यहाँ पर एक टीम मौजूद है। दे कैन पॉसिबली पुश हियर, वो इस साइड पर आ सकते हैं और दो एंड्स पर बिजी रहना बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहेगा फोर्थ राइज के लिए। सर्कल के हिसाब से ये जगह बहुत शानदार अभी तक के लिए तो नहीं है, लेकिन फोर्थ राइज एंड फरिया शायद होता हुआ दिखाई दे, बिकॉज यू कैन सी दैट प्लेयर्स आर नाउ, उनको इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है और वो थोड़ा सा अब केयरफुल हो रहे हैं, थोड़ा सा ज़रा संभल रहे हैं। पहले तो गाड़ी लेकर रोटेट करना चाहते थे, लेकिन अब थोड़ा सा इंतजार किया जाएगा फरिया की जानिब से। हाँ बिल्कुल, और इनफैक्ट जहाँ पे भी ये फाइट हमें चलते हुए दिखाई दे रही है, टीम फोर्थ राइज, टीम टीटी वर्सेस टीम फरिया स्पोर्ट्स, कुछ शायद अगर आपको तो इनफैक्ट याद होगा कि हमें इसी जगह पर जो है वो बहुत सारी मेमोरीज हैं फाइट्स की, जहाँ पे टीम एस्ट्रा अकेडमी से आई थिंक एक हिस्ट्री जो है हमारी स्टार्ट हुई थी, टीम आईआईटी स्पोर्ट्स वर्सेस एस्ट्रा अकेडमी, और उसके बाद कुछ जो प्लेयर्स हैं बिकॉज यहाँ पे टीम फोर्थ राइज के अंदर भी प्ले कर रहे हैं, सो इसीलिए मुझे जो यहाँ पे फ्लैशबैक्स आ रहे थे किस तरह की जगह पर प्लेयर्स के पास एक्सपीरियंस है कि आपने फाइट जो है वो लेनी है, तो आपको क्या करना चाहिए, और अगर आप फाइट लेने के लिए यहाँ पर आए हैं तो यू जस्ट हैव टू बी वेरी केयरफुल कि आप अगर एक साइड पर फायर करते हैं तो दूसरे एंड से कोई टीम जो है वो आपके ऊपर फायर कर सकती है। आप सारा यहाँ पर जो है सिनेरियो के अंदर सैंडविच हो सकते हैं। प्रोबेबली टीम फोर्थ राइज, इनको इस चीज़ का बखूबी अंदाज़ा होना चाहिए। एंड लेट्स सी आने वाले टाइम में टीम फोर्थ राइज को किस तरह से जो है हमें डील करते हुए दिखाई देगी। लेकिन इन द किल पे टीम ओजी वो एक एलिमिनेशन पॉइंट कंफर्म करेंगे इस मैच के अंदर, फर्स्ट एलिमिनेशन पॉइंट फॉर देम कि उन्होंने इस मैच में भी कंफर्म कर रखा है। लेकिन अगर आप पॉइंट्स ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, हटकर इस फाइट को देखें टीम गीके वर्सेस टीम अरोरा गेमिंग, वो यहाँ पर हमें होता हुआ दिखाई दे जाएगा। गीके वो रोटेशन करके जाना चाह रहे थे, टीम अरोरा गेमिंग पहले ही से यहाँ पर मौजूद है, लेकिन गीके उन्होंने बिल्कुल परख लिया, उनको पता चल गया कि प्लेयर्स यहाँ पर मौजूद है, उन्होंने इस गाड़ी का रुख बदला और अब जहां पर वो जाएंगे वहां से बैक स्टैब उनको किया जाएगा टीम अरोरा गेमिंग की तरफ से। लेकिन क्वाइट अनफॉर्चुनेटली क्योंकि एक अच्छा खासा कवर है यहाँ पे प्लेयर्स के पास, तो जो डैमेज है उस व्हीकल के होते हुए, हावरक्राफ्ट के होते हुए कुछ भी नहीं हो पाया। well, गीके के पास अभी टाइम मौजूद है, वो रुक भी सकते हैं यहाँ पर, इंतज़ार भी कर सकते हैं। सेकेंडली उनकी तरफ से वापस से जाकर जो दूसरा ब्रिज है वहाँ से भी रुख बनाया जा सकता है, बट आई बिलीव गीके यहीं से जाना चाहेगी। दे आर नॉट इंटरेस्टेड। वहाँ पर गीके के पीछे हमने एक और प्लेयर देखा, शायद गोड स्क्वाड के वो एक प्लेयर हैं जो कि सरप्राइज करते हुए गीकी को दिखाई दे सकते हैं। अभी के लिए देखा जाए तो गोड के आखिरी प्लेयर ही मौजूद हैं साइड के ऊपर, जो कि सोने पे सुहागा सर्कल से भी बाहर हैं। उनके सामने गेट कीप भी लगा हुआ है, उनके सामने दो टीमें मौजूद हैं जो कि मेरे ख्याल से इंडिकेशन तो यही कर रही है कि गोड ज़्यादा कुछ कर नहीं पाएगी। लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए ऑल गेमर्स हमारे सामने, ऑल गेमर्स फुरिया के अगेंस्ट आती हुई नजर आती है, सर्कल के सेंटर के बिल्कुल करीब है, सर्कल के एक्सट्रीम सेंटर में फोर्थ राइव्स के पास वो कॉम्पाउंड्स मौजूद हैं। जिस जगह पे 40 थी वहाँ ऑल गेमर्स आ जाती है, लेकिन फोर्थ राइव्स यू नीड सम डिफरेंट स्ट्रैटेजी, सम यूनिक स्ट्रैटेजी, बिकॉज ये कॉम्पाउंड्स मैंने आज तक किसी भी टीम को इन कॉम्पाउंड्स को होल्ड करते हुए नहीं देखा। फुल ऑन केओस होता है जब भी सर्कल का सेंटर यहाँ बनता है, स्लैमिन्स पे स्लैमिन्स आते हैं और तीन टीमें इन कॉम्पाउंड्स के अंदर, इस एरिया के अंदर आकर अपने लिए जगह पा सकती है, पनाह ले सकती है। और एक ही टीम का स्प्लिट में रहकर इस जगह को होल्ड करना ये रिस्की ज़रूर है, बट फोर्थ राइज इज ट्राइंग। क्या वो कामयाबी के साथ इस जगह को होल्ड कर पाते हैं? अगर सर्कल देखा जाए पोर्टल, तो सर्कल के हिसाब से वो जगह जहां फोर्थ राइज है दैट इज द डेड सेंटर। लेकिन दूसरी साइड पर उल्फ वर्सेस ओजी, दोनों आमने सामने हैं। एक तरफ वुल्फ है, एक तरफ ओरंगुटैन है। लेट्स सी इस लड़ाई के अंदर कौन जीत पाता है, या ये लड़ाई होगी भी या नहीं होगी। मिनी मैप की तरफ देखा जाए तो उल्फ के एक प्लेयर गाड़ी घुमाते हुए साइड पर आ रहे हैं। उल्फ को अंदाजा हो चुका है दैट ओजी इज हियर और अब शायद एक दूसरे से फाइट लेते हुए नजर आएंगे टीमें। उल्फ के प्लेयर ग्रेनेड फेंकते हुए नजर आएंगे। एरन गाड़ी से उतरते हैं, एरन को पकड़ लिया जाएगा। नारू व्हाट अ ब्यूटीफुल नॉकआउट, पहला नॉकआउट दर्ज किया जाएगा। केच को पकड़ लिया जाता है, दूसरा नॉकआउट भी दर्ज कर दिया जाएगा, लेकिन आतंकी इंस्टेंट ट्रेड ऑफ हो जाएंगे और टीम ओजी अपना प्लेयर वो भी खवाती हुई नजर आती है। उल्फ के बाकी प्लेयर पीछे से आएंगे, सिचुएशन टर्न अराउंड करेंगे। उल्फ स्पोर्ट्स अपने नाम करेगी मजीद एक और नॉकआउट को और अब AKOP के ऊपर जिम्मेदारी है। उनके साथ साथ विज़गॉड पीछे रहेंगे, लेकिन उल्फ की तरफ से यूटिलिटीज डंप की जाती हैं। फॉल बैक करने का मौका मिला तो था AKOP को, लेकिन उन्हें पकड़ लिया जाएगा गेमिंग स्टार के हाथों और ओजी इस मैच से बाहर होती भी नजर आ सकती है हमें, लेकिन उससे पहले उल्फ स्पोर्ट्स इस मैच से बाहर हो जाती है।
हाँ जी हाँ, और थोड़ी दूरी पर आई थिंक टीम ओजी वो भी स्मार्ट से आपको एलिमिनेट होते हुए दिखाई दे सकते हैं, लेकिन थैंकफुली फॉर देम कभी कभी एक सोलो प्लेयर टीम के स्मार्ट में सर्वाइव कर रहे हैं। और इस फाइट के साथ साथ टीम अरोरा गेमिंग वो भी फाइट में आते हुए दिखाई दे रहे हैं अलॉन्ग साइड टीम गीके, जिनके प्लेयर बिल्कुल सामने मौजूद हैं। ग्रेनेड्स यहाँ पर एक्सचेंज किए जाएंगे, लेकिन अरोरा उनको एलिमिनेशन पॉइंट मिलना था, चाहे वो ग्रेनेड से मिल जाए, चाहे वो यहाँ पर फाइल्स की जद मिलाकर पिकअप कर दिया जाए। देयर इट इज, टीम अरोरा गेमिंग के ज़्यूल आई थिंक वो प्लेयर बने जिन्होंने इस एलिमिनेशन पॉइंट को कंफर्म किया। इन टोटल टीम का 3rd पॉइंट आया इस मैच में, और अब जहां ये फाइट हमने समअप होते हुए देखी, टीम गोट वो इस मैच से एलिमिनेट हो जाएंगे। टीम ओरंगटन थोड़ी देर पहले जो आपको फाइट में जाते हुए दिखाई दे रहे थे, जिन्होंने एक डिसेंट फाइट अगेंस्ट टीम वोल्फ स्पोर्ट्स हमें करके दिखाई, लेकिन उसके बाद टीम गेमिंग स्टार का आ जाना, टीम ओजी का अपने प्लेयर्स को लूज करना, और उसके बाद एक सोलो प्लेयर से अब इस मैच से बाहर चले जाना। सो सारी मेहनत है वो यहाँ पर हमें जो उनका कुछ भी एक एग्जैक्ट यहाँ पर रिजल्ट टीम डिमांड कर रही थी या टीम का एक टारगेट था, वो टीम यहाँ पर जब हासिल नहीं कर पाएगी। इन 3 पॉइंट्स तक की टीम रुक जाएगी, लेकिन टीम अल-उला वर्सेस टीम गेमिंग स्टार आई थिंक एक के बाद एक फाइट, और वाकई में जो क्योस इस मैच का वो एज कम्पेयर टू द लास्ट मैचेस आपको कुछ ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। स्टार्ट से जो फाइट्स हैं होती चली जा रही हैं, एक के बाद एक फाइट आपके सामने आ रही है, और थोड़ी देर में जहाँ हम एक फाइट की बात करते हैं उससे यहाँ पर जैसे आप दूसरी साइड पर जाते हैं तो आपको एक परफेक्ट स्क्वाड फाइट है वहाँ पर भी तैयार दिखाई देती है। दिस टाइम अराउंड टीम एक्सफोर्स रिजेक्ट्स वो फाइट में जरूर गए थे, लेकिन वो भी इस मैच से एलिमिनेट हो चुके हैं। वॉली साइड पर देखा जाए गेमिंग स्टार वर्सेस नगमा गैलेक्सी वर्सेस अल-उला, ये टीमें आपस में लड़ती हुई नजर आ सकती हैं। गेमिंग स्टार के तो शायद आखिरी प्लेयर ही हैं जो कि पीछे से ब्लू जोन का डैमेज लेंगे। सामने उला स्पोर्ट्स मौजूद है, किसी और साइड पर जाएंगे तो नगमा गैलेक्सी वहां दिखाई देगी, लेकिन सेटन उन पर स्प्रे दिया गया। क्लॉस की जानिब से गलती की गई, एंड क्लॉस की गलती भारी पड़ेगी। गेमिंग स्टार के प्लेयर जोन के बाहर से आएंगे, ट्रेड लिया जाएगा, नॉकआउट दर्ज किया जाएगा। यूसुफ एक और प्लेयर गिराएंगे। यूसुफ क्या कर रहे हैं जोन के बाहर से? ये 3rd पार्टी उला स्पोर्ट्स की कमर तोड़ती हुई नजर आती है, एंड उला स्पोर्ट्स क्लब अपने आखिरी 2 प्लेयर्स पर आ जाती है, जहां पर क्लॉस तो ब्लीड आउट कर रहे हैं, लेकिन बाकी 2 प्लेयर्स को देखना है। यासिर हमें सामने नजर आते हैं जो कि शायद रिवाइवल देना चाहेंगे, लेकिन यूसुफ रैंडम फायर्स के चलते इस मैच से बाहर हो जाएंगे। क्विक के हाथों ये एलिमिनेशन पॉइंट कंफर्म किया जाएगा, लेकिन उला शायद अपने प्लेयर को नहीं बचा पाएंगे, और जाने से पहले जो कमाल करना चाहते थे गेमिंग स्टार के प्लेयर वो कर पाते हैं। लेकिन दूसरी साइड पर RRQ वर्सेस अरोरा की फाइट बनेगी, जहां पर ट्रेड नॉक निकाला जाता है रिफर्स की जानिब से, लपार को गिरा दिया जाएगा। आखिरी 2 प्लेयर्स पर बात आ जाती है अरोरा गेमिंग के, लेकिन जेनफोर्स भी यहाँ पर आएंगे। रिफर्स उनके क्रॉस सेल जेनफोर्स पर बनेंगे, गाड़ी लेकर वो निकलना चाहते थे इस जगह से, और एक शैक को अपने लिए फिलहाल के लिए सेफ साइड मानकर इस जगह पर आया तो जाएगा, लेकिन फायर वही गलती जो कि हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। फायर गलती करते हैं, ज़रूर पनिशमेंट देंगे, एंड अरोरा विल बी बैक ऑन देयर 3 प्लेयर्स अलाइव। लेकिन DRX इस सारी जगह पर स्काउट कर रही है, दे आर आल्सो लुकिंग फॉर एनी ओपनिंग्स, और अगर कोई नॉकआउट दर्ज किया गया अरोरा के ऊपर, अरोरा ने अलाउ किया कि DRX नॉकआउट निकाले, DRX डेफिनेटली यहां आकर स्लैमिंग देती हुई नजर आएगी। हाँ बिल्कुल, और आई थिंक हाई चांसेस के टीम DRX वर्सेस टीम अरोरा आने वाले टाइम के अंदर हमें जो फाइट है वो होते हुए दिखाई भी दे जाए, बिकॉज एक टीम वो सर्कल से बाहर है, दूसरी टीम उनके एक जो प्लेयर हैं वो सर्कल के अंदर पहले जाते हैं, उसके बाद दूसरे प्लेयर अब सर्कल में चले जाएंगे। टीम DRX गेमिंग आई थिंक अब आपको सर्कल ही को जो है वो प्रेफर करते हुए दिखाई देगी, बिकॉज सर्कल ऑलरेडी हमें स्टार्ट होता हुआ दिखाई दे चुका था। प्लेयर्स को सर्कल के अंदर अपने आप को यहाँ पर लेकर जाना था, और जहाँ ये सर्कल की सारी फाइट चल रही थी, सर्कल का शिफ्ट हमारा हो रहा था, वहाँ पर अब समहाउ फाइट भी हो जाएगी। सो फाइट भी होती है, सर्कल का शिफ्ट भी हो जाता है, लेकिन टीम अल-उला अनफॉर्चुनेटली वो शायद आपको सर्कल के अंदर ना जाते हुए दिखाई दे, बिकॉज एक और प्लेयर इस मैच से एलिमिनेट हो चुके हैं, एंड नाउ टीम अल-उला दे आर सर्कल बिल्कुल ओपन है। DRX वर्सेस टीम अरोरा वो फाइट पे वापस आएंगे, और यहाँ पर भी अरोरा गेमिंग क्वाइट अनफॉर्चुनेटली आई थिंक अब उनके लिए खासी मुश्किल है। और जो फाइट की आप बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले कि टीम DRX वर्सेस टीम अरोरा गेमिंग की फाइट होगी, वो फाइट तो हो रही है, लेकिन टीम अरोरा गेमिंग आई डोंट थिंक सो कि उनके लिए इस फाइट को विन करना यहाँ से जो है वो पॉसिबल बन पाएगा। फिलहाल के लिए अरोरा गेमिंग अपना प्लेयर गवाती हुई भी नजर आती है, लेकिन 4th राइज उनको हमने देखा कि शायद वो इसी साइड पर इंटरेस्टेड दिखाई देंगे, शायद वो यहाँ 3rd पार्टी करने के लिए आए, लेकिन यहाँ देखा जाए ज़ियोल को पकड़ लिया जाएगा ऑक्सी की जानिब से। क्या ही शानदार स्लैमिंग देखने को मिला। अरोरा गेमिंग जाने से पहले एक एलिमिनेशन पॉइंट कंफर्म किया, एक प्लेयर को नॉकडाउन किया जाता है, लेकिन ये काफ़ी नहीं होगा। अरोरा पॉइंट्स टेबल पर देखा जाए फिलहाल के लिए हमें फर्स्ट पर नजर तो आती है, #1 पर नजर तो आती है, लेकिन DRX उनका सर्वाइव करना
जो कि अब KRX बन चुके हैं, उनका सर्वाइव करना, एलिमिनेशन पॉइंट्स निकालना अरोरा को डीथ्रोन करने के लिए काफ़ी होगा। लेकिन RRQ जोन के अंदर से थर्ड पार्टी करते हुए दिखाई देंगे। अनफॉर्चुनेटली KRX के जो एक प्लेयर थे उनको फिनिश कर दिया जाता है। KRX इज डाउन टू द लास्ट 2 प्लेयर्स, उनके पास HP तो काफ़ी लो है, लेकिन जहाँ भी जाएंगे दे विल फाइंड समवन। अगर वो आगे जाते हैं ऑल गेमर्स के हत्ते चढ़ सकते हैं। थोड़ा सा वेस्टर्न साइड पर गए तो वहाँ 4th राइज है। KRX का बचना बहुत मुश्किल दिखाई देता है। आई बिलीव यहाँ से KRX बच ही नहीं पाएगी। हाँ, जाने से पहले RRQ के जेनफोर्स का एलिमिनेशन पॉइंट निकाला जा सकता है। Well, let's see, and definitely I think जो एलिमिनेशन के पॉइंट्स हैं वो आपको निकालने चाहिए। आपको ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर पॉइंट्स दरकार भी हैं अगर आप अपने आप को टॉप 1 पर लेकर जाना चाहते हैं। ना सिर्फ टॉप 1 पर जाना है, बल्कि अब बात आ रही है कि आपने लीड बनानी है, और लीड बनाने के लिए आई थिंक टीम KRX दे आर डेफिनेटली वेरी वेरी क्लोज कि इस मैच का जो विनर सेकंड विनर है, अगर किसी तरह से यहाँ से टीम वो निकाल जाती है, क्योंकि अब नंबर्स थोड़े से कम है, तो इसलिए बात यहाँ 50-50 आपको होते हुए दिखाई दे जाएगी। लेकिन स्टिल अगर कुछ डिसेंट वो पॉइंट्स मजीद निकाल जाते हैं इन टर्म्स ऑफ प्लेसमेंट अलॉन्ग साइड दीज एलिमिनेशंस, तो यकीनी तौर पर जो चैलेंज है वो ऑलरेडी #1 के लिए बाकी टीमों के लिए यहाँ पर सेट कर दिया जाएगा। लेकिन RRQ जिनके जेनफोर्स आखिरी खिलाड़ी मौजूद थे, थोड़ी देर पहले बात की गई कि शायद इनका जो एलिमिनेशन पॉइंट है वो कंफर्म करे टीम KRX, वो तो यहाँ पे कंफर्म नहीं करेंगे, लेकिन उन्होंने पॉइंट कंफर्म किया। और अब हमें सर्कल के रोटेशन होते हुए दिखाई देंगी। टीम 4 थ्राइव्स वो यहाँ पर सर्कल के बाहर है, टीम 4 थ्राइव्स के बिल्कुल नीचे टीम AG अलायंस के साथ टीम KRX के बिनी वो सर्कल में जाना चाहेंगे, लेकिन बिनी जैसे वो रोटेशन करके जाते हैं उनको पकड़ लिया जाएगा। ही गेट्स नॉक्ड आउट, स्ट्रेट अवे फिनिश भी होगा। और टीम KRX जहाँ पे 2 थे अब 1 खिलाड़ी है, और शायद थोड़ी ही दूरी पर ये भी इस मैच से जाने वाले हैं। दे वी हैव इट दो। टीम AGAL वो भी इस मैच से में यहाँ पर कुछ प्लेयर्स गवाते हुए दिखाई दे जाएगा लॉन्ग साइड, लेकिन वी आर डाउन टू द टॉप 6 प्लेयर्स, टॉप 6 टीम्स इन फैक्ट दो, एंड 23 प्लेयर्स अलाइव। टीम 4 थ्राइव्स वो फाइट में आ जाते हैं और सामना करने के लिए रहेगी टीम ऑल गेमर्स, जिनके 1 खिलाड़ी वो पहले ही यहाँ पर गिरा दिए जा चुके हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने, ऑल गेमर्स के 2 प्लेयर्स गिरा दिए जाएंगे। गाड़ी लेकर फ्लावर एज के ऊपर पुश किया जाएगा, ग्रेनेड्स पीछे से आते हैं ऑल गेमर्स के लिए, उनको फिनिश कर दिया जाता है। लेकिन मेपल क्या गलती करेंगे, अपने ग्रेनेड से अपने ही प्लेयर को एलिमिनेट किया जाएगा। एंड देयर वी हैव इट, 4 थ्राइव एलिमिनेट्स ऑल गेमर। और अब उन्हें जोन में जाना है। फलक काफी लो HP दिखाई देते हैं, अपने आप को हील करना चाहेंगे। सामने सर्कल है, दिक्कतें इतनी आएंगी नहीं, लेकिन फुरिया के प्लेयर जो कि गेट कीप कर रहे हैं उनके ऊपर नॉकआउट्स निकालने पड़ेंगे। उज़ैफा यू गोटा वॉच आउट, आपको अपना एलिमिनेशन पॉइंट नहीं देना। अगला सर्कल भी 4 थ्राइव्स के बिल्कुल सामने दिखाई देता है। रीसेट होने का टाइम मिलेगा, उसके बाद आगे बढ़कर एलिमिनेशन पॉइंट्स निकाले जा सकते हैं। लेकिन फरिया जिस तरह से गेट कीप लगा रही है, 4 थ्राइव्स यहां पर कुछ कमाल करना पड़ेगा। स्लैमन नहीं देना, इन एनी ऑफ द केस स्लैमन नहीं देना। फुरिया के पास जगह जोन में मौजूद तो है, लेकिन उसके अलावा 4 थ्राइव्स के पास जो हाइट है यहाँ वो हर टीम के सामने विजिबल हैं। कोई टीम कितना भी दूर हो, उनको 40 के प्लेयर्स आउट इन दी ओपन नजर आ सकते हैं और वहाँ वो थर्ड पार्टी कर सकते हैं। लेकिन 4 थ्राइव्स आई ट्रूली बिलीव कि उनको भी इस चीज़ का अंदाजा तो है। बट इन द मीन टाइम बात की जाए सर्कल के हिसाब से जिन टीमों ने आगे आना है, निग्मा गैलेक्सी को सर्कल में जगह मिल सकती है। फ्लैश को आगे आकर फुरिया से फाइट लेना पड़ेगी, और फ्लैश ऐसा कर भी रही है जहां पर फुरिया के ऊपर यूटिलिटीज डंप की जाएंगी इनकी जानिब से। जी हाँ, एंड टीम फुरिया वंस अगेन दे आर इन द टॉप 5, जहाँ पर ये 5 टीम को करना है। टीम फ्लैश जिनकी हम बात कर रहे थे कि उनका ये मैच शायद बेहतर हो सकता है। निरंगल का मैच जब हम देखते आ रहे हैं तब टीम फ्लैश अनफॉर्चुनेटली आपको कुछ ज़्यादा ऐसा जो बड़ा रिजल्ट है वो हासिल करते हुए नहीं दिखाई दे। लेकिन दिस इज द मैच जहाँ पे टीम के पास चारों प्लेयर्स मौजूद हैं। टीम के पास अभी के लिए 2 एलिमिनेशन पॉइंट्स बनता हुआ दिखाई दे रहा था। ये फाइट टीम को विन करनी चाहिए, लेकिन क्या टीम यहाँ पे मिसलामन करके जब कुछ प्लेयर्स हैं डेंजर करते हुए दिखाई देगी। टीम निग्मा गैलेक्सी इन द मीन टाइम वो कुछ प्लेयर्स को नॉकआउट कर रहे किल फीड के अंदर, लेकिन टीम फ्लैश वो टीम थर्ड टॉप गेमिंग TTG के प्लेयर्स हैं वो इनफैक्ट अगेंस्ट टीम निग्मा गैलेक्सी आपको एलिमिनेट होते हुए दिखाई दे जाएंगे। राइट है टीम फुरिया, उनके अयाला उनको एलिमिनेट किया गया। साइलेंस वो इस मैच से बाहर जा चुके हैं, और टीम फ्लैश आई थिंक जो लग रहा था कि शायद एक बहुत बड़ी मिस्टेक है टीम के एंड से, थैंकफुली कि टीम उसको यहाँ पे कवर अप कर जाती है। और अब टीम फ्लैश अपने चौथे खिलाड़ी को भी जैसे आपको रिवाइव करते हुए दिखाई देगी। दे विल बी बैक टू द फोर स्टैंडिंग। टीम 4 थ्राइव्स, टीम फ्लैश, टीम निग्मा गैलेक्सी एक दफा फिर से आपको 3 टीमें फोरमैन होते हुए दिखाई देंगे। एंड टीम निग्मा गैलेक्सी अभी पिछले ही मैच के अंदर आपको कुछ ऐसे ही मनाजर यहाँ पे दिखाई दे रहे थे कि हमारे सामने टीम गोट का स्क्वाड था, निग्मा गैलेक्सी उनके खिलाफ मौजूद थी, तब जो टीम का विनर सेकंडर है वो आपको होता हुआ नहीं दिखाई दिया था। लेकिन क्या इस मैच में उसको कवर अप किया जा सकेगा? आई थिंक कुछ ही देर के अंदर इसका जवाब भी हमें मिलने वाला है।
वेल निग्मा गैलेक्सी को देखा जाए, अगर सबसे पहला चैलेंज 4th राइज के सामने निग्मा गैलेक्सी है, दे डोंट हैव द सर्कल फॉर देमसेल्व्स, उनको थोड़ा सा आगे आना पड़ेगा एंड ये चीज़ उन्हें एक्सपोज कर सकती है। लेकिन आईक्यू को जो पीछे छोड़ा गया है, सबसे क्रूशल रोल आईक्यू का रहेगा इस सारी फाइट के अंदर, जहां वो हाइट एडवांटेज के साथ कवर प्रोवाइड कर सकते हैं, वो स्काउट करके इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। लेकिन निग्मा गैलेक्सी को शायद अंदाजा है कि 4th राइज के प्लेयर इस साइड पर आ चुके हैं, राउफ उनकी जानिब से फ्लैश के ऊपर क्रॉसेस टंग किए गए हैं, यानी कि निग्मा गैलेक्सी किसी और एंड पर बेसी दिखाई दे रही है, व्हिच इज अ गुड थिंग। लेकिन सर्कल में आगे जाने के लिए अगर 40 की साइड से जाया गया तो बड़ी दिक्कतें आ सकती हैं। राउफ आपको ध्यान देना है, फलक सामने मौजूद है, फलक को स्पॉट कर लिया जाएगा, स्प्रेस किए जाएंगे, लेकिन आईक्यू उनकी तरफ से मदद का इंतजार किया जाता है। उज़ैफा पीछे बैठे हुए इंतजार करेंगे। निग्मा गैलेक्सी को रियलाइज हो जाता है कि वो इस साइड पर जा नहीं सकते, सामने जोन है जिसे वो हासिल करना चाहेंगे, लेकिन आईक्यू किस तरह से सर्कल में जगह बनाएंगे। मेरा सबसे बड़ा सवाल ये है, आईक्यू अगले सर्कल में कैसे आएंगे अगर सर्कल दूर चला गया, ये एक सबसे बड़ा सवाल तो रहेगा। लेकिन सर्कल 40 के पास आएगा, एक प्लेयर अभी भी सर्कल में मौजूद है, बाकी कोई टीम या कह सकते हैं कि फुरिया के अलावा कोई और प्लेयर सर्कल में दिखाई नहीं देता। लेकिन फुरिया इस्तेमाल करेंगे उस सर्कल में जो उनको जगह मिलती है उसका, और बड़े अच्छे अंदाज से निग्मा गैलेक्सी के ऊपर एलिमिनेशन पॉइंट्स निकालेंगे। फुरिया के 2 प्लेयर्स तो बचे हुए हैं, लेकिन एक मौका अच्छा मिलता है सर्कल के शिफ्ट से कि वो एलिमिनेशन पॉइंट्स को बढ़ाते हुए दिखाई दें। लेकिन 4th राइज उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज जो निग्मा गैलेक्सी के प्लेयर्स थे, अनफॉर्चुनेटली उन पर थर्ड पार्टी होती है और थोड़ी बहुत आसानी 40 को मिलती हुई। हाँ जी हाँ, एंड टीम 4th राइव्स नाउ दे वेटिंग ऑब्वियसली फॉर द सर्कल। आई थिंक कि सर्कल किस तरह से हमें शिफ्ट लेके जाता हुआ दिखाई देगा। जब सर्कल शिफ्ट लेगा तभी टीम निग्मा गैलेक्सी उनके साथ जो फाइट है उसके आपको इम्कान ज़्यादा बढ़ते हुए दिखाई देंगे। इसके साथ साथ टीम फुरिया को थोड़ा डिस्टेंस बना दिया जा चुका टीम 4th राइव्स के एंड उनकी तरफ से। सो आई थिंक ये जो फाइट है उसको भी थोड़ा सा यहाँ पर जहाँ प्रोलॉन्ग होता हुआ देख पाएंगे। एंड देन टीम फ्लैश जो कि बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर रहेगी टीम 4th राइव्स से। सो ये जो फाइट है वो इवेंचुअली आपके सामने जो फिर आ सकती है। लेकिन टीम फुरिया वर्सेस टीम फ्लैश फाइनली ये फाइट हमें स्टार्ट होते हुए दिखाई देगी। एंड फुरिया ऑब्वियसली वो टीम जो कि पहले ही से हमें यहाँ पर सर्किट के अंदर सेंटर पे अपनी जगह बनाते हुए दिखाई दी थी, जगह बनाते हुए दिखाई दी थी, वो फाइट स्टार्ट करती है टीम फ्लैश। उनको भी अपने आप को बचाना है, लेकिन लुक द ट्रेलिंग्स, 2 ग्रेनेड्स किए जाते हैं यहाँ पर टीम 4th राइव्स पर। एंड टीम निग्मा गैलेक्सी वो नेड्स करेंगे, 2 खिलाड़ी नॉकआउट कर दिए जाएंगे टीम 4th राइव्स के। एंड टीम 4th राइव्स ये जो मसनूई रेड जोन बना दिया जाता है उससे खुद को नहीं बचा पाई टीम 4th राइव्स, उनके लिए अभी भी मुश्किलात बरकरार हैं। और टीम निग्मा गैलेक्सी आई थिंक ये जो स्ट्रेटेजी बनाई गई, जिस तरह से टीम आगे बढ़ी, प्रोबेबली एक शानदार स्ट्रेटेजी रही। और टीम 4th राइव्स के एंड से ऐसा शायद एक्सपेक्ट किया नहीं जा रहा था कि प्लेयर्स आपको इतना सरप्राइज करते हुए दिखाई देंगे थ्रोएबल्स के साथ। लेकिन नाउ द लास्ट प्लेयर स्टैंडिंग, लेकिन टीम 40 के फलक वो एक ग्रेनेड थ्रो करेंगे। टीम फ्लैश के यूज इन द किल फीड वो आपको एक नॉकआउट करते हुए दिखाई भी देंगे। लेकिन टीम फ्लैश वर्सेस टीम निग्मा गैलेक्सी ये तो बात की बात है। टीम 4th राइव्स उनको खुद को बचाना था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली लॉर्ड का एक और ग्रेनेड जाएगा और टीम 4th राइव्स इस मैच से एलिमिनेट कर दी जाएगी। एंड आई थिंक टीम निग्मा गैलेक्सी दिखाई दिए हैं, चाहे पर ऑल्दो अनफॉर्चुनेटली टीम गोड के हाथों टीम नंबर 2 तक ही हमें महदूद भी होते हुए दिखाई दी। लेकिन स्टिल बहुत सारे आई थिंक फ्लैशबैक्स हैं, बहुत सारी मेमोरीज हैं जो कि अभी भी इन पेज को देख। लेकिन एक्स फोर्स रिजेक्ट उनके प्लेयर व्हीकल लेकर शायद फॉल बैक करने का इरादा ही रखते हैं। जी हाँ, फॉल बैक ही कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, और आई थिंक एक अच्छा डिसीजन टीम एक्स फोर्स रिजेक्ट के प्लेयर्स की तरफ से कि उनको रिस्क नहीं लेना चाहिए था। टीम ने रिस्क नहीं लिया, कंसिडरिंग कि आप नंबर 13 पर मौजूद है, नंबर 14 पर इनफैक्ट हैं ऑन द पॉइंट टेबल। तो आपको ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए कि आप न्यून अपने लिए जो अच्छी लूट है उसको एक्वायर करें। जिस तरह का मिरामार का मैच है, आप ज़्यादा से ज़्यादा इस मैच की डेप्थ में जाएँ और सर्वाइवल को प्रायोरिटाइज़ करें। बिकॉज मिरामार कंपेयर्ड ऑब्वियसली कंपैरेटिवली अगर आप एंगल को देखें, आप रूंडो को देखें, तो यहाँ पर अच्छी जो चीज़ आई थिंक रहती है वो यही है कि मिरामार में आपको टुवर्ड्स द वेरी एंड जब काफ़ी हाई चांसेस होते हैं कि आप तब भी एलिमिनेशन पॉइंट्स हासिल कर सकते हैं, तब भी आपके साथ काफ़ी सारी और टीम्स है जो सर्वाइव कर रही होती हैं। और यही शायद एक वजह है कि आपको इसमें यहाँ पर लॉन्ग रेंज पर भी एट टाइम फाइट्स होते हुए दिखाई दी जाती हैं, बिकॉज प्लेयर्स बिल्कुल ज़्यादा करीब आ नहीं रहे होते हैं अनलेस और अनटिल उनको सर्कल जो है फोर्स आउट करे, सर्कल शिफ्ट कर करके जो है वो आपको बिल्कुल जो है एक छोटे से एरिया में जो है जहाँ पर टुवर्ड्स एंड वेरी हमें वहाँ पर जो है महदूद करते हुए दिखाई दे। लेकिन खैर अभी के लिए हम वापस हमारे प्लेस पर भी आ जाएंगे। एंड टीम अरोरा गेमिंग जो कि अभी तक के लिए आपको टॉप 3 के अंदर शुमार होते हुए दिखाई देते हैं, जस्ट वेरी अनलाइक टीम रिजेक्ट जो कि बॉटम से नंबर 3 पर आपको दिखाई देते हैं। सो ये जो 2 टीमें हैं, अगर आप इनके डिफरेंस की भी बात करें तो तब भी इनफैक्ट आई थिंक हम कह सकते हैं कि मिरामार के जो मैच है, मिरामार के जो 2 मैचेस हैं, इनफैक्ट ये इस डिफरेंस को भी कवर करने के लिए आपको सफिशिएंट होते हुए दिखाई देते हैं। सो बिल्कुल आपके लिए यहाँ पर ये मैचेस इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल आपके लिए मैचेस का जो वेटेज है
बहुत ज़्यादा है, आपको बहुत केयरफुल रहना है, एक एक मूव अपना जो है बहुत ध्यान से आपने करना है। और ये बारह हमें देखने को मिलता रहेगा। प्लेयर्स ओपन में नज़र आएंगे, व्हीकल्स इसी तरह की आपको मिलेंगी जिनकी स्पीड ज़्यादा नहीं है, आपको इस तरह से रिजेस से गुजरना पड़ेगा। एंड टीम वुल्फ फॉर द वेरी फ्यू सेकेंड्स आपको ऐसा लगा कि शायद उनके व्हीकल जो यहाँ पर कुछ ख़तरों से हमें जो दो चार होते हुए दिखाई देंगे, लेकिन खैर अब प्लेयर्स अपने रास्ते पर गामजन है, कुछ ज़्यादा एसेट्स उनके आसपास टीम भी मौजूद नहीं है। सो सर्कल में जाते हुए आई डोंट थिंक सो, इनफैक्ट सर्कल के अंदर ही मौजूद हैं जहाँ पे जाना चाह रहे हैं पोजीशन पर, उस तक जाते हुए भी इनको कोई भी टीम हमें तंग करते हुए नहीं दिखाई देगी। जी हाँ बिल्कुल। एंड वहीं पर अर्ली रोटेशंस का आगाज़ हो चुका है। टीम वुल्फ के प्लेयर्स को आपने देखा, पोर्टल ने काफ़ी अच्छी तरीके से समझाया। टीम 4 थ्राइव्स आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुकी हैं एंड 4 थ्राइव्स भी अर्ली रोटेशन को प्रेफरेंस देते हुए सर्कल के अंदर तो आ चुके हैं। एंड सर्कल के अंदर अभी तक के लिए ज़्यादा कुछ क्लस्टर्स बनते आपको देखने को भी नहीं मिल रहे। हाँ, सर्कल के सेंटर के अंदर वो 2-4 नाम होते ज़रूर हैं, 4-5 नाम होते हैं, लेकिन इतनी ज़्यादा दिक्कतें नहीं हैं। अर्ली जाकर एक कहीं पर अगर आप रोटेट कर जाएं, सर्कल के अंदर एक अच्छी जगह हासिल कर लें जिसमें आप मद्देनज़र रखें इस चीज़ को कि आने वाले सर्कल फेजेस के अंदर भी आप अकॉर्डिंग आप जो है एक अच्छी पोजीशन पर हों, ये स्ट्रैटेजी इस्तेमाल करनी ज़रूर पड़ती है। लेकिन फर्स्ट ब्लड आई वुड से अब जाकर इस मैच का निकला है। तकरीबन 6 मिनट हमें हो चुके हैं इस मैच के अंदर आए हुए को। रैग्नारॉक गीके के रैग्नारॉक पहला एलिमिनेशन पॉइंट कंफर्म करते हैं। पहला प्लेयर एक्सफोर्स रिजेक्ट्स का ही इस मैच से बाहर होता है। बिल्कुल, और टीम एक्सफोर्स रिजेक्ट्स जो थोड़ी देर पहले हम इस ख़तरे की बात कर रहे थे, संदेशे की बात कर रहे थे कि आपको प्लेयर्स अपने लूज़ नहीं करना है, आपको अर्ली फाइट्स नहीं करनी है। क्वाइट अनफॉर्चुनेटली कि रिजेक्ट फोर्स उनके आई थिंक इस चीज़ को अवॉइड करने के बावजूद भी, उनकी कोशिश करने के बावजूद भी उनके साथ ऐसा हुआ कि उनके प्लेयर इस मैच से एलिमिनेट किए गए। नाउ वे क्लियरली कैन सी कि एक टीम को स्टार्ट मिल चुका है। इट इज़ टीम गीके जिन्होंने दिन का स्टार्ट भी इनफैक्ट बहुत अच्छा किया था टीम की तरफ से। पहला वो जो मैच था उस मैच का विनर सेकेंडरी भी आपको आता हुआ दिखाई दिया रूंडो पर, और इन टोटल आई बिलीव 18 पॉइंट्स से जो टीम गीके ने निकाले। लेकिन उसके बाद फिर जो आगे आने वाले मैचेस थे वो बेहतर नहीं रहे थे। वो जो इरेंगल का फेस था वो अच्छा नहीं गया था टीम गीके का। यही वजह है कि अभी भी आप टीम गीके को अनफॉर्चुनेटली कि उनका जो #2 से आज के दिन का सफ़र स्टार्ट हुआ था, बिकॉज नंबर 1 पे मैच 1 के बाद टीम 40 थी। सो टीम गीके नंबर 2 से स्लिप होते अब आपको नंबर 8 पर दिखाई दे रही है। सो 18 और उसके बाद बाकी अगर आप पॉइंट्स को माइनस कर लेते हैं तो इनफैक्ट 6 पॉइंट्स ओनली जो कि टीम गीके ने अपने इरेंगल के उन 3 मैचेस में निकाले, जो कि यकीनन किसी भी तरह से अच्छे नहीं थे। और अब एक जिम्मेदारी है टीम गीके पर कि आपने मिरामार को बेहतर करना है, और अगर मिरामार बेहतर हो गया तो वंस अगेन कम बैक होगा टॉप 3 में, कम बैक हो सकता है #1 की जानिब, और ये एक कंटेंडर्स है वो हमें बाकी टीम्स को चैलेंज करता हुआ दिखाई देगा। लेकिन फुरिया उन्होंने इनके प्लेयर्स के दरमियान हमने देखा कि कुछ गैस कैन का आई थिंक जो तबादला है वो किया गया। प्लेयर ने गैस कैन को फेंका ताकि पीछे वाले प्लेयर हैं वो उसको अपने बैकपैक में डाल लें, एंड फर्दर जो रोटेशन है वो कैरी की जाएँ। एंड ऑल द वे आई थिंक रोटेशंस ही आपको होते हुए दिखाई दे रही है, कुछ ज़्यादा डिफरेंट नहीं है इस मैप में। 8वां मिनट हमारा चल रहा है, थोड़ी देर के अंदर हमारा सर्कल भी 30 सेकंड के बाद इनफैक्ट एग्जैक्टली आपको सर्कल से शिफ्ट लेके जाता हुआ दिखाई देगा। तब जाकर कुछ फैसला होगा कि कौन सर्कल से ज़्यादा दूर है, कौन सर्कल के बहुत ज़्यादा करीब है, या फिर एक अच्छी जगह के अंदर ऑलरेडी अपने आप को लेकर आ चुके हैं। एंड आप देखें कि लॉबी का जो ट्रेंड चल रहा है वो सर्कल के तकरीबन सेंटर से चलता हुआ आपको टुवर्ड्स दी साउदर्न एंड दिखाई दे रहा है। एंड ज़्यादातर लॉबी आपको पुएर्तो पराइसो के नज़दीक इम्पाला और पुएर्तो पराइसो के बीच के अंदर ही आती देखने को मिल रही है। एंड लीजिए वो मनाजर आपकी स्क्रीन के ऊपर भी मैप के आ चुके हैं, लेकिन सर्कल पूरा का पूरा बैक फ्लिप खा कर जाएगा। ला बंदीता वाली साइड के ऊपर एक प्रैंक सक्सेसफुली पुल ऑफ कर दिया है सर्कल ने टीमों के साथ, और वो डांस ऑफ डेथ जो है वो अब शुरू होता। आपको मिरामार के सर्कल्स ही अमूमन आपको करते दिखाई देते हैं। काफ़ी आई वुड से कि चैलेंजिंग हार्ड शिफ्ट्स मिरामार के अंदर आते हैं। एंड दिस इज़ वन ऑफ दो सर्कल्स जो कि पूरा का पूरा एक खा कर करवट बिल्कुल पिछली साइड पर जा चुका है, एंड काफ़ी फ़ायदा पहुंचेगा। सबसे बढ़कर फ़ायदा आई वुड से कि अल-उला ई स्पोर्ट्स को पहुंचा है, जो कि अभी ब्लू जोन से बाहर निकले ही थे, और जहां पर वो निकले बाहर ब्लू जोन से वहीं पर आकर सर्कल उनके ठीक पैरों में ही आ जाता है।
और वहाँ से उनको ज़्यादा कुछ अब मज़ीद रोटेशंस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन हाँ, इन सारी रोटेशंस जो लॉबी पुएर्तो पराइसो वाली साइड के ऊपर मौजूद थी, वहाँ से फॉल बैक करते करते सर्कल के अंदर जो रोटेशन करनी है उसके दौरान कुछ शायद प्लेयर्स अब आपको एलिमिनेट होते दिखाई दे सकते हैं। उल्फ स्पोर्ट्स उनके बिल्कुल करीब कुछ रोटेशंस चल रही हैं, उनके अतराफ में अब आपको 2 से 3 नाम आते दिखाई दे रहे हैं। सो लेट्स सी कि अब अगला नाम या पहला नाम इनफैक्ट इस पूरे मैच में किस टीम का होगा जो कि एलिमिनेशन बैनर की नज़र होता दिखाई देगा। हाँ जी हाँ, और इंतज़ार रहेगा हमारी उस पहली टीम का जो कि इस मैच से एलिमिनेट होते हुए दिखाई देगी। लेकिन अगेन चीज़ें भी के लिए काफ़ी बेहतर हैं, काफ़ी रोटेशंस है वो हो चुकी हैं, अभी भी और रोटेशंस है जो कि टीम्स को करना है टुवर्ड्स द सर्कल, बिकॉज 307 मीटर का 310 मीटर का सफ़र है जो कि टीम RRQ करते हुए आपको दिखाई देगी अभी के लिए। और इनके साथ साथ टीम फुरिया स्पोर्ट्स के प्लेयर्स हैं जो कि सर्कल में जाना चाह रहे हैं। और अगर आप मैप की भी बात करें तो इनफैक्ट इससे पहले भी जब हमारा सर्कल में शिफ्ट लेकर जाता हुआ दिखाई दिया तो तब भी काफ़ी सारे नाम थे जो कि सर्कल के अंदर तकरीबन आपको पहुंचते हुए दिखाई दे ही चुके थे। लेकिन टीम फ्लैश वर्सेस टीम अरोरा गेमिंग ये फाइट हमें होते हुए दिखाई दे जाएगी। इन फ्लैश विद द फर्स्ट एलिमिनेशन जो कि टीम अरोरा के अगेंस्ट यहाँ पे कंफर्म कर दिया जाता है। अरोरा गेमिंग अनफॉर्चुनेटली आई थिंक बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि इस तरह से उनको यहाँ पे मौका ही नहीं मिलेगा कि उनके नॉकआउट हो। और स्ट्रेट अवे टीम फ्लैश उनके ऊपर ये एलिमिनेशन पॉइंट भी हमें कंफर्म करते हुए दिखाई दे। लेकिन टीम फ्लैश ऑब्वियसली दे आर कमिंग इनटू दिस मैच विद द मोमेंटम। वो जो पिछले मैच के 20 पॉइंट्स हैं वो जब टीम फ्लैश ने हासिल किए तो यू डेफिनेटली कैन एक्सपेक्ट कि टीम फ्लैश अब आपको इस तरह से ये आने वाले मैचेस में फ्लैशी परफॉर्मेंसेस करके जाते हुए दिखाई दे। टीम अपने आप को मजीद जब यहाँ पे एलिमिनेशंस के अंदर लेकर आए। और अगर ऐसा होता रहा तो यकीनन ना सिर्फ टीम अरोरा बल्कि जो बाकी भी 2 और नाम हैं इनके साथ टॉप 3 के अंदर उनके लिए मुश्किलात बनती रहेंगी। लेकिन टीम अरोरा फाइनली रुकते हुए सर्कल का थोड़ा डैमेज भी लिया जाएगा। रीफस एटवल भी जो कि इस मैच से एलिमिनेटेड हैं, टॉप ज्यूल और डॉक अभी भी ये 3 प्लेयर्स हैं जो कि इस मैच के अंदर टीम को हमें रिप्रेजेंट करते हुए दिखाई दे जाएंगे। लेकिन थोड़ी दूरी पर टीम उल्फ स्पोर्ट्स वो टीम थंडर टॉक गेमिंग, एक जानिब टीम उल्फ स्पोर्ट्स जो कि नंबर 6 पर है, वो टीम थंडर टॉक गेमिंग जो कि अभी तक के लिए आई थिंक अपना पहला बड़ा मैच आज के दिन का अभी भी टीम तलाश कर रही। बिल्कुल आपने सही कहा पोर्टल। एंड टीम टीटी नो डाउट उन्होंने हैरान किया है अपनी परफॉर्मेंस से, मतलब अच्छा खेलकर नहीं बल्कि अच्छा ना खेलकर उन्होंने ज़्यादा हैरान कर दिया है। एंड अभी आप देखें कि बॉटम स्पॉट्स में मौजूद हैं और इतने बुरे हालात टीम टीटी के चल रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ 12 पॉइंट्स अभी तक के लिए उन्होंने निकाले हैं पिछले 4 मैचेस में। ये 5वां मैच है। लेट्स सी कि यहाँ पर वो किस तरह से खेल पाएंगे। लेकिन टॉप प्लेयर्स की फहरिस्त में द मैन विद द गोल्डन हैंड फलक भी अपनी जगह बना पाते हैं। पहले नंबर पर टॉप प्लेयर्स की फहरिस्त में अगर टॉप ही ना हो तो वो टॉप प्लेयर्स की फहरिस्त क्या ही फहरिस्त होगी। और टॉप अपनी जगह बनाते हैं पहले नंबर के ऊपर, वहीं पर फलक तीसरे पर मौजूद ज़रूर है। बट लेट्स सी कि आज के दिन के इख्तिताम पर जाते जाते कौन आएगा टॉप प्लेयर्स के #1 के ऊपर। क्या टॉप को डीथ्रोन किया जाएगा? टॉप द यूनिवर्सल आई वुड से के टॉप प्लेयर आपको देखने को मिलते हैं। बट खैर निग्मा गैलेक्सी उनके प्लेयर को पकड़ा गया है। एंड निग्मा गैलेक्सी अच्छे रैंगल के मैचेस खेल कर आकर अब उनको चोक बिल्कुल भी करना नहीं है। लेकिन लॉर्ड को अनफॉर्चुनेटली अबांडन कर उनके प्लेयर्स के पास और कोई ऑप्शन मौजूद नहीं था सिवाय इसके कि फॉल बैक करें। लॉर्ड अनफॉर्चुनेटली आपको एलिमिनेट होते दिखाई देंगे। हाँ जी हाँ, और टीम फ्लैश वंस अगेन इट विल भी जो कि कुछ एलिमिनेशन पॉइंट्स निकालते हुए दिखाई दे रही है। टीम फ्लैश के ज्यूस हैं जो कि नॉकआउट कर दिए जाएंगे अब टीम निग्मा गैलेक्सी की तरफ से। सो निग्मा गैलेक्सी, टीम अरोरा एंड टीम फ्लैश 3 नाम है जो कि आपको फाइट में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन टीम फ्लैश क्या खुद को यहाँ से निकाल पाएंगे सही सलामत? आई थिंक ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल बन चुका है। और टीम अरोरा गेमिंग उनके पास भी क्योंकि एक लौता खिलाड़ी यहाँ पर सर्वाइव कर रहे हैं, सो उतने ही ज़्यादा यहाँ पे चांसेस उस टीम के भी रहेंगे कि वो इस मैच से हमें अनफॉर्चुनेटली एलिमिनेट भी होते हुए दिखाई दे। एंड देयर इट इज टीम अरोरा गेमिंग के ज़्यूल उनको इस मैच से एलिमिनेट कर दिया जाएगा। एंड टीम गेमिंग स्टार वो टीम बनी जिन्होंने वो आखिरी एलिमिनेशन पॉइंट कंफर्म किया। टीम फ्लैश उनके पास 3 पॉइंट्स आए और अरोरा जैसा नाम वो टीम जिनके पास खासा एक्सपीरियंस है। आप एक्सपेक्ट करते हैं कि टीम आपको इस तरह के मैचेस में ज़्यादा जो सर्वाइव करते हुए दिखाई दे, अच्छे पॉइंट्स निकालते हुए दिखाई दे। सरप्राइज था यहाँ पर एलिमिनेशन, लेकिन टीम 40 के फलक ही विल गेट द नॉकआउट। लेकिन IQ विद द आंसर वो फ्लैश के टॉप को पकड़ेंगे और एक प्लेयर को यहाँ पर नॉकआउट, दूसरे एंड पर दूसरे को नॉकआउट कर दिया जाएगा। और टीम फ्लैश वो टीम 4 थ्राइव्स, एक प्लेयर की सिचुएशन यहाँ पर रहेगी जो कि अभी तक के लिए आपको नॉकआउट यहाँ पर एलिमिनेट होता हुआ दिखाई दिया। बिल्कुल आपने ठीक कहा पोर्टल। एंड वहीं पर कुछ मज़ीद फाइट्स अब आपको चलती देखने को मिल रही हैं। फ्लैश के प्लेयर्स अनफॉर्चुनेटली उनको बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है। एंड वही चीज़ है, हालांकि फ्लैश मिरामार के ऊपर अच्छा खेलती रही है इससे पहले, काफ़ी तगड़ा मैदान है फ्लैश के लिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जिस तरह से टेरेन शिफ्ट आया है रोटेशंस के दौरान, अब जाकर उन्होंने अपने 3 अदद प्लेयर्स ऑलमोस्ट अपने गवा दिए हैं। लीजिए विन का एलिमिनेशन पॉइंट भी गेमिंग स्टार्स के मेनियक कंफर्म कर लेकर जाएंगे। एंड फ्लैश इस मैच से पूरी की पूरी बाहर कर दी जाएगी। पहली टीम पहले
14 मिनट के अंदर तकरीबन आधा मैच होने वाला है और अब जाकर के पहली टीम पूरी की पूरी इस मैच से बाहर की गई है। लेकिन बाकी की सारी टीमों को अगर आप देखें पोर्टल तो काफ़ी संभल कर खेला जा रहा है। इनफैक्ट फ्लैश के अलावा अरोरा भी बाहर हुई है, आई एम रियली सॉरी मैं देख नहीं पाया। लेकिन बाकी टीमें जो सर्वाइव कर रही हैं, ओवरऑल जो सर्वाइवेबिलिटी मैच की चल रही है वो काफ़ी शानदार है। आप देखें कि ज़्यादा गलतियां कोई भी नहीं कर रहा है। हाँ, वो जो फाइट्स सर्कल की वजह से मुसल्लत हो रही हैं उन्हीं की जद में आकर आपको दो ही नाम एलिमिनेट होते देखने को मिले हैं। लेकिन ओवरऑल लॉबी एक बहुत अच्छी और बैलेंस्ड स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल करते खेलती आपको देखने को मिल रही है। यकीनन, और आई थिंक मिरामार में डेफिनेटली आप एक्सपेक्ट भी करते हैं इस तरह की टीम से कि वो सर्वाइवल को यहाँ पे प्रायोरिटाइज करें, अपने लिए जो अच्छे अच्छे कंपाउंड्स हैं उनको टारगेट ना सिर्फ किया जाए इनकी तरफ से, बल्कि उन तक अपने आप को अपनी जो रसाई है वो भी मुमकिन बनाई जाए। बिकॉज तभी ये जो फाइट्स हैं वो आपको अच्छी होते हुए दिखाई देती हैं, तभी जो यहाँ पर कुछ अच्छी थर्ड पार्टीज़ हैं वो आपके सामने निकल कर आ पाती हैं। और अभी के लिए आई थिंक इस मैच के अंदर भी अगर आप फाइट्स की बात करें तो ऐसा हुआ नहीं है कि आपको प्रॉपर जो टीम फाइट्स हैं वो होते हुए दिखाई दी है, बल्कि कुछ थर्ड पार्टी फाइट्स होती रही हैं। कहीं पर आपको बिल्कुल एक ट्रायंगुलर सी फाइट चलते हुए दिखाई दी हैं, कहीं पर आप कह सकते हैं कि शायद प्ले रोटेशन कर रहे हैं जस्ट लाइक दिस, और प्ले को गाड़ी से उतारा गया है, उनको ओपन में नॉकआउट किया गया और फिर वो जो एलिमिनेशन पॉइंट है वो कंफर्म होता चला गया है। सो ये जो यहाँ पे पैटर्न है आई थिंक मिरामार के मैच का वो खासा डिफरेंट है, और यही वो चीज़ है जो कि मिरामार को काफ़ी यूनिक बना देती है हमारे एंगल के मैच के मुकाबले में, हमारे रूंडो के मैच के मुकाबले में। एंड प्रॉबेबली इस चीज़ का अलर्ट था प्लेयर्स के पास, और प्लेयर्स को अंदाज़ा था कि ये जो क्योस है इसके लिए हमें रेडी खुद को करना है, हमें खुद को यहाँ पर जो है आने वाले इस मिरामार के मैच में मैक्सिमम कोशिश कर रही है कि अपने आप को इस तरह से रोटेशंस के दौरान फायर से जो है वो बचा के हम रख पाएं। लेकिन खैर कुछ टीमें कामयाब हुई हैं, कुछ कामयाब नहीं हो पाई, बट टीम एजी वंस अगेन विद द फायर्स, और टीम टीके उनके प्लेयर रहेंगे जिनको यहाँ पर अभी के लिए नॉकआउट कर दिया जा चुका है। लेकिन टीटी विद द फायर्स एज वेल, टीटी के अवे के जो कि नॉकआउट निकालेंगे, शिवा द प्लेयर जो कि नॉकआउट हुए, लेकिन यहाँ से टीम ऑल गेमर्स मजीद आगे चार्ज इन करेगी, फ्लावर एस पीछे बाकी रहेंगे, और टीम गीके द प्लेयर जो कि यहाँ पर अब टीम के लिए सिर्फ आखिरी खिलाड़ी रह चुके हैं रैग्नारोक, उनको टीम ऑल गेमर्स को या तो इस मैच से एलिमिनेट करना है या फिर इनको एलिमिनेशन पॉइंट देकर टीम गीके को इस मैच से खुद को बाहर करवाना है। बिकॉज टीम गीके इनके पास इसके अलावा कुछ जो दूसरी ऑप्शन है वो ऐसे आपको यहाँ पर दिखाई दे नहीं पा रही है, बिकॉज बैकएंड साइड से टीम KRX भी खासी करीब थी। बिल्कुल आपने ठीक कहा पोर्टल। एंड वहीं पर टीम AGAL ऑल गेमर्स के स्क्वाड को अगर आप देखें तो यहाँ पर भी थोड़ी दिक्कतें बनी हुई हैं। एक प्लेयर ऑलरेडी एलिमिनेट कर दिया जा चुका है, दूसरे प्लेयर एलिमिनेट होने को हैं, गीके के 2 प्लेयर्स हैं, रिवाइवल चल रहा है आपस में, एंड रैग्नारॉक जैसे तैसे कर जान मार रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि एटलीस्ट एलिमिनेट होना ही है तो सामने रहते 2 या 3 एलिमिनेशन पॉइंट्स निकाल कर ही एलिमिनेट हो। लेकिन रैग्नारॉक रिवाइवल मुकम्मल हो चुका है और अब फिलहाल के लिए रैग्नारॉक को पकड़ लिया जाता है, और एक शानदार ब्लाइंड यूटिलिटी से रैग्नारॉक को पकड़ा गया। दिस माइट बी गेम ओवर फॉर टीम गीके। जी हां, इस मैच से बाहर का रास्ता दिखाया जाता है और टीम ऑल गेमर्स शानदार अपने लिए 4 अच्छे एलिमिनेशन पॉइंट्स निकाल पाएंगे सारे फाइट से। लेकिन अब अपने खिलाड़ी को रिवाइव कर इस सारे लोकेशन को अबैंडन कर आगे सर्कल के जानिब उनको बढ़ना है। लेकिन 4 थ्राइव्स सामने 2 अदर टीमें हैं और रैंगुटान्स और 4 थ्राइव्स की एक फाइट हमें बनती देखने को मिल रही है। लेकिन असल दिक्कत सामने से नहीं है, बिल्कुल पीछे रिज पर अगर कोई टीम आ गई तो फिर टीम 4 थ्राइव्स के लिए आगे बढ़कर स्लैम इन देना या फाइट हेड ऑन लेकर जाना वो थोड़ा मुश्किल बना दिया जाएगा। हाँ जी हाँ, और टीम निग्मा गैलेक्सी वर्सेस टीम RRQ अभी तक के लिए आई थिंक एक जो समझौता, एक जो मुआहिदा है वो किया जा चुका है दोनों टीम्स की तरफ से, और ना टीम निग्मा गैलेक्सी वो पहल कर रही है, ना ही टीम RRQ उनकी तरफ से कुछ जो शॉट्स हैं वो आपको यहाँ से जो वो जाते हुए दिखाई दे रहे हैं अपने ओपोनेंट्स की जानिब, और सर्कल वो भी इसी असना में आपको शिफ्ट लेके जाता हुआ भी दिखाई दे जाएगा। सो टीम निग्मा गैलेक्सी, टीम RRQ आपने फाइट नहीं करनी, इट्स ऑल गुड, आप फाइट ना करें, लेकिन सर्कल अब शिफ्ट लेके जा चुका है, सब दोनों ही को वहाँ से निकलना है, अपने आप को सर्कल की तरफ लेकर जाना है। और जब आप ऐसा करेंगे, जब आप सर्कल की तरफ बढ़ेंगे तो इन दैट प्रोसेस आई थिंक टीम रिजेक्ट आपका इंतजार करिए। रिजेक्ट के एक प्लेयर है प्रोबेबली जो कि सर्कल के अंदर मौजूद हैं, फिर टीम उला के प्लेयर्स हैं जो कि ऑलरेडी सर्कल के अंदर आ चुके हैं, और उसके अलावा अगर आप टीम फुरिया को देखें तो फुरिया का बड़ा स्प्रेड हमें यहाँ पर जो है एक इनसेन दिखाई दे जाता है। 2 प्लेयर्स थोड़ा दूरी पर हैं, बिल्कुल वेस्टर्न साइड अगर आप टॉप एंड की बात करें वहाँ पर हैं, और 2 प्लेयर्स अगर आप थोड़ा बॉटम को टच करते हैं तो वहाँ पर आ जाते हैं, और वहाँ पर भी एक स्प्लिट आपको होता हुआ दिखाई दे जाता है। थोड़ी दूरी पर एक प्लेयर है आगे की जानिब अयाला, और उसके बाद जो बैक एंड साइड पर साइलेंस हैं वो अपनी पोजीशन रखे हुए हैं। सो टीम फुरिया एक्सपेक्टेशंस तो थी कि इस मैच में टीम हमें जो है अच्छा करते हुए दिखाई देगी, लेकिन अभी तक के लिए अच्छा तो हमें उस तरह से रिजल्ट जो नहीं आता हुआ दिखाई दे, बिकॉज कोई भी पॉइंट्स नहीं है, कोई फाइट्स नहीं हुई है। लेकिन स्ट्रेटेजी की अगर आप बात करें
तो आई थिंक ये कुछ अनोखा ज़रूर है और टीम फुरिया सो फार सो गुड, ऐसा लग रहा है कि शायद ये स्ट्रेटजी अगर उनकी वर्क कर जाती है तो अपने प्लेयर्स को बचा पाएंगे, अपने लिए एलिमिनेशंस मैक्सिमाइज कर पाएंगे और ये जितने भी प्लेयर्स इनके सामने मौजूद हैं जब ये यहाँ से निकलेंगे तो जो बैक स्टैप करने की हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी है वो इस टीम के पास ज़रूर मौजूद रहेगी। बट देयर यू गो, टीम गोट वर्सेस टीम टीटी गेमिंग और टीटी के प्लेयर्स जो कि शायद यहाँ पर पहले ही से मौजूद थे, उन पर एक स्लैमन दिया गया और इस स्लैमन के चलते हुए टीम थंडर टॉक गेमिंग जो कि पहले ही मुश्किलात से जूझ रहे हैं अपने 2 खिलाड़ी को गवा देंगे। तीसरा नॉकआउट है उनको भी कंफर्म किया जाएगा और टीम गोट के लिए एक बेहतरीन फाइट जो कि इनफैक्ट रिजल्ट करेगी कि टीम थंडर टॉक गेमिंग इस मैच के अंदर भी सिर्फ 1 पॉइंट हासिल करके हमें बाहर जाते हुए दिखाई दे जाए। जी हाँ बिल्कुल, एंड टीम टीटी अनफॉर्चुनेटली वो जो सूरज गरूब हुआ था अब वो वापस से आप कह लें कि उभरता दिखाई नहीं दे रहा है उनके लिए। लेकिन वहीं पर निग्मा गैलेक्सी पिछले मैचेस अच्छे खेलने के बाद अभी फिलहाल के लिए एक प्लेयर अपना गवाया ज़रूर है, ज़्यादा कुछ दिक्कतें नहीं है। लेकिन निग्मा गैलेक्सी जिस पोजीशन पर है यहाँ से शायद मुश्किल से सिर्फ और सिर्फ 2 अदद टीमें ही बचकर बाहर निकल आ पाएंगे। एंड टीम गेमिंग स्टार्स का आप पोजीशन देखिए कि कितना शानदार है। थर्ड पार्टी ना कि सिर्फ वो बैक स्टैब निग्मा गैलेक्सी को कर सकते हैं, सामने रहते RRQ के प्लेयर्स को भी पकड़ा जा सकता है। एंड लीजिए जिस चीज़ का जिक्र किया वही चीज़ आपको होती देखने को भी मिली है। गेमिंग स्टार के प्लेयर्स खुद भी गिरते हैं लेकिन निग्मा गैलेक्सी के प्लेयर्स के ऊपर भी कुछ नॉकआउट्स निकाले जरूर हैं उन्होंने। लेकिन वहीं पर दूसरे जानिब RRQ और फुरिया यहां से भागने की जंग लड़ते आपको देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि अनलेस एंड अनटिल के आप एक दूसरे को एलिमिनेट ना करें आप यहां से फॉल बैक नहीं कर सकते हैं। लेकिन RRQ के प्लेयर वो आगे बढ़ते हैं, फुरिया के साइलेंस को पकड़ा जाता है उनकी साइड से लेकिन खुद भी गिरा दिए जाएंगे RRQ के साइड के ऊपर खिलाड़ी। बैकयार्ड से निग्मा गैलेक्सी आगे बढ़ती देखने को मिल रही है, खूब सीधा गाड़ी लेकर के स्लैम इन देंगे, रैंडम फायर्स प्री फायर्स करके आला। इनफैक्ट निग्मा गैलेक्सी के एक और मजीद प्लेयर को नुकसान पहुंचाया जाएगा। सेटन आखिरी खिलाड़ी अब बिल्कुल पीछे रह चुके हैं। निग्मा गैलेक्सी इस मैच से बाहर होने को है एंड लीजिए बाहर कर भी दिए जा चुके हैं। लेकिन मुश्किलात अभी भी कम ना हुई है फुरिया की, एक फाइट से बाहर निकलते हैं बैकयार्ड पर। अब उला स्पोर्ट्स आ चुकी है इस्तकबाल करने के लिए। हाँ जी हाँ, और टीम अल-उला विद द आंसर ऑब्वियसली कि उनकी तरफ से इस फाइट का आगाज किया जाएगा। एंड टीम फुरिया के चीफ जो कि आगे बढ़े थे जिनको शायद एक शॉटगन कनेक्ट करना थी, अनफॉर्चुनेटली उनके शॉट्स कनेक्ट नहीं करेंगे। एंड टीम फुरिया राइट आफ्टर द फाइट जो कि उन्होंने विन करके दिखाई वो भी इस मैच से लिबरेट हो जाएंगे। और टीम गेमिंग स्टार वो रही सही कसर जो कि टीम अल-उला की तरफ से बाकी में दिखाई दी इस फाइट में वो भी यहाँ पे पूरी कर दी जा चुके हैं। टीम गेमिंग स्टार आई थिंक ये सेकंड फाइट है, टीम का चौथा एलिमिनेशन है जो कि टीम ने इस मैच में कंफर्म किया है। वंस अगेन प्रूविंग देमसेल्व्स कि वो किस तरह से एक पोटेंशियल स्क्वाड है और ऑल्दो कुछ ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, ज़्यादा एक्सपोजर नहीं है इस तरह के वर्ल्ड कप स्टेजेस का, लेकिन स्टिल टीम गेमिंग स्टार का जो पोटेंशियल है वो इस तरह की फाइट्स में, इस तरह के क्रूशियल थर्ड पार्टी फाइट्स के अंदर आपको जो है वो बाहर दिखाई जरूर देता चला जा रहा है। लेकिन उल्फी स्पोर्ट्स बैक टू देम, उनके पास 3 एलिमिनेशन पॉइंट्स रहेंगे, चारों के चारों प्लेयर्स आपके सामने ऑन द स्क्रीन है और इनफैक्ट टीम टॉप 6 के अंदर भी अपनी जो जगह अभी तक करीब हमें बनाते हुए दिखाई दी है। सो ये कुछ नाम है जो कि अच्छा खेलते चले आए हैं, ये वो कुछ नाम है जो कि कंटेंडर्स हैं ऑब्वियसली फॉर द टॉप 5 स्पॉट्स। और मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर इस मैच की हम बात करें तो आपको टॉप 1 के लिए फाइट भी करते हुए दिखाई देने वाले हैं। टीम KRX उनके पास अभी तक के लिए कोई एलिमिनेशन पॉइंट नहीं आया है, कंसीडरिंग के पूरे का पूरा स्क्वाड टीम के इस मैच में लाइव है। दे आर द ओनली वन इन द टॉप 9 जिन्होंने अभी भी इस मैच के अंदर अपनी पहली फाइट, पहला एलिमिनेशन पॉइंट है वो हासिल करना है।
जी हाँ बिल्कुल। एंड वहीं पर अगर आप देखें टीम 4 थ्राइव्स, उनको अपने पोजीशन पर जिस तरह से वहाँ पर ट्रिगर डिसिप्लिन इससे पहले टीम 4 थ्राइव्स ने दिखाया है, ये चीज़ बहुत काम की है टीम 4 थ्राइव्स के लिए। अभी फिलहाल के लिए साउदर्न एजेस पर टीम 40 खेल रही है। गेट कीप सॉर्ट ऑफ वो करते एक नहीं बल्कि दो अदर टीमों को दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल उनके सामने कॉम्पाउंड्स में टीम ओरांगुटान्स मौजूद हैं। ओरांगुटान्स के बिल्कुल पीछे सर्कल के अंदर जाने की जस्तुजू करते हुए उल्फ ई स्पोर्ट्स आपकी स्क्रीन के ऊपर है, लेकिन उल्फ ई स्पोर्ट्स के स्कारफेस। यहाँ पर अगर फाइट ओरांगुटान्स और उल्फ की होती है तो टीम 4 थ्राइव्स बहुत शानदार तरीके से थर्ड पार्टी करेगी, लेकिन इन एनी केस टीम 4 थ्राइव्स यहाँ पर पॉइंट स्कोरिंग कर सकती है, चाहे कोई भी फॉल बैक भी करे या रोटेशन भी करने की कोशिश करे। टीम 40 बासानी अपने क्रॉसेस बना पाएगी, लेकिन अभी फिलहाल के लिए स्कारफेस आगे बढ़ना चाहते हैं। ओरांगुटान के AKOP अपने क्रॉसेस बनाते जरूर हैं, लेकिन कुछ रैंडम फायर्स करना होंगे, कुछ यूटिलिटीज का इस्तेमाल करना होगा। लेकिन पीछे देखिए टीम 4 थ्राइव्स अपने एलिमिनेशन पॉइंट्स में इजाफा करती आपको देखने को मिल तो रही है। दूसरा एलिमिनेशन पॉइंट निकाला जाएगा, उठाया जाएगा गेमिंग स्टार्स के प्लेयर के ऊपर, लेकिन 4 थ्राइव्स अपने व्हीकल्स लेकर एक बिल्कुल डिफरेंट एंगल पर एक डिफरेंट टीम के ऊपर स्लैम इन देते आपको देखने को मिल रहे हैं। लेकिन यहां पर ओरांगुटान्स वर्सेस उल्फ की फाइट में दोनों साइड्स के ऊपर आपको कैजुअलिटीज डील होती देखने को मिल रही हैं। अब जाकर विस को गिरा लिया जाएगा एंड उल्फ ई स्पोर्ट्स एक प्लेयर उनका गिरा जरूर है, लेकिन 3 एलिमिनेशन पॉइंट्स अभी तक के लिए उल्फ ई स्पोर्ट्स अपने लिए निकाल चुकी है। टीम 4 थ्राइव्स गेमिंग स्टार को वहां से भगाने के बाद अब वापस आएंगे अपने उसी पोजीशन के ऊपर। जी हाँ, लेकिन टीम 4 थ्राइव्स के फलक विद द शॉट्स दो एंड टीम ओजी के आई थिंक आतंकी वो प्लेयर है जिनको इस मैच से एलिमिनेट कर दिया जाता है। टीम उल्फ वर्सेस टीम ओजी जो कि फर्दर भी आपको होता हुआ दिखाया देगा। इनफैक्ट आतंकी मौजूद है, दूसरे वो प्लेयर थे जिनको शायद इस मैच से एलिमिनेट किया गया थोड़ी देर पहले, लेकिन ओजी वंस अगेन इट विल बी द टीम दो जो कि आपको अंडर प्रेशर जाते हुए दिखाई देगी, बिकॉज एक एंड पे टीम हुज़ैफा है, दूसरे एंड पे टीम उल्फ के प्लेयर्स है जो कि एक ही कंपाउंड के अंदर रहेंगे, लेकिन AKOP उनकी शॉटगन चलेगी। टीम उल्फ के कैच उस मैच से एलिमिनेट कर दिए जा चुके हैं। 40 के फलक थोड़ी दूरी पर मौजूद, लेकिन AKOP वंस अगेन विद द क्रॉस से उनकी तरफ से फिर से फायर जाता है, एक और खिलाड़ी गिरा दिया जाता है और ये दो खिलाड़ी जो कि शायद यहाँ पर अभी तक के लिए हमें भारी आते हुए दिखाई दे रहे हैं, इनको आपको एलिमिनेट करना है। टीम 40 के हुज़ैफा उनकी तरफ से इसमें यहाँ पर पहला कदम रखा भी जाएगा। हुज़ैफा उन्होंने नॉकआउट निकाला क्विक विद दैट थर्ड पार्टी शॉट जो उन्होंने टीम 40 के प्लेयर को एलिमिनेट किया, लेकिन हुज़ैफा इट विल बी जो कि शायद एक 1v3 करेंगे अगेंस्ट टीम उल्फ स्पोर्ट्स टू एलिमिनेट देम दो, लेकिन 40 वर्सेस टीम ओजी ओरंगुटान वर्सेस टीम 4 थ्राइव्स। और अभी तक के लिए आई थिंक एक प्रॉपर इन टर्म्स ऑफ नंबर्स की अगर आप बात करें उस तरह से नंबर्स तो नहीं है, लेकिन थर्ड पार्टी यहाँ पर नहीं होना थी। 40 के हुज़ैफा उन पर एक थर्ड पार्टी कर दी जाएगी अलूला की तरफ से, और वो जो एक फाइट हम लोग इंतजार कर रहे थे अनफॉर्चुनेटली हमारी आंखों के ठीक सामने वो फाइट खत्म हो जाएगी और अब अलूला इंतजार करेगी कि ओजी उनको भी मजीद एलिमिनेट किया जाए और टीम 40 के जो दो मजीद खिलाड़ी हैं उनको भी ये टीम अपने नाम हमें करते हुए दिखाई दे जाए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली दो आपने पहले एलिमिनेशन पॉइंट्स तो हासिल किए, लेकिन अब आपको शायद सर्कल की तरफ भी खुद को लेकर जाना है। जी हाँ बिल्कुल, लेकिन अलूला आई थिंक सो उनके प्लेयर कोई को अंदाज़ा नहीं था कि कॉम्पाउंड के अंदर कोई मौजूद है, लेकिन अब स्मोक्स देख करके उनको अंदाज़ा हो चुका है और अब वो अपना व्हीकल लेकर के वापस से उसी जगह के ऊपर जाने की कोशिश करेंगे। लेकिन वहीं पर टीम 4 थ्राइव्स उनके दो अदद जाबाज वो कैसे अपनी जगह सर्कल के अंदर बनाएंगे ये देखना अभी के लिए बाकी है, लेकिन सर्कल के एजेस के बिल्कुल करीब ही टीम 40 के प्लेयर्स हमें देखने को मिल रहे हैं। लेकिन ओरांगुटान्स उनके प्लेयर को गाड़ी से ही उतार लिया जाएगा। गोट के प्लेयर फूप्समैन के खाते में ये एलिमिनेशन पॉइंट दर्ज होता आपको देखने को मिलता जरूर है, लेकिन वहीं पर टीम 4 थ्राइव्स वो भी बाहर निकलेंगे। सर्कल के अंदर जाने की कोशिश क्या हो पाएगी कामयाब? अभी फिलहाल के लिए अपना व्हीकल लेकर जो कि काफी हद तक अबैंडन्ड है, आईक्यू जैसे तैसे कर सर्कल के साउदर्न एज पर अपनी जगह बना चुके हैं, लेकिन ज्यादा कुछ हार्ड कवर यहां पर मौजूद बिल्कुल भी नहीं रहेगा। लेकिन 4 थ्राइव्स 8 एलिमिनेशन पॉइंट्स हैं डोमिनेशन के ऊपर अभी फिलहाल के लिए टीम 4 थ्राइव्स के प्लेयर्स तो खेल रहे हैं, अब बहुत संभल कर खेलना है क्योंकि एक और खिलाड़ी का एलिमिनेट होना टीम 4 थ्राइव्स को एक बहुत बड़े डिसएडवांटेज के अंदर ले आएगा। लेकिन टॉप 4 में अपनी जगह जो बनाई है अब एक प्लेयर, इनफैक्ट 2 ही खिलाड़ी हैं और दोनों को बहुत ज्यादा संभल कर खेलना है। ज्यादा अननेसेसरी फाइट्स के अंदर अपना पोजीशन कॉम्प्रोमाइज बिल्कुल भी करना नहीं है, लेकिन आईक्यू अपना अबैंडन्ड अपना आप कहें कि कॉम्प्रोमाइज व्हीकल लेकर स्काउट करने की कोशिश करना चाह रहे हैं। गोट के प्लेयर आएंगे अपना व्हीकल लेकर, अलूला स्पोर्ट्स के प्लेयर्स बिल्कुल ठीक पीछे मौजूद हैं, लेकिन गोट के हाथों 40 इस मैच से बाहर कर दी जाती है। And I would say कि it was a great game। अगर पीछे से अलूला की थर्ड पार्टी पहले ना होती तो शायद हमें 40 अभी के लिए अपने 3 प्लेयर्स पर और ओरांगुटान इस मैच से बाहर होती देखने को मिल सकती थी। जी हाँ, लेकिन क्वाइट अनफॉर्चुनेटली फॉर आई थिंक सम ऑफ द टीम्स कि उनको थर्ड पार्टीज का सामना करना पड़ा और उन्हीं में आपको टीम 4 थ्राइव्स
इस मैच के अंदर सम हो जाए शुमार भी होते हुए दिखाई दी। सो टीम गोट वो आगे बढ़े, उससे पहले टीम अलूला को हमने देखा कि उन्होंने थर्ड पार्टी की। सो हर ही तरह से फोर्थ राइव्स मैच आसान नहीं रहा, लेकिन टीम की तरफ से एक अच्छा खेला गया मैच में, अच्छी परफॉर्मेंस दिखाएगी इस मैच के अंदर। इन टोटल आई थिंक 12 पॉइंट्स निकाले हैं टीम फोर्थ राइव्स ने आज के दिन की, उनकी सेकंड हाईएस्ट पॉइंट्स हैं किसी भी मैच के अंदर, मैच के जो कि आपको इस मैच में आते हुए दिखाई दे। सो इट्स अ गुड स्टार्ट फॉर द मिरामार मैप्स, और मिरामार का जो आगे आने वाला मैप है लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि उसके अंदर हमें चीज़ें और भी ज़्यादा बेहतर होते हुए दिखाई दें। लेकिन डाउन टू द लास्ट 3 टीम्स, टीम KRX वर्सेस टीम गोट वर्सेस टीम अलूला वो स्क्वाड होगा ऑब्वियसली जिनके पास एक एडवांटेज आपको रहता हुआ दिखाई दे जाता है, अलॉन्ग साइड टीम गोट जिनके पास 4 खिलाड़ी हैं, फिर टीम KRX आ जाती है जिनके पास 3 खिलाड़ी हैं, और नंबर्स ऑब्वियसली क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं इस तरह की एंड सिचुएशन के अंदर। सो टीम KRX आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, आपको थर्ड पार्टी का यहाँ पर जो शायद अपनी जो यहाँ पे पार्टिसिपेशन उसको बढ़ाना पड़ेगा अगेंस्ट दीज टीम्स के। जब ये फाइट कर रहे हैं तब आप थर्ड पार्टी करें और इन दोनों में से पहले एक टीम को एलिमिनेट करें, दूसरे को डैमेज दें, और फिर आगे बढ़ के इस मैच का विनर सेकंड टीम हमें कंफर्म करते हुए दिखाई दे। लेकिन लुकिंग बाय द आई थिंक लुक्स ऑफ इट, टीम गोट बड़ी परफेक्ट टीम दिखाई देती है जो कि शायद इस मैच में विनर सेकंड के लिए आगे बढ़ रही है। जी हाँ बिल्कुल, एंड गोट 13 एलिमिनेशन पॉइंट्स की डोमिनेशन के ऊपर हैं। इनफैक्ट 14th नॉकआउट उन्होंने दर्ज कर भी दिया है, बल्कि 15वां नॉकआउट शायद उन्होंने दर्ज कर दिया है अलूला के ऊपर। एंड उला की भी कहानी अब आपको ख़त्म होती दिखाई देगी गोट के हाथों। एंड गोट मिरामार पर बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने एक वाज़े तौर पर पैगाम दिया है कि मिरामार के अंदर काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग होल्ड है टीम गोट का, लेकिन वहीं पर स्ट्रॉन्ग होल्ड को कन्फर्म करने के लिए अभी भी चिकन डिनर निकालना बाकी रहेगा। अलूला बिल्कुल सामने, उनके 3 प्लेयर्स अभी भी इंटैक्ट हैं। इनफैक्ट ये आखिरी 2 टीमों पर आकर बात खत्म होती आपको देखने को मिलेगी, लेकिन क्विक अकेले ही आगे बढ़ करके लड़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनका अकेले लड़ना काफी ना था। पीछे रहते प्लेयर्स अनफॉर्चुनेटली अब कुछ भी ना कर पाएंगे, एंड एक इजी पीजी चिकन डिनर। आई वुड से गोट ने इस सारी फाइट को ऐसा दिखाया है कि जैसे ये फाइट कुछ थी ही नहीं उनके लिए। लेकिन आई वुड से कि जहां पर गोट ने बहुत शानदार खेला इस आखिरी फाइट में, अलूला ने उतना ही बुरा खेला। 4 प्लेयर्स थे उनके पास, लेकिन अनफॉर्चुनेटली गोट के मेन एडवांटेज को और उनके पास जिस तरह से उन्होंने आगाज़ किया फाइट का उस चीज़ को तोड़ ही ना पाए। अलूला बिल्कुल भी चैलेंज नहीं कर पाएगी गोट को इस मैच के चिकन डिनर के लिए। एंड गोट कम से कम आई वुड से कि 15 या इसलिए ज़मीन आसमान का फ़र्क है किसी भी टीम के पॉइंट्स में और गोट के पॉइंट्स में। गोट ने अपने नाम की लाज रखते हुए गोट ही खेल कर दिखाया है। 26 पॉइंट्स कुल मिलाकर निकाले उन्होंने, लेकिन 12 पॉइंट्स पर ख़त्म किया इस मैच को। अलूला क्लब स्पोर्ट्स जो कि बज़ाहिरी सेकंड स्पॉट के प्लेसमेंट पॉइंट्स लेकर गए हैं, दूसरे नंबर तक सर्वाइवल ही नहीं बनाया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ज़्यादा वो चैलेंज नहीं कर पाएंगे। लेकिन ओवरऑल रैंकिंग्स में फोर्थ राइव्स जो कि पिछले मैच से कबल आपको पॉइंट्स ऑब्वियसली, लेकिन खैर आखिरी मैच है ख़वातीन और हज़रात, पबजी मोबाइल एट ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप 2026 सीधा पेरिस से ये नशरियात चल रही है। एंड लेट्स सी के इस आखिरी मैच को आज के पहले दिन पर 50% कंपटीशन जो कंक्लूड होना है, आखिरी मैच में जाते जाते कौन हैरान कर जाएगा। क्या टीटी जो कि 16वें पायदान पर हैं, सिर्फ और सिर्फ 13 पॉइंट्स अब तक के 5 मैचेस में इकट्ठे कर पाए हैं, क्या वो कर पाएंगे चिकन डिनर 20 से 22, 23, 24 पॉइंट्स वाला, या रिजेक्ट हमें कुछ कर दिखाई देगी। GSTR एट टाइम्स बहुत अच्छा खेलते हैं, लेकिन कंसिस्टेंट नहीं रह पा रहे बिल्कुल भी। अभी के लिए टॉप प्लेस की फहरिस्त में चीज़ें तब्दील हो गई हैं पिछले मैच के बाद। फलक और हुज़ैफा हमें फर्स्ट और सेकंड नंबर पर आते देखने को मिल रहे हैं। हाँ बिल्कुल, एंड डैमेज की मद में आई थिंक ऑलमोस्ट सेम है। कूप्स पहले भी नंबर 2 पर थे, टॉप पहले भी नंबर 1 पर थे, और फलक पहले भी आपको #3 पर ही दिखाई दे रहे थे। सो जस्ट एलिमिनेशन जो लीडर्स हैं वो आपको तब्दील होते हुए दिखाई दिए हैं। हुज़ैफा का जो एक इंक्लूजन है वो हमारे सामने आ जाता है, एंड ऑब्वियसली ऑल थैंक्स टू दैट 1v4 प्रोबेबली, जो कि शायद हमें 1v3 लगा लास्ट मैच के अंदर अगेंस्ट टीम उल्फी स्पोर्ट्स जो कि हुज़ैफा ने किया। सो वो जो एक 1v4 था, जब टीम औरंगटन टॉप पे मौजूद है, जब आसपास कुछ और ज़्यादा टीमें मौजूद थी, तब भी अकेले हुज़ैफा एक 1v4 करके गए, और आई थिंक दैट वाज जस्ट टू गुड। और आई थिंक जिस तरह के लेवल के प्लेयर हैं, जिस तरह के कैलिबर के प्लेयर हैं हुज़ैफा, आप इनसे एक्सपेक्ट सभी कुछ कर सकते हैं, किसी भी टीम को चैलेंज कर सकते हैं तनहा। और उस तरह के मोमेंट पे स्पेशली जब टीम को ज़रूरत थी, जब फलक को नॉकआउट किया गया, तब ये अकेले उस 7 वाले कंपाउंड में रहे, फिर आ जाते हैं आगे की जानिब, और देन आउट ऑफ नोवेयर आई थिंक इनका जो अपना POV है अगर वो हमें मिल जाता तो फिर तो क्या ही बात हो जाती। लेकिन खैर हमें एक
आप कह रहे हैं ड्रॉन व्यू आई थिंक देखने को मिला उस सारी फाइट का कि उल्फ किस तरह से उस कंपाउंड में रही और अंगठन इंतजार करती रही और फिर नीचे से जो फाइट है वो कंप्लीट हो गई। लेकिन खैर बैक टू दिस मैच, मिरामार का ये आखिरी मैच है आज के इस दिन पर। इन टोटल 16 टीमें और 64 खिलाड़ी, और इस मैच के अंदर भी अभी तक के लिए एज यूजुअल प्लेयर्स जाएंगे अपने अपने एरियाज की जानिब, और ज़ेओल शायद इनको कुछ यहाँ पर शॉट्स हैं कनेक्ट किए गए हैं किसी टीम की जानिब से, बिकॉज उतरते साथ इनकी जो HP है प्रॉबली 65% अपनी जो हेल्थ है वो लूज कर चुके हैं। जी हाँ बिल्कुल, एंड वहीं पर बच जाएंगे अभी के लिए, बाल ही बचेंगे उतरते ही। HP थोड़ा सा डिप्लीट किया, लेकिन अरोरा गेमिंग पिछले मैच के अंदर काफ़ी अर्ली एग्जिट लेकर के गए थे। इस मैच के अंदर दे कैन नॉट अफोर्ड टू डू अनदर अर्ली एग्जिट, क्योंकि 36 पॉइंट्स के ऊपर हैं, 32 पॉइंट्स के ऊपर उनसे नीचे उल्फी स्पोर्ट्स बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं कि अगला गेम कब अरोरा कब आ जाएगा और हम ऊपर आएंगे। 31 पॉइंट्स के ऊपर आपको ऑल गेमर्स देखने को मिल रहे हैं 8वें नंबर पर ओवरऑल स्टैंडिंग्स में। 26 पॉइंट्स के ऊपर फिर गीक है, और अगर आप देखें कि गीक का फ़र्क सेकंड स्पॉट से सिर्फ और सिर्फ 20 पॉइंट्स का है, 9वें और दूसरे पायदान के बीच में सिर्फ और सिर्फ 20 ही पॉइंट्स का डिफरेंस है। जिस तरह से गोट ने 26 पॉइंट्स पिछले मैच में निकाले, अगर गीके या ओरांगुटान्स चलें, गीके या फुरिया अगर निकाल कर लेकर चले जाएं तो वो बासानी सेकंड नंबर के ऊपर आ सकते हैं, दूसरे पायदान को चैलेंज कर सकते हैं। लेकिन बात वही है, इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट कि आप एक मैच के अंदर 20 से 26 पॉइंट्स निकाल कर लेकर जाएं। एंड बात यह है कि एक मैच से बात कहानी ख़त्म नहीं होगी। आपको एक मैच के अंदर चले आपने 20 पॉइंट्स निकाल लिए, आप दूसरे तीसरे चौथे नंबर के ऊपर आ गए, उसके बाद भी आपको कंसिस्टेंट रहना है। और कंसिस्टेंट आप तभी रह पाएंगे जब आप एक टीम गेम कर कर दिखाएंगे, जब आप साइनर्जी के साथ खेलेंगे, जब आप वो मोमेंटम हासिल करेंगे हर मैच का, जहाँ पर हर मैच के अंदर आप 7-8 पॉइंट्स निकाल कर लेकर जा रहे हैं कंसिस्टेंसी से। ओवरऑल जो आपका प्लेइंग एवरेज है वो इम्प्रूव करना चाहिए, तब जाकर आप शायद फाइनल्स के अंदर क्वालिफाई कर पाएंगे और फाइनल्स के अंदर फिर अच्छा भी खेल पाएंगे। लेकिन खैर बैक टू दी मिरामार का एक्शन देखते हैं। अभी के लिए एक बहुत बड़ा रिस्क लेते निग्मा गैलेक्सी के प्लेयर दिखाई दे रहे हैं, शॉट्स दागे जाएंगे आला की साइड से, बाल बचते हैं। कूप्स को खुद भी अंदाज़ा नहीं था कि वो बिल्कुल वो शेर के मुंह में से हाथ क्या अपना निकाल पाएंगे या नहीं बाहर, लेकिन खैर बच जाएंगे अभी के लिए कूप्स, और यहाँ से आगे चलते बनते देखने को मिलेंगे निग्मा गैलेक्सी के बाकी के खिलाड़ी भी। हाँ जी हाँ, एंड अगेन एक नॉर्मल मिरामार का मैच जो कि हमारे सामने चलता हुआ दिखाई दे रहा है, और कोई भी ऐसा प्लेयर इस मैच से एलिमिनेट नहीं हुए। लास्ट टाइम अराउंड आई रिमेंबर शायद टीम एक्सफोर्स के प्लेयर थे, एक्सफोर्स रीजेक्ट के प्लेयर थे जो कि हमें एलिमिनेट होते हुए दिखाई दिए थोड़ा अर्ली इस मैच के अंदर, और उसके बाद टीम एक्सफोर्स ज़्यादा बेहतर नहीं कर पाई थी। मैच ही उनका ओवरऑल हमें जो है वो ख़राब होता हुआ दिखाई दिया। इन टोटल भी अगर आप पॉइंट्स की बात करें तो 3 ही पॉइंट्स हैं वो टीम एक्सफोर्स ने उस पिछले मैच से एक्चुअली अखज़ किए थे। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि ऑब्वियसली आपको काफ़ी हर्ट करती हैं, और ख़ासतौर पर मिरामार जैसे मैच के अंदर एक प्लेयर आपका जो है वो, जो हमने पहले मैच के अंदर भी बात की कि मिरामार में चीज़ें बहुत डिफरेंट हैं। आपको व्हीकल्स को प्रायोरिटाइज़ करना है, आपको अपने आप को यहाँ पे कवर में कोशिश करनी है कि कवर आपको मिल पाए, आप कवर के अंदर ही रखें खुद को, क्योंकि अगर आप नॉर्मली इस मैप को देखें तो ज़्यादा कुछ खास कवर है नहीं आपको कंपेयर टू एरेंगल, कंपेयर टू रोंडो, ऐसे जो कुछ बिल्डिंग्स हैं वो दिखाई देती नहीं। और इवन अगर आप लास्ट सर्कल्स की बात करें तो लास्ट जो सर्कल्स बन रहे होते हैं इस मैप के अंदर, अब वहाँ पर रिजेस होती हैं, वहाँ पर आपको बहुत कम जो है यहाँ पर आप समझ लें आई थिंक एट टाइम्स 20-30% जो ओवरऑल उस एरिया का जो कवर है, जो कवर के लिए कुछ जो बुशेस हैं वो दिखाई दे रही होती हैं, हेस्टैग्स आपको दिखाई दे रहे होते हैं। अदर देन दैट आई थिंक कुछ खास रहता नहीं है। सो ये जो आई थिंक मिरामार का मैच है ये आपको बहुत तरह से टेस्ट करता है। आपको आपका जो स्किल सेट है वो टेस्ट किया जाता है, आपका पेशेंस टेस्ट किया जाता है कि आप कितना पेशेंट रहकर इस मैच में डीप जा सकते हैं, ताकि फिर आपको जो है उस सब्र का जो फल है वो मिल पाए। लेकिन टीम अल-उला द टीम जिन्होंने पिछले मैच के अंदर एक डिसेंट परफॉर्मेंस दिखाई वो आपके सामने आ जाएंगे। अल-उला विल ऑब्वियसली होप कि इस मैच के अंदर भी एक अच्छी ही परफॉर्मेंस टीम की तरफ से जाए, बिकॉज जो पिछले एरेंगल का जो फेज़ था वो बुरा रहा टीम का, लेकिन मिरामार का जो फेज़ है अच्छा स्टार्ट हुआ है। 11 पॉइंट से जो शुरुआत है, देखते हैं मजीद कहाँ तक जाके बात बनती है टीम। बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा पोर्टल, एंड फुरिया भी काफ़ी नीचे आ चुकी है। लाइक पहले 2-3 मैचेस उन्होंने अच्छे खेले, लेकिन उसके बाद वो भी मेंटेन ना कर पाए अपनी परफॉर्मेंस को। हालांकि फुरिया मिरामार पर काफ़ी, जिस तरह से आपने प्रेडिक्शन भी की थी फुरिया के पिछले मैच में,
मेरा बार अच्छा है उनका, और देयर इज़ अ हाई चांस कि शायद फुरिया इस मैच के अंदर कमबैक दिखाकर वही 20-22 पॉइंट्स लेकर आपको वापस से अपनी जगह संभालते दिखाई देंगे जहां से वो नीचे आए हैं पिछले 2-3 मैचेस में। लेकिन टीम 4 थ्राइव्स वंस अगेन, दे आर ऑन योर स्क्रीन। फलक, T24, IQ, हुज़ैफा पाकिस्तान का नाम अपने साथ लिए। इस मैच के अंदर परफॉर्म करना ज़रूरी 40 के लिए भी है। 40 की एक चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है कि आपको लगेगा कि वो शायद अच्छा नहीं खेल रहे हैं, लेकिन जब आप ओवरऑल स्टैंडिंग्स देखेंगे तो वो आपको टॉप 3 में ही दिखाई देंगे। उसकी वजह एक बहुत बड़ी है कि आप देखेंगे, शायद आप पिछले मैच की ही आप मिसाल ले लें कि वो पॉइंट स्कोरिंग कर ही निकले हैं पिछले मैच से। बेशक वो चिकन डिनर्स उतने ज़्यादा ना कंफर्म करें, लेकिन वो अपनी प्रेजेंस लॉबी के अंदर बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन रखते हैं एलिमिनेशन पॉइंट स्कोरिंग करके। हाँ, चिकन डिनर्स अगर आते रहें टीम 40 के पास, क्योंकि कई मैचेस के अंदर आपने देखा है कि 5वें नंबर पर 4थे नंबर तक वो आते हैं, लेकिन उनके पास 10-12-13 एलिमिनेशन पॉइंट्स होते हैं। ये चीज़ एक बहुत बड़ा डिफरेंस लेकर आती है टीम 40 के लिए, और उनका पॉइंट्स एवरेज वो बड़े अच्छे तरीके से बरकरार रहा है पूरे दिन में। बेशक 1-2 मैचेस बीच में बुरे चले गए, वो चीज़ इतना इफेक्ट नहीं करती है टीम 4 थ्राइव्स के ऊपर। और प्रेशर से बाहर निकलने की जो एक सलाहियत, मैं इसको ज़रूर कहूँगा, टीम 40 ने विद टाइम ये चीज़ बहुत अच्छे तरीके से इस पर काम भी किया है कि प्रेशर से, जब वो अंडर प्रेशर होते हैं, बुरे मैचेस जा रहे होते हैं, उससे बाहर भी निकला जाता है फिर 40 की जानिब से। लेकिन खैर, सर्कल सीधा कदमों में गया है कुछ टीमों के, लेकिन 4 थ्राइव्स उनके पास, इनफैक्ट जितनी टीमें अभी फ़िलहाल के लिए आपको लॉस लियोनेस के अतराफ में दिखाई दे रही हैं, सभी के पास एक मौका है कि वो कहीं पर भी रोटेट करके जा सकती हैं सर्कल में। लेकिन टाइम इतना नहीं है, क्योंकि सारी की सारी लॉबी को अंदाज़ा है कि ये एरिया डाउन साउथ लॉस लियोनेस के साउदर्न साइड के ऊपर काफ़ी वेकेंट है, यहाँ पर ज़्यादा टीमें नहीं होती हैं। एंड इसी चीज़ को कैश आउट करने के लिए, सबसे पहले एक अच्छी जगह पर जाने के लिए सभी आपको रोटेशन करते देखने को मिल रहे हैं। बट लेट्स सी कि कौन कहाँ पर रुकता है। और फर्स्ट ब्लड जो आई थिंक सो फर्स्ट ब्लड अभी तक निकला ही नहीं है। 64 के 64 प्लेयर्स ही हैं, लेकिन अब जाकर शायद आपको निकलता दिखाई देगा टीम 4 थ्राइव्स के हाथों ही। हाँ जी हाँ, आइए मिलकर देखते हैं इनफैक्ट इस नॉकआउट को। और टीम 4 थ्राइव्स विद द आंसर दो येस, उनकी तरफ से नॉकआउट निकाला जाएगा। इन टीम फुरिया की साइलेंस वो प्लेयर बने जिनको इस मैच से एलिमिनेट कर दिया जाएगा। इन हुज़ैफा उनकी ये क्रॉसेस से जिन्होंने हेल्प आउट किया कि टीम 4 थ्राइव्स हमें अपना जो पहला दो ये कर शायद आपको निकलता दिखाई देगा। टीम 4 ही है, 64 के 64 प्लेयर्स ही हैं, लेकिन अब जाकर शायद आपको निकलता दिखाई देगा टीम 4 थ्राइव्स के हाथों ही। हाँ जी हाँ, आइए मिलकर देखते हैं इनफैक्ट इस नॉकआउट को। और टीम 4 थ्राइव्स विद द आंसर दो येस, उनकी तरफ से नॉकआउट निकाला जाएगा। इन टीम फुरिया की साइलेंस वो प्लेयर बने जिनको इस मैच से एलिमिनेट कर दिया जाएगा। इन हुज़ैफा उनकी ये क्रॉसेस से जिन्होंने हेल्प आउट किया कि टीम 4 थ्राइव्स हमें अपना जो पहला एलिमिनेशन पॉइंट है वो ज़्यादा यहाँ पर जो उसके लिए इंतज़ार ना करते हुए दिखाई दे, और एज सुन एज पॉसिबल अब दूसरा जो पॉइंट है उसकी तरफ भी टीम अपनी जो डिसीजन मेकिंग है, अपने कुछ यहाँ पर जो प्लानिंग है वो हमें करते हुए दिखाई दे। सो फुरिया चैलेंज बाय टीम 4 थ्राइव्स, एक वो नाम जो कि अभी के लिए आपको टॉप 1 को जो चैलेंज करते हुए दिखाई दे टेबल पर, वो इज टीम फुरिया जो कि लास्ट मैच में 3 पॉइंट्स निकाल कर गए थे। इन द पास्ट ऑब्वियसली हम इनको देखते आए हैं कि मिरामार के मैच के ऊपर टीम काफ़ी अच्छा खेलती रही है, लेकिन इस मैच के अंदर आई थिंक सो चीज़ें बेहतर है टीम 4 थ्राइव्स के लिए। 4 थ्राइव्स दे विल हैव टू डू इट, दो उनको ग्रेनेड्स अपने यहाँ पे कनेक्ट करवाना है, और जिस तरह से डैमेज गया था इट जस्ट लुक लाइक शायद ये जो नेड है वो बस काम तमाम करने ही वाला है चीफ का। एंड टीम फुरिया का जो सेकंड प्लेयर है वो भी हमें यहाँ पर टीम 40 के हाथों एलिमिनेट होने के करीब होता हुआ दिखाई दे जाएगा। एंड टीम फुरिया के हेगर्ट उसके साथ साथ जो एक और प्लेयर यहाँ पे फिर बैक साइड पर रहेंगे अयाला, शायद उनके साथ टीम 40 को मजीद फाइट को जो है वो सर अंजाम देना पड़ेगा। लेकिन चीज़ें जो है थोड़ा सा बेहतर है अभी भी टीम फुरिया के लिए। फुरिया 3 मैन स्टैंडिंग, टीम 4 थ्राइव्स 4 मैन स्टैंडिंग, सिर्फ एक ही एलिमिनेशन इस मैच का जो कि टीम 40 ने निकाला है। एंड कंपैरेटिवली बाकी कोई भी टीम ऐसे आई थिंक आपको अभी के लिए फाइट के लिए जो ज़्यादा करीब भी आते हुए नहीं दिखाई दे। और अगर आप निगमा गैलेक्सी की बात करें, ये तो खैर 1800 मीटर ऑलमोस्ट सर्कल से भी बाहर है। जी हाँ बिल्कुल। एंड वहीं पर निगमा गैलेक्सी रोटेशन कर इनफैक्ट पोर्टल अभी काफ़ी टीमें हैं जिनको अभी भी रोटेशन कर सर्कल के अंदर अपनी जगह बनानी है। निगमा गैलेक्सी काफ़ी दूर हैं, गोट के प्लेयर्स भी चले रोटेट कर चुके हैं, ऑलमोस्ट ब्लू जोन से बाहर आने को हैं, लेकिन निगमा गैलेक्सी काफ़ी लेट रोटेशन, लेट्स सी कि किस तरह से साबित होती है उनके लिए, क्योंकि सर्कल अगला फेज़ भी शुरू होने वाला है। एंड हो सकता है कि निगमा गैलेक्सी उनको फ़ायदा पहुंच जाए अगर तो ये सर्कल वेस्टर्न शिफ्ट खाकर चला गया, लेकिन अगर एक हार्ड शिफ्ट खाया सर्कल ने
साउदर्न साइड के ऊपर या बिल्कुल ईस्टर्न साइड के ऊपर ला बंदीता या लॉस लेओनेस की ईस्टर्न एंड के ऊपर, तो फिर शायद निग्मा गैलेक्सी के लिए बहुत बड़ा चैलेंज हो सकता है। अभी भी आप देखें कि सर्कल दूर गया है, इतना ज़्यादा दूर नहीं गया है, वापस से साउदर्न साइड को फेवर करता सर्कल देखने को मिला है। इससे पिछला शिफ्ट भी साउदर्न एंड के ऊपर आया था, लेकिन निग्मा गैलेक्सी इस लेट रोटेशन की बदौलत अब उनको शायद 2-3 टीमों के बीच में से होकर सर्कल के अंदर अपनी जगह बनानी पड़ेगी। वो भी शायद उनको मिल पाए या ना मिल पाए, लेकिन फाइट्स अब निग्मा को लेकर ही सर्कल के अंदर जगह बनानी होगी अपने जोरे बाजू। यकीनन, और टीम निग्मा गैलेक्सी ऑब्वियसली आई थिंक ज़हनी तौर पर जब उनको पहले खुद को तैयार करना पड़ेगा इस फाइट के लिए, एंड देन ऑब्वियसली आपकी जो फिजिकली यहाँ पर फाइट्स होंगी तब उसमें देखते हैं कि टीम निग्मा गैलेक्सी कितने एलिमिनेशन पॉइंट्स मजीद निकालती है। और जिस तरह से इरेंगल के मैच को टीम ने डोमिनेट किया आज के इस दिन पर, क्या मिरामार में भी टीम अपने आप को बेहतर कर पाएगी? बिकॉज मिरामार का जो पहला मैच है वो कुछ खासा बेहतर नहीं था, सिर्फ 5 पॉइंट्स हैं वो इन टोटल वो टीम निग्मा गैलेक्सी में हासिल करते हुए दिखाई दी। और इस मैच के अंदर भी जिस तरह से रोटेशन चल रही है, जिन चैलेंजेस की इनफैक्ट आपने भी बात की, सो उन चैलेंजेस के होते हुए आई थिंक एक एक पॉइंट निकालना जो है वो टीम निग्मा गैलेक्सी के लिए खासा एक चैलेंज है, खासी एक बड़ी मुश्किल है। और अभी भी जहां हम टीम निग्मा गैलेक्सी की बात करते हैं वहाँ पर कुछ और फाइट्स भी स्टार्ट है हमारी, और टीम अरोरा गेमिंग वर्सेस टीम फोर थ्राइव्स, जहाँ से टीम फोर थ्राइव्स के प्ले को नॉकआउट कर दिया जाएगा। एंड टीम अरोरा गेमिंग वो इंतज़ार करेंगे कि अपने लिए इस एलिमिनेशन पॉइंट को टीम एज सून एज पॉसिबल हमें कंफर्म भी करते हुए दिखाई दे। लेकिन आई डोंट थिंक सो कि एलिमिनेशन पॉइंट है वो जल्दी कंफर्म होगा, क्योंकि टीम अरोरा गेमिंग थोड़ा दूर है फोर थ्राइव से। एंड टीम फोर थ्राइव्स उनके प्लेयर्स को भी अगर आप याद करें, जब हमने लास्ट टाइम अराउंड उनको देखा था फाइटिंग विद टीम फुरिया ई स्पोर्ट्स, तो टीम फोर थ्राइव्स के पास अच्छा खासा कवर मौजूद था, टीम फुरिया के पास भी कवर मौजूद था। और ये जो एरिया जहाँ पर ये फाइट हमें होते हुए दिखाई दे रही थी, एक काफ़ी सेफ शेल्टर था आईबो से ओवरऑल किसी भी इस तरह के मैच के अंदर जब सर्वाइव करने के लिए। लेकिन टीम निग्मा गैलेक्सी अगेन जैसे आप इनके प्लेस पर आ जाते हैं तो आपको अभी भी सर्कल से दूरियां दिखाई दे रही हैं, 350 मीटर कहीं पर 330 मीटर ये जो सफ़र है वो इन प्लेयर्स को तय करना पड़ेगा। और देख रहे थे प्लेयर के खैर कौन कौन सर्कल के अंदर मौजूद है, कितनी ज़्यादा टीम्स के साथ इनको फाइट करना पड़ सकती है, या फिर कहाँ से एक ऐसी जगह मौजूद है कि टीम निग्मा गैलेक्सी हमें खुद को सर्कल के अंदर लेकर जाते हुए दिखाई दे। लेकिन सर्कल शिफ्ट लेकर जाने के करीब है, 40 मजीद सेकंड्स 45 मजीद सेकंड्स एग्जैक्टली कि आपको इस सर्कल जो है शिफ्ट लेकर जाता हुआ दिखाई दे। टीम गेमिंग स्टार, टीम फुरिया, यहाँ से भी कुछ मूवमेंट्स हैं वो हमें फर्दर जो फिर होते हुए दिखाई दे। बिकॉज जब सर्कल शिफ्ट लेकर जाएगा प्लेयर्स के दरमियान हलचल होगी, प्लेयर्स उठेंगे, अपने आप को रोटेट करवा कर सर्कल के अंदर लेकर जाएंगे, और जब डीप इनसाइड आप जाएंगे तभी ये फाइट्स मुमकिन हो पाएंगी, और तभी हमारी जो फर्स्ट टीम है, फर्स्ट जो प्रॉपर स्क्वाड है इस मैच के अंदर, वो हमारे सामने एलिमिनेट भी होता हुआ दिखाई देगा। लेकिन सो फार सो गुड, सिर्फ 3 प्लेयर्स एलिमिनेट हुए इन 14 मिनट्स के अंदर, और इन सभी टीमों को इसकी दाद देना पड़ेगी, इस डिसिप्लिन के लिए, इस पेशेंस के लिए कि फाइट्स इन्होंने ऐसे ज़्यादा नहीं की हैं। जहाँ पर फाइट उनको प्रॉपर होते हुए दिखाई दी, सिर्फ वहीं पर अपने आप को जो कैश इन करवाया गया, जस्ट लाइक टीम फोर थ्राइव्स, जस्ट लाइक टीम अरोरा गेमिंग उन्होंने कोशिश की थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनको उस कोशिश में जो कामयाबी वो मिल नहीं पाई। लेकिन उसके अलावा टीम की है जिनके पास फिर 2 एलिमिनेशन पॉइंट्स इस मैच से आए, इन टोटल यही अभी के लिए इस मैच का हमारा खुलासा भी रह जाता है। लेकिन सर्कल फाइनली दे वी हैव इट, सर्कल शिफ्ट लेकर जाएगा, और ये सर्कल थोड़ा और सेंट्रलाइज होगा, ज़्यादा कुछ यहाँ पर कटिंग्स नहीं हुई है, थोड़ा टॉप एंड साइड से सर्कल ज़्यादा छोटा हो चुका है, थोड़ा वेस्टर्न साइड से सर्कल ने यहाँ पर श्रिंक किया है खुद को, और ईस्टर्न साइड हमारी जो बिल्कुल आप कह लें कि साउदर्न साइड है वो यहाँ पर फेवर होते हुए दिखाई दी सर्कल के हाथ, और जो टीमें पहले ही यहाँ पर मौजूद हैं उनको ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा। एंड वो टीमें जिस तरह से टीम निग्मा गैलेक्सी की बात करें जो करते हैं, जो कि सर्कल के अंदर आना चाह रहे थे फ्रॉम द वेस्टर्न साइड, उनके लिए थोड़ी मुश्किल होगी। टीम उल्फ ई स्पोर्ट्स जो कि सर्कल के अंदर शायद अभी पहुंचे ही हैं, अपने आप को यहाँ पर मजीद जगह दिलवाने के लिए उनको चैलेंज का सामना करना पड़ सकता है। देयर यू गो दो, टीम फुरिया ई स्पोर्ट्स वर्सेस टीम गेमिंग स्टार फाइट हमारे सामने निकल कर आ जाएगी। एंड रोलेक्स पहले उन्होंने फायर्स के जोरे बाजू फाइट जीतने की कोशिश की, अब वो नेड करना चाहेंगे, लेकिन उनके सामने से अयाला वो ग्रेनेड थ्रो कर देते हैं, और टीम गेमिंग स्टार के रोलेक्स बाज रहेंगे, रोक दिया जाएगा, नहीं यहाँ पर नॉकआउट मिलेगा इनको। एंड टीम फुरिया लाइकवाइज उनको भी नॉकआउट नहीं मिला है, सो दोनों ही जानिब से अभी के लिए सीज फायर होता हुआ है। एंड टीम अल-उला ई स्पोर्ट्स, अल-उला गेमिंग थोड़ा आसपास घूम रहे हैं, वो भी इंतजार कर रहे हैं कि आखिर कब हमें मौका मिलेगा इस फाइट के अंदर खुद को लेकर जा पाने का। टीम फोर थ्राइव्स वो भी इंतजार में है। टीम 40 के एक स्प्लिट है जो कि आप देख पा रहे हो ऑन द सर्कल ऑन द मिनी मैप, दो कि टीम 40 के T24 थोड़ा अलग है, टीम 40 के हुज़ैफा, टीम 40 के प्रोबेबली IQ यहाँ पे फलक है उनके साथ जो कि अलग है। लेकिन दे यू गो आर क्योंकि जेफोर्स वो फाइट में जाते हैं, सामने मौजूद है टीम गोट के वो प्लेयर्स जो कि पिछले मैच के अंदर डोमिनेट करते हुए दिखाई दिए, जिन्होंने किसी को नहीं बख्शा, वो इस मैच के अंदर भी यहाँ पर डोमिनेट करेंगे और एक एक करके टीम गोट के साथ फाइट लेने के लिए आए हुए
टीम आरआरक्यू के 2 खिलाड़ी वो भी के लिए नॉकआउट कर दिए जा चुके हैं। लपाल ही इज नॉक्ड आउट, जेनफोर्स ही इज नॉक्ड आउट एज वेल, लेकिन जेनफोर्स जहां पे उनको भी नॉकआउट किया गया था, उनके टीममेट वो आगे बढ़ जाएंगे और फाइनली टीम गोट के फोर्स उनको बाज रखा जाएगा। उनको यहाँ पर एलिमिनेशन नहीं कंफर्म करने का मौका मिलेगा और अब टीम आरआरक्यू वो उनके पास मौका है कि वो रिवाइवल भी दे, उनके पास मौका है कि बाकी जो टीम गोट के प्लेयर्स हैं जस्ट लाइक मॉक्सी उनके साथ फाइट करके उनको भी इस मैच से टीम हमें एलिमिनेट करते हुए दिखाई दे जाए। लेकिन जितना ये कहने में आसान है उतना करने में मुश्किल है और टीम गोट वर्सेस टीम आरआरक्यू की ये फाइट दोनों ही साइड्स को पता है कि कितना मुश्किल ये फाइट रहेगी, लेकिन किलर जो क्या ही शानदार ग्रेनेड है और सामने से होने वाली ये फाइट जो कि फूक्समैन कर रहे थे उस फायर के जोरे बाजू फाइनली नॉकआउट निकल कर आ जाएगा। टीम आरआरक्यू एक दफा फिर से हमें पिंच डाउन होते हुए दिखाई दे जाएगी, हालात खराब हो जाएंगे और चीजें यहां पर शायद एलिमिनेशन की जाने भी बढ़ जाएंगी। एंड देयर यू गो, दो टीम गोट के फूक्समैन आगे गए, एलिमिनेशन पॉइंट कंफर्म किया गया एंड इट विल बी टीम आरआरक्यू जो कि इस मैच से हमें एलिमिनेट होते हुए दिखाई दे जाएगी। सिर्फ 1 पॉइंट टीम ने निकाला इस मैच से एलिमिनेट होने से पहले और वो 1 पॉइंट टीम गोट ही के खिलाफ निकाला गया, लेकिन उसके बरअक्स टीम गोट जिन्होंने 4 एलिमिनेशन पॉइंट्स निकाले, हैट्स ऑफ टू देम दो वंस अगेन अपने आप को प्रूव करने के लिए, अपने आप को इस एरेंगल के इनफैक्ट मिरामार के पैच के अंदर, मिरामार की फेज के अंदर कंसिस्टेंट रखने के लिए, क्योंकि पिछले मैच में 26 पॉइंट्स थे, इस मैच में अभी तक के लिए 4 हो चुके हैं, सिर्फ 2 मैचेस के 30 पॉइंट्स से टीम कम से कम कंफर्म कर चुकी है और अभी भी इस मैच का कंप्लीट होना, इस मैच का आगे बढ़ना बाकी रहेगा। लेकिन सर्कल वंस अगेन हमारी नजरों के ठीक सामने और सर्कल कहां पर जा रहा है, क्या सर्कल नॉर्दर्न साइड पर जाएगा, लेकिन खैर इसका जवाब नफी में आएगा और सर्कल हमारा स्लाइड वेस्टर्न साइड पे जाता है। नॉर्थ से जरा कट आपको होता हुआ दिखाई दिया, ईस्ट साइड से ज्यादा कट है और टीम फ्लैश जो कि पहले शायद सर्कल के अंदर मौजूद थी अब सर्कल से बिल्कुल बाहर जा चुके हैं। टीम गुड्स इनके 2 प्लेयर्स आपको बैक एंड साइड पे दिखाई दे जाते हैं, फूप्समैन है, मॉक्सी है, उनको भी सर्कल के अंदर आना पड़ेगा, लेकिन फूप्समैन खासतौर पे वो जहाँ से जा रहे हैं बिल्कुल सामने की तरफ टीम निग्मा गैलेक्सी के स्क्वाड है, सो आपको बहुत ज़्यादा एहतियात करना है जब आप उस सर्कल के अंदर अपनी एंट्री कर रहे होंगे। एंड इन दैट मीन टाइम ऑब्वियसली हमारे पास कुछ और भी ऐसे नाम हैं जिनको हम देख सकते थे उस सर्कल के अंदर, लेकिन खैर अभी वक्त हो चुका है कि फाइट्स को यहाँ पर अब लोग से विटनेस करें। टीम टीटी वर्सेस टीम फ्लैश, यहाँ से फाइट स्टार्ट होगी। फ्लैश के प्लेयर वो नॉकआउट कर दिए जा चुके हैं, थंडर टॉक गेमिंग के 12 भी जिन्होंने नॉकआउट निकाला, कंफर्मेशन देने के लिए अभी भी वक्त दरकार है। टीम गीके के रैग्नारोक वो भी सुन रहे हैं फाइट्स के यहाँ पर जो साउंड है और उसको, और उनकी तरफ से इंतज़ार किया जा रहा है कि आखिर कहाँ पर ये फाइट चल रही है प्रिसाइजली। वो अपने आप को यहाँ पर मौका देना चाह रहे हैं कि उस साउंड का जो है वो सही यहाँ पर पिक करके उसकी सही प्रेडिक्शन करके फर्दर जाएं और उस फाइट में अपनी टीम के लिए कुछ एलिमिनेशन पॉइंट्स हैं उनको निकालने की अपॉर्चुनिटी ये प्लेयर हमें क्रिएट करता हुआ दिखाई दे। लेकिन इन द किल फीड वी जस्ट सॉ कि टीम 4 थ्राइव्स उन्होंने अपना दूसरा एलिमिनेशन पॉइंट भी कंफर्म किया इस मैच का और फाइनली जो कंपटीशन है नंबर 1 के लिए वो थोड़ा और हमें इंटेंस होता हुआ दिखाई दे जाएगा। 4 पॉइंट्स टीम गुड उन्होंने निकाले थे, तो टीम 4 थ्राइव्स उन्होंने दूसरा पॉइंट निकाल के एक बार फिर से उनको बता दिया कि हम ज़्यादा दूर नहीं हैं आपसे और ये जो कंटेस्टेशन है वो चलती रहेगी हमारी आपके साथ। ये जो टसल है अब वो आखिरी इस मैच के मोमेंट तक जाएगी और यहाँ तो टीम गोट नंबर 1 पे आएगी इस मैच के बाद, यहाँ पे टीम 4 थ्राइव्स ही आपको इस मैच के बाद प्रॉबली #1 को अटेन करते हुए दिखाई देगी। लेकिन इसके साथ साथ अगर कुछ और टीमों की भी बात की जाए तो निग्मा गैलेक्सी वो ज़्यादा दूर नहीं है, 45 पॉइंट्स पर है, चारों खिलाड़ी उनके इस मैच में मौजूद हैं। KRX के भी 4 के 4 खिलाड़ी मौजूद हैं, उन्होंने एक एलिमिनेशन पॉइंट भी निकाला है। अरोरा गेमिंग जिनका पिछला मैच बुरा गया तो उनके पास भी 1 पॉइंट रहेगा, लेकिन फ्लैश वंस अगेन वर्सेस टीम गोट और गोट जिन्होंने एक टीम को इस मैच से एलिमिनेट किया। लेट्स सी क्या वो दूसरे को भी एलिमिनेट कर पाएंगे एंड प्रोबेबली द आंसर विल बी 50-50 बिकॉज फ्लैश उनके पास एक प्लेयर मौजूद है, टीम गोट उनके पास 2 खिलाड़ी हैं और गोट के पास एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी कि वो बैक टू बैक और एक और टीम को इस मैच से एलिमिनेट करें और अपना जो सबका है अपनी जो यहाँ पे लीड है ना एक पास प्रोबेबली द आंसर। एक टीम को मैच बुरा गया तो 4 के 4 खिलाड़ी मौजूद हैं, उन्होंने एक एलिमिनेशन पॉइंट भी निकाला है। अरोरा गेमिंग जिनका पिछला मैच बुरा गया तो उनके पास भी 1 पॉइंट रहेगा, लेकिन फ्लैश वंस अगेन वर्सेस टीम गोट और गोट जिन्होंने एक टीम को इस मैच से एलिमिनेट किया। लेट्स सी क्या वो दूसरे को भी एलिमिनेट कर पाएंगे एंड प्रोबेबली द आंसर विल बी 50-50 बिकॉज फ्लैश उनके पास एक प्लेयर मौजूद है, टीम गोट उनके पास 2 खिलाड़ी हैं और गोट के पास एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी कि वो बैक टू बैक और एक और टीम को इस मैच से एलिमिनेट करें और अपना जो सबकत है अपनी जो यहाँ पे लीड है नंबर 1 के ऊपर उसको मेंटेन करके जाएं।
बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा पोर्टल, बट लेट्स सी कि गोट जिस तरह से पिछला मैच खेला है अभी तक के लिए दिखाई नहीं दे रहा कि लॉबी उनको इजाज़त देगी दोबारा से डोमिनेशन पर जाने की। एंड आप देखें कि 2 अदद खिलाड़ी ऑलरेडी उन्होंने अपने गवा दिए हैं, ज़्यादा कुछ अब और करने को बाकी है नहीं है। लेकिन वहीं पर एक और टीम बाहर हो जाती है जिस टीम से मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी कि शायद इस मैच के अंदर वो कम बैक करेंगे। फ्लैश का नाम बाहर कर दिया जाता है, 5वें नंबर पर आए इनफैक्ट आज के पूरे दिन में, एंड अब 5वें पर ख़त्म कर जाएंगे आज के पूरे दिन को। लेकिन वहीं पर अरोरा बिल्कुल ठीक उनके नीचे हैं, 1 पॉइंट के फ़र्क के साथ अरोरा इंतज़ार कर रही है और वो 1 पॉइंट शायद वो निकाल कर बासानी फ्लैश को डीथ्रोन भी कर देंगे, 5वें नंबर से नीचे मजीद भेज देंगे। लेकिन उल्फी स्पोर्ट्स आप देखें कि फ्लैश से नीचे जितनी टीमें हैं 11वें स्पॉट तक, 11वें पायदान तक, वो सभी की सभी अभी तक के लिए सर्वाइवल अपना यकीनी बनाए रखे हैं। लेकिन सर्कल लॉस लियोनेस का जो अर्बन एक वॉरफेयर है वो लेकर के आता है सामने। एक अरसे बाद हमने लॉस लियोनेस के सिटी के अंदर कहीं ना कहीं सर्कल ख़त्म होते देखा है एक एसटीआर इवेंट के अंदर। लेकिन खैर वहीं पर 4 थ्राइव्स इस सर्कल के अंदर मौजूद है, बिल्कुल हाई राइज आप कह लें कि वो मल्टी स्टोरी कंपाउंड्स हैं, उनका इस्तेमाल किया जा रहा है टीम 40 की जानिब से। लेकिन उल्फी स्पोर्ट्स यहाँ से असल में दिक्कत सिटी अर्बन सर्कल्स की ये होती है मेरा मार के अंदर कि फॉल बैक करना, रोटेट करना गाड़ियों के अंदर खास तौर के ऊपर वो बहुत ज़्यादा रिस्की होता है। एंड आप देखिए कि उल्फी स्पोर्ट्स उनके प्लेयर एरन पकड़े जाएंगे, 40 के हाथों एलिमिनेशन पॉइंट अपना गंवाना पड़ जाएगा उनको। तीसरा एलिमिनेशन पॉइंट है जो टीम 4 थ्राइव्स अपने खाते में दर्ज कर लेकर जाती है। लेकिन अरोरा गेमिंग शानदार रिटालिएशन किया जाता है फुरिया की साइड से एंड अरोरा के प्लेयर को नॉकआउट तो किया गया है। वहीं पर टीम 4 थ्राइव्स अपने एलिमिनेशन पॉइंट्स में पे दर पे इजाफा करती आपको दिखाई दे रही है। यकीनन, और टीम 4 थ्राइव्स वंस अगेन उनकी तरफ से अपने जो पॉइंट्स उनको अप कर दिया जाएगा और पहले 2 पॉइंट्स से 4 पॉइंट्स में कन्वर्ट हो चुके हैं। पूरे का पूरा स्क्वाड है जो कि डेफिनेटली बैक करते हैं एलिमिनेशन पॉइंट्स को एंड वी वांट टू सी कि टीम 4 थ्राइव्स इस मैच में अपने लिए जो है एक बेहतरीन रिजल्ट जो हमें फाइनली अटेन करके जाते हुए दिखाई दे इस दिन को एंड करते हुए। और टीम 4 थ्राइव्स जिस तरह से उन्होंने फर्स्ट मैच के अंदर 19 टोटल पॉइंट्स निकाले, इस मैच के अंदर भी वही एक टच जो है वो आए और इवेंचुअली आपको जो दिन का इख्तिताम है वो भी इंशाल्लाह एक नंबर 1 पर जो है वो एंड हमें जो है टीम करते हुए दिखाई दे जाए। लेकिन दिस इज द ड्रोन शॉट जो कि वंस अगेन आपको बता रहा है कि कितनी ज़्यादा टीम्स मौजूद हैं इस सर्कल के अंदर। 14 टीमें मौजूद हैं, 22 मिनट हो चुके हैं मेरा मार के इस मैच को, 44 टोटल खिलाड़ी, 44 खिलाड़ी इस तरह के सर्कल तक होना आई थिंक बड़ा क्योस होगा। बड़ा यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो हीटअप हो रही होंगी, चाहे वो डिवाइसेस हैं, चाहे वो कंपटीशन है, चाहे वो कुछ भी है। लेकिन आपको यहाँ पर खुद को बचाना है अपने आप को, यस अपने आप को आपने जो है वो बस चिकन की जानिब लेकर जाना है। लेकिन ऑब्वियसली वी कैन सी द फैंस शेयरिंग फॉर टीम 4 थ्राइव्स और उसके साथ साथ कुछ और भी टीम्स हैं उनकी जो फैन बेस है वो भी आपको दिखाई दे रही है लाइव फ्रॉम द अरीना। लेकिन इन द किल फील्ड वंस अगेन एक्सफोर्स रिजेक्ट डेविल वो नॉकआउट निकालेंगे एंड टीम KRX इट विल बी जिनके प्लेयर अभी फाइनली हमें इस मोमेंट पर जो है वो नॉकआउट होते हुए दिखाई दिए। जी हाँ बिल्कुल, एंड वहीं पर 4 थ्राइव्स 5 अच्छे एलिमिनेशन पॉइंट्स हैं। आई थिंक सो शायद 2-3 एलिमिनेशन पॉइंट्स उनके स्टील ऑफ भी हुए हैं इस सारे मंजर में। लेकिन 4 थ्राइव्स बार बार कोशिश कर रही है, इनफैक्ट चैलेंज किया जा रहा है उनकी तरफ से हर ही टीम को। लेकिन 40 अभी भी चिकन डिनर कंफर्म करना बाकी है एंड गोट के प्लेयर्स अभी तक के लिए 2 अदद खिलाड़ी वो भी सर्वाइव जैसे तैसे कर अपना करते देखने को मिल रहे हैं। लेकिन टीम अरोरा वो एक अच्छे बड़े प्लान के साथ खेलते दिखाई दे रहे हैं, काफ़ी सेंसिबल गेम फिलहाल के लिए कर रहे हैं, कोई अननेसेसरी फाइट्स के अंदर जाती हमें अरोरा भी दिखाई नहीं दे रही है। हाँ मिड रेंजेस पर रहते एलिमिनेशन पॉइंट स्कोरिंग उन्होंने 2 अदद एलिमिनेशन पॉइंट्स अपने खाते में दर्ज किए ज़रूर हैं। वहीं पर ओरंगुटान नो डाउट पिछले वर्ल्ड कप के बनिस्बत इस बार एक पॉजिटिव चेंज आया ज़रूर है एंड अभी के लिए वो सर्वाइवल्स के अंदर ओरंगुटान अच्छा कर पा रही है। हाँ थोड़ा सा फाइट्स पर काम करना ज़रूरी है, लेकिन खैर एलिमिनेशन फीड में 4 थ्राइव्स वर्सेस अरोरा आपको बनता देखने को मिल रहा है। मिड रेंजेस पर ही अभी तक के लिए ये फाइट आपको थमती देखने को मिलेगी, लेकिन आने वाले वक्तों में जब सर्कल अपना फैसला सुनाएगा तो शायद दोनों को ही अपने अपने पोजीशंस चेंज करके आगे सर्कल की जानिब बढ़ना पड़ेगा। लेकिन 4 थ्राइव्स उनको पहले प्लान आउट करना है अपना रोटेशन, क्योंकि 40 आपको बिल्कुल एजेस पर दिखाई दे रही है एंड लीजिए सर्कल आगे जा चुका है 4 थ्राइव से। हाँ बिल्कुल, और सर्कल फाइनली वो यहाँ पर थोड़ा टफ टाइम देता हुआ टीम 4 थ्राइव्स का एंड 4 थ्राइव्स वेल लेट्स सी दो वो सर्कल में किस तरह से अपने आप को लेकर जा पाते हैं। लेकिन कुछ फाइट्स हमारे सामने आ जाएंगे। टीम KRX वर्सेस टीम रिजेक्ट, जिनके प्लेयर्स यहाँ पर नॉकआउट कर दिए जाएंगे। डेविल वो प्लेयर जो कि इस मैच से एलिमिनेट हुए, शिवा सेकंड वन जो कि अब आपको कंफर्म होते हुए दिखाई दे चुके हैं। सो इट्स डाउन टू बेबी द प्लेयर जिनको यहाँ पर नीड अपना कनेक्ट करवाना है, जिनको अकेले ही टीम KRX को अगर इस मैच से एलिमिनेट करना है तो इस फाइट में कुछ अनोखा करके दिखाना पड़ेगा। लेकिन बिनी QX से डबल जी
और टीम KRX के स्क्वाड के चलते हुए इस ट्रियो के मौजूद होते हुए इस जगह पर आई डोंट थिंक सो कि टीम एक्सपोर्ट्स के लिए चीज़ें जो यहाँ पर आसान होंगी। टीम एक्सपोर्ट्स यहाँ से जो एलिमिनेशन पॉइंट है वो हमें कंफर्म करते हुए दिखाई दे पाएगी, लेकिन स्टिल ऑन द वेरी अदर साइड आपको कुछ और भी फाइट्स जो है वो चलते हुए दिखाई दी हैं। शायद टीम 40 का नाम आ रहा है इन द किल फीड, एंड जी हाँ, टीम 40 वर्सेस टीम फुरिया, जहाँ पर फुरिया के एक और खिलाड़ी को भी एलिमिनेट किया जाएगा और फुरिया के साथ शुरू होने वाली इस मैच की फाइट उसका इख्तिताम भी टीम 4 थ्राइव्स करेगी और 40 उनके पास 7 एलिमिनेशन पॉइंट्स, वंस अगेन बैक टू द हैश 1 और टीम फुरिया जैसे भी इस मैच से एलिमिनेट किए गए उनका ये सफर कम से कम नंबर 11 पर महदूद हुआ है। अगर बॉटम से कोई और टीम उठकर आ जाती है तो शायद अभी और नीचे को जाना पड़ेगा, लेकिन एलिमिनेटिंग टीम्स में कुछ और नाम भी एडअप हो रहे हैं। टीम अल उला क्लब द लेटेस्ट जो कि इस मैच से अब फायर हो जाते हैं, फॉलोड बाय टीम गोट। जी हाँ, गोट बिल आखिर इस मैच से बाहर कर दी जाती है। टीम 4 थ्राइव्स अब अपने पहले पायदान के ऊपर वापस आती देखने को मिल रही है। माशाल्लाह 7 अच्छे एलिमिनेशन पॉइंट्स के ऊपर टीम 4 थ्राइव्स फिलहाल के लिए हमें दिखाई दे रही है, लेकिन निग्मा गैलेक्सी दे आर स्टिल इन द गेम। निग्मा गैलेक्सी आगे बढ़ना चाह रहे हैं एक पूरे क्लस्टर के दरमियान, लेकिन 4 थ्राइव्स उनकी एक क्लोज फाइट शुरू हो जाएगी जहाँ पर बिल्कुल सामने टीम आप कह लें कि DRX के कुछ प्लेयर्स मौजूद हैं, KRX के प्लेयर हैं। DRX KRX दोनों एक ही टीमें हैं। नेम इन गेम टैग चेंज किया गया है DRX की तरफ से अपना, लेकिन निग्मा गैलेक्सी आगे बढ़ के उल्फी स्पोर्ट्स के प्लेयर भी सारी फाइट के अंदर मौजूद हैं, 2 अदद खिलाड़ी। वहीं पर बिल्कुल वेस्टर्न साइड के ऊपर निग्मा गैलेक्सी एक प्रॉपर फाइट लेती आपको रांगुटान्स के खिलाफ दिखाई दे रही है, लेकिन उल्फी स्पोर्ट्स यहाँ से अब सिर्फ ट्रिगर दिखा सकते हैं। डिसिप्लिन ज़्यादा अगर शोर शराबा किया, अपना पोजीशन कॉम्प्रोमाइज़ किया तो उल्फी स्पोर्ट्स को एलिमिनेट करने के लिए उनके अतराफ में 2 से 3 मुख्तलिफ टीमें मौजूद रहेंगी, लेकिन वहीं पर अरोरा वो अपने एलिमिनेशन पॉइंट्स में छुपके से अंडर द रडार रहकर अपने एलिमिनेशन पॉइंट्स में इजाफा कर रहे हैं। एंड अरोरा का पोजीशन वो बड़ा शानदार है। निग्मा गैलेक्सी और ओरांगुटान्स की फाइट जब मजीद आगे बढ़ेगी तो अरोरा के पास एक मौका रहेगा थर्ड पार्टी करने का, लेकिन आतंकी का ग्रेनेड निग्मा गैलेक्सी के रऊफ को गिराएगा। रऊफ का एलिमिनेशन पॉइंट स्टील ऑफ नहीं बल्कि आतंकी ही कंफर्म कर लेकर जाएंगे। ओरांगुटान्स 2 अदद एलिमिनेशन पॉइंट अपने कंफर्म कर लेकर जाते हैं, लेकिन निग्मा गैलेक्सी क्या वो निकल आ पाएंगे इस फाइट से बाहर? 2 अदद खिलाड़ी बाकी रह चुके हैं। अच्छा इस्तेमाल है यूटिलिटीज का। ओरांगुटान्स एक फाइट जीतते हैं, 4 के 4 एलिमिनेशन पॉइंट्स अपने खाते में दर्ज कर लेकर जाएंगे, लेकिन बैकयार्ड पर अरोरा के प्लेयर्स भी एलिमिनेट होते हमें दिखाई दिए हैं। एंड अरोरा गेमिंग अपने 3 खिलाड़ियों पर आ चुकी है। उल्फी स्पोर्ट्स के हाथों गवाया अपना एक खिलाड़ी, पीछे रहते टीम 4 थ्राइव्स अपने लिए 8वां एलिमिनेशन पॉइंट कंफर्म कर चले गए हैं। जी हाँ, और टीम 4 थ्राइव्स उनके पास 3 टोटल खिलाड़ी हैं जो कि इस मौके पर आपको सर्वाइव करते हुए दिखाई देंगे, लेकिन अभी भी जो एलिमिनेशंस का नंबर है उसको आप कर सकते हैं और डेफिनेटली वो चीज़ अभी होते हुए दिखाई देगी। टीम 4 थ्राइव्स मूविंग फॉरवर्ड, मूविंग ऑनवर्ड्स विद द 10th एलिमिनेशन और T24OP वो प्लेयर थे जिन्होंने ये 10वां एलिमिनेशन पॉइंट कंफर्म किया, लेकिन उल्फी स्पोर्ट्स इनफैक्ट वर्सेस टीम अरोरा गेमिंग वो उनको फाइट यहाँ पर चलते हुए दिखाई देगी। रीफर्स उन्होंने ये एलिमिनेशन पॉइंट भी कंफर्म किया। टीम उल्फी स्पोर्ट्स उनके अब आखिरी एक खिलाड़ी रहेंगे जो कि आपको कॉल्स की सूरत में दिखाई दे जाते हैं। आई थिंक सर्च जारी है टीम ओजी की तरफ से कि जल्द से जल्द इस प्लेयर को ढूंढा जाए, इनको इस मैच से एलिमिनेट किया जाए और थोड़ी देर पहले होने वाली वो फाइट जिसमें टीम ओजी को एक मोमेंटम मिला एंड बाय द लुक्स ऑफ दैट फाइट आई थिंक टीम ओजी अब एक थोड़ा बेहतर टीम ओजी दिखाई दे रही है और चाह रहे हैं कि अपने लिए कुछ और भी एलिमिनेशन पॉइंट्स हासिल कर लिए जाएं, लेकिन ओजी उनके लिए शायद यहाँ पे चीज़ें हमें बेहतर थोड़ा मुश्किल से होते हुए दिखाई दे, बिकॉज अभी भी जो आसपास कुछ और नाम है वो खासा यहाँ पर नज़र रखे हुए हैं और ये जो आपको 6 टीमें दिखाई दे जाती है इनमें से हर एक टीम की नज़र है कि वही इस मैच का विनर सेकंडर हासिल करके जाए अपने लिए, लेकिन टीम अरोरा गेमिंग वो यहाँ पर रिवाइवल देंगे अपने खिलाड़ी को। रिवाइवल के साथ साथ मजीद आगे भी बढ़ा जाएगा। टीम और अरोरा के अलावा टीम AG अलायंस वो सामने की तरफ मौजूद रहेंगे। टीम गी के वर्सेस टीम 40 जहाँ पर 40 के खिलाड़ी नॉकआउट हुए, लेकिन T24 क्या रिवाइवल मिल पाएगा? This is the question. I think this is the most important question जो कि यहाँ पर रहेगा, क्योंकि टीम की के वो भी साथ ही मौजूद है। टीम 40 उनको फाइट भी करना है, पुश बैक करना है इन प्लेयर्स को और पुश बैक किया जाएगा हुज़ैफा की तरफ से जो कि फिर से खड़े होते हैं, फाइट बैक दिया जाता है और टीम 4 थ्राइव्स अपना 11वां एलिमिनेशन पॉइंट इस मैच का में कंफर्म करते हुए दिखाई दे जाती है। डाउनवर्ड्स ऑब्वियसली द लास्ट 2 प्लेयर्स जो कि अभी भी फाइट बैक कर रहे हैं और ये जो रिवाइवल है वो साथ ही साथ आई एम होपिंग तो कि अब हो चुका होगा, हो जाता है रिवाइवल, लेकिन ये नहीं होना चाहिए था, ये करना नहीं था एजी के प्लेयर को, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो एक ग्रेनेड 2 को नॉकआउट करेगा। हुज़ैफा अकेले बच जाएंगे और टीम 4 थ्राइव्स के लिए हुज़ैफा उनको बहुत ही कुछ अनोखा करना पड़ेगा। प्ले करने की कोशिश करता है, एक को नॉकआउट करेंगे, शायद दूसरे को भी शायद उन्होंने कोशिश की, लेकिन टीम 4 थ्राइव्स डाउन टू दैट लास्ट HP। हुज़ैफा
क्या बच पाए हैं, क्या बच पाएंगे, दिस इज द क्वेश्चन। लेकिन हुजैफा को वो जो नॉकआउट्स है वो आपने देखे इन द किल फीड, लेकिन अब टीम 40 इस मैच से जा चुकी है और टीम 4 थ्राइव्स हैज 4 पर, लेकिन अब सिर्फ 2 और टीमें और टीम अरोरा वर्सेस ओजी। जी हाँ बिल्कुल, एंड ओजी ख़वातीनो हज़रात अपना पहला चिकन डिनर कंफर्म कर लेकर जाते हैं। हुज़ैफा बहुत ही शानदार किलिंग स्प्री पर रहे, लेकिन ओजी को भी दाद देना पड़ेगी, पहला चिकन डिनर कंफर्म करते हैं। एंड ओजी पिछले साल के बनिस्बत देखें, जहाँ तारीफ बनती है वहाँ पर करनी ज़रूर चाहिए कि एक चेंज आया ज़रूर है। हाँ, काफ़ी चीज़ों पर काम करना अभी भी बहुत बाकी है, लेकिन एक चिकन डिनर जो शायद पिछले साल ना निकला था वो इस साल ज़रूर निकल आ पाया है। वहीं पर टीम 4 थ्राइव्स को अगर आप देखें, और ख़ास तौर के ऊपर पोर्टल हुज़ैफा, जिस तरह से वो 1 मैन आर्मी बने हुए थे और प्ले जोन से शायद वो एलिमिनेट ना होते तो हमें कुछ मिरेकल होता दिखाई देता वहाँ पर। हाँ बिल्कुल, और आई थिंक मिरेकल ही तो वो हैं, बिकॉज मिरेकल आपको याद होगा नाम इनका था पहले, और मिरेकल से हुज़ैफा ये हुए। ऑब्वियसली मिरेकुलस एक परफॉर्मेंस है वो वहाँ से मजीद हो सकती थी, लेकिन आई थिंक जिस तरह की उनकी एचपी थी, जिस तरह से वो 1 एचपी रहकर भी उन्होंने फाइट बैक किया, दैट वाज जस्ट टू गुड आई थिंक टू वॉच फ्रॉम द साइड ऑफ हुज़ैफा, जो कि आप एक्सपेक्ट भी करते हैं इस प्लेयर से। और उन्होंने फिर से अपनी टीम के लिए ढाल की तरह बनकर वहाँ पर जब फाइट दी और कोशिश की कि जो सामने वाली टीम है उनके लिए किसी भी सूरज है वो इस चिकन डिनर को आसान ना बनाया जाए। सो हैट्स ऑफ टू टीम 4 थ्राइव्स, रिगार्डलेस के उन्होंने विनर चिकन डिनर हासिल नहीं किया, लेकिन अरोरा गेमिंग ऑब्वियसली कुछ यहाँ पर अफसुर्दा जो चेहरे हैं वो आपको दिखाई दे रहे हैं। फैंस के आप जो प्ले कार्ड्स है वो देख सकते हैं, आई थिंक टीम निग्मा गैलेक्सी को सपोर्ट कर रहे हैं बिकॉज एनजीएक्स के प्लेयर्स यस उनके नाम आपको दिखाई दे रहे थे वहाँ पर, लेकिन टीम ओजी इट इज जिन्होंने आज के इस दिन का इख्तिताम किया अच्छे नोट पर, और आखिरी विनर चिकन डिनर जो कि प्रोबेबली 10+ एलिमिनेशंस आई थिंक इस टीम ने भी निकाले हैं। सो इनके लिए भी आई थिंक बहुत ज़्यादा एक मोरल बूस्ट होगा कल के दिन पर आते हुए। और टीम ओजी जो इससे पहले शायद हमें थोड़ा नीचे जाते हुए दिखाई दे रहे थे, नंबर 11-12 पे आई थिंक टीम जा चुकी थी, लेकिन अब क्योंकि विनर चिकन डिनर हासिल किया है, 20 समथिंग पॉइंट्स निकाले हैं, यू कैन से कि बासानी नंबर 6-7 के करीब तो टीम आ चुकी हो। बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा पोर्टल, काफ़ी चेहरे अभी भी परेशान हैं बहुत ज़्यादा। निग्मा गैलेक्सी को आप देख लीजिए, दे आर ऑल्सो वेरी अपसेट, नॉट दैट हैप्पी फ्रॉम देयर परफॉर्मेंस। हाँ, एरंगल्स तक निग्मा गैलेक्सी ने बहुत अच्छा खेला, 40 पॉइंट्स निकाले इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग पोर्टल एरंगल में से। जी हाँ, एंड निग्मा गैलेक्सी, लेकिन उसके बाद वही बात है जो हमने शायद एक आधा मैच पहले दोहराई थी कि डोमिनेशन से ज़्यादा कंसिस्टेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चिकन डिनर्स मैटर नहीं करते हैं, चिकन डिनर मैटर नहीं करता है, चिकन डिनर्स ज़रूर मैटर करते हैं, चिकन डिनर मैटर नहीं करता है। या एक बड़ा मैच अगर आप 6 में से खेल रहे हैं वो कर चाहे आप सेकंड पेज पर 10वें 12वें 13वें 14वें नंबर पर ही क्यों ना हो, लेकिन रोंडो अगर आप कल के दिन का आगाज का अच्छा खेल लेते हैं तो आपके लिए भी टॉप 5 के दरवाजे बासानी खुल सकते हैं यकीनन। और अगर हम दूसरे परफॉर्मेंस टीमों की रही है, लेकिन उस पर भी बात करें कि क्या पाकिस्तान डोमिनेट करेगा या नहीं करेगा। वो हर एक मैच में आपको कर करके लेकर इज द अनदर नेम ऑफ कियोस प्लेयर आ जाते हैं जो कि कुछ डैमेज के अंदर पहले फेजेस से ही निकालना शुरू करने की कोशिश की जाती है टीमों की तरफ से, लेकिन जिसके चलते साथ फिर कुछ दिक्कतें भी आती हैं। सर्वाइवल पॉइंट्स को एलिमिनेशन पॉइंट्स के साथ बैलेंस आउट करना, ये चीज़ थोड़ा सा मुश्किलात टीमों के लिए पैदा करती ज़रूर है। लेकिन खैर, पहला गेम शुरू हो चुका है ख़वातीनो हज़रात, और जहाज़ अपनी उड़ान भर करके लेकर जा चुका है। अब यहाँ से आगे कोई ब्रेक्स नहीं है, कोई सेकंड थॉट्स नहीं है। जो भी स्ट्रैटेजीज़ आपकी थी, जो ये टीमें अपनी स्ट्रैटेजीज़ लॉक करके आई हैं, अब वो फुल एंड फाइनल लॉक हो चुकी हैं। अब कोई चेंजेस आप कर नहीं सकते हैं। यहाँ से आगे बस आपको ट्रॉफी पर अपनी नज़र रखनी है। अभी फ़िलहाल के लिए ग्रैंड फाइनल्स के ऊपर अपनी नज़र रखनी है, और आसान रूट यही है कि आप यहाँ से टॉप 5 आकर के अपनी जगह ग्रैंड फाइनल्स के अंदर बनाएं, ना कि सर्वाइवल स्टेज का रास्ता लेकर इनडायरेक्ट आप ग्रैंड फाइनल्स तक जाने की कोशिश करें। बट खैर, पहला एलिमिनेशन किस टीम का होने वाला है ये देखने के लिए मैं एक्साइटेड हूँ।
जो यहाँ पहला एलिमिनेशन किस टीम के ऊपर निकलेगा, कौन सी टीम पहले एलिमिनेशन पॉइंट्स निकालेगी। बात की जाए ओजी की, ओरंगुटान काफ़ी अच्छा खेलते हुए दिखाई देते हैं रोनो के मैप के ऊपर। अर्ली हमने इनको काफ़ी लोकल टूर्नामेंट्स के अंदर अच्छे एलिमिनेशन पॉइंट्स निकालते हुए देखा, लेकिन बात यहाँ ये आ जाती है कि बाकी पूरे साल के टूर्नामेंट्स को एक तरफ रखा जाए, पीएमजीओ एंड ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप उनके मुकाबले का कोई इवेंट है ही नहीं। ऑफ सीजन अगर आप डोमिनेट करते जाएं, एक के बाद आप एक एलिमिनेशन पॉइंट उठाते जाएं, एक के बाद आप एक टाइटल लेते जाएं, इट डज नॉट मैटर। लेकिन बात करेंगे उस chaos की जो कि बर्पा किया जाएगा अल उला की जानिब से। एक साइड पर निग्मा गैलेक्सी वर्सेस फोर्थ राइज होता है, जहां फोर्थ राइज दे लॉस्ट दे वन प्लेयर, लेकिन एक एलिमिनेशन पॉइंट निकाला पीछे से थर्ड पार्टी करने के लिए KRX यानी कि DRX के प्लेयर आ जाते हैं, जो कि कुछ डैमेज जरूर देंगे, नॉकआउट दर्ज किया जाएगा। वाओ, जी हाँ बिल्कुल, नॉकआउट तो दर्ज किया जा ही रहा है, लेकिन वहीं पर टीम 4 अलूला के प्लेयर्स पर एलिमिनेशन पॉइंट्स भी इकट्ठा करना चाहते हैं, लेकिन पीछे से कहीं से आई थिंक से कुछ फुल स्टॉप लगाया गया है फलक के ऊपर। फलक तो नॉकड आउट है, लेकिन हुजैफा रहते नीचे, क्या बचा पाएंगे अपने खिलाड़ी को? बच जाएंगे अभी के लिए। हुजैफा टीपीपी लेते हुए रैंडम फायर्स करते आगे बढ़ा जाता है। निग्मा गैलेक्सी अपने प्लेयर्स यहां से गवाती आपको देखने को मिलेगी, लेकिन वहीं पर 4 अदद खिलाड़ी अभी के लिए टीम 4 के एक जगह पर तो मौजूद नहीं है। 2 अदद प्लेयर्स फलक और हुजैफा एक दूसरे के साथ मौजूद हैं। तीसरा खिलाड़ी नॉकड आउट है, एक प्लेयर को एलिमिनेट कर दिया जा चुका है, लेकिन लेट्स सी वापस रिकॉल होकर के टीम 4 के बाकी के 2 खिलाड़ी कब आते हैं। लेकिन खैर टीम 40 अपने तीसरे प्लेयर को भी रिवाइवल देने में कामयाबी हासिल हो चुकी है। फलक ही थे जो नॉकड आउट थे, उनके अलावा बाकी के 2 प्लेयर्स इंटैक्ट हैं अभी भी टीम 40 के तरफ। एंड 4 अदद एलिमिनेशन पॉइंट्स अभी तक के लिए टीम 40 अपने लिए इकट्ठे कर चुकी है। लेकिन वहीं पर अरोरा और फुरिया, एक टीम जिनको आपने प्रेडिक्ट किया था शायद, और एक टीम जिनको मैंने प्रेडिक्ट किया था, वो दोनों ही आपस में आपको अब भिड़ते देखने को मिल रहे हैं। मेरी प्रेडिक्शन गोड स्क्वाड रही थी, उनके साथ साथ फोर्थ राइज थी। अरोरा एंड फुरिया उनको मैंने प्रेडिक्ट नहीं किया था, लेकिन इन द मीन टाइम उन्होंने निग्मा गैलेक्सी को बाहर जाते हुए देखा, ये होना नहीं चाहिए था। लेकिन यहाँ देखा जाए ऑल गेमर्स की फाइट बन जाएगी, जंप दिया जाता है सामने से, लेकिन मेपल बिल्कुल भी एंटरटेन नहीं करेंगे। ट्री को नॉक एंड फिनिश कर दिया जाता है और प्लेयर्स हर ही तरफ यहाँ पर गिरते हुए दिखाई देंगे। दूसरी तरफ देखा हमने अरोरा जो प्लेयर्स गवाए थे, दोनों प्लेयर्स को रिकॉल कर लिया जाता है। ज़ोल भी वापस आएंगे, टॉप भी वापस आएंगे, वापस से फॉर्म अप होती हुई टीम दिखाई देगी। लेकिन ख्याल रखना है, बार-बार रिलाय नहीं करना, एलिमिनेशन पॉइंट्स नहीं देने, लेकिन देते हुए ओरंगुटान भी नजर आती है किल फीड के अंदर अपने एलिमिनेशन पॉइंट्स। इस बार एक्सफोर्स रिजेक्ट, जहां 2 पॉइंट्स दिए वहां पर 2 पॉइंट्स उठाने की कोशिश ओरंगुटान करती हुई नजर आती है, जिनमें से एक कंफर्म किया जाएगा। यहां देखा जाए कि वो DRX वो हमारे सामने हैं, जिनके प्लेयर्स फाइट लेते हुए क्लोज रेंजेस के अंदर नजर आएंगे टीम ऑल गेमर्स के साथ। लेकिन किल फीड में ओरंगुटान उनके एक और प्लेयर को नॉक एंड फिनिश कर दिया जाएगा। व्हाट इज गोइंग ऑन? ख्याल से खेलना है, ध्यान से खेलना है, लेकिन रही सही कसर निकालने के लिए इस सारी फाइट में थर्ड पार्टी करते हुए टीम 4 के प्लेयर्स आएंगे। लेकिन स्मोक के अंदर ये शॉटगन चलाना काफी नुकसानदेह साबित होता है। मेपल बिल्कुल भी मौका नहीं देते, कोई भी सामने आएगा उसे धूल चटा दी जाएगी मेपल की जानिब से, और एक बार फिर से एक और एलिमिनेशन पॉइंट अपने नाम दर्ज। जी हाँ, ऑल गेमर्स का स्क्वाड खेलता आपको देखने को तो अच्छा दिखाई दे रहा है। इससे पहले शायद उतना ज़्यादा इन प्लेयर्स को हमने खेलते नहीं देखा है, लेकिन अभी के लिए दे आर लुकिंग टू गुड। लेकिन वहीं पर ओजी के प्लेयर्स को अगर आप देखें, उन्होंने उठाए ज़रूर, एक एलिमिनेशन पॉइंट उठाया है। एक अदद प्लेयर उनका भी फिलहाल के लिए हमें एलिमिनेटेड दिखाई दे रहा है। लेट्स सी कि क्या रिकॉल लेकर के वापस आ पाएंगे। टीम 4 अपना एक और खिलाड़ी गवाएंगे, लेकिन 5 अच्छे एलिमिनेशन पॉइंट्स टीम 40 अपने खाते में दर्ज कर लेकर जा ही चुकी है। लेकिन AGAL ऑल गेमर्स अभी के लिए 5 एलिमिनेशन पॉइंट्स के मार्कर पर वो भी अपने आप को लेकर के जा चुके हैं। न्योक्स फैक्ट्री के अतराफ लास्ट टीम स्टैंडिंग्स के अंदर या लास्ट प्लेयर स्टैंडिंग के अंदर फलक आपको देखने को मिल रहे हैं। के अंदर फलक आपको देखने को मिल रहे हैं, सामने ही मेपल मौजूद है। दोनों टीमों के पास 5 और 5 एलिमिनेशन पॉइंट्स हैं, जो कि अब तक के सारे लॉबी के अंदर तकरीबन हाईएस्ट ही रहेंगे। उसके बाद 3 एलिमिनेशन पॉइंट्स के ऊपर आपको फुरिया दिखाई दे रही है, लेकिन फलक जाते जाते यहां से भेजना चाहते हैं इनफैक्ट मेपल को, और छठा एलिमिनेशन पॉइंट अपने लिए कंफर्म करना चाहते हैं। लेकिन सामने आएंगे, क्रॉसर रखा जरूर था पहले मेपल ने, लेकिन सामने रहता शहजादा अपने लिए छठा एलिमिनेशन पॉइंट तो कंफर्म कर लेकर जाएगा ही जाएगा। लेकिन बाकी के प्लेयर्स 4 के कहां पर मौजूद है ये देखना अभी के लिए बाकी है। आई थिंक बाकी सब रिकॉल हो चुके हैं और वो एक साथ खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं। फलक काफ़ी दूर हैं, ऑल बिकॉज वो एलिमिनेट नहीं हुए एक बार भी, और जो हुए उनको वापस बुला लिया गया एंड थैंक्स टू IQ जिनकी तरफ से ये कार्य खैर निभाया जाता है। लेकिन आपने देखा कि मेपल वो प्लेयर थे जिन्होंने 2 से 3 बार 1v1s के अंदर पूरी तरह से एक अटर डोमिनेशन दिखाई।
लेकिन जब फलक के सामने आते हैं, ऐसा नहीं कि मैं इसको बहुत बढ़ा चढ़ा कर बता रहा हूँ, आप सब ने देखा, आप सबके सामने ये चीज़ वाज़ेह थी। फलक के सामने जब आते हैं तो वहाँ फलक he got the better of him, all because of that one jump shot आदि जो कि सरप्राइज करती है। वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि सामने वाले प्लेयर के पास ओजी मौजूद होगी जिससे आप जंप शॉट देते हैं तो कनेक्शन पूरा जाकर आपका बॉडी पर चिपकता है। पहले से क्रॉसर बनाया हुआ था एब्सोल्युटली, और ही शॉटगन से वो इंतजार कर रहे थे। शॉटगन का जो परफेक्ट कह सकते हैं कि मुकाबला करने के लिए उजी का जो इस्तेमाल जंप शॉट के साथ किया गया वो बहुत ही शानदार साबित होता है। एंड फलक उसके चलते अपना लोहा मनवाते हुए नजर आए, लेकिन इसको आगे लेकर जाना है। 6 एलिमिनेशन पॉइंट्स अपने निकाले, ठीक है, हम आपको दाद देंगे, लेकिन यहाँ एलिमिनेट नहीं होना। 6 एलिमिनेशन पॉइंट्स क्या, 8-10 एलिमिनेशन पॉइंट्स भी ये मैप आपको बड़े आराम से दे जाता है, लेकिन डिपेंड ही करता है कि आप फिनिशिंग टचेस किस तरह से निकालते हैं। लेकिन यहाँ बात करेंगे फुरिया की, एक और टीम जिसको फेवरेट कहा जा रहा है कई लोगों की जानिब से, ऑल्दो मैं डिनाई करूंगा इस चीज को, लेकिन यहाँ फुरिया फाइट लेने के लिए आगे जाएगी। थंडर टॉक गेमिंग के सामने आएंगे चीफ ग्रेनेड से पहला नॉकडाउन, शॉटगन से दूसरा। फुरिया 4 एलिमिनेशन पॉइंट्स निकालती है। अयाला आगे जाएंगे, विल टेक डाउन एजे एज वेल। आखिरी प्लेयर टीटी के बच जाते हैं, बहुत ही बड़ा नुकसान पहुंचता हुआ। इनफैक्ट थंडर टॉक के 2 प्लेयर्स यहाँ मौजूद हैं, पहले ही नॉकडाउन थे वो प्लेयर जिनको फिनिश कर दिया जाता है। एंड थंडर टॉक गेमिंग थोड़ा सा खसारे में जाती हुई। जी हाँ, एंड टीटी के प्लेयर्स अब जो बाकी के 2 रह चुके हैं, यहाँ से फॉल बैक करना ही उनकी सेहत के लिए अच्छा साबित होगा। उस फाइट को मज़ीद आगे बढ़ाना उनको बिल्कुल भी नहीं है। एंड टीटी अभी के लिए सर फहरिस्त उनको अपने प्लेयर्स को रिकॉल कर वापस बुलाना है ताकि रीग्रुप कर एक अच्छा मोमेंटम हासिल कर पाएँ। लेकिन जो टीमें हैं जिनके पास अच्छे एलिमिनेशन पॉइंट्स हैं, उसमें टीम 40 के बाद आपको 2 अदद नाम देखने को मिलते हैं। ऑब्वियसली ऑल गेमर्स है, फुरिया का एक नाम रहेगा जिन्होंने 5 एलिमिनेशन पॉइंट्स अपने लिए इकट्ठे किए हैं। लेकिन गोट के प्लेयर्स वो एक पहरेदार बन चुके हैं अभी फ़िलहाल के लिए सारे रिज के ऊपर। एंड आप देखें कि मल्टीपल एंगल्स के ऊपर बिखरे हुए गोट के प्लेयर्स दोनों साइड्स पर उनके टीमें मौजूद हैं। एक साइड के ऊपर गेमिंग स्टार है, उनके बैकयार्ड्स के ऊपर एक और अदद नाम है, लेकिन अब यहाँ से फॉल बैक किया जाएगा बिलाखिर गेमिंग स्टार्स की साइड से। एंड गोट वो भी चाहते नहीं थे कि इस जगह पर रहकर 2 टीमों से वो पंगा ले लें, लेकिन अच्छा हुआ एक टीम यहाँ से फॉल बैक कर चुकी है। गोट के प्लेयर्स गेमिंग स्टार के प्लेयर्स 3 अदद हैं, रोटेशनल क्लैशेस भी बन सकते हैं इस सारे खेल के चलते साथ। लेकिन लेट्स सी कि कहां पर अगली फाइट निकलती है। नाम लिया और एलिमिनेशन फीड में दस्तक दी जाती है अल ऊला के प्लेयर्स की तरफ से। फलक आई थिंक सो पहली बार एलिमिनेट हुए हैं, इससे पहले नॉकआउट हुए थे लेकिन उनको एलिमिनेट नहीं किया गया था। आई एम क्वाइट होपफुल एंड आई विश कि जल्द से जल्द वो रिकॉल लेकर के वापस आ जाएं। It's kind of a good news because फलक को अब रिकॉल मिलेगा तो साथ ही साथ वो रिग्रुप भी कर जाएंगे। यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन के IQ जा रहे हैं रिकॉल टावर के ऊपर, ये बटन दबा दिया उन्होंने एंड विद इन 5 seconds फलक विल बी बैक विद हिज टीममेट्स। और ये अच्छी चीज़ तो है, इस तरह से देखें आप वापस आ गए, वो रिग्रुप कर जाएंगे वो। बिकॉज आप अगर न्यूयॉर्क फैक्ट्री में हैं या किसी भी ऐसी जगह पर अगर आप काफ़ी दूर हैं अपने प्लेयर से और आप वहाँ पर जो है वो इंतज़ार कर रहे हैं टीममेट्स के आने का, तो वो रिस्की हो सकता है। जाकर एलिमिनेट हो जाएं और जाकर अपने प्लेयर्स के पास रिकॉल टावर वाली साइड के ऊपर फिर से आए। और ये ज़्यादा आसान है, जिसका इस्तेमाल 4 Thrives ने किया तो सही, लेकिन सर्कल क्लोजिंग करने वाला है। बैड न्यूज़ फॉर 4 Thrives कि उनको जोन में जाना है। सामने कई टीमें हैं जो कि उनका गेट कीप कर सकती हैं। अभी तक सिर्फ एक ही टीम एलिमिनेट हुई है आदि, और 15 टीमें हमारे सामने मौजूद हैं। लेकिन यहाँ देखा जाए DRX के प्लेयर बहुत ही अच्छा कवर बनाते हुए अपने लिए, ये होता है अच्छा इस्तेमाल क्रॉसबो का। ये इससे अच्छा इस्तेमाल मैंने अभी तक नहीं देखा जो इन्होंने किया है। आई मीन कवर बनाने में कामयाब होंगे, गाड़ी सेफ साइड पर लगा दी है, डिप क्रिएट कर ली अपने लिए। एक टाइम था मसनूई कवर पर रिलाई करना पड़ता था, लेकिन ये वो टाइम है। ढूंढो कंक्लूजन किस तरह से मेटा को चेंज कर रहा है कि आप अपने लिए कवर खुद ही बना सकते हैं। बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा। और वो जो डिच बनाई गई है उनकी तरफ से, आई वुड से कि वहाँ पर थोड़ी देर के लिए रुका जा सकता है। बट खैर सर्कल अभी स्टेज 2 पर ही है, अभी भी कंक्लूड नहीं होगा कि कहाँ पर जाएगा सर्कल, वाजे नहीं होने वाला है। अगले शिफ्ट का इंतज़ार आपको ज़्यादातर टीमें करती देखने को मिल रही हैं। एंड वो जो केओस था जो आगाज़ में आपको देखने को मिला, वो थोड़ी देर के लिए आपको थमता देखने को मिल रहा है। और वो सिर्फ इसीलिए है कि आगाज़ के वो जो
5 मिनट होते हैं उसमें टीमें कोशिश करती हैं, क्योंकि रिकॉल्स आपके पास मौजूद होते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा एग्रेसिव होकर एलिमिनेशन पॉइंट्स निकालने की कोशिशें की जाती हैं। लेकिन उसके बाद अब जब बेशतर खिलाड़ी आपकी टीम के रिकॉल अपना इस्तेमाल कर कर आ चुके होते हैं, उसके बाद बैक टू द स्टैंडर्ड्स टीमें आती आपको देखने को मिलती हैं। वो कहते हैं बाय द बुक्स आपको खेलती देखने को मिलती हैं कि अपना कोई भी प्लेयर वो गवाए ना, संभल कर फाइट्स लें, और वही चीज़ आपको अब होती देखने को मिल रही है। लेकिन खैर 16 टीमों में से एक अदद टीम जो कि पहले आई थिंक 2 से 3 मिनट के अंदर ही अला दिन बाहर हो चुके थे। निग्मा गैलेक्सी, उम्मीद इस तरह की नहीं थी कि इतना जल्दी इतने बड़े नाम को बाहर कर दिया जाएगा, लेकिन लेटली काफ़ी स्ट्रगल कर रही है। पिछले इस साल के आगाज़ से ही अगर आप देखें तो निग्मा गैलेक्सी का सूरज वो निकल नहीं रहा है। वेल आपने बिल्कुल ठीक कहा, निग्मा गैलेक्सी थोड़ा सा स्ट्रगलिंग फेज उनका चल रहा है, बल्कि थोड़ा नहीं काफ़ी स्ट्रगलिंग फेज चल रहा है। देयर वाज अ टाइम जब ये टीम टॉप कंटेंडर हुआ करती थी, लेकिन अभी भी देर नहीं की, अभी भी वक्त है आपके पास। एक मैचअप का बुरा गया, 11 मैचेस पीछे बाकी हैं, वो अनहोनी जो आप दिखा सकते हैं, जो कि आप में काबिलियत मौजूद है। अगर अब देखा जाए निग्मा गैलेक्सी का लाइनअप जो है वो हमें वो पुराना लाइनअप दिखाई दे रहा है। वो प्लेयर्स हमें यहाँ पर नजर आ रहे हैं जिनको हमने पहले एक साथ खेलते हुए देखा था। राउफ हर बार वो आते हैं, एक अच्छी से अच्छी टीम बनाते हुए दिखाई देते हैं। इस बार अगर देखा जाए कूप्स को वापस से अपनी टीम में लिया जाता है उनकी जानिब से। वी हैव 4YD-Oled हैं, सेटन है, और राउफ हिमसेल्फ, द मैन हिमसेल्फ, वो खेलते हुए नजर तो आएंगे। लेकिन बात करते हैं फिलहाल सर्कल की। आदि सर्कल ने थोड़ा सा नॉर्थ वेस्टर्न शिफ्ट लिया, जिसका थोड़ा बहुत फायदा फोर्थ राइज को भी होगा। आई मीन जिस साइड से उन्होंने एंट्री ली, अगर वापस सर्कल वहाँ से दूर चला जाता तो फिर से वो चेज गेम चलता तो सही। लेकिन अभी गुड न्यूज़ इसके सर्कल उस साइड पर आया है, थोड़ा सा ब्रीदिंग स्पेस मिलेगा, टाइम मिलेगा, रीस्ट्रेटजाइज करने का टाइम मिलेगा, रीसेट करने का अपने दिमाग को। लेकिन दूसरी साइड पर टीम RRQ, थोड़ी सी नज़र इन पर भी डालते हैं। काफ़ी टाइम बाद ये लाइनअप वजूद में आया है, और इस बार तो सीधा EWC के अंदर एंट्री ली इनकी जानिब से। हाँ जी हाँ, बिल्कुल RRQ की आपने बात की है। एंड RRQ ऑब्वियसली एक आई वुड से कि मैं इनको भी डार्क हॉर्स नहीं कहूँगा। हाँ, साउथ ईस्ट एशिया फाइनल्स PMGO के अंदर इस साल के आगाज़ में #3 पर इन्होंने ख़त्म ज़रूर किया, लेकिन उसके बाद PMGO S1 मेन इवेंट के अंदर बिल्कुल भी अच्छी परफॉर्मेंस उनकी आई नहीं है। लेकिन RRQ के प्लेयर्स अब आपको गिरते भी देखने को मिल रहे हैं। फ्लैश और अरोरा आपस में आपको लड़ते दिखाई दे रहे हैं। वंस अगेन एक मैच बड़ा अहम है। एक मैच की एलिमिनेशन आपको कहाँ से कहाँ पर लेकर जा सकती है, ये आपको अभी थोड़ी देर बाद अंदाज़ा होगा जब पहले 3 मैचेस ख़त्म होंगे। लेकिन रोंडो स्पेसिफिकली इसके अंदर अच्छी जो टीमें हैं, इनफैक्ट सारी ही अच्छी टीमें हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि कोई भी डिजर्विंग नहीं है, सभी डिजर्विंग है, इक्वली डिजर्विंग है। लेकिन रोंडो असल में आपको पुश देकर जाता है दिन के आगाज़ में। अगर आप इस मैच के अंदर अच्छे पॉइंट्स निकालने में कामयाबी हासिल कर लें तो आपके पूरे दिन पर वो जो एक बोझ होता है हर मैच के अंदर अच्छे पॉइंट्स निकालने का, वो कुछ हद तक के लिए कम हो जाता है। लेकिन खैर वहीं पर अरोरा के प्लेयर्स जिस तरह आउट इन दी ओपन फाइट ले रहे हैं, और आप देखें कि पीछे जो रिजेस मौजूद हैं वहां पर अगर कोई आ गया तो अरोरा के लिए एंड इनफैक्ट टीम उल्फ के लिए भी दिक्कतें बन सकती हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा दिक्कत यहां पर यह है कि यहां से जब रोटेशन चलेंगी, कोई आसपास से रोटेट करता चला तो फिर बैक स्टैप किया जा सकता है इन दोनों टीमों को। लेट्स सी, अभी के लिए अरोरा और उल्फ एक ऐसे आई वुड से सिचुएशन के अंदर आ चुके हैं जहां से दोनों ही शायद फॉल बैक नहीं कर सकते हैं। बट लेट्स सी आने वाले वक्तों में क्या होता है। वहीं पर टीम 4 थ्राइव्स के खिलाड़ी कहां पर हैं, ये देखना अभी के लिए बाकी है। एक्स-फोर्स गायब होने वाली है।
जी हाँ, बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा अलादीन के 2 अदद खिलाड़ियों पर अब आ चुके हैं, लेकिन RRQ दे आर फाइटिंग हार्ड कि जैसे तैसे कर कर वो यहाँ से निकल कर जाएं। लेकिन मुझे ज़्यादा दिक्कत ये भी है कि अरोरा यहाँ से बेशक ये सारे एलिमिनेशन पॉइंट्स उठा करके भी चली जाए, लेकिन उनके पीछे आप देखें X4 रिजेक्ट के प्लेयर हैं, उल्फ की पूरी टीम है, अल उला ई स्पोर्ट्स बिल्कुल पीछे इंतजार कर रही है एंड बेसब्री से इंतजार कर रही है कि जैसे तैसे कर कर वो कुछ ना कुछ एलिमिनेशन पॉइंट्स यहाँ से थर्ड पार्टी कर कर लेकर के जाएं। लेकिन अरोरा गेमिंग 4 अदद खिलाड़ी हैं यहाँ पर, अगर उनको एलिमिनेट कर दिया गया तो बहुत दुख उनको होगा ज़रूर। लेकिन आप ये देखिए कि जो रहेंगे डिचेस उनका कितना बेहतरीन तरीके से अरोरा इस्तेमाल करती देखने को मिल रही है, लेकिन टीटी के प्लेयर्स वो आपको गिरते देखने को मिल रहे हैं एंड टीटी अनफॉर्चुनेटली ज़्यादा कुछ अभी के लिए कर नहीं पा रही है। आखिरी 2 अदद प्लेयर्स के ऊपर आ चुके हैं, लेकिन 17 मिनट का टाइमर ख़वातीन हज़रात इस मैच के अंदर हमें आए हुए हो चुका है, विच मीन्स के रिकॉल टावर्स अब जाकर डीएक्टिवेट हो चुके हैं। नो मोर रिकॉल्स, नो मोर सेकंड चांसेस फॉर एनी प्लेयर। लेकिन वहीं पर अगर आप देखें 6 अदद एलिमिनेशन पॉइंट्स टीम ऑल गेमर्स कर कर जो लेकर गए थे, 5 एलिमिनेशन पॉइंट्स न्यूयॉर्क फैक्ट्री से उठाए थे, उसके बाद काफ़ी बैलेंस्ड और काफ़ी स्ट्रेटेजिकली खेलते आपको देखने को मिल रहे हैं। ना ज़्यादा अननेसेसरी फाइट्स में जा रहे हैं, सिर्फ अपना पैसिवनेस दिखा रहे हैं और इसी तरह से ही आपको खेलना पड़ता है। जैसे 4 थ्राइव्स आपको बहुत देर से अब आपको काफ़ी आई वुड से कि डिफेंसिव नहीं लेकिन संभल कर खेलते दिखाई दे रहे हैं। अब किसी और फाइट के अंदर इंटेंशनली टीम 4 थ्राइव्स हो या टीम ऑल गेमर्स हो, या आपको जाते दिखाई नहीं दे रहे हैं। एग्जैक्टली वेल नो एलिमिनेशन पॉइंट्स यहाँ फरिया भी निकालती हुई नजर आती है हमें। कहीं ना कहीं पॉइंट्स टेबल पर राज किया जा रहा है इस टीम की भी जानिब से भी, लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए KRX उनके 4 प्लेयर्स इंटैक्ट पॉसिबिलिटी यहाँ पर भी रहेगी कि कुछ कमाल इनकी जानिब से भी किया जा सकता है। लेकिन चले फिलहाल फ्लैश के ऊपर ग्रेनेड फेंका गया, फ्लैश की टॉप 0 गिरा दिया जाएगा। दिस गिव्स देम एंड द इंफॉर्मेशन के चार्ज करना अब यहाँ मकसूद हो चुका है और ऐसा किया जाएगा सही, लेकिन सीओस की जानिब से पकड़ लिया जाता है। सीओस यहाँ फुल स्टॉप लगाना चाहते हैं और अनफॉर्चुनेटली टीम KRX इनके 4 प्लेयर्स यहाँ मौजूद थे, उनको 3 प्लेयर्स पर ला खड़ा किया जाएगा। सर्कल में जाने के लिए फ्लैश के प्लेयर से फाइट लेना जरूरी है। 4 वर्सेस 2 सिचुएशन को 3 वर्सेस 2 में कन्वर्ट करना वाज द बिगेस्ट मिस्टेक, लेकिन अब उसे क्या मजीद अपने नाम दर्ज किया जाएगा? जी हाँ, ज़्यूस और बाउस मिलाकर मजीद प्लेयर्स गिराएंगे। इस बार ग्रेनेड्स के साथ पासा पलटा जाता है, टीम KRX उनके ऊपर दिक्कतें बनाई जाती है, लेकिन देयर वी गो, एक और ग्रेनेड आता है, ट्रेड ग्रेनेड आता है जो कि मुश्किलात बनाएगा फ्लैश के ऊपर। लेकिन अब इस 2 वर्सेस 1 सिचुएशन को किस तरह से अपने नाम किया जाता है? थर्ड पार्टी पीछे से होगी, बिनी पकड़े जाएंगे, वेस्ट गॉड आगे आते हैं, उनकी तरफ से डीपी चलाई जाती है, बिनी को गिरा दिया जाएगा और वो टीम जो कुछ मोमेंट्स पहले अपने 4 प्लेयर्स पर दिखाई दे रही थी आदि, अब अपने आखिरी 2 प्लेयर्स पर आ जाती है। बिल्कुल आपने ठीक कहा एंड टीम KRX ये DRX ही है ख़वातीन व हज़रात। नाउ दे हैव रीब्रांडेड देमसेल्व्स और रीनेम्ड देमसेल्व्स एज KRX। लेकिन खैर KRX के प्लेयर्स नीचे 3 अदद एक साथ ही मौजूद हैं, लेकिन फ्लैश के प्लेयर आए थे, गलती की उन्होंने, दोबारा गलती की जाती है। एक एक करके फ्लैश के प्लेयर्स को आना चाहिए नहीं था, क्योंकि आगे सामने जिस टीम से आप लड़ने जा रहे हैं उनके तीनों खिलाड़ी एक दूसरे के साथ ही मौजूद हैं। यूटिलिटीज़ का अगर इस्तेमाल किया जाता तो शायद फ्लैश अभी आपको बचती दिखाई देखने को मिल सकती थी, लेकिन वहीं पर ऑल गेमर्स उनका स्ट्रैटेजी आप देखें कि 9 एलिमिनेशन पॉइंट्स इनफैक्ट फुरिया के पास मौजूद हैं, लेकिन ऑल गेमर्स भी 6 एलिमिनेशन पॉइंट्स के ऊपर अब जाकर फिलहाल के लिए हमें देखने को मिल रहे हैं। लेकिन फुरिया वो भी एंट्री हासिल करेंगे सर्कल के अंदर, बिल्कुल साउथ ईस्टर्न एंड से आए जरूर हैं, बैकस्टैप करने की पोजीशन में है तो है, लेकिन RRQ के प्लेयर एक अदद खिलाड़ी को नॉकआउट किया गया है। लेकिन फुरिया अनफॉर्चुनेटली अपने 2 अदद प्लेयर्स गिरा दिए जा चुके हैं उनकी साइड से। आखिरी प्लेयर पर अब बात आ चुकी है, अरोरा गेमिंग बिल्कुल पीछे रहते थर्ड पार्टी की बदौलत हर एक के ऊपर कुछ एलिमिनेशन पॉइंट्स स्टीलिंग की है अरोरा ने। कुल मिलाकर 3 अदद एलिमिनेशन पॉइंट्स अभी फिलहाल के लिए अरोरा के पास आ चुके हैं। वेल अरोरा इससे पहले हमने देखा कि बहुत ही शानदार इनकी तरफ से टीम फाइट ली गई थी, लेकिन इस बार दूर कहीं पर मिनी 14 का इस्तेमाल करते हैं, वो एलिमिनेशन पॉइंट्स बटोरे जाते हैं उनकी जानिब से। लेकिन अरोरा वर्सेस ओजी होता है, जहां पर ओजी की जानिब से अरोरा के ऊपर कहर बरसाया जाएगा। RRQ सामने है, थर्ड पार्टी करना चाहेंगे, यूटिलिटीज का इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन यहाँ ऑल गेमर्स को देखा जाए जो कॉम्पाउंड अपने लिए हासिल किए हैं, बदकिस्मती के साथ वो जोन से बाहर है। अरोरा उन पर रही सही कसर निकालने के लिए आ जाते
जाते हैं टीम RRQ के प्लेयर्स 6 एलिमिनेशन पॉइंट्स निकाले, मजीद दर्ज करने की कोशिश। अरोरा के शायद आखिरी प्लेयर रीफर्स यहाँ दिखाई देंगे जिनको एलिमिनेट करना अरोरा को इस मैच से बाहर करने के मुतरादिफ जरूर होगा, लेकिन ग्रेनेड के साथ क्या एलिमिनेशन पॉइंट कंफर्म किया जाएगा? इन एनी केस इस आउट इन द ओपन सिचुएशन में सर्वाइव करना अरोरा का इम्पॉसिबल दिखाई तो देता है, लेकिन थर्ड पार्टी पीछे से होती हुई RRQ को ध्यान देना है। जो गलती अरोरा ने की वो गलती नहीं करनी, यूटिलिटीज से बचना होगा। इन डिप्स के अंदर हमने 3 से 4 टीमों का 4 से 5 टीमों का डिमाइस देखा और आपने उनमें अपना नाम दर्ज नहीं कराना। रीफर्स को एज सुन एज पॉसिबल ठिकाना लगाना जरूरी है, वरना ऑल गेमर्स उनको मदद मिलेगी 2 साइड से। इन ऑल गेमर्स अब उन्होंने डिसाइड किया है कि वो स्लैम इन देते हुए दिखाई देंगे। फ्लावर एज शॉटगन के साथ पहला नॉकआउट दर्ज करते हैं, लेकिन पीछे से थर्ड पार्टी आदि जिस चीज का खौफ था वही होता है। थर्ड पार्टी यहां पर नुकसान पहुंचाती हुई नजर आती है। आप ये देखेंगे गेमिंग स्टार्स हो चाहे ऑल गेमर्स हो, इनफैक्ट RRQ के कुछ प्लेयर्स वो सर्कल से बिल्कुल बाहर हो चुके हैं। अरोरा अनफॉर्चुनेटली उनको थोड़ा नुकसान उठाना यहाँ पर पड़ चुका है जस्ट बिकॉज ऑफ सर्कल के सर्कल यहाँ पर धोखा देकर जाता है ज़्यादातर टीमों को, लेकिन ये सब टीमें अब यहाँ पर आपको एलिमिनेट होती देखने को मिलेंगी, जिसमें से गेमिंग स्टार्स उनको तो बाहर कर दिया जा चुका है ऑल गेमर्स की साइड से। 8 एलिमिनेशन पॉइंट्स कुल मिलाकर डुओ डोमिनेशन की बदौलत टीम ऑल गेमर्स अपने लिए निकाल करके लेकर जा चुकी है। लेकिन इस सारी सूरत हाल में टीम 4 थ्राइव्स उनका स्ट्रैटेजी पूरी लॉबी से बिल्कुल मुख्तलिफ है। जहां पर पूरी लॉबी आपको ईस्टर्न साइड पर लड़ती एक दूसरे से भिड़ती देखने को मिल रही थी, टीम 4 थ्राइव्स बिल्कुल ऑपोजिट एंड के ऊपर वेस्टर्न साइड पर आराम से इंतजार कर रहे थे कि सर्कल का शिफ्ट कब आएगा। और अब आप देखेंगे अपनी जगह आहिस्ता आहिस्ता से सर्कल के अंदर टीम 4 थ्राइव्स आपको बनाती दिखाई तो मिलेगी, लेकिन वहीं पर 3 अदद मजीद एलिमिनेशन पॉइंट्स कंफर्म कर लिए जाएंगे। एलिमिनेशन पॉइंट्स कंफर्म कर लिए जाएंगे। अरोरा के रीफर्स जाते जाते कुछ एलिमिनेशन पॉइंट्स उठाते हैं। फलक अपने एलिमिनेशन पॉइंट्स टीम 4 थ्राइव्स लेकर के बढ़ा करके 11वें पर लेकर जा चुकी है, लेकिन ऑल गेमर्स उनके पास भी 10 अदद एलिमिनेशन पॉइंट्स हैं। रीफर्स अभी भी सरवाइव कर रहे हैं। क्या आ पाएगा एक शानदार क्लच? ना निकला ना ही आ पाएगा अभी के लिए, लेकिन ऑल गेमर्स और 4 थ्राइव्स बिल्कुल आगाज से न्यूयॉर्क फैक्ट्री में दोनों टीमें उतरी थी अलादीन, और वहीं से एलिमिनेशन स्ट्रीक एक जो शुरू की गई थी, एक एलिमिनेशन स्प्री शुरू की गई थी। 5-5 एलिमिनेशन पॉइंट्स न्यूयॉर्क फैक्ट्री से निकालकर दोनों टीमें बाहर निकली, और अब आप देखें दोनों ही टीमों के पास 11 और 11 एलिमिनेशन पॉइंट्स हैं, लेकिन एक हाथ आगे या कहें कि आप एक कदम आगे टीम 4 थ्राइव जरूर है 4 प्लेयर्स के साथ। जी हाँ बिल्कुल, ऑल गेमर्स जहाँ पर उनका एक प्लेयर नॉक होता है दूसरे प्लेयर भी गिरते हुए दिखाई देंगे, वहीं पर हुज़ैफा भी गिर जाएंगे। 4 थ्राइव्स अब फाइनली उनकी तरफ भी नुकसान पहुंचते हैं। गीके के प्लेयर इस बार आगे आएंगे, यूटिलिटीज के साथ नॉकआउट दर्ज किया है। गीके इंटेंशन उनका यही है कि किसी तरह ग्रेनेड से नॉकआउट दर्ज किया जाए, वो आगे आना नहीं चाहते, लेकिन हुज़ैफा उनको ये हीट महसूस होगी यूटिलिटीज की, ग्रेनेड्स की, जहाँ पर सामने से भी यूटिलिटीज दर्ज होती हैं, लेकिन कोई नॉकआउट ट्रेड नहीं किया जाता। फलक आगे जाएंगे, T24 gets taken down, ये अच्छा नहीं है, ये अच्छा नहीं है। फलक इस सबके बावजूद पहला नॉकआउट दर्ज करेंगे, घूमा जाएगा, दूसरा प्लेयर गिराया जाएगा, but he is the last man standing। अगर गीके यहाँ आती है, अगर गीके के प्लेयर स्लैम देते हुए दिखाई दिए, 4 थ्राइव्स का बचना इम्पॉसिबल दिखाई देगा। गीके उनको आगे बढ़ना है, 4 थ्राइव्स के ऊपर वो कारी सर्व लगाना होगी, लेकिन दूसरी साइड पर ऑल गेमर्स को देखा जाए 12 एलिमिनेशन पॉइंट्स निकाले जाते हैं, और गीके वो नॉकड आउट प्लेयर्स के ऊपर एलिमिनेशन पॉइंट्स कंफर्म करते हुए स्लैम नहीं दिया जाता। 4 थ्राइव्स को एक और दिन देखने के लिए जिंदा छोड़ दिया जाता है, लेकिन ये गीके की सबसे बड़ी गलती हो सकती है आदि। जी हाँ बिल्कुल, लेकिन अलादीन टीम 4 थ्राइव्स नाउ दे हैव टू बी एक्सट्रीमली केयरफुल, क्योंकि क्योंकि सर्कल उनके पास बिल्कुल भी मौजूद नहीं है। आगे बढ़ना पड़ेगा टीम 40 के प्लेयर्स को सर्कल के जानिब, लेकिन वहीं पर ओरांगुटान्स अभी तक के लिए सर्वाइव कर रहे हैं, नज़र ही नहीं आए कहीं पर, और एकदम से किसी पत्थर के नीचे से बाहर निकले ज़रूर हैं, लेकिन खैर देर आए दुरुस्त आए, मैं ज़रूर कहूँगा सर्वाइवल अच्छा निकाल लिया है, टॉप 4 में अपना नाम दर्ज किया ज़रूर है। लेकिन अभी के लिए टीम 4 थ्राइव्स क्या अपनी जगह सर्कल के अंदर बना पाएंगे, उसके लिए उन्हें एक दीवार से गुजरना पड़ेगा, और वो दीवार 2 अदद प्लेयर्स टीम ऑल गेमर्स के हैं, जिनका सामना कर करके ही टीम 4 थ्राइव्स को शायद सर्कल के अंदर अपनी जगह बनानी पड़ेगी। लेकिन सिर्फ ऑल गेमर्स का ही नहीं, आगे गीके उनको अंदाजा है कि 2 अदद खिलाड़ी यहां पर भी सर्वाइव कर रहे हैं, एंड टीम 4 थ्राइव्स का पोजीशन भी कॉम्प्रोमाइज रहेगा। लेकिन अभी के लिए देखते हैं ऑल गेमर्स के प्लेयर न्यू मौजूद हैं, ग्रेनेड दागा गया तो है, फलक को नुकसान पहुंचाया जाता है। फलक जिनको कहा भी जाता है मैन विद द गोल्डन हैंड, एक यूटिलिटी जाएगा, नुकसान क्या पहुंचाएगा, बच जाएंगे अभी फिलहाल के लिए ऑल गेमर्स के खिलाड़ी।
गई, लेकिन दोनों ही साइड से कुछ स्मोक्स का इस्तेमाल करते अपनी जगह बनाना चाहते हैं सर्कल में, लेकिन राग्नारॉक वापस से निकल कर आएंगे। फलक को इस बारी पकड़ा जाता जरूर है, लेकिन आईक्यू रिवाइवल देते आपको देखने को मिल रहे हैं। मोलोटॉव का टाइमिंग बहुत ही गलत रहेगा। आईक्यू करना चाहते थे रिवाइव, लेकिन बच ना पाएंगे। फलक ही गेट्स एलिमिनेटेड, लेकिन वहीं पर आईक्यू जैसे तैसे करके एक स्लिवर ऑफ एन एचपी के साथ अपनी जान बचा लेते हैं। हील स्टार्ट भी पुल ऑफ कर लिया जा चुका है उनकी साइड से, लेकिन वहीं पर ऑल गेमर्स के प्लेयर बैकयार्ड से ओरांगुटान्स टीम 4 थ्राइव्स की थोड़ी बहुत मदद करते आपको देखने को मिल रहे हैं, जहां पर आईक्यू का पोजीशन तो कॉम्प्रोमाइज ओरांगुटान्स के हाथों नहीं है। शायद आईक्यू अपनी जगह बना पाएंगे सर्कल में, लेकिन आईक्यू जाते जाते मजीद एक और एलिमिनेशन पॉइंट का इजाफा कर जाएंगे। सामने निकल कर आते हैं आखिरी प्लेयर ऑल गेमर्स के, लेकिन बचकर ज्यादा रहना है ओरांगुटान, और पीछे रहते गीके के क्रॉसहेयर से। ओरांगुटान की बात की जाए, उनके पास जगह काफी शानदार है, यहाँ उन्हें थर्ड पार्टी का सामना तो करना नहीं पड़ेगा, लेकिन फोर्थ राइज के आईक्यू आई थिंक उनका बचना बहुत मुश्किल दिखाई दे रहा है। यहाँ पर मिरेकल से कम नहीं होगा अगर आईक्यू एक और एलिमिनेशन पॉइंट भी निकाल जाते हैं, लेकिन मकसद उनका यही है किसी तरह से हैश टू पर आया जाए। इसके लिए जरूरी है कि गी के आगे बढ़े, थोड़ी सी अग्रेसिव अप्रोच दिखाई जाए, लेकिन अगर देखा जाए मैप की तरफ आदि, यहाँ पर आपको ये चीज वाजे होती है कि गीके के 3 प्लेयर्स वो एक तरफ है जहां पर फोर्थ राइज के आईक्यू हैं, वहीं पर एक प्लेयर उस साइड पर है जहां पर हमें 3 प्लेयर्स दिखाई देते हैं ओजी की, यानी कि ओजी के पास चांसेस है कि वो इस मैच को चिकन डिनर में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि किसी का मैन एडवांटेज तोड़ा जाए। यू आर एन आपके पास डिसएडवांटेज है, मैन डिसएडवांटेज है, आपके पास प्लेसमेंट डिसएडवांटेज है, यहां से चिकन डिनर निकालने की इजाजत कीके ने दी तो बहुत बड़ी गलती हो सकती है, लेकिन ओरांगुटान यहां तक आना कमाल तो है। एलिमिनेशन पॉइंट अभी भी एक है, मजीद एलिमिनेशन पॉइंट ना निकाले गए, चिकन डिनर ना निकाला गया तो यहां तक आना जाया जाएगा। रोंडो में 10-12 पॉइंट्स निकालने वाली हमें कई टीमें नजर आती हैं, और अगर आप यहां से एलिमिनेट हो जाएंगे यू विल प्रॉब्ली गेट 6 और 7 पॉइंट्स, 7 से 8 पॉइंट्स आपको मिलेंगे, लेकिन गी के शायद अंदाजा हो चुका है कि फोर्थ राइज के आईक्यू कहां मौजूद है। नहीं आई थिंक सो रैग्नर, ओह माय गुडनेस, जी हाँ बिल्कुल, इजी फॉर बैड बॉय, उन्होंने ही स्कोप इन किया था टीम 4 थ्राइव्स के आखिरी प्लेयर के ऊपर, एंड नाउ आईक्यू हैज़ बिन एलिमिनेटेड, लेकिन एक बहुत अच्छी डोमिनेशन दिखाकर आई थिंक सो हाईएस्ट एलिमिनेशन पॉइंट्स निकालकर टीम 4 थ्राइव्स एलिमिनेट हुई है 4थे नंबर पर, लेकिन अब बात आ चुकी है 3रे नंबर पर। इनफैक्ट गुस्ताखी के लिए माजरत चाहूँगा, लेकिन वहीं पर ओरांगुटान्स और गीके, यहाँ पर क्या कहानी, कौन लिखता दिखाई देगा, कौन लगाएगा अपनी मोहर इस मैच के ऊपर। और ये पहला ही गेम है ख़वातीनो हज़रात, लेकिन रोंडो जिस तरह से अलादीन ने मेंशन किया कि अगर आपके पास अच्छे एलिमिनेशन पॉइंट्स नहीं हैं तो ये चिकन डिनर के 10 पॉइंट्स, अगर 12-13 पॉइंट्स लेकर 15 पॉइंट्स लेकर आप इस मैच से निकल रहे हैं वो काफ़ी नहीं है, क्योंकि इतने तो एलिमिनेशन पॉइंट्स आपको बेशुमार टीमों के देखने को मिलेंगे जब मैच रैंकिंग्स आएंगी, लेकिन वहीं पर गीके बहुत संभल कर खेल रहे हैं, ज़्यादा गलती नहीं कर रहे हैं। अंदाज़ा उनको है कि ओरांगुटान्स के तीनों खिलाड़ी बिल्कुल इस रिज के पार मौजूद हैं, लेकिन ओरांगुटान्स वो भी गलती नहीं कर रहे हैं। दाद देना उनको भी पड़ेगी। सर्वाइवल जिस तरह से उन्होंने अपना यकीनी बनाया है अपने 3 प्लेयर्स की बदौलत, मैं देखना चाहूँगा कि कितने एलिमिनेशन पॉइंट्स हैं ओरांगुटान्स के पास मौजूद। अभी के लिए सर्कल का ये आखिरी स्टेज है। ओरांगुटान्स जिस जगह के ऊपर मौजूद है अलादीन, ज्यादा प्रेशर ब्लू वॉल या ब्लू जोन इन्हीं के ऊपर सबसे पहले बनाएगा, जिसकी बदौलत इनको अपनी जगह छोड़कर जैसे तैसे कर आगे बढ़ना ही पड़ेगा। जी हाँ बिल्कुल, लेकिन जैसे ही विस्कोट आगे आते हैं उन्हें फौरन से मुंह की खानी पड़ती है। ओजी एकेओपी कोशिश की गई थोड़ी बहुत पीक सी जाएं, एग्रेसिव होना चाहते थे, लेकिन नुकसान पहुंचता है। एक 2 वर्सेस 4 सिचुएशन है जहां पर गी के उनको वो अपर हैंड एडवांटेज तो मिलेगा, लेकिन क्या ओजी के प्लेयर्स कुछ कमाल कर पाएंगे? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं होगा। एक भी प्लेयर नॉक नहीं किया जाता और आखिरी प्लेयर को भी धूल चटाई जाएगी। गी के इस मैच का चिकन डिनर लेकर जाते हैं, एंड ओजी काफी दूर आए, काफी करीब आए। इनफैक्ट चिकन डिनर निकालना जरूरी था, नहीं निकाल पाए। एलिमिनेशन पॉइंट्स में देखना चाहता हूं इस टीम ने कितने दर्ज किए हैं। अगर आपके पास 3 से 4 एलिमिनेशन पॉइंट्स हैं, 6 पॉइंट्स आपको प्लेसमेंट्स के मिले, बहुत अच्छा नंबर नहीं है ये। कई टीमें जिन्होंने मैच के पहले 5 से 10 मिनट्स में एग्जिट लिया, उनके पास इतने पॉइंट्स थे। यही वजह है कि मैं कहता हूं कि रोंडो एक ऐसा मैप है जिसमें जितने चाहे पॉइंट्स आप ले लो, और उसके लिए जरूरी है कि एलिमिनेशन पॉइंट्स को पूरी तरह से फेवर दी जाए। बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा अलादीन, एंड एलिमिनेशन पॉइंट्स का ही तो ये गेम था रोंडो का। एलिमिनेशन पॉइंट्स को अगर आप बैलेंस कर लें प्लेसमेंट पॉइंट्स के साथ, जिस तरह से टीम 4 थ्राइव्स ने किया, जिस तरह से ऑल गेमर्स ने किया, 2 टीमें ऐसी जो कि आपको पूरे मैच के अंदर अच्छा खेलती देखने को मिली हैं, और एक ही लेवल पर आकर, वो कहा जाता है कि एक ही दूसरे के
लेवल पर आकर इन्होंने खेला है इस मैच को, चाहे एलिमिनेशन नंबर्स की बात हो, फाइट्स की बात हो, आपस में एंड पर आकर आपको दोनों आपस में भी लड़ते देखने को मिले हैं। लेकिन गीक है, उनको दाद देना पड़ेगी। विद सम डिसेंट एलिमिनेशन पॉइंट्स उन्होंने इस मैच पर अपनी मोहर लगाई है और ओरंगुटान्स को सर्वाइवल निकालने की दाद हम ज़रूर देंगे, लेकिन इससे ज़्यादा अनफॉर्चुनेटली वो कुछ कर ना पाए हैं। बट खैर, मैच रैंकिंग्स में देखते हैं कि बाकी टीमें कहाँ पर कितने पॉइंट्स लेकर इस मैच को ख़त्म किया है। अरोरा सरे फहरिस्त हमने देखा कि काफ़ी देर से, काफ़ी अरसा एक उनको लगा उस सारे क्लस्टर के अंदर से बाहर निकलने में, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वहाँ से सिर्फ और सिर्फ से एक ही प्लेयर निकल आ पाते हैं बाहर। बदकिस्मती के साथ हमने देखा कि अरोरा गेमिंग भी उसी तरह से उसी भीड़ का शिकार चढ़ती हुई नजर आती है, जहां पर हमने कई टीमों को एलिमिनेट होते हुए देखा। वो एक ओपन जगह थी जहां पर हर किसी ने सर्वाइव करने की कोशिश की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कर कोई भी नहीं पाया। और अरोरा से पहले भी हमने कई टीमों को वहां एलिमिनेट होते हुए देखा था। लेकिन चलें, वक्त हुआ चाहता है अगले मैच का, बट उससे पहले इस मैच के थोड़े से स्टार्ट्स पर नज़र डालेंगे, थोड़े से नंबर्स पर नज़र डालेंगे। जिस तरह से मैंने पहले भी कहा कि एलिमिनेशन पॉइंट्स निकालना बहुत ज़रूरी है। वो परसेंटेज जो है कहीं ना कहीं 60-40 की होनी चाहिए। 60% से ज़्यादा आपके पास एलिमिनेशन पॉइंट्स होने चाहिए। करंट मेटा जो है वो इस चीज़ को चीख कर बता रहा है, और चैंपियन टीम की मेंटालिटी भी यही होती है। इसी तरह से खेलते हुए 4 थ्राइव्स नज़र आती है। गीके कहीं ना कहीं चिकन डिनर उन्होंने खुद ही निकाला है, अपना छीना है उन्होंने। ये नहीं कह सकते कि सर्कल ने उनको चिकन डिनर दे दिया। नो डाउट सर्कल ने फेवर ज़रूर दी कई टीमों को, लेकिन लास्ट मोमेंट के ऊपर जहां हमने देखा कि 4 थ्राइव्स के 4 प्लेयर्स मौजूद थे, इट वाज गीके जिन्होंने 4 थ्राइव्स का मिनट एडवांटेज उनसे छीना था। इट वाज गीके जिन्होंने 2 प्लेयर्स को नॉक इन फिनिश किया था। ग्रेनेड अगर कनेक्ट नहीं करता, T24 शायद उस टाइम पे नॉक हुए थे, और हमने उज़ैफा को भी नॉक होते हुए देखा था। अगर ना होता ऐसा तो रिजल्ट डिफरेंट हो सकता था। लेकिन इफ्स एंड बट्स की बातें बाद में करेंगे, अभी के लिए जाएंगे छोटे से ब्रेक की तरफ। विल बी राइट बैक आफ्टर अ वेरी शॉर्ट ब्रेक, कहीं मत जाइएगा। Play is in our DNA. Whenever we let it out, it becomes our superpower. Now imagine an entire city being built to supercharge it. Qiddiya City, powered by play. पता लग जाता है ना सिर्फ प्लेयर है सबसे ऊपर, बट वहीं पर दाद देना पड़ेगी DRX को, या KRX आप उनको कह लें, जो उनका गेम टैग है। ऑल गेमर्स ने बड़ा शानदार खेला अलादीन। जी हाँ, बिल्कुल, ऑल गेमर्स ने कहा 500 का की तरफ एक एडिशन देखने को मिल रहा है। जिस टीम के ऊपर कैमरा है उस टीम के नाम के साथ यहाँ पर कैमरा भी दिखाई दे रहा है, जो कि मेरे ख्याल से ज़रूरी नहीं है, बिकॉज अगर हमें गी के सामने दिखाई दे रही है तो इट मीन्स गी के पर ही कैमरा है। ये शायद बनाने की ज़रूरत नहीं थी, बट गी के व्हाट अ ब्यूटीफुल स्टार्ट आदि, बहुत ही अच्छा। कल की टीम 4 थ्राइव्स नॉकआउट्स जिस तरह पहले उन्होंने निकाले हैं, इस बारी कंफर्मेशन के अंदर भी तब्दील उला के साथ जो हुआ ही जो हुआ ही किसी के साथ नहीं होना चाहिए। सबसे बड़ी बद्दुआ अगर आप किसी को दे सकते हैं तो वो ये दे सकते हैं कि जो उला के साथ हुआ वो तुम्हारे साथ हो, बिकॉज दिस वाज ऑन सम अनदर लेवल। लेकिन चलें यहाँ देखा जाए, फ्लैश वर्सेस अरोरा भी होता हुआ दिखाई देता है। जी हाँ बिल्कुल, एंड अरोरा अब टीमों के हाथों अपने सारे के सारे, क्योंकि आएंगे जन फोर्स, ट्रेड नॉक निकाला जाता है। T24 इज द लास्ट वन स्टैंडिंग एंड इट्स अ 1 वर्सेस 2, जहां T24 टॉसर्स में आएंगे एंड ही आल्सो गेट्स एलिमिनेटेड। RRQ को दाद देना पड़ेगी, बहुत ही शानदार ख्वाब बन जाएगा, लेकिन ये बड़ी गलती थी। दिस वाज दोनों खिलाड़ी Alex show alongside 4 thrives. Yeah, I mean it will be a problem for other players if I be consistent, then yeah. Absolutely. Well, thank
इतना बेहतर नहीं गया जितना बेहतर करने की कोशिश टीम 40 ने की। दोबारा ऐसा मैच नहीं जाना चाहिए जैसे अरोरा, उन्होंने रिस्क इस मैच के अंदर बिल्कुल भी उठाया नहीं। उन्होंने कंफर्म किया अपना चिकन डिनर, जिसको आई वुड से कि वो प्लान कर कर आए हुए थे। एक मैच बुरा गया है और एक मैच का प्रेशर 2 मैचेस पर नहीं जाना चाहिए। बट खैर, EWC 26. I'm with Falak, the man himself, and I want to talk about game 1 here for that Rondo match as a whole. Because Erangel wasn't too impactful. Let's talk about Rondo. You guys were on the west side for quite a while. UK was north of you, and you were a little bit stuck in there, but you kind of made a good meal of it. So, what was the game plan for Four Thrives in those moments? Our game plan was pretty simple from the start, that we have to hot drop, take kills, and just scout. Like whichever places are free, we were just scouting and rotating according to that. Okay, so I mean, in that game, 9 eliminations for Falak here, looking for an MVP already by the looks of things. Do you think that it's going to be there's going to be challenges from other players if you're able to put up those kinds of performances, or is it going to be the Falak show alongside Four Thrives? Yeah, I mean, it will be a problem for other players if I be consistent. Then yeah. Absolutely. Well, thank you very much, Falak, for joining us here. I'll let you get back to your team. Obviously, plenty more games to come here at PMWC at EWC 26. That is Falak here from Four Thrives. वेल फलक का कहना है कि अगर मैंने कंसिस्टेंट खेलना शुरू कर दिया तो इट विल बी अ प्रॉब्लम फॉर ऑल द प्लेयर्स। वेल डेफिनेटली फलक इज राइट। फर्स्ट वेल टॉक मैच पर एंड दोबारा वो बात होगी, प्लेयर्स आएंगे तो फिर हम जब उस बात को दोबारा से स्टार्ट ज़रूर करेंगे। लेकिन नो रिप्लाई ऑल द वे टुवर्ड्स सॉल्वर सिवनी, आपको प्लेन लाइन बनते हुए दिखाई दी। टीम्स में टीम अरोरा सोसफ का मिलिट्री बेस हमें जाते हुए दिखाई दी। सर्कल की भी अगर साथ साथ बात की जाए तो इनफैक्ट सर्कल भी एक ऐसा सर्कल बन चुका है जहाँ मिल्टा और मिल्टा पार के जो चांसेस हैं फॉर द लास्ट सर्कल वो आपको काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। सो टीम एजी, आई थिंक ऑल गेमर्स, उनके पास एक अच्छा चांस हो सकता है, बट इट ऑल डिपेंड्स ऑब्वियसली कि आने वाला जो सर्कल है, खासतौर पे हमारा जो स्टेज 3 है वो कैसा सर्कल शिफ्ट जो वो लेकर जाएगा। लेकिन फिल वक्त हम वापस आ चुके हैं और हमारी टीम प्लेयर्स के POVs जहाँ पर RRQ अल उला को चेज करेगी और बचना नामुमकिन है प्लेयर का। थोड़ी ही यहाँ पर दूरी पे थोड़ी ही वक्त के अंदर आपके प्लेयर नॉकआउट होते हुए दिखाई देंगे। देयर यू गो, RRQ अब इस मैच का फर्स्ट एलिमिनेशन हमें ड्रॉ करते हुए दिखाई दी। निहत्ते ओपोनेंट के ऊपर गोलियां चलाना ये कहीं की बहादुरी नहीं है, लेकिन दुश्मन सामने आए तो फिर दुश्मन को छोड़ा भी तो नहीं जाता। वो एक पॉइंट, वो एक एलिमिनेशन पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं चाहता हूँ कि कभी ऐसा भी हो कि आपके सामने कोई प्लेयर आए जिसके पास वेपन ना हो तो आप उसे छोड़ दें। आप कहें कि हम निहत्ते दुश्मनों पर वार नहीं करते, लेकिन क्या ये सेंसिबल है? आई डोंट थिंक सो। आपके सामने कोई भी आए, चाहे पूरा स्क्वाड आ जाए, 4 प्लेयर्स आ जाएं, चाहे 1 प्लेयर आ जाए, एलिमिनेशन पॉइंट की वैल्यू आपको तब पता लगती है जब किसी टूर्नामेंट के अंदर आखिरी मैच में उस एक पॉइंट से टीमें डिस्क्वालीफाई होती हुई घर जाती हुई नजर आती हैं। दिस इज द रीजन व्हाई यू कैन नॉट डिसरिस्पेक्ट अ सिंगल एलिमिनेशन पॉइंट। लेकिन RRQ फिलहाल जेनफोर्स की तरफ से एलिमिनेशन पॉइंट कंफर्म किया जाता है एंड नाउ दे मूविंग टुवर्ड्स देयर प्राइमरी ड्रॉप लोकेशन। लेकिन लेफ्ट साइड पर अगर आप देखें आपको लाइव फ्रॉम पेरिस वो सीन्स दिखाई दे रहे हैं जहाँ पर प्लेयर्स तैयार हैं, प्लेयर्स रेडी हैं। निग्मा गैलेक्सी, ये थोड़ी सी बात की जाए इनके बारे में, पॉइंट्स टेबल पर देयर नॉट ऑन अ वेरी कंफर्टेबल स्पॉट। पहला मैच इनका बिल्कुल भी अच्छा नहीं गया था, सेकंड मैच में रिलेटिवली बेहतर खेला। इन टोटल 10 पॉइंट्स निकाले जो कि बहुत अच्छे तो नहीं है, बट चलें ठीक है। यहाँ पर इस मैच में, इससे अगले मैच में एक बड़ी परफॉर्मेंस आ जाती है। निग्मा गैलेक्सी अपने आप को पॉइंट्स टेबल में टॉप 3 में लेकर आ सकती है, टॉप 5 में लेकर आ सकती है, बट फॉर नाउ द प्रेशर इज डेफिनेटली ऑन देम। थोड़ा सा प्रेशर ज़रूर आएगा, उस प्रेशर से निकलने के लिए वो बड़ी परफॉर्मेंस निकालना उतना ही ज़रूरी है। एक और टीम की बात करें जो कि अर्ली ऑन फाइट में आती भी नज़र आती है, दैट इज X4's रिजेक्ट, जिनको हमने मोस्ट ऑफ द टाइम्स रिसीविंग साइड पर ही देखा एंड अनफॉर्चुनेटली अपने प्लेयर्स गवाते हुए नजर आए। बी इट द फर्स्ट मैच जहां पर इनके ऊपर 2 एलिमिनेशन पॉइंट फोर थ्राइव्स निकाले थे, और बी द लास्ट मैच जहां पर हमने देखा कि एक अच्छी जगह पर तो थे लेकिन प्लेयर्स वो टीम गेम नहीं दिखा पा रहे। इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट कि आप टीम गेम दिखाएं, टीम फाइट्स लें और टीम फाइट्स जीतें, बिकॉज किसी भी चैंपियन टीम की अगर आप हिस्ट्री उठाते हैं, अगर आप नंबर्स उठाते हैं तो आपको ये बात वाज़ेह नजर आएगी कि वो टीम फाइट्स के ऊपर रिलाई कर रही है बहुत ज़्यादा। हाँ बिल्कुल, और आई थिंक खास तौर पे अगर आप वर्ल्ड कप जैसे स्टेज की बात करें तो देयर इज़ नो डाउट कि आपको टीम फाइट्स ही आगे लेकर जाएंगी, आपको टीम फाइट्स ही इस टूर्नामेंट को विन करवा सकती है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली क्योंकि अभी हम हमारे स्टेप 1 पर मौजूद हैं, ग्रुप स्टेज पर हैं, सो यस
अगर एक अच्छा स्टार्ट हो जाता है आपका, आपके सभी प्लेयर्स की तरफ से एक परफॉर्मेंस हमें देखने को मिल जाती है, तो डेफिनेटली आने वाला जो मरहला है आपके लिए वो ज़्यादा हमें जो वो आसानियाँ लेकर आता हुआ दिखाई देगा। जहाँ तक आपने बात की रिजेक्ट की, देयर इज़ नो डाउट हमें अफ्रीका से आए हुए नाम दिखाई दे जाता है, और आई थिंक एक ऐसी टीम भी है जिनके पास ऐसा कुछ ज़्यादा एक्सपोजर नहीं था जब उन्होंने PMGU सीज़न 1 खेला, लेकिन सीज़न 1 की वो जो परफॉर्मेंस है वो भी अनफॉर्चुनेटली कुछ खास नहीं गई। टीम हैश 25 पे एंड करते हुए दिखाई दी थी, फिर उसके बाद अब जो है एक और S tier इवेंट है जिसमें ये टीम आपको प्ले करते हुए दिखाई दे रही है। सो स्टिल आप कह रहे हैं कि इनके करियर वाइज अगर आप देखें तो आई थिंक इट्स क्वाइट अर्ली स्टेजेस के, यहाँ से हमें एक्सपीरियंस ही गेन करते हुए दिखाई देंगे। यहाँ से अगर इनफैक्ट अगर आप PMGU सीज़न 1 के मुकाबले में बात करते हैं तो प्रॉबली अगर टीम सर्वाइवल स्टेज तक भी चले जाती है, सर्वाइवल स्टेज से इनफैक्ट अगर उन्होंने अपने आप को फाइनल तक पहुंचा ले फिर तो खैर बहुत बड़ी चीज़ हो जाएगी, लेकिन आई वुड से कि अगर सर्वाइवल स्टेज तक भी टीम जाती है और वहाँ पे अच्छा खेल कर फिनिश करती है डिस्पाइट द फैक्ट वो क्वालिफाई करे या ना करे फाइनल्स के लिए, तो तब भी आई थिंक रिजेक्ट के लिए एक अच्छा ही यहाँ पर हम रिजल्ट जो इसको कंसिडर कर सकते हैं, कंसिडरिंग कि जिस तरह से आपको एक नई ये टीम जो है अफ्रीका से इस सारे ग्लोबल टूर्नामेंट्स को ज्वाइन करते हुए दिखाई दिए। लेकिन खैर बैक टू द टूर्नामेंट, बैक टू द एक्शन जो कि हमारे सामने ऑन द स्टेज भी चल रहा है और हमारी स्क्रीन पर भी है कि आपको प्लेयर्स दिखाई दे